लोलोंडो। Night World Championships. गुड मॉर्निंग Throughout the बॉयज। season, these skilled teams have battled to secure their place on the हेलो किरत भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वैसे गुड आफ्टरनून के गुड मॉर्निंग भाई, मैं टाइम में कंफ्यूज हूँ यार बेटी। शिट मैन। हेलो स्काइलॉट भाई, क्रिम्सन भाई, कुणाल जी, विजय वरा भाई, हिमांकर जी, सुजल भाई, एंड एवरीवन एल्स एज वेल। वेलकम टू द स्ट्रीम यार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट सबको। यूवीएक्स, आशु जी, आर्य घोष जी, आराम जी, रिपेश भाई, कल्पना झा जी। हाँ भाई, गुड नाइट भाई, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाल है सबके यार? सेक्सी जनस वेलकम स्ट्रीम। इंडिया से है कोई? नहीं यार, कल रेवेनेंट थी। इधर ही ग्रुप्स देख लो, दिख रहे हैं आपको। अपने ग्रुप में मैं रेवेनेंट थी, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट क्वालिफाई। अभी टॉप 8 आ चुके हैं वर्ल्ड्स के सारे। सो ग्रुप ए से T2 नो शो, ग्रुप बी से रेनेसेंस टर्निटी, ग्रुप 3 से ब्लैक हैंडेड आई क्लैन, ग्रुप डी से आईएक्स गेमिंग एंड नाउन्स ई स्पोर्ट्स क्वालिफाई करके आ चुकी हैं। ब्रश नहीं किया क्या? ऐसा क्या भाई, क्या हो गया? सही था रिपेश जी, अच्छा था। मुझे भी खिला लो अपने साथ कभी। हाँ भाई, आजा वर्ल्ड में, चल चल चल, पासपोर्ट रेडी है। आरएनटी के लिए खराब हो गया अब तो यार, जो हो गया कुछ कर भी नहीं सकते ना यार। दे डिड द बेस्ट इन वट एवर टाइम दे हैड, एंड यू नो इट वाजंट इनफ। अच्छा गाइस, सबसे पहले एक चीज पूछूंगा। जो आपको लाइक स्क्रीन दिख रही है, ज्यादा ब्राइट तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? मेरे को बस एक चीज ये कंफर्म कर दो, क्योंकि मैं यूजुअली पीसी स्क्रीन ज्यादा दिखाता नहीं हूँ ना, तो मेरे को आइडिया नहीं है कि सारा कैसा है। राजू देवनाथ जी, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग बडी, वेलकम टू द स्ट्रीम। मेरे को बस वही कंफ्यूजन है थोड़ा। थोड़ी टू ब्राइट ब्राइट है क्या? रुको रुको, मैं अभी ठीक कर देता हूँ दोस्त। फिल्टर्स, फिल्टर्स। अब ठीक है? क्या अब कम ब्राइट हो गई है? लॉल, माइटी फुल स्क्रीन का। रुको रुको ना, रुको रुको। आई एक्शन वी फाइनल, यप यप, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम। ओके नाउ, ऑल गुड। कुछ खराब तो नहीं है ना? अजीब तो नहीं दिख रही? ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दिया भाई, कर दिया है। परफेक्ट। सीक्रेट शिप के साथ अनफेयर हुआ है भाई, सीक्रेट शिप के लिए सब रूट कर रहे थे, पहला मैच ही 0 गोल। टू डार्क। यार तुम ना सुधरोगे नहीं लौंडो यार, तुम्हारी ऐसी की तैसी। टू डार्क हो गया अब तुम्हारा। थोड़ा और कम करूँ कि थोड़ा और ज्यादा करूँ? चलो, अब ठीक। अपने पास T2 और नाउन्स स्पोर्ट्स पहला मैच ही है शायद, मैंने शेड्यूल भी नहीं देखा भाई। यार एक बंदा बोल रहा है टू ब्राइट, अब बोल रहा है कम। मैं क्या समझूं यार? परफेक्ट है। ठीक है, ओके दोस्त मेहता। फिल्टर हटा दो जान। अरे फिल्टर हटाया तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी मेरे लाल। फिल्टर हटाया तो जीजी वेलप्लेड हो जाएगा। फिल्टर लगा के कम किए मैंने। थोड़ा ब्राइट हो गया यार, मैं क्या दिखता हूँ आपको यार? इधर वॉच पार्टी करनी है और तुम बकचोदियां पेल रहे हो मेरे साथ। सैचुरेशन इंक्रीज कर देता हूँ और ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, क्या बोलते हो? ऑल गुड। आरएनटी की मैच कर ली होगी थी, ग्रुप ग्रुप स्टेजेस कर लिए हो गए थे मेरे दोस्त। तो उधर ही खत्म हो गया था आरएनटी का तो। लाइक दे लॉस्ट द ग्रुप्स एंड अरे एंट्रेंस आ गई गाइस। साउंड करा देते हैं। आज किसका मैच है? आज अपने टॉप 8 ब्रैकेट्स के मैच हैं दोस्त। अभी ब्रैकेट्स भी दिख जाएंगे। अपना तो अच्छा साउंड ठीक आ रहा है सबका गाइस? बादशाह क्यों नहीं गया? उसका लाइक थोड़े वीजा इश्यूज थे दोस्त, बट आई थिंक कोई और इंडिया से नहीं, एक ही टीम गई थी दोस्त। क्या यार, U7 और सोल नीड टू रीच वर्ल्ड वेव के, बट ठीक है भाई, U7 और सोल भाई ठीक है यार। ओपी भाई मेरे को खुद याद नहीं है, देखना पड़ेगा। इंडिया हार चुके हैं ब्रो, दे लॉस्ट यस्टरडे। भाई टकलू भाई ओपी यार। यप, आई सपोर्ट आरएनएस एज वेल, होपफुली। मेरा थर्ड टीम था एक्साइस और वो हार गया, उसके लिए बुरा लगा। एक्साइस तो यार उनके लिए भी ऑलमोस्ट इंडिया जैसा सीन था कि अपने रीजन में अनडिफीटेड थे, बट जब वर्ल्ड्स में आए तो पता लगा लाइक कंपटीशन काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है।
is a commanding presence. RS and IX ऐसा क्या सही है यार? No show 2 OP, T2 better. No show से T2 better है, in my opinion. उनके ग्रुप से जितना मेरे को लगता है. चलो इधर पिक्स चालू हो गए. मैं एक बार जरा अपने सर्वर पे टैग कर दूं, नहीं तो लोग बोलेंगे. ओ भाई ओ भाई. Very different play styles and giving us an idea what truly is going to rise to the top in competitive Pokemon Unite. One thing that's standing out to me already is that T2 has taken Supercell फाइनल्स का है. यप दिस इज टॉप 8. भाई पिक्स तो जा रहे हैं यार. ब्राइटनेस बहुत हाई है यार. अब हाई हो गई क्या? तुम्हारी ऐसी की तैसी यार. रुको जरा. तुम बोलते हो ठीक है, अब बोलते कम करो यार. पहले ठीक क्यों बोला हरामो? हरामियों. In these competitive team compositions, we see Nouns Esports loading up that powerful teleporting Pokemon hyperspace holes and rings unbound allow you to quickly move around the map. But T2 is favored not Contrast playing कम that करूँ कि character क्या so करूँ far in the यार? tournament. Yeah, instead having some movement speed held items to Is this maybe better? help circumvent that, but also Hello Throw Gamer भाई, welcome stream. Bro filter हटता. अरे भाई ज़्यादा हो गया क्या? On the left side of your screen, T2 is sending Mame on the Serena into the central area. Mame, an absolute superstar player. अब ठीक है? A lot of people's opinion, best player in the entire world. आदि भाई जरा मॉड हटाना पड़ेगा, फील आ रही है. हेलो सागर भाई, वेलकम टू स्ट्रीम. T2 yesterday showed us अब तो जहर हो गया है. जहर मतलब their ज़्यादा हो गया क्या? in the central area until much यार later जल्दी in जल्दी the बताओ game. चैट, And मेरे को now देखना है. they have their ठीक Hoopa करना है भाई. invade मैच से the पहले ठीक opposing करना ही है. central area here, picking up that valuable experience that T2 often goes back for later. कंट्रास्ट A थोड़ा level कम 1 करो. invade is a great read from Geeks. You see that they already found the KO on the Bouffalon, meaning they got the red buff for themselves as well. They're going to give up on the blue one and instead opt into trying to steal this APALM away. We see Snorlax being the last hit contender. That is the fantastic character that it is, getting in there and getting that valuable experience away from now. पर अब तो बहुत ब्राइट हो जाएगा यार. Play there. We see a brawl breaking out in the top path on this point with Gatlu pushing up on that Trevenant, getting the first knockout here on the Zarina for Nouns Esports. Now Gatlu's Trevenant play has definitely been very successful in the past. We saw maybe not the best performance yesterday when he was playing that Pokemon, but now I'm really excited to see how well against one of Japan's भाई वो फिल्टर हटा के था. getting a nice KO. Haruto goes in for 2 and they find the KO onto Redmaw as well. ओरिजिनल लगाया तो आपकी आंखें खराब हो गई. But that is still a 1-for-2 trade. We see the power of that hyperspace highway from that Hoopa, bringing 2 members down to the bottom path and stopping what would have assuredly been a number of points going into this bottom goal zone. That is true. It ended up being a little bit of a 2-for-2 trade. Takishima on the Blissey did get knocked out. अरे नॉर्मल बहुत ब्राइट है. अभी तो बोला. तुमने बोला फ्रेश हो गए हम तो. They have got a lot of smaller, I mean by that, by sub 20 AOS energy scores, meaning they have ओरिजिनल लगाओ एक बार, रुको. but a lot of stats. फिल्टर ये हटाया. ये ओरिजिनल है. कैसा है ये? This is original. जो अभी देख रहे हो ये ओरिजिनल है. मुझे कुछ दिखाई नहीं. ये सब फिल्टर हटा के खराब ना लगा ना. फिल्टर लगा दे. फिल्टर लगा दे. अब आ रही ना आवाज. जहर है भाई. जब बोला फिल्टर लगाने दो. नहीं यार. यार क्या चीज कम करूँ? गामा, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ह्यू शिफ्ट, ओपेसिटी. क्या चीज करूँ? मुझे सेटिंग बताओ. मेरे को ज्यादा पता नहीं, नॉलेज नहीं है. Haruto starts out the fight. Supercell follows up with a pretty nice जल्दी जल्दी बताओ. SC12 is permanent. ब्राइटनेस कम करूँ. मैं कलर करेक्शन का फिल्टर, सैचुरेशन इंक्रीज करनी कम करनी है. Players are being pushed around in order to see a big beam from the Dragonite here. Ooh, it is Redmaw with that power up punch secure on the Dreadnought. Redmaw finds that final last hit. Desu with KO streak of 2 as well. They are going to try to chase down Mame, but the likelihood of them finding them in any time soon, not super high. You can see the HP bar of that Pokemon on the left side of your screen. But in the meantime, Ruin has found a crime. भाई ये तो बवासीर लग रहा है.
I think that first Dreadnought engagement there really highlights the strength of Noun's composition here. We saw Mame on this arena kind of pushing out the Dragonite around that Dreadnought, but that left Redmaw an opening still to get in there with their power-up punch and secure that super... filter नहीं हटेगा मेरे भाई. Rotom तो मिल गया, T2 नहीं. Nouns को, random gaming ये Nouns. Onto that Redmaw, but they do find a KO into the Cramrats. Who's squishy there? An unstoppable counters in Mame's Unite move. They get knocked out immediately. Geese finds it with a hyperspace hole, and now they break the top tier. Goal zone are headed towards tier 2. Yeah, with a very small overkill there, I have to imagine the call on comms is that let's push up in here, let's get these points in on the second goal zone. But it looks like, unfortunately, एक काम करते हैं भाई, स्ट्रीम भी बंद कर देता हूँ मैं. आराम करो. They do, but Gatlu got 40 points in the bottom goal zone at the exact same time. They do break the bottom tier goal zone as well. T2 finds a couple of KOs for their trouble. Nice little safeguard there by Bruv to keep themselves with an unstoppable feature so they can get away. SAT का pronunciation तो SAT वाली है मेरे भाई. Safeguard attack here on the Blissey. We've frequently seen Blisseys playing eggs to heal recently, and the fact that they're playing into this really powerful Snorlax reposition makes the unstoppable that safeguard invaluable. अब बताओ. Phenomenal tank player, obviously one of the only players. सब zero कर दिया तो आपको काला दिखेगा. Living here in London full time, so playing a little bit on home turf. Brightness तो है भाई. Great show for the home crowd today. Original color क्यों नहीं आ रहा मेरे को नहीं समझ आ रहा. जो मेरे PC पे दिख रहा है, जो मेरे PC पे दिख रहा है वो color क्यों नहीं आ रहा तुम पे. मुझे वो टेंशन है. Little better. नहीं दोस्त, PC से ही कर रहा हूँ. काला कर दे क्या भाई. यार तुम मैच नहीं देखने दोगे यार. ओ भाई ट्रेवेनेंट भाई गैटली जहर कर रहा है. रुको, इधर से कुछ कर सकते हैं क्या. घंटा इधर से कुछ हो रहा है. ओबीएस सेटिंग्स ही देख रहा हूँ यार. कलर करेक्शन का फिल्टर लगा रखा है. पीसी खराब नहीं है यार. This goal zone does get broken thanks to a small 11-point dunk there by Supercell, but रुको, now the reinforcements from Nouns have arrived. A Bliss assistance goes on to Gatlu. They तो मैच देखो, मैं सेटिंग का बवासीर देखता हूँ. क्या बोलते हो? We see the second Rotom spawning in the top path here. Not अब देखना. super important for T2. ब्लैक स्क्रीन दिख गया होगा आपको तो बीटी. We see the hyperspace highway open up here, bringing all of Nouns to the top path. The Unite moves start popping off here as we see that rings get unbound. I believe that was yet another Serena Unite move. It got countered again, but Keys with this Hoops Unbound is pushing forward, allowing Gatlu. Better? अब ठीक हो गया लगता है. अब ठीक हुआ शायद. See how Nouns chooses to play this Rotom. It's looking like it's going to be map pressure. We see lots of yellow dots representing wild Pokemon up all across the map. It looks like Nouns is going to elect to kind of fan out and clear that. HDR की MKC. Get higher levels on their characters. They can be the best HDR की MKC. for this final engagement. क्या बोलते हो? HDR enabled था. Every objective on the map and are looking at 4 level 12s on their side, where T2 has only one. पिगी भाई ये कर लो यार. अब मैं चैट देख सकता हूँ फाइनली. अब मैं चैट देख सकता हूँ फाइनली. भाई कल वारंटी खराब है रे कोई ना. Congratulations on learning stage 1. Also trying to escape Dragonite, getting in some damage. A huge block there by Supercell. जहर भाई. It does not find a KO quite yet. चलो guys. HDR game. Sorry guys. noob हूँ मैं. चलो अपने को 50-50 देखना है guys. अपने को क्या बाकी ऑब्जेक्टिव है. अपने को 50-50 देखना है. मटका गेमिंग देखते हैं guys. Let's go. तब तक मैं गिवअवे का लिंक भी डाल देता हूँ इधर. ओ भाई जहर तो चल रहा है. सो सारे ऑब्जेक्टिव नाउन्स को मिले हैं. अच्छा अगर किसी को पता नहीं है नाउन्स ई स्पोर्ट्स ही रैंडम गेमिंग है. अगर किसी को पता नहीं है तो सारे उनको ही मिले हैं. हैप्पी बर्थडे. आज मेरा हैप्पी बर्थडे एक बार. अरे हैप्पी बर्थडे अरीफ जी. वेलकम स्ट्रीम. जुग जी हो यार. मेक श्योर टू एंजॉय द डे एंड अपना रेजोल्यूशन रख लो यार. रिप्ले करो 2x में. अरे नहीं डीएम भाई आगे हल्का सा स्ट्रीम लैग होता है. फिर एक बार प्लेबैक कर दिया ना तो थोड़ा लैग करता है थोड़ा सा. पाजी किडनी स्टोन हो गया है. कौन सी बीर पीऊं यार. मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ. ओ भाई सीधा ही आडेसू भाई जीजी भाई. गैटल्यू पे ब्लिसी का अल्टर 4 बंदों को बिजी रख रहा है यार. What the fuck? उधर ऊपर का पोर्टल, उधर ड्रैगनेट ने मेल्ट किया है और ये फ्लफी.
Another one here. The Zapdos goes in favor of Nouns Esports. I have to imagine this first game as well. भाई ट्रेवेनेंट लास्ट हिट लेकर गया सारे ऑब्जेक्टिव्स की। दो ड्रेड, एक ज़ैप्डोस, शायद तीसरा ड्रेड भी। भाई यार इधर अपने को नहीं मिलती ड्रेड यार। गैटली भाई को रिक्रूट करना पड़ेगा। ब्रेनेक्स भाई हम कब जा रहे हैं वर्ल्ड्स खेलने? भाई रेवेनेंट गई है यार, वो अब हार गए बस। हेलो थ्रो गेमर वाला भैया, मैं हूँ मेलन, ऐसा क्या दीक्षा जी? पेड़ ओपी भाई, गैटली ब्लिसी दोस्त है भाई। कल आपने स्ट्रेटजी यूज किया था ना टूर्नामेंट में, नाइस ब्रो नाइस एनालिसिस। नहीं घोल भाई ने अपनी मर्जी से इजी स्लैश लिया था, बाद में उनको पता ही नहीं इजी स्लैश यूज कैसे करते हैं, मेरा दिमाग खराब हुआ था। भाई जहर चल रहा है। चलो HDR डिसेबल करना इतना पता लग गया, पर स्टिल कमबैक पॉसिबल है यार अगर ये। ओह ओके भाई गैटली पूरा चीज कर रहा है यार, उसकी चाहे पूरी टीम लाइक बैग भाई गैटली वो पे यार। भाई उसको कोई डैमेज ही नहीं हो रहा है यार, टायर नहीं टरला हुआ यार इसके। यार पूरी टीम उसकी पूरी टीम 3-4 बार रिकॉल करके आ चुकी है, वो बैठा है। फाइनली मरा है शायद, नहीं मरा भी नहीं। इसलिए आपकी स्ट्रीम मेरा कोई ना यार हरिंदर जी, गेट वेल सून मेरे भाई। ये तो जहर हो गया यार, जहर हो गया ये गैटली जॉर्ड यार। अच्छा गाइस साउंड वगैरह सब ठीक है ना? मेरा साउंड और गेम का साउंड ठीक आ रहा है ना उधर से स्ट्रीम का? Phenomenal individual performances from specific players. I mean, Gatlu with some amazing Trevenant play, both on the defense and on the offense. Redmon with some incredibly timed split pushes. हाँ, all right है क्या? Stat line, I think it's fine. कल का ओवरलॉर्ड का गेम था यार, मैंने वो मैच मिस कर दिया यार, उसका फर्स्ट मैच मिस कर दिया था मैंने, फर्स्ट वीडियो 3 मिस कर दिया एक्चुअली। 6 के 7 बजे के बाद मैं कोई मैच नहीं देख पाया, 7 से 10 बजे तक मैं मैच नहीं देख पाया, कोई काम में फंस गया था थोड़ा। भाई ट्रेवेनेंट मामे भी अच्छा खेला यार, मामा जी अच्छा खेले। रेड मॉप अप से डैमेज देता रहता है, बट ट्रेवेनेंट यार जहर 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 जहर। यप गैटलर ब्रो, जीजी वेल प्लेड भाई। भाई पूरा प्लान्ड भाई ट्रेवेनेंट कैरी। चलो गाइस बैटल पास गिवअवे का लिंक भी डाल दिया हमने, पिन कर देता हूँ। 2 डेज लेफ्ट है, जिन्होंने भी बैटल पास गिवअवे एंटर नहीं किया दोस्त, लाइव चैट में लिंक पिन है, एंटर करें, 2 स्टेप्स कंप्लीट करें, फॉलो सब्सक्राइब आपकी मर्जी, एंड यू आर गुड टू गो। 2 दिन में खत्म हो रहा है, 23 तारीख को विनर्स अनाउंस हो जाएंगे। सोलो की सेरीना देखी, यप यप यार, पर उनका भी तो बेचारों का सीन था यार, लाइक अगर उनका ओरिजिनल जंगलर होता ना जी, शायद नो शो नहीं आती फिर, शायद नो शो नहीं आती फिर। ये ब्रूफ टिच वाला है, सब अपने नॉन प्लेयर्स ही हैं। यप अपना ही है ब्रो, ब्रो एचडी। वैसे मैं गैटलू से ओपी खेलता हूँ सपने में, पर वो तो मैं भी खेलता हूँ यार। भाई ट्रेवेनेंट लास्ट हिट लेकर गया है यार, ट्रेवेनेंट चैट मिस। अरे भाई इधर वॉच पार्टी चल रही है मेरे लाल भाई। कहीं मैं पीयू इंडिया डीसी पे गया था, बोला कोई खेलेगा, लोग बोल रहे हैं हम बस। ठीक है यार जनेश भाई, कोई ना यार, द पेन इज रियल, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेने का भाई, दर्द समझ आता है। क्या ही बोले, they were basically out of position at that second dreadnought, but Gatlu here, our player of the game, with just Gatlu भाई use of that curse burst to be able to secure the क्या ही बिल्ड है यार, इसके स्टैक कैसे हो गए यार इतने। ये देख बहुत रहे होगा आज भाई, कर्स तो रो दिया होगा। ब्लैक एंड जीजा बस। चलो दूसरे मैच भी चलो, आज स्पीड पकड़ी है इन्होंने भाई, कल तो बहुत डिले हो गए थे भाई, आज स्पीड पकड़ी है।
डबल एक्सपी शेयर रन हो रहा है क्या? नहीं डबल एक्सपी शेयर तो अभी तो नहीं दिख रहा। ड्रैगन नाइट स्कोप खेल रहा है। ओके गेट लू स्कोर शीट चला गया उसकी की जगह। एंड उधर डबल स्पेक्स फोकस एनर्जी एम्पलीफायर है एजी पे। भाई कितने यूनिट मारने हैं उसको। ब्लिस्सी भी फुल डैमेज गई। डबल एक्सपी शेयर इधर है टी2 की साइड पे। कल तो एक घंटे बस 2 मैच हो रहे थे वही ना। इंडिया की टीम का क्या हुआ पॉकेमॉन्स भाई? रेवेनेंट खेल रही थी बट कल दे लॉस्ट इन द राउंड रॉबिन। अभी राउंड रॉबिन स्टेजेस खत्म हो चुकी हैं। टॉप 8 टीम्स आ चुकी हैं। दिस इज द फाइनल मैचेस। दी आर द फाइनल टॉप 8 टीम्स उनके मैचेस हो रहे हैं। डबल एलिमिनेशन ब्रैकेट है पूरा तो मैचेस काफी जाएंगे आज। राहुल भाई शाउट आउट टू यू दोस्त। यार कोई ना यार तन्मा भाई फर्स्ट टाइम था चलता है। कियात भाई तो कॉमन चीज है यार। सपोर्ट करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट भाई ये कर लो यार। वेलकम टू स्ट्रीम एवरीवन। भाई है डबल एक्सपी शेयर। यप डबल एक्सपी शेयर टी2 की साइड डबल एक्सपी शेयर है। उनके साइड नाउंस की साइड नहीं है मेरे ख्याल से। हेलो कृष्णा भाई एंड हेलो एवरीवन एल्स वेलकम टू स्ट्रीम। गुड इवनिंग आफ्टरनून मॉर्निंग टू एवरीवन। आरएनटी का लास्ट मैच। यप आरएनटी ने लास्ट मैच तो अपना पूरा दे दिया यार। लास्ट मैच तो अच्छा गया। आई थिंक वही है ना वो अपनी इंडियन स्ट्रेटजी से खेल रहे थे बट इन द एंड एनिमी ने ज्यादा काउंटर किया। इन द एंड वही मैटर करता है ना। लाइक एनिमी ने आपको कितना रीड करा आपने एनिमी को तो उधर थोड़ा डिफरेंस दिखा। बट यू नो दे प्लेड वेल कंसीडरिंग उनके प्लेयर चेंजेस कितने हुए हैं। लाइक एक महीने में उनको भी नहीं पता था उनके कौन से प्लेयर जा रहे हैं। पहले लेग का कंफर्म हो जाता है फिर चेंज हो जाता है तो चलता है। दे डिड देयर बेस्ट इन व्हाट टाइम पीरियड दे हैड। ठीक है लाइट गामी भाई स्नो मोड ऑन मैन। नहीं यार खुला चैट करो यार खुला चैट करो। वॉच पार्टी है यार। मैं तो खुद देख रहा हूँ मैं चैट भी ढंग से नहीं देख पा रहा। आज सीरियसली बोल रहा हूँ मैचेस देखना यार। मैचेस देखना चैट पे कम फोकस करना। सीखने को मिलेगा अभी। ओजी लुका वर्सेस ओवरलॉर्ड लुका हो जाए जीजी हो जाएगा। आपका कौन फेवरेट भाई टूर्नामेंट में? अभी तक तो आई एम रूटिंग फॉर आरएनएस आईएक्स एंड ब्लैक हैंड एंड समवॉट टी2 एज वेल। 4 टीमों को रूट कर रहा हूँ बट चलता है। 4 टीमों को रूट कर रहे हैं। ओवरऑल का देखो। हाँ ओवरलॉर्ड ने तो कल जहर किया था भाई। ओरेंगुटैन का ओरिजिनल जंगलर डेव करके था बट कुछ इश्यूज की वजह से वो नहीं आ पाया। तो उनका जितना मेरे को स्टोरी पता है उनका हुपा प्लेयर करंट वो जंगलर बन गया एंड उनका सब्स्टिट्यूट जो वो गर्ल प्लेयर थी वो हुपा खेल रही थी। ओजी भी नहीं खेल पाई ओपी भाई। ओजी भी अब टॉप 8 में नहीं है। दे आल्सो लॉस्ट इन द राउंड रॉबिन स्टेजेस। जीजी की टीम नहीं गई क्या? नब देयर कुडंट क्वालीफाई। एंड मूवमेंट पे उनका सीन हो गया। हार गए वो मैचेस। सरीन लेके तो हम भी घुसते हैं फाइट में। ऐसा क्या भाई पर जिंदा निकलते हैं ना। आरएनटी बार क्या यस दोस्त कल ही बार हो गए। सॉरी कल लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया। कल थोड़ा मैचेस में ध्यान दे रहा था प्लस टाइम भी नहीं मिला प्रॉपर लाइव स्ट्रीम का। टीम नो शो नहीं यार। आई डोंट थिंक टीम नो शो। ब्लैक हैंड टी2 आरएनएस एंड आईएक्स थोड़ा सा ना यू नो अपर एंड रखते हैं बाकी 4 टीम से। मेरे आईएक्स क्वालिफाइड दोस्त। आईएक्स इज क्वालिफाइड। आज मैचेस होंगे दोस्त। मैं तुम्हें ब्रैकेट बताता हूँ रुको। आपको ब्रैकेट बताता हूँ रुको। मेरे पास ब्रैकेट्स हैं। गिव मी अ सेकंड। Flexibility, great game awareness, amazing mechanics. But honestly, if I'm looking across the entire team of Nouns Esports, they are so phenomenal from top to bottom. Not very often do we have what I like to call sometimes a super team. T2 versus Nouns अभी चल रहा है। Then it's gonna be RNS versus iClan, Blackhand versus No Show, Ice Gaming versus Eternity. और इनमें से जो भी हारेगा वो लूजर्स ब्रैकेट में जाएगा। डबल एलिमिनेशन फॉर्मेट है। T2 just running it straight back here. It's important to remember that it's not just बीस्टर्स भाई ये कर लो यार। करेंगे भाई नेक्स्ट टाइम फुल ट्राई। वेलकम टू स्ट्रीम भाई। जीजीएस वन लाइक इनफाइनल सारे चुना बीटीएस मेंबर लग रहे हैं भाई। कोई ना यार तुम लोग अगली बार जाओगे। देखो यार जो भी टीम जाती है मैं नहीं कहता हम भी कंफर्म जाएं कोई भी टीम। बस यू नो द बेस्ट वन गोज। लाइक
इस बार तो चलो जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ, कुछ रूल्स बने, लाइक यू नो जल्दी जल्दी में सब कुछ ढंग से नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम अब टाइम है, सब कुछ सॉर्ट होगा, सब टीम्स प्रॉपरली प्ले कर पाएंगी इन माय ओपिनियन। इंडियन टीम हार गई श्रेयस जी, कल हार गए वो फर्स्ट स्टेज में। तो 2 स्टेजेस का था वर्ल्ड चैंपियनशिप, पहले 4 ग्रुप्स का राउंड रॉबिन, सो हर ग्रुप में से 2 टीम्स क्वालिफाई कर सकती थी, उसमें से हमारी टीम नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। तो ये हमारी टॉप 8 टीम्स है अभी वर्ल्ड के लिए। ऐसा कि इंडियन हैकर भाई, ठीक है भाई स्पैम मत करना यार, किस नहीं तो स्लो मोड ऑन करना पड़ जाएगा मेरे को। व्हाट डू यू थिंक आरएनटी की क्या गलतियां? आई थिंक वही है यार, मेटा का ही सीन हुआ इन दी एंड। उन्होंने अपने लाइक यू नो देख सकते थे वो थोड़ा इंडियन मेटा अडॉप्ट करने का ट्राई कर रहे थे, बट हो नहीं पा रहा था, लाइक काउंटर हो गए थे। अमान खान जी थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, वेलकम स्ट्रीम। सॉरी ये थोड़ा आपको मिनिमाइज ना दिख गया हो। ओ भाई रेडमो भैया, अपनी टीम में दरबारी भाई तो सीधा लंदन गए हैं। दिस इज सेफगार्ड वेट टेस्ट था कल यार, अब उनको भी नहीं पता ना प्लेयर्स, थोड़ा लाइक यार चलो कोई ना यार, नो कंप्लेंट्स, दे डिड द बेस्ट। नर्वस हुई काफी, पॉसिबल है कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं ये एक्चुअल सिचुएशन तो उनको ही पता है ना एज अ प्लेयर्स। रश किंग भाई, वेंजर भाई कहां से आ गए इधर? हिंदी वाली स्ट्रीम भार्गव जी, वो एक्चुअली में हम कर तो लेते बट हिंदी वाली स्ट्रीम एक्चुअली 5 to 10 मिनट्स डिलेड है, तो चैट में भी रिजल्ट स्पैम होगा, तो वो नहीं चाहता। ये बीच पे गोकू का में अरे मेरा वो वॉलपेपर दिख गया, लाइक मिनिमाइज हो गई स्क्रीन गलती से। ओ भाई बफ तो ले गया, जिंदा बचेगा अपना बंदा। सुपर सेल भैया, अरे काट गया, अरे काट गया भैया। टाइम पर बट टाइम बहुत वेस्ट हुआ इसका, टाइम बहुत वेस्ट हुआ इसका। We see Mame pushing up on this T2 point in the top path at that powerful Zarina stage now, looking to get those double stops. निंजा कब खेल रही है कुलो भाई? विंजर हो तेरा भाई। They really need some attack weight stacks though if they're going to try to match up to Redmaw, if they're going to catch up. They have a full 30 AOS energy and T2 भाई मामे का सरीना तो नेक्स्ट लेवल है यार, जो भी हो जाए वो लेवल ही लेता है। Opens up in a manual rotation from T2. ऊपर क्रैम लोग घुसे हुए हैं रेडमॉ पे, by Hoopa and friends piling in the clown car and popping out the other side. गोल हो गया उनका तो। ड्रैगन का चलो ड्रैगन नाइट 8 हो जाना चाहिए। फॉर द विन। आई एम होपिंग फॉर नाउंस। ये दोनों ही है यार, ये दोनों में ही टक्कर की है इन्हें। वैसे ये सोलो का सरीना ओपी बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट यार, सोलो ने बहुत किया कल यार, बहुत कैरी किया सोलो ने, मजाक नहीं कर रहा, बंदा फोड़ रहा था टू बी ऑनेस्ट। हिंदी कमेंट्री अपने वाले ही कर रहे हैं ना, वो लोग भी लंदन गए हैं, इधर स्टूडियो में ही है वो लोग, स्टूडियो में ही है बिशट भाई। बॉट एडी स्लेज मिटाने वाला क्या? अभी तो मेटा बहुत कुछ चेंज होगा यार, अभी तो नया मैप आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में तो स्टैंडर्ड में आएगा बट स्टिल अभी मेटा चेंजेस एक्सपेक्ट करो काफी, बैलेंस चेंजेस भी तो आएंगे अभी, तो कुछ नहीं कह सकते। वेट करो, आज नूडो का सरिया देखा भाई, क्या ही बोले। गोल लीड तो ठीक है, टीम एक साइड के टूटे हुए हैं। ड्रेड नाउंस ने लिया, रोटम इन्होंने टिटू ने लिया, बट भाई गैटलू भी लाइक ओ भाई Gatlu did not hear your caster curse, do not worry. A unite move on Naharuto and Supercell. They are trying to still fight this. भाई वो मर नहीं रहा है यार। हेलो रॉबिन भाई, वेलकम टू स्ट्रीम। Locked them in place, big KO there. Desu on the other मेरे side though. को तो ये अच्छा लगा कि इन्होंने देखा ड्रेड के नहीं मिल सकता, रोटम गया पे आप। चलो मैं भी अभी चैट की जगह थोड़ा गेम पे फोकस करने वाला हूँ, मेरे को थोड़ा देख लें। दिया भाई, इनका स्नोलैक्स 9 हो जाए।
has a little space of an angle. लेवल एडवांटेज तो अभी भी नाउंस के पास ही है। Esports has a little bit of space. They instead fan out and घेट ली तो यार जहर है यार। You know थोड़ा टैंकी मेटा चल रहा है वर्ल्ड्स में। मैक्स टू मैक्स क्रैम या नाइनटेल दिख रहे हैं और कोई टैकर दिख ही नहीं रहा। कल उन्होंने गेंगार दिखाने का ट्राई किया, क्या नाम था यार सीक्रेट शिप का, बट बीटी वेल प्लेड। मामे भैया गोल का प्लानिंग कर रहे हैं। के नीचे रेड फाइट ऊपर तो इन पे है, तो मामे कैसे आएगा? पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है भाई गोल के लिए। ओ भाई लॉल यार, वैसे ये सही रहता है यार, ये चीज सही है। एक साइड पे एजी स्लैश है, एक साइड पे ड्रैगन नाइट है और सरीना भी है, क्रैम भी है, लेकर ऊपर जा रहे होते हैं यार लास्ट हिट। मतलब लास्ट हिट कोई और ही लेके जा रहे होते हैं यार। कल तो लगी देखा था, कल दोनों टीम में ड्रैगन नाइट, ग्रीडेंट, स्नोरलैक्स, लुकारियो और लास्ट हिट ब्लिस्सी को। इंडियन टीम का मैच मेंढक भाई कल हो गया था इंडियन टीम का मैच, दे कुडंट क्वालिफाई फॉर टुडे स्टेज, सो अनफॉर्चुनेटली आज नहीं देखा गया इंडियन का मैच। नाउन वालों ने फुल जोन कर दिया भाई बीटी। मामे तो स्कोर ही करी जा रहा है यार, अगले 3 मैच के स्टैक करने हैं क्या भाई? पूरा जंगल ले रहा है उनका। जापान टीम्स का ये देखा यार, मतलब ऑब्जेक्टिव्स पे चाहे फोकस ना करें, स्कोर पे करते रहेंगे, फार्म लेते रहेंगे, लेवल मेंटेन, और उनको फार्म भी नहीं दिया तो उनका भी लेवल बस ऑब्जेक्टिव से मिल रहा है मेनली एनिमी टीम को। सही है यार भाई, काट ली फिर भाई का। ओ भाई नाइस हर्ट। ओ भाई गैटलू भाई ओपी यार। यार स्नोरलैक्स ने ड्रैगन नाइट को चिपका दिया भाई, ड्रैगन नाइट को चिपका दिया। इन्हें या पेन कुछ नहीं कर सकता इस के अगेंस्ट। भाई मामे ने तो उठा दिया यार भाई, फाइट क्लच कर सकता है भाई पूरा भाई। 1v4 यार भाई 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 भाई, एटलीस्ट वी डोंट सी जंगल स्टीलर है यार। कितना सरवाइव किया इसने यार, इसने कितना सरवाइव किया है। जीजी वेल प्लेड ड्यूड, माइट बी एक ब्रीफ कंफ्यूजन दिस टूर्नामेंट में देख नहीं पाया। तो देखो गाइस, आफ्टर एवरी क्वालिफायर जो टॉप 16 टीम्स आई थी वर्ल्ड के लिए, उनमें से इंडियन टॉप 13 बच गई, नहीं सॉरी 16 13 बचे बिकॉज 3 टीम्स couldn't come due to visa issues and all. So 13 टीम्स बची, बस ग्रुप ए में 4 टीम थी, बाकी ग्रुप्स में 3 टीम्स। अपने ग्रुप में रेवेनेंट थी, सो रेवेनेंट क्वालिफाई नहीं कर पाई, ओनली 2 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप क्वालिफाइड। तो अब आज के स्टेज पे टॉप 8 टीम्स हैं हमारे पास एंड उन्हीं के मैचेस हैं। ये फर्स्ट मैच है, फर्स्ट BO3 है, सारे BO3 होंगे एक्सेप्ट आई थिंक ग्रैंड फाइनल्स, लूजर्स फाइनल्स एंड जस्ट इन केस ग्रैंड फाइनल्स का रीसेट होता है तो वो BO5 होंगे। ओ भाई गैटलू का सिर्फ 2 बंदा पेल्ट लगा, 1 बंदा पेल्ट लगा गैटलू का, तो थोड़ा सा टेंशन हो रही है भाई। माँ में तो क्रैम कार्ड थोड़ा भाई गैटलू मार दिया यार, नाइस कमबैक। Dude, nice ब्लिसी अल्ट, पर नहीं उनके ब्लिसी का भी अल्ट है। स्नोरलैक्स लेट गया भाई, फुल जोन आउट कर देगा ये आदेशु को तो मेरे ख्याल से। इनको तो पता भी नहीं होगा कौन लीड में है यार, अनलेस इतनी इनकी मैसी गॉड लेवल है। गैटलू पर वापस आने वाला है अब, पर रेड मो डेड है, एक सिक्योर गया इनका। ये हाइपर भी है लो। जीजी T2 गया सेकंड मैच के साथ। ब्रो पारेंटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो they did their best in the circumstances they had। कराउली ने
और बार गा रहे हैं भाई डीएम भाई। कोई ना यार, आरएनटी डिड देयर बेस्ट गाइस, आरएनटी डिड देयर वेरी बेस्ट। मेटा डिफरेंस दिखा बट यू नो जाएगा इंडिया आगे, इंडिया आगे जाएगा, डोंट वरी, इंडिया विल गो हेड, डोंट वरी। कमबैक पॉसिबल तो नहीं लग रहा इस मैच में, टाइम हो चुका है इनका, टाइम तो जीजी हो गया है। अरे गाइस लेट्स गो, 200 वाचिंग, ये भी सही है यार। वेलकम टू स्ट्रीम एवरीवन, मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब यार, एंड लाइव चैट में अपना बैटल पास गिव अवे पिंड है, अगर ज्वाइन करना है तो कर दीजिए गाइस, 2 सिंपल स्टेप्स हैं, विजिट करना है बस। भाई स्नोरलैक्स जहर कर दिया यार, ये एक्सपीड वाले स्नोरलैक्स बहुत जहर दिखे यार आज भाई, स्नोरलैक्स बहुत जहर दिखे यार, एक्सपीड दबा के ब्लॉक यार, एकदम टक्कर का मैच चाहिए, एकदम टक्कर की मैच है। राजेश जी मॉडल भाई प्रोफेशनल प्लेयर थोड़ी हैं, वैसे हम मस्ती के लिए डेफिनेटली खेले थे एक दिन, तो खेलेंगे आगे जाके भी होपफुली। चलो गाइस दूसरा मैच T2 लेकर जाती हुई। स्वीट भाई अपने को परमिशन है दोस्त, वी गॉट परमिशन सो वी आर डूइंग इट, वरना नहीं करता आज दोस्त। बाय बाय, एकदम टक्कर का मैच है यार। इज आरएनटी आउट? यस मतंग जी, आरएनटी इज आउट। कोई ना यार, सीखने को काफी कुछ मिला यार, टेंशन नहीं है, फर्स्ट टाइम था। लाइक अगर मैं कंपेयर करूं, देखो ब्राजील की टीम थी अपना XIS, ठीक है, और अपनी एक इंडिया की टीम थी। ब्राजील का मैं ज्यादा नहीं जानता सीन, बट वो भी शायद इंटरनेशनल उतना नहीं खेले, एंड अपना इंडिया भी इंटरनेशनल उतना नहीं खेली। ये जो PUPL लास्ट हुआ था सीजन 3, वही था एक इंटरनेशनल इवेंट जो हमारे साथ हुआ था। अदरवाइज बाकी सीजन्स का देखे, एओस कप्स, मंथली कप्स होते थे, बाहर की टीम्स को फेस करते थे, वो इंडिया ने नहीं किए फेस। इंडिया का ना अपने अंदर एक इकोसिस्टम बना हुआ था, सो हम लोकल टीम्स के अगेंस्ट ही यू नो अपने मेटा अपना कुछ, अब वर्ल्ड पे फेस किया पता चल रहा है भाई कि यू नो बीटी है। यस ब्रो, टायरेनिटार एंड ग्लेशियन आर बैंड, आई थिंक टायरेनिटार डेफिनेटली बैंड है, ग्लेशियन का मैं नहीं कह सकता। टीटो क्रैमर, अरे नहीं देखा नहीं यार, कोई ना यार पहले। ओ भाई ऑब्जेक्टिव में तो जीजी है इस बार, थोड़ा सा मैसा वो उन्होंने गैटलो को पूरा घेर लिया यार। These are really fun to watch when there is third games in worlds, yep, एकदम यू नो नेल बैटिंग मुकाबला, क्या ही बात करें। सही खेल रहे हैं पर चलता है यार, वैसे नो स्टार्टिंग में ही क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम प्ले नो काफी आगे है यूनाइट अपना। हेलो RRK गेमिंग एंड एवरीवन इन द स्ट्रीम। ग्लेशियन का मेटा मूव बैन है, व्हाट डू थिंक माइट बी बीजेएम बैन से फ्यू को? देखो मेंडिक भाई वो तो बूस्ट तो वैसे भी मिलता, अब शायद यू नो, वैसे बीजे में बैन तो नहीं यार, बैन तो परमानेंट बैन है, वी कैन कॉल इट अ सस्पेंशन, वी कैन कॉल इट अ सस्पेंशन rather than a ban। वापस तो आएगा बीजे में यार। बाय आरएनटी मैचेस लेट, एमसी गेमिंग ब्रो आरएनटी के मैच खत्म हो चुके हैं दोस्त, RNT didn't qualify for the top 8 matches. Yes bro, I have the टेंशन ना लो यार, वॉच पार्टी कर रहे, टेंशन ना लो। स्विच अलाउड, नॉट एवरीथिंग इज अलाउड एक्सेप्ट फॉर पीसी, एमुलेटर नहीं अलाउड है। बाकी जो भी इनका गेम पैड है, निंटेंडो स्विच है, iOS, एंड्रॉइड, जिसमें भी गेम ऑफिशियली अवेलेबल है वो सारे डिवाइसेस अलाउड हैं, बिकॉज दे आर नो उन्होंने बनाया ऐसा है कि इक्वल रहे। चलो गाइस थर्ड मैच फिर से ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। गैटली भाई ग्रेडियंट आ रहे हैं क्या वापस? लेट्स गो। टेलन पे एक्सपी शेयर, हेलो गैटली भाई क्या चल रहा है ये? दे प्लेन मोबाइल, वो उन पे प्लेयर्स पे डिपेंड करता है दोस्त, एक टीम के प्लेयर्स किसी भी पे खेल सकते हैं, एक स्विच पे खेल सकता है, 4 मोबाइल पे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये तो पता नहीं है मेरे को। काफी लोग स्विच पे खेलते हैं, काफी लोग एक्सबॉक्स, शायद एक्सबॉक्स पे, पता नहीं मेरे को। मर्सी भाई का सीजन 2 मतलब नहीं हरिंदर भाई, हमने अपने को टेंशन ना लो यार, टेंशन ना लो यार, टेंशन ना लो यार, आप लोग स्विच में खेलना थोड़ा बढ़िया है मोबाइल से, ये तो भाई पर्सन पे डिपेंड करता है ना। अभी मैं अभी स्विच पे जाके खेलूं, मेरे को नहीं सूट करेगा, राइट? मेरे को मोबाइल बेटर लगेगा, करेक्ट? वही बात है। अरे हाँ RRK भाई बोला तो दोस्त, नेक्स्ट वर्ल्ड्स कब होगा? 1 साल बाद ही होता है, अगस्त में ही अराउंड इनके होते हैं हर बार, जितना मैंने सुना है, बिकॉज सारे गेम्स इनके VGC, पोकन,
फिर वो 66 फॉर्मेट जो भी ट्रेडिंग कार्ड गेम सारा इधर ही होता है। एमजे द नर्ड कैट लॉन्ग टाइम नो से बडी, वेलकम टू स्ट्रीम। वो पीछे अपना सेबल आया पोकेमॉन। यार सेट तो मस्त बनाया है यार, सेट पूरा मस्त बनाया है इन्होंने, सही है। चलो भाई, लास्ट मैच ऑफ द फर्स्ट BO3। पोकेमॉन के टूर्नामेंट्स नहीं होते क्या? होते हैं शायद यार, होते हैं। डिस्कंटिन्यू हो गया क्या? मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अरे पैंथर गेमिंग भाई टेंशन ना लो। ऑलमाइट वर्सेस, हाँ बेटे सिंड्रॉग निंजा नहीं लेने के क्वीन में, निंजा लिया था उसने, ओवरलॉर्ड ने। सिंडरेस तो नहीं भाई, सिंडरेस नहीं चल रहा वर्ड्स में, टेंशन ना लो। आईपैड एंड टैबलेट्स भाई मेंढक भाई मेरे को नहीं पता, पर मोबा में यू नो टैबलेट्स पे नहीं खेलते लोग मोबा, बिकॉज यू नो आई डोंट थिंक पीपल प्ले मोबा ऑन टैबलेट्स। रोज रेड इन पीयूष हूं यार, ये तो लहस मस्ती कर रहे हैं। ऑडियंस पर थोड़ी खाली, आई डोंट नो कि ये वेन्यू ओपन है कि नहीं। आई थिंक ओपन नहीं है, ये वाला वेन्यू उतना ओपन नहीं है एक्सेप्ट फॉर टीम सपोर्ट्स। जो दूसरा वेन्यू है जहाँ पे लाइक यू नो मैच एरिया वगैरह वो ओपन रहता है पूरा। फाइनल आज होगा, यह फाइनल आज ही है दोस्त। पूरे 8 मैच का डबल एलिमिनेशन ब्रैकेट आज खत्म हो रहा है। फाइनल किसके बीच में अभी भाई? फर्स्ट मैच है ये दिन का यार, टोटल 8 टीम्स हैं, तो अभी वेट करो। ओके एमजे भाई, ब्रो रेवेनेंट क्यों हार गई? क्योंकि अपोनेंट टीम जीत गई यार। गजब करते यार, हार गई यार, तो हार गई यार। कौन सी टीम जीतेगी? अभी तो 4 टीम्स का हाथ लग रहा है। अभी ये मैच के बाद मैं क्लियर हूँगा यार, कुछ भी कह सकते हैं। आरएनएस है, ब्लैक हैंड है, आईएक्स है अभी, और ये 2 टीमें भी हैं। टॉप 8 है यार, एकदम इक्वल चल रहा है, ये लेवल इक्वल है। अब कुछ नहीं बोल सकते भाई। ब्रो हाउ विल यू गिव बैटल पास? ब्रो वेबसाइट ऑटोमेटिकली ही विनर डिक्लेयर कर देगी एंड उनको मेल्स के थ्रू गिफ्ट कार्ड कोड्स दे दिए जाएंगे। आर यू रियल ऑलमाइट है उसका भूत? ब्रो अभी कौन जीतेगी? आई एम वो यार, मैं दोनों के लिए रूट कर रहा हूँ यार, दोनों ही अच्छी टीमें हैं। RNT is in loser bracket। हाँ? भाई राउंड रॉबिन में आप बाहर हो चुके हैं भाई, लूजर ब्रैकेट कहाँ? ओ भाई चल, अरे पिक फिर से हुआ? पिक नहीं हुआ था क्या? लो फिर से कोई बीटी हो गया लगता है। ओके ग्रेडियंट दिख रहा है, सिंगल एक्सपी शेयर इस बार एंड T2 पे डबल एक्सपी शेयर अगेन। एक एनर्जी सही है भाई। चलो यार गाइस, ऑलमाइट भैया को मैच देखने दो यार, तुम भी मैच देखो यार, अब देखेंगे ना। आर यू स्टिल इन? यस ब्रो, वी आर अंडर सोल ब्रो, वी आर अंडर सोल। ये अमृत भाई वाले घाटलू है क्या यार? ये नहीं मेरे को पता अब अमृत भाई का घाटलू कौन है यार। इंटरनेशनल स्किन भी खेलो थोड़ा तक भाई, करेंगे रुक भाई, बिकॉज यू नो अब एक्सपोजर मिला, करेंगे डेफिनेटली, टेंशन ना लो यार। इन द एंड रेड थिंग पे थोड़ी पिंक करेंगे यार, क्या बोलो मेंढक भाई, बट नेसेसरी है ना। लाइक उन्होंने एक लैन इवेंट करवाया, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स होंगे, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा ना, राइट? दे कांट बी लाइक, फिर तो परमिशन नहीं मिलेगी। ब्लैक एंड वर्सेस T2 काइंड ऑफ पॉसिबल। लेट्स सी अभी अनाउंस का। चलो भाई, मतलब ऐसे देखो गाइस, नाउंस वाले 1-1-3 करके भी जीत, रेडमो थोड़ा ये ना कंट्रोल में है। बट वेट, इनके भी नीचे, हाँ इनके भी नीचे 3 है अब तो, माय बैड, डोंट कॉल। उधर स्नोलेक्स को छोड़ा है और उधर सरीना ज्वाइन करेगी उसको फार्म के लिए। गैटली भाई ने तो काम कर दिया। आठ बेस्ट गुच्चू प्लेयर यार, उनको तो एक नेट पर्सनल प्लेयर को मिलता होगा ना, लाइक हमारे यहाँ। क्या मतलब दोस्त?
पता नहीं दीक्षा जी, मुझे पार्टिसिपेट करना है वर्ल्ड टूर्नामेंट में, बट मैं 11 की हूँ। वो तो एज रिस्ट्रिक्शन तो वो तो रीजन पे रीजन बेसिस होता है। नेक्स्ट टाइम शायद हो जाए कि गार्डियन की परमिशन के साथ कर पाओ आप, कुछ नहीं कह सकते। भाई ग्रेडियंट का स्कोर नहीं होने दे रहा क्या भाई? चलो हो गया भाई। एजी पे तो छील रहे हैं यार बच्चे को। सरीना 6 हो गई है, ड्रैगनेट भी 6 है, पर गैटल्यू भाई काम पे चालू हो गए हैं। भाई छील रहा है यार, लग गया इसके। ओह मार दिया, तलवार को छील दिया भाई। अगर आप वर्ल्ड जाओ तो आपकी टीम में कौन फिक्स पे होंगे, ये तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे यार, किसको वीजा मिलेगा, किसको कैसा होगा, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। फिर भी ऊपर ठीक है यार। T2 गोल फोकस टीम है, नाउन्स ऑब्जेक्टिव पे चले जाती है। अभी जंगलर वैसे जंगलर भाई नीचे तो बॉटम लेन तो डेफिनेटली नाउन जीत रही है, टॉप लेन हल्का सा T2 का लीड है। आ रही है चलो और मेड पे वर्ल्ड के मैंने मजा। हां भाई हेलो एवरीवन, वेलकम स्ट्रीम। यस पीपी लुका बैडी आप लुका खेलते हैं। नाउन्स के पास लास्ट हिट की कोई कमी नहीं है। और कल यही कॉम्प था नाउन का, और एनिमी के पास भी 2 लास्ट हिट थे, और लास्ट हिट मिली थी इनकी ब्लिस्सी को। मतलब सोच रहे हो यार हमारी टीम को क्यों नहीं? भाई अब बोल रहा हूँ पीपी यार, क्या है यार इनकी कोऑर्डिनेशन भी देखो ना। ड्रैगनेट आधी एचपी पे हाइपर बीम मारा, उनको भी पता है उसकी टीम भी डैमेज देगी साथ में। ऊपर टावर तो नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा, तो बीट हो जाता है इनके रोटेशन का भी। भाई स्नोरलेक्स का हैवी स्लैम का ना अभी तक इधर आ रहा है। हैवी स्लैम सॉरी सरीना की स्टॉर्म भाई पूरा स्क्रीन शेक हो रही है। ये नाउन जीत सकती है क्योंकि नाउन की टीम में ड्रैगो है। वो इन दिन डिपेंड करता है ना टीम फाइट कौन जीतेगा यार। मामे भाई का अल्ट यूज हो गया, अब हील खा रहे हैं ना। लास्ट हिट तो ऑलमोस्ट हो गया था यार, बीटे जाता अभी। ब्लिसी का अल्ट यूज है, बस इनको ब्लिसी का अल्ट अब निकालना है। ब्लिसी का गोल करवाएंगे, आई थिंक ब्लिसी का गोल करा दो भाई, हो गया। एंड ड्रैगनाइट का आई थिंक, पर नहीं लूका का भी हो सकता है। अच्छा ये ब्लिसी के स्टैक करवा रहे हैं, मेरे ख्याल से इनको ब्लिसी के स्टैक करवाने थे बट नहीं हुए, उन्होंने अल्टी खोल दी ताकि ब्लिसी स्टैक ना कर पाए। ये थोड़ा बीटी हो गया इनका। रेड मॉक का लेवल 9 हिट हुआ है, शायद अल्टी यूज कर दे वो डिफेंड के लिए। नाइस क्लोज कमबैक, हीलिंग कम पड़ गई भाई। एजी से 9 बन गया, चलो किनोपी भाई। सुपर सेल का तो अब टाइम बाय करेगा ये थोड़ा। शील्ड खड़ी कर दो यार, टायरानिटर तो शील्ड भी पहन ले यार। स्नोरलेक्स की जीजी वेल प्लेड। इनेसो के इस दवारे अपना इनो तो जीजी है यार। अब एजी को छीलने के प्लान है भाई। लेवल्स तो इक्वल है यार ऑलमोस्ट। गोल्स कर रहे हैं ना T2 वाले, और टीम फाइट ऊपर गोल हो जाएगा क्रैम का। अरे पर गैटल्यू को भेज दिया रे गुच्चू गुच्चू। भाई वो क्रैम अपने सारे स्किल लेके भाग रहा था, गैटल्यू फिर भी अल्टी यूज्ड। स्नोरलेक्स हो गया भाई। ग्रेडियंट का सीसी भाई, गुच्चू गुच्चू इतना हिल रहा है यार, इतना हिल रहा है गुच्चू गुच्चू। 4 versus 5 in this bottom path. It's a strong commitment what they're doing here, but the Takashima and Arta are being able to support one another quite well. अरे उसने अल्टी दी थी पर लेट हो गया। नाइस स्लैम ड्यूड, जीजी।
very massive here, but भाई and Mame is knocking him down even farther. Mame looking to push up here, but back it out here, unable to get past the Bruv on the point. अबे नहीं हो रहा यार तेरा स्कोर. They missed the Dreadnought, but they collected a ton of knockouts afterwards. They sure did. यही सही है यार. अब एक्चुअली और बेटर होगा. नए मैप पे तो हिल बिल मिलता है वो ऑब्जेक्टिव्स लेने से. Rotom, the next objective up on the map. Yes, Godzilla banned those. Level 13. भाई टीटो को टेंशन ही नहीं है. फ्री ऑब्जेक्टिव भाई ले लो यार. हमें नहीं चाहिए. Only level 11 despite getting 2 Dreadnoughts. Mame has found a way to make this भाई वो लेवल work into this composition. उनका सरीना इतने गोल कर चुका है कि उसको 2 ड्रेडनॉट के बाद लेवल 13 और एनिमी का जंगलर. चलो एनिमी जंगलर छोड़ मैक्सिमम लेवल उनका 11 है यार. क्या चल रहा है बीसी. Aegis Slash for T2 is level 12 and there isn't even a single level 12 on the Noun side. Dread को वाला डमी वही ना यार. It's not going to be happening, but we still have to look at their BT भाई BT. As Zapdos' main objective, Haruto does find a KO once he's there. Redmon trying to engage a Desu. ओ भाई. Move at short range, it'll be back very. Nice भाई Snorlax. Redmon को छील रहे हैं यार, पर नहीं बच गया. वो 50 मारने जा रहा है फिर से. चलो काउंटर हुआ थोड़ा, पर जंगल तो दे रहे हैं हल्का सा. ओ भाई. यार पूरा फार्म ले रहे हैं T2 वाले यार. एक फार्म नहीं छोड़ रहे. मतलब टेंशन ही नहीं उनको. बीज उसने उसके लिए छोड़ दिया शायद, दोस्त के लिए, मामे के लिए. मामे बीज लेने जाएगा मेरे ख्याल से. अल्टी अभी मामे की नहीं है बस, एजी की भी नहीं है. उधर की साइड से गैटलू और ड्रैगनेट की तो आ ही जाएगी. हाइपर में स्टार्टिंग में मारी क्या, मैं ध्यान नहीं दिया. चलो गाइस फाइनल फाइट. दोनों टीम T1 से भाई जोन जोन हक दिया. But look where they're hiding out in that bottom right bush. If Nouns Esports has no intel, they could come in behind them in this Zapdos fight. We see Mame 14 3/4 looking for that level 15 with their first knockout here in T2. ऊपर पे चढ़ना चाहिए लोग. In the pit is just so beneficial. भाई इनका स्नोरलैक्स अब थोड़ा प्रेशर दे रहे हैं उनको, पर इन पे हुपा है तो ये गोल करके आ सकते हैं. गोल कर दे. यहाँ तो एकदम पीछे से आ रहा है ड्रैगनेट. ऊपर ने नीचे पोर्टल खोल दिया. भाई ब्लिसी तो छिल गई. गैटलू ने अल्टी यूज कर दिया. ओ भाई जी जी बाप रे बाप रे बाप रे बाप. चलो गाइस जीजी. 100-point dunks raining in here for T2. I think T2 जीजी यार, छील दिया रैंडम. गिज तो आउटप्ले करने जा रहा था रिकॉल में नहीं. सारे यूनाइट मूव्स वेट करवा दिया यार उन्होंने. सारे यूनाइट मूव्स वेट करा दिया. इन द एंड कुछ बचा ही नहीं इन पे. जीजी भाई जहर यार. मामे भाई जहर. उधर हुपा का यूनाइट मूव यूज करवा दिया, बाद में फाइट में आके पेल दिया, और अब टाइम वेस्ट करवा रहा है पूरा. भाई हाइपर बीम डॉज कर दे. चलो गाइस विद दिस नाउन Esports एक रैंडम गेमिंग गई है लूजर ब्रैकेट में, और ये और गोल मार रहा है भाई. सब भी रेड हार के भी लेवल डिप जैप पे नाउन का वही ना भाई. आप नेक्स्ट वर्ल्ड खेलोगे क्या, ये तो क्वालिफायर्स में पता लगेगा ना मेरे भाई. कंफर्म तो मैं ऐसे वही क्या मतलब कोई प्रॉपर्टी. ए स्ट्रीम को क्या हुआ, स्ट्रीम लैग हो गई क्या इनकी हैं. कम ऑन यार, ऐसे टाइम पे स्ट्रीम लैग नहीं होनी चाहिए गाइस. क्वालिटी को कम हो गई है. RNX नेक्स्ट. यप RNS वर्सेस आई क्लैन. ये भी गंदा मैचअप है गाइस, ये भी गंदा मैचअप है. जीजी मैचअप आने वाला है RNS वर्सेस आई क्लैन. वन ऑफ द टॉप मैचेस होने वाले हैं ये. जापान का मैक्रो भाई, जापान का मैक्रो. भाई छील दिया ना उसको यार. पूरे गेम कंट्रोल रखा है यार. मतलब उनको बीच में बेट दे देंगे. ये लो भाई टॉफी लेते जाओ, हम पूरी चॉकलेट लेके जा रहे हैं. टॉफी देते हैं नाउंस को ड्रेडनो और रोटम के नाम पे, पर चॉकलेट पूरी यही ले गए दुकान.
after knockout, reining in GG भाई mid to late game team fights for T2. गेम सेंस ओपी यार Ruins gameplay in games number 1 and 2. I thought they were playing pretty भाई, हाई क्वालिटी ही है भाई। इन द एंड दिस इज, अब ये चीज होने वाली है मेटा वर्सेस मेटा का गेम प्ले। That's it. कुछ टीम्स का मेटा सिमिलर होगा, कुछ टीम्स का मेटा डिफरेंट होगा। अब उनका नाउन का रेडमो है, लास्ट हिट वाला और टीम फाइट वाला। T2 का भी मेटा है, मैक्रो, गोल स्कोरिंग, एक्सपी लेने वाला, इसलिए बीटी दे रहे हैं पूरा। भाई अपनी टीम नहीं है यार, अपनी टीम कल राउंड 1 में ही आउट हो गई, राउंड रॉबिन स्टेजेस में अपनी टीम आउट हो गई, टॉप 16 टीम में थी पर आउट हो गए वहाँ पे। कोई ना यार, आज देखो वर्ल्ड का बेस्ट कौन बनता है। भाई यार टकलू को बहुत तंग, भाई इसका बहुत फनी बनाया इन्होंने। 2K से रह गया 100K से, मतलब कानिकी जी समझ नहीं आया। डैमेज अच्छा वही ना मामे भैया, तो भाई सरीना सारे ओपी है टूर्नामेंट में यार। सरीना, लुकारियो सारे ओपी है टूर्नामेंट में। कल तो क्राउली भाई भी सरीना खेल गए यार। आई थिंक मेजर बीटी यहाँ पे हुआ, ये जो टॉप पे रोटम फाइट हुआ ना, मेजर बीटी यहाँ पे किया इन्होंने। वो ब्लिसी के चक्कर में इन्होंने अपना पूरा थ्रो कर दिया। ओ भाई इधर ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता तो इनकी काफी टीम डेड थी यार। T2 kills पूरे टाइम T2 ये पेप, वही तो बोल रहा हूँ यार। लिटरली T2 ने मतलब कहा है तुम ड्रेड लो, हम तुम्हारा जंगल लेंगे, लेन फार्म लेंगे, स्कोर करेंगे, अपना भी फार्म लेंगे। लिटरली नाउंस के पास फार्म के लिए मुश्किल से अपना थोड़ा सा जंगल, 1-2 मिनियंस और रेड था बस। T2 ने पूरा मिड फार्म कंटेस्ट किया है, सारी बीज ली हैं, टावर स्कोर किए हैं, टावर पे स्कोर किया, टावर तोड़े हैं, लेन फार्म तक लिया है और अपना लेन फार्म भी लिया। अपना लेन फार्म जंगल तो लिया ही लिया है, एनिमी में घुस के लिया है यार। सोच रहे हो skipped objectives they didn't think they had a chance कास्टर to भी get. बोल रहे हैं, even sure I would phrase it that way. To me it felt like they just didn't think the objective mattered. They felt like they could get more value in other places and the way they came in. Serena nerf, yep, Serena is getting nerfed. Hello Pile Cute जी भाई, नाउंस फर्स्ट क्लास के लिए पर स्नोलेक्स ने बहुत, यप स्नोलेक्स बहुत बीटी दे रहे हैं टूर्नामेंट में यार। स्नोलेक्स बहुत बीटी दे रहे हैं टूर्नामेंट में। टीटो का स्ट्रेटजी मस्त है। यप भाई मेरा मैसेज पढ़ो ऊपर से प्लीज, एक सेकंड दोस्त। भाई पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया दोस्त, अभी पढ़ चुका हूँ। चलो गाइस ट्रांसलेशन चालू। अपने डूस्नेक्स भाई, भाई क्या बन के आए भाई, एकदम है चिल पार्टी में आ रहे हैं डूस्नेक्स भाई तो। चलो गाइस जापानी सीख लो, एनिमे वाले सारे मेरी तरह आ जाओ यार। And also to have won the match, it's absolutely fantastic. Well, it was a great showing by the team. Of course, you faced down Nouns Esports, a very tough team. What do you think your keys to success were to win? Well played यार, both teams played well. 試合だったんですけれども、टेंशन ही नहीं।対戦相手も大変手強い相手だった。दत्ते भाई, ओ भाई दत्ते भाई निकल गया तुम्हारा। वॉच पॉरी हो रही है क्या? यस क्षितिज भाई वेलकम टू स्ट्रीम। कैप बाइंड अप के यार मेटा देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, देखोगे नहीं क्या? मैंने तो कल इसी स्ट्रीम नहीं किया, मैं अपने इधर से देख रहा था और प्लस मेरे पास लाइक वॉच पार्टी का यू नो रिस्क लेना चाहता था, फुल परमिशन मिल गई तो आ गया दोस्त। स्नोलेक्स ओवर मोमोस वाइन डेफिनेटली। स्नोलेक्स का ब्लॉक अभी बहुत ओपी है। कामेहामेहा भाई आरिगातो। नीचान निकल रहा है किसी का भाई। नाउंस का है MRG 27 पर नाउंस जस्ट लॉस्ट देयर फर्स्ट मैच सो दे आर इन द लूजर्स ब्रैकेट नाउ। अभी आई थिंक आइकन वर्सेस ये लो या इस ब्रैकेट आ गया, ये विनर ब्रैकेट है सिर्फ। अब ओ भाई ब्लैक एंड ऑफ स्ट्रीम हुआ था, ब्लैक एंड वर्सेस नो शो ऑफ स्ट्रीम और ब्लैक एंड जीत गई 2-1। ओ भाई 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 ये क्यों कर दिया यार उन्होंने? ये मैच तो देखना बनता था यार। जीजी वेल प्लेड ड्यूड, तदाइमा भाई बंखाई। इस टू बी ऑनेस्ट मेरी उनकी टीम देखी टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि क्या भाई कुछ हम नहीं बोल सकते यार, प्रेशर था, प्लेयर्स काफी शिफ्ट हुए, प्रोसीडिंग्स में टाइम भी नहीं, प्रैक्टिस मिलने का, एनालिसिस भी थोड़ा सा कम था, यू नो। कोई ना यार, मेटा भी थोड़ा यू नो बैंड था। 4 मिनट का ब्रेक आ गया। अब आर्नेस वर्सेस आइकलेन होगा एंड आई
थिंक जो एक दूसरा मैच था एंड पे कौन सी टीम का था, ये अपने कामरूल भाई लेट्स गो। लाइक वर्ल्ड्स मोस्ट वर्सेटाइल जंगलर सबके ओपिनियन में तो ये क्या ही बोले, फेवरेटिंग का वैसे क्रिम्सन आई थिंक टाइम इश्यूज कल के देख लो यार, कल एक तो स्ट्रीम इश्यूज इनको बहुत हुए, प्लस इनका लिटरली कितना हमारे लाइक इंडियन टाइम में देखे तो 1:30 पे मैच स्टार्ट हुए थे और रात के 12:30 खत्म हुए। अब टाइम लगा लो यार, ऑलमोस्ट 11 घंटे का चला है इनका, 11 घंटे का टूर्नामेंट। कास्टर्स के लिए भी टायरिंग है, प्लेयर्स के लिए भी टायरिंग है, एंड मैनेजमेंट ऑब्वियसली यार कितना ही एक टाइम पे 11 घंटे का भाई, 11 घंटे समझ रहे हो। और एक इवेंट नहीं हो रहा इनका, एक इवेंट नहीं हो रहा भाई यूनाइट का, यूनाइट सॉरी पोकेमॉन का, उधर पूरा वेन्यू है। बीटीएस वाले कह रहे भाई लास्ट ईयर देखने को मिल रहा है गाइस। साकिल भाई इंडिया लॉस्ट यस्टरडे ऑन द डे 1 ऑफ द टूर्नामेंट अनफॉर्चुनेटली, सो आज देखने को नहीं मिलेगा। कल मैं वॉच पार्टी नहीं कर पाया, रियली सॉरी, पर मैचेस देख रहे थे हम। चलो भाई और बताओ यार मैचेस से क्या क्या सीखने मिल रहा है सबको। आई गेस सिंगल प्लेयर्स के पास सिर्फ कॉन्फिडेंस करें, आई थिंक यार इन द इंडिया यू नो मेटा पे तो बात आती है, बिकॉज कंपेयर टू अदर गेम्स मोबा में मेटा मेन चीज होती है यार, कंपेयर टू अदर गेम्स जो लाइक यू नो वर्ल्ड लेवल पे कंप्यूटर मोबास में मेटा की एक होती है, स्ट्रेटजीज की चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वे मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर गेम, लाइक रियली वे मोर इम्पोर्टेंट। ट्विच पे भी क्रिस रोजेंडी पे 12-13 घंटे वॉच पार्टी कर रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो वही ना यार, लाइक कैसे मॉडल भाई मॉरल, अच्छा नहीं अच्छा मॉरल मुझे मॉडल भाई कुछ भी करके जैफ फाइट जी तो मटका नहीं काम कर रहा है यार, मटका अब इस स्टेज पे मटका नहीं काम करेगा। मैं टू बी ऑनेस्ट यार, तुम टॉप 16 टीम से ही ले लो, ग्रुप स्टेज से ले लो, मटका भाई कितना मटका काम किया है, मटका गेम में क्या किया है, 50-50 बहुत कम, एक मैच में हो गया मुश्किल से, करने ही नहीं देते। मतलब मटके में ड्रैगनेट का बीम मारा, स्नोलेस अपने ब्लॉक से उसको दूर ले जाता है और बीम लगती नहीं है। क्रैम ने दिया, स्नोलेस उधर ही यूनाइट मार देता है, क्रैम कार्ड स्नोलेस को लग रहा है पूरा। व्हाई नॉट यूज ब्लास्टिंग इन सेरेना ब्रो, कंपेयर्ड टू लाइक यू नो मेटा ही ऐसा है, अभी स्नोलैक्स इतना चल रहा है कि ब्लास्टिक काउंटर हो सकता है, स्नोलैक्स रैपिड स्पिन में वो लट्टू उधर ले जाएगा। प्लस फार्म कैसे लोगे सरीना के अगेंस्ट, बहुत नेक्स्ट लेवल का ब्लास्टर चाहिए भाई। मुझे लगा था लुका का एरा खत्म हो गया है, बट नॉट एट यट। क्रैम इज बेटर नाउ समवट, अभी तो कुछ नहीं देखा भाई, अटैकर्स दिख भी नहीं रहे थे कल, आज तो चलो क्रैम दिखा, कल तो अटैकर्स भी नहीं दिख रहे थे। अभी आरएनएस वर्सेस आइक्लैन, फिर लूजर्स का राउंड 1 होगा, नो शो वर्सेस शायद आरएनएस वर्सेस आइक्लैन, जो हारेगा वो फिर सेमीफाइनल सीधा दिखेगा विनर्स ब्रैकेट का। पता नहीं कौन कौन सा मैच स्ट्रीम हो रहे हैं, आज से उन्होंने स्ट्रीम शेड्यूल थोड़ा शॉर्ट रखा है। Hope is MVP able to choose out their favorite Pokemon for. Yep. Guys again स्ट्रीम पसंद आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, एंड मेक श्योर टू एंटर द गिव अवे, लाइव चैट में लिंक पिन है यार, जिन्होंने भी एंटर नहीं किया है यू जस्ट हैव टू डू 2 टास्क, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है दोस्त, विजिट जरूर कर देना बस, फॉलो एंड सब्सक्राइब आपकी मर्जी, कंटेंट पसंद आ रहा है तो, एंड दैट्स इट। 2 डेज लेफ्ट है, 23rd को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा मेरे भाई, मेरा लाल बोलने वाला था शिटमैन। आईएक्स का मैच देखना है, आईएक्स का मैच स्ट्रीम नहीं हो रहा यार, शायद आईएक्स का मैच इसी के साथ अभी हो रहा है ऑफलाइन, बिकॉज वो सारे मैच स्ट्रीम नहीं कर सकते ना। आई थिंक काफी ये जो एक आई थिंक जो एक मेन वेन्यू है ना वो एक ही है, तो सारा इधर ही हो रहा है भाई। ऑडियंस तो है भाई, ऑडियंस तो है भाई, जी अपनी टीम को अब सच्ची इतना ग्राइंड कराऊंगा कि अगली बार हम जाए। अरे बिल्कुल भाई ट्राई करो। गुटका मुकेश भाई नाम तो सही है पर रेवेनेंट गई थी बट दे लॉस्ट यस्टरडे इन द ग्रुप स्टेजेस। चलो भाई कामरुल भाई आ गए भाई गाड़ी पे, भाई फुल अटैक गाड़ी है यार, कुछ नहीं है भाई सर्वाइवल के लिए। उधर वीनस और फुल नॉर्मल बिल्ड, सरीना भी नॉर्मल बिल्ड है, डबल एक्सपी शेयर रन कर रहे हैं, आईक्लैन भी डबल एक्सपी शेयर रन कर रही है, ड्रैगन रेजर क्लॉ के लिए गया स्कोपलेंस की जगह,
Serena भी normal build, Krem double specs focus. Let's go यार. ओ भाई. Guys ये मैचअप ओपी होने वाला है. Get ready. Spriggles भाई भी आ गए हैं. You know I love the slow bro, and I am excited. यार होने वाला भाई. The pin on my lapel is a slow bro. I'm sending my energy. MVP कामिरुल भाई होंगे. Let's see guys, टक्कर का मैच है ये. Not gonna lie. This is gonna be the most nail biting match ever. समझ लो ये finals level का है. Because GD boss spam होता है. Depend करता है actually. अब तो ये Dragonite की preference पे, team की preference पे ना. अगर ये एक आइटम से टीम को better result मिल रहे हैं तो वो आइटम यूज करवाएंगे. टेलीफोन बूथ बनेगा जाके कॉल कर लो यार. इंडिया क्या मिस्टेक थी यार, कुछ मेजर नहीं, यू नो वही था यार, एक्सपोजर नहीं मिला था इन द एंड. एक्सपोजर मैटर किया, अभी एक्सपोजर मिला है थोड़ा. चलो गाइस, आरनेस वर्सेस आइक्लेन फर्स्ट मैच. पेंगू भाई आ गए, सेमी जंगल करके लेन फार्म लेंगे एंड चलेंगे आगे. नीचे का लेन फार्म पूरा. बल्बा वर्सेस ये, और लास्ट हिट बल्बा को मिली है भाई. यार गोल को दिखाना पड़ेगा यार, नजर लगा दी मैंने. Shep trying to bully with puffs here down in the bottom stages. Yang is desperately trying to get those levels of the Bulbasaur. A little paltry in the early game, trying to get छील तो रहे हैं. छील तो रहा है भाई. सरीना उनका गया वापस जंगल. टॉप पे तो क्या भाई, टॉप पे ड्रैगनेट मार दिया. फ्रिफ भी मर सकता है. नहीं चलो बच गया. कामिरुल से बिल्कुल भाई. आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इसमें? यार इसमें कुछ नहीं, इसमें वोट ही नहीं है. भाई स्लो ब्रो को पिल दिया भाई. कहाँ गुस्सा था स्लो ब्रो पर इनका. हेलो भाई, ये तो फुल स्टॉम्पिंग गेम प्ले कर रहे हैं भाई. लीड में आ गए, पर अब सरीना 6 हो गए तो देखना पड़ेगा. अब इनकी रिबोंग्स थोड़ा अंडर फॉर्म रह सकता है. कामिरुल ऊपर आएगा आई थिंक. अब कामिरुल, पर ड्रैगन एयर जी 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 जी. कहाँ ना 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 ना, वो ड्रैगनर बन गया ना बीटी. स्ट्रीम लैग क्यों कर रहा है इतना थोड़ा सा. एंटी ओ भाई, सडनली जज्बात बदल गए यार. आइक्लेन पे शिफ्ट होगी लीड. कैम भी लेवल अप कैच कर लिया है अब, क्योंकि गाड़ी ऊपर गई तो क्रैम ने सारा फैम ले लिया. अब नीचे अब ड्रैगनेट जंगल हो गया, सरीना टॉप हो गया. ड्रैगनेट 8 का आ जाएगा होपफुली. बिना 7 का तो हो सकता है भाई. स्लोब्रो छील रहा है यार, स्लोब्रो छील रहा है बिना. अब थोड़ा बीटी है. यप भाई 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 जी 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 जी. ये तो स्टॉम्प कर दिया पूरा. सरीना 9 का हो सकता है. सरीना 9 का हो सकता है. रीबॉन्ग 6 का नहीं हुआ है. भाई 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 भाई. कामिरुल का तो 9 लेवल हो जाता है भाई पहले रेड पे. इधर तो सरीना लेवल 9 की आ रही है यूनाइट के साथ. इनकी सरीना 6 हुई. वीना, चलो वीना कैचअप कर रहा है, पर लेट गेम कॉम पे तो कुछ नहीं कह सकते. तो ड्रैगनेट 8 नहीं है तो ये एडवांटेज इनका. ड्रैगनेट 8 नहीं है अभी, होने वाला है. चलो भाई, कामिरुल भैया ने काम चालू कर दिया यार. रिबॉन्ग्स को पर्सनल फील करा दिया, पर बच गया भाई. ब्लेस यू भाई. अबे क्रैम भाई, रिबॉन्ग्स अभी लेवल 6 था. ड्रेडनो से पहले सीधा लेवल 9 हिट किया है. कामिरुल जी जी यार. आयरनेस जी जी. पर वही है ना, हुपा नहीं है आइक्लेन पे तो उसका एडवांटेज उठा रहे हैं ये. इंस्टेंट स्टार्ट किया इन्होंने, इंस्टेंट वेट ही नहीं किया. पर्सनल अर्ट्स का भाई. क्रैम वाला
वाला फेल्ट पर्सनल टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा बच सकता था, बट वही ना क्रैम बच भी सकता है, क्रैम टाइम वेस्ट करा सकता था उनका, तो उन्होंने मार दिया, सोचा बेटर, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं कर सकते ना। चलो आइक्लैन ने कमबैक तो किया, बट ना 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 ये वापस आएंगे और छीलेंगे। अब ब्लिसी कार्ड वीना पे है और वीना 10 का है, अब घुसेगा नहीं, चलो फाइट डिसएंगेज हो गई। अब क्रैम शायद इन्वेट करने का प्लान है क्या? नहीं, 20 का प्लान है। ओ भाई सरीना को देखकर डर लगता है भाई, पूरा फार्म दिया जा रहा है भाई, पूरा फार्म दिया जा रहा है। सरीना उनका नीचे 20 घंटे करने चला गया, ऊपर का भी इनको मिला। ओ भाई नाइस, लॉल, पर ये नीचे बीटी हो सकती है, ऊपर मर जाएगा इनका, तो पोर्टल कैंसिल हो गया, अब रिकॉल करके आना पड़ेगा इनको। ओह शिट, नहीं अब टावर गया शायद। Yeah, just a body falling back to earth, no worries. 20 seconds now until our second की dreadnought, and these two teams नहीं दिखाई ये लोग ने, कोई ना यार, कोई ना पहुंच गए ना आगे, समझ लो फिर ओवरलॉर्ड ने अपना गेम कर दिया। रेड इन 10 seconds गाइस, लेट्स गो। अरे यार टेंशन मत लो। ओ भाई वीना को डैमेज, भाई वीना को बैकअप मिल रहा है, भाई वीना को बैकअप, पेंगू मरा, क्रैम को छील रहे हैं, क्रैम डेड गया, ये क्रैम भाई, जीजी भाई जीजी। अब ये ब्लिसी चुरा के चलेगी तो कुछ नहीं बोल सकता, पर ब्लिसी टाइम भी तो बाइक करवा रही है, इनको जल्दी मेल्ट करना पड़ेगा। भाई गाड़ी इतना टेंस क्यों है भाई, गाड़ी भाई उन्होंने सारे यूनिट्स अपने वीना पे फोकस कर दिए यार, वीना का तो यूनिट भी नहीं खुला, वीना डेड, बाकी को सिक्योर कर दिया। जीजी वेल प्लेड, मून ब्लास्ट बेस्ट। यप भाई यूटीजी पे तो चढ़ ही गया, नाइस ब्लिसियर्ड भाई, वो नीचे बिना ब्लिसियर्ड के जीते हैं फाइट, एनिमी के तो ऑलमोस्ट सारे अल्ट थे नीचे, पेंगू का अल्ट पर वो यूज नहीं कर रहा अभी। जी जी अब वो यूज करेगा शायद, टाइम बाय कर लिया पर इन्होंने बीटी एंड ये फाइट हार सकती है वारनेस, थोड़ा बीटी हो गया है। ओके नेवर माइंड, नेवर माइंड, नेवर। यूनाइट क्यों नहीं यूज किया पेंगू ने यार, कैंसिल हुआ क्या? ध्यान नहीं लगा मेरा। एम्बलम्स बाय द वे नहीं है गाइस, एम्बलम्स नहीं है जरा, अरे ओ एम्बलम नहीं है भाई, एम्बलम्स नहीं है टूर्नामेंट मोड में, एम्बलम्स कब से आ गए? व्हाट द फक, डोंट स्प्रेड रॉन्ग न्यूज़ ब्रो, एम्बलम्स आर नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ इन वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड इन कस्टम मोड एज वेल, टूर्नामेंट मोड। स्लो ब्रो की सीन तो मस्त है यार, एकदम पड़ाकू, पर ब्रेन डिप होते हैं। एम्बलम बैन नहीं, एम्बलम यूज नहीं, बैन नहीं किया टूर्नामेंट मोड में, अभी लाई नहीं है वो, रैंक में चलता है सिर्फ एम्बलम, तो इतना स्पीड कैसे है यार? उसके स्किल्स का बफ, उसका लाइक एक्सपीड है क्या उसमें? मैंने ध्यान नहीं दिया उसके स्किल पे। प्लस यूनाइट में यूज करके स्पीड बढ़ती है ना, ये पुश तो कर दिया, पर अब वीना भाई जैसे इन्होंने वीना गाड़ी देखे भागो, ड्रेड के लिए तो है नहीं कोई, उनको लगा ड्रेड के लिए जा रहे हैं, भाई गॉड लेवल है काम तो अपना। जोन तो फुल बन गया रन इसका भाई, वीनस और सरीना एक साथ, गाड़ी आराम से फार्म कर रहा है, 15 के आने का प्लान नहीं किया भाई, कामिरुल का नहीं बफ ले रहा था, ठीक है उनका बस टॉप लेन का जोन है, कामिरुल एकदम पीछे बैठा है भाई, टेंशन ही नहीं उसको, पूरा कंट्रोल ले लिया इन्होंने, वॉकिंग चालू है भाई, उन सारे ही टॉप ऊपर से फाइट होगी पूरी। ओ तेरी पोर्टल दो भाई उसको, नहीं चल अंडा ही है, स्लोब्रो को छील रहे हैं भाई, स्लोब्रो बिना अल्ट के, हेलो गाड़ी ड्यूड, हेलो
भाई 4 यूनाइट यूज नहीं किए। What the fuck? With the Gardevoir are getting it done. Wow, 4 KO streak there for the Venusaur, unbelievable. भाई कामिरुल का यूनाइट जीजी यार। Every member of Icon, the 50-50 went all कामिरुल का यूनाइट। Thank you Thanos. At least Renaissance would be saying that. What a fight. I mean they dominated that Zapdos. Another one for Yang, level 15. यार ये तो अपनी टीम दिख रही है मेरे को। जीजी होता रहता है भाई। Wow, I mean, was it the Hoopa? Was it the Venusaur? There's definitely some स्लोब्रो ने यूनाइट क्यों नहीं यूज की? Renaissance really कल से देख रहा हूँ भाई, बहुत स्लोब्रो यूनाइट के बिना मर रहे हैं यार। वेट, आइक्लन का ही तो स्लोब्रो था। कल भी आइक्लन का स्लोब्रो था भाई, बिना यूनाइट के मर रहा। रुको भाई, करसट भाई को मैसेज करते हैं। No problems. Iclan, tough sled, and they have a lot of work to do in the last 30 seconds, but they're going to try their best. UTG Hyper Beam goes wide, doesn't find anybody. Oh भाई, try and get it done, deals tons of damage, but we also have the Gardevoir Unite coming in. भाई जितना भी कर लो नहीं आ रहा भाई। Venusaur, they're coming back into the action. Zarina goes down as well, but it's a Gardevoir getting a घर लेके जाएगा यूनाइट भाई। just barely making it out here, but you know there's so many points. There's वीना तो नहीं मर रहा भाई, नेवरमैंड नस्तर लगा दी गई। वीना नहीं मर रहा बोल के। भाई 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 बीटी। कल गिवअवे रिजल्ट परसों दोस्त 23rd, आज कितनी है? नहीं 23rd दोस्त, कल नहीं 22nd तक गिवअवे है, 23rd को गिवअवे का रिजल्ट आएंगे दोस्त। किसी और को भी बुला लो वॉच पार्टी में। कौन आएगा भाई? सब टॉक्सिक लोग हैं अपने, वो मस्ती मस्ती में बोलते हैं कुछ। ओ भाई बीटी भाई, अब आप लोगों ने यार, आप लोग साथ में हो, चैट भी तो पढ़ रहा हूँ। ये अपना सुपर सेन भाई, भाई वेल प्लेड यार। कामरुल भाई तो जीजी कर दी है, गाड़ी जॉड है भाई। हु कैन काउंटर सरीना माइट ब्रो? अभी के लिए तो लिमिटेड काउंटर्स है, एक तो स्लो वर्ल्ड है, दैट्स इट। दूसरी सरीना या फिर स्नोरलैक्स, उसको सीसी चाहिए यार, सरीना को सीसी करना है, दैट्स इट। आप क्या सोल से खेलता हूँ दोस्त, खेलते थे नहीं, खेलता हूँ। आई एम वाचिंग पोकेमॉन गेम प्ले ऑलमोस्ट आफ्टर 4 मंथ्स। अरे दीपेश जी भाई जहर है भाई, जहर भाई। डैमेज यार, कहाँ भी रूल तो टायरेनिटर वाला डैमेज दे रहा है। यप, आइक्लिन का स्लोवर कल से यूनाइट ही नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। यूनाइट बटन नहीं है लगता उसके लिए। पिका ले बेटा, गलती से मुंह पे पहुंच गया ना वो पिका के, एक स्टॉम्प में आधा एचपी। सबसे ऊपर अपना भी चेहरा डाल दो। हैं कहाँ पे? इसका ऑन करवाना है क्या भाई? लेट्स गो। डैमेज भाई, आइकन द नंबर 1 ऑलमाइट थ्रोअर भाई। ये कर लवा रहे हैं जीजी भाई। कामरुल भाई तो लिटरल मुंह पे है भाई, आके दिखाओ। पब भी इफेक्टिव है सरीना के अगेंस्ट, बट वही है ना, उसी टाइम खत्म करना पड़ेगा। आरएनटी का अचरीज भाई ऐसे कोई हेट कमेंट्स मत दो यार। दे डिड देयर बेस्ट, दे डिफीटेड लाइक एवरीवन, तभी गए हैं ना वो यार। टेक क्लासेस फ्रॉम कस्ट फॉर वर्ड्स। जब गाड़ी और ब्लैक होल में होते हो तो बटन डिसेबल होता है। अरे मेरे पर स्लोब्रो की बात चल रही है ना, वर्ल्ड में सब हैवी पोकेमॉन यूज हो रहे हैं भाई। चैट एक्टिव है भाई पूरी भाई। स्लोब्रो अगले साल यूनाइट चलाएगा भाई, ऐसा है क्या? ओ भाई, फर्स्ट ड्रेड पे आरएनएस ने पूरा कर दिया भाई, रेनेसांस ने पूरा कर दिया फर्स्ट ड्रेड पे सारा बीटी। हेलो एमडी फेरो ब्रो, वेलकम स्ट्रीम। स्विच में भी 50 चलता है गेम, मैंने सुना है स्विच में हल्का का लैग होता है। ये डिपेंड करता है भाई, आई डोंट थिंक लैग होता है। स्लोब्रो न्यू ईयर में यूज करेगा यूनाइट फॉर पार्टी भाई। सही है यार। इंडिया क्यों हारी? एनिमी टीम जीत यार, इंडिया क्यों हारी का क्या होता है यार? मतलब यार लोगों का मेंटालिटी चेंज करो यार, मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा यार। क्यों हारी का क्या मतलब होता है यार? वर्सेस में गए नहीं जीते बस। फोकस मैन थोड़ी था इसका। हेलो, ये तो एनर्जी एम था। शायद मोबाइल पे खेल रहे थे सब इश्यूज हो रहे। एक्चुअली भाई मोबाइल पे बहुत लोग खेल रहे हैं उधर भाई, सर्वर इशू का कोई बात नहीं है भाई। चलो गाइस, सेकंड मैच सब लाइन में थे भाई, इसका किसी को ऐसा नहीं कर सकते कि एक टीम को इशू आ रहे हैं। भाई ब्लैक एंड सपोर्टर्स एरिया फॉर 2 देखते हैं भाई। आरएनएस ने आइक्लन के साथ खेला भाई नहीं। चलो गाइस, ऑलमोस्ट सेम सेम पिक पर अब उधर से माचेम पा रहा है। वीकनेस पॉलिसी माचेम भाई, एल्डेगॉस निकाल दिया इन्होंने तो।
वीनस और के लिए आई थिंक, ताकि पर नहीं बैटल डांस तो नहीं होगा, बैटल डांस तो मिस नहीं हो रहा भाई। फुल रेडी भाई, फुल रेडी। लेट्स गो आरएनएस बॉयज। कार्य लेके गाड़ी को कंट्रोल करो भाई। तुम्हें देखना पड़ेगा, एक चीज देख लो। हाँ, इन अ परफेक्ट वर्ल्ड लुकारियो काउंटर्स गाड़ी समवट, बट उसी जगह उसके टीममेट भी तो हैं। 1v1 तुम 1v1 में देख रहे हो काउंटर हो रहा है, उधर 5v5 चल रहा है यार। ये पाज ही खत्म हो जाएगा तो वर्ल्ड 2 डेज का ही है। बाय बाय बाय। चलो गाइस, गेम 2 लेट्स गो भाई। तुम कब देखो, अभी इस वर्ल्ड में तो नहीं दिख रहे भाई। वो लोड हाइपर कैरी है भाई, वही है ना, पर हाइपर कैरीज नहीं चलते वर्ल्ड में उतना, टीम को परफॉर्म करना पड़ता है। नहीं 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 किंकुल भाई, अगर लाइक 11 के लूका को स्टन नहीं पड़ता ना तो वो देख सकते हैं। आज ही खत्म हो जाएगा। यप वी आर सो ऑसम। अरे भाई क्या ऑसम भाई, किस बात के लिए, हम तो बस यू नो जस्ट अ प्लेयर। फेस कैम कम से अभी नहीं हरिंदर जी, अभी नहीं। आरनेस तो फिर से अब 2-1-2 में आ गया वापस, थोड़ा सा थोड़ा 2-1-2 सेमी जंगल पर भाई पहले तो उन्होंने फिर दिया। स्टैक्स हो गए उसके, ड्रैगनेट चलो 5 का आया। ओ भाई उसको मिल गया। नाइस। RNS India name those. RNS is from APAC, Asia Pacific. ओरेंगुटन की ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है, ओरेंगुटन की जीती ट्रॉफी इंडिया नहीं दोस्त। वैसे भी ओरेंगुटन की टीम बाहर हो चुकी है, नो लुकारी थी जो, वो बाहर हो चुकी है दोस्त। RNT के ग्रुप में ही थी एंड बोथ ऑफ दोस टीम्स couldn't qualify for top 8. फेस कैम से आवाज पटी। अरे भाई फेस कैम है ही नहीं अभी यार। RNS के बीसी पहले टारगेट करो भाई। यप मैं चैट कम करूंगा, गेम पे फोकस। थैंक यू दोस्त। डेलफॉक्स नहीं है क्या? काउंटर है भाई, डेलफॉक्स काउंटर करना आता है लोगों को यार, ऐसे नहीं चलेगा। हेलो ओवरलॉर्ड ने खोल दिया भाई ओपोनेंट का एकदम फुल कैरी। ओ भाई भाई रिबॉन्ग्स तो फीड हो गया इस बार एटलीस्ट पिछले मैच में सरीना 6 था, ड्रैगन ऑलमोस्ट 8 था। इधर तो बीटी हो गया 6, सरीना रिबॉन्ग 6 हो गया। ड्रैगनेट उनका चलो भाई, ड्रैगनेट से कामिरुल 7 हो गया है। मे बी माचम डिफरेंस कर सकता है बिकॉज ये सॉफ्टवेयर ब्लिसी खेलते हैं ना, तो माचम कैन मेक अ डिफरेंस। बच गया जी जी लग गई नजर भाई, उल्टा हो रहा है भाई। अबे नहीं भाई, आपको भी सरीना आता होगा ना, मेरे को सरीना आता है क्या? नहीं नीचे वाले दो फेस कैम देख लो भाई, फेस कैम क्या हेयर कैम है भाई। भाई कल तो लोग चैट में स्पैम कर रहे थे कि ओवरलॉर्ड द नंबर। यप लुटानो भाई, ये कर टॉप पर क्यों है सब, यही तो फाइट होती है भाई, उनको भी पता है एक टीम उधर टॉप आएगी भाई एक बार। अरे भाई पकड़ लिया भाई, शॉट आउट दोस्त। आरएनएस लेट्स गो यार, बोलो मत कुछ आप। कार मेरा भी कास्टर कर्स लग रहा है क्या भाई? मेरा भी कास्टर कर्स है यार, मेरा भी कास्टर कर्स है, मेरा भी कास्टर कर्स है क्या भाई? भाई वो तो है ही नहीं। प्रे फॉर ब्लिसी, अभी तो चेंसी है, उम्मीद है ब्लिसी बन जाए। बन गए यार, कर्स नहीं लगा। 4 किल ब्लिसी 9 का विनर सर। भाई ड्रैगनाइट को तो छील दिया, जोन आउट कर दिया, इजेक्ट मार के आ रहा है भाई। कामिरुल तुम्हारी ऐसी की तैसी बोल के। अरे अल्ट कैंसिल बीटी 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 पुलिल मार दिया। ओ ओके नेवर माइंड, सरीना मर गई पर इनकी, पर नहीं चलो। अरे 12 मार दे उसके, अल्ट खुलवा रहे हैं वापस अभी भाई। जी जी यार अल्ट ही खुलवा दिए पूरी। कामिरुल नहीं मरता भाई गाड़ी से, वही ना यार, फुल प्रैक्टिस की उन्होंने यार, फुल प्रैक्टिस एकदम। यही तो टाइम है यार सारी प्रैक्टिस दिखाने का,
इससे बेटर और क्या अपॉर्चुनिटी है? अब इससे कुछ नहीं है यार, दिस इज द अल्टीमेट लेवल, समझ लो यार। एल्डेगॉस का यूनाइट कब आएगा भाई? एल्डेगॉस ऐसे ही मर जाएगा यार। भाई जी जी भाई, मार्चन का पता भी नहीं चला, अल्ट दिया है। ओके रिबॉन्स गया, पर रोटम गया इनका, रोटम गया, हुपा का यूनाइट खुल गया, थोड़ा सा हो गया बीटी। सरीना बिना यूनाइट के मरा ना इनका, लेवल्स मिल गए थोड़े। चलो नाइस वन, स्टैंडर्ड की फीलिंग आ रही है भाई। नेक्स्ट टाइम में गॉडजिला मेटा में होगा क्या? रेक्स भाई 1 साल है, 1 साल में कितने पोकेमॉन आ रहे हैं आप सोच लो। यंग बहुत सही है बब, पर मर गया। चलो भाई फिर भी इन पे यूनाइट्स है ना, ऊपर की पुश चलो ठीक है, पर नीचे तो ऑलमोस्ट सारे यूनाइट्स यूज हो गए एल्डेगॉस के अलावा। इनके पे तो यूनाइट्स हैं अभी 3, इन पे तो 3 यूनाइट हैं यार। गजब बीटी है ये। गाड़ी का यूनाइट थोड़ा सा गलत हो गया मेरे ख्याल से, सामने से नहीं किया ना उसने, थोड़ा सा यूनाइट गलत हो गया। बट घुस के तो फिर भी आरएनएस मार रही है, आरएनएस फिर भी घुस के मार रही है। गुस्सा हो गया भाई, ड्रेड लिया तुमने हमारा। आफ्टर वाचिंग द टोपी गाड़ी भाई, कोई भी रो देगा यार। डिपेंड करता है भाई, हुपा के भी नर्फ्स हो सकते हैं, नए सपोर्ट्स आ सकते हैं, नेक्स्ट ईयर ड्राफ्ट भी हो सकता है। मैनी न्यू थिंग्स, लाइक क्या पता मैच में मिड लेना चाहे अगले साल, कुछ नहीं कह सकते। चलो अब लेवल, हाँ लेवल ठीक है। अब जितने बंदे कैंप पे सीधा देख रहे हिल रहे हैं, वो सब स्विच वाले हैं। यप यप स्विच। ओवरलॉर्ड चिल देगा गाड़ी को, डिपेंड करता है भाई। इंडियन स्ट्रेटजी तो बनाई होगी ना हर टीम के आगे, जिनको भी फेस कर रहे हैं वो ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते ना। आरएस भी लाइक घर में घुस के मारेंगे भैंस की डिंग डिंग। किसी सिंडरेस नहीं लिया था क्या? सिंडरेस तो नहीं चल रहा बेटा, सिंडरेस सोलो क्यों इंडिया में दिखता है? टू बी ऑनेस्ट, जस्ट अ फेयर ओपिनियन भाई। सिंडरेस इंडिया में ओवरहाइप्ड है यार, मजाक नहीं कर रहा। वो भी 5-5 में नहीं दिखता सिंडरेस, मस्ती में लेते हैं तो लेते हैं, अब नहीं। सिंडरेस का चला गया यार, बिकॉज उसकी किट में क्या है, डैश है और डैमेज है बस। नो हील नो स्टन, मैं भी ब्लेज किक का स्टन है, अल्टी उतना डैमेज नहीं है भाई, एक बड़ी बैरियर मेल्ट कर देगी। फ्रेगस भी लाइक चुपके से ऑटोग्राफ ले लूंगा विनिंग टीम का। मैंने कब थोड़ा हाईलाइट भाई। अरे बट किसको भी और जंगल बुक इन बुक ओवर बुक बना दिया भाई। करो है रेगनोस, करो इंडियन नहीं सिंगापुर वाले। यप 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 दीज आर सिंगापुर, रेनेसेंस से सिंगापुर आई थिंक। मैं ज्यादा ओरिजिन्स नहीं जानता टीम के, ऊपर रीजन लिखे गाइस, आइक्लेन इज फ्रॉम ओशियाना एंड रेनेसेंस इज फ्रॉम एपेक, एशिया पैसिफिक। ऊपर अलग से, पर नहीं बीटी हो जाएगा इनका, पोर्टल रेडी है इनका। भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, एक्सपीड निकलवा दिया। चलो अब भाग नहीं पाएगी ब्लिसी फाइट में। भाई भाई भाई, सरीना पूरा टॉप जोन कंट्रोल कर रही है, नीचे से आने दे रहे हैं इनको। T1 पूरा छोड़ा हुआ इन्होंने, फिर भी लीड में है। अगर 50 का गोल भी हो जाता है तो भी लीड में है। कर दो 50 का, उनको टेंशन ही नहीं है, उनको टेंशन ही नहीं है भाई, पता है उनको लीड में बहुत। अब डिपेंड करता है ना, अब क्या करेंगे, अभी भी आइक्लेन को ही एंगेज करना है। काट के आ गया ये तो। यांग 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 यांग। ऊपर के यूनाइट सरीना पे, सरीना चढ़ गया गाड़ी पे और ओ ओ ओ ओ ओ ड्रैगन डेड इंस्टेंट। ब्लिसी का यूनाइट एल्डेगॉस पे लगा। जी 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 जी। अभी देखते हैं सरीना स्टील कर पाएगी क्या? नोप। सरीना बेटा अच्छा है दोस्त, सरीना मजा ले रहा है। जी जी, स्कोर तो
कोई नहीं रोक सकता भाई इनके। ब्लिसी यूनाइटेड यार, ये तो अपनी ब्लिसी लग रही थी यार। जी जी, अब तो नहीं हो रहा काउंटर पुश। उनकी टीम अलग से मर रही भाई, मर रहे हैं अलग से, बेस में मर गए अलग से। 1000 जाने वाला है ये तो 1000 जाने वाला है मेरे ख्याल से, अगर वो बैठे हैं यहाँ पे। 800 तो हो ही गया। जी जी, वेल प्लेड। यस, टॉक्सी भाई एल्डा का टीममेट्स को हील करता है और एनिमीज को पुशबैक देता है एकदम से धक्का। Just poor Iclan, Pengu trying to come in, just get a final KO. Oh, bhai. Rebongs uses their Unite double stomp tandem, gets a KO BT, back BT. the other way, just right a little. उधर ऊपर ने नेट खोल दिया भाई, मैंने लिखा था 1000 भाई। BT भाई गजब ही खेल गए भाई, गजब ही खेल गए यार। Now I want to play Serena solo queue. Well played है कोई ना यार, Iclan well played, Iclan did their well, did the very best. पर अभी loser bracket है तो comeback कर सकते हैं। Pengu भाई anti, yep. शेयर कर दिया भाई, almost 1000 यार। को डैमेज देखना है 2000 पे। अरे नहीं टक्सी भाई किल्स भाई, उधर 4 किल्स हैं बस, इधर तो भाई 6 इधर हो गए, 6 8, बाप रे 20 प्लस किल्स। जी जी, डैमेज ओवरऑल एकदम वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, सबने डैमेज दिया। डोमिनेशन कम था इस बार, आइक्लैंड ने काउंटर किया बट एंड पे टीम फाइट। Visible LD will busy goes भाई। Oh भाई, Iclan versus Nouns। नहीं, I think Iclan is versus कौन सी टीम आ रही थी उधर से यार? ब्लैक एंड वर्सेस किसका हुआ था? अभी ब्रैकेट दिखेगा गाइस, जस्ट अ सेकंड, ब्रैकेट दिखेगा अभी। 2 तो हो गया इधर। एम्बलम नॉट अलाउड, यप एम्बलम भी आए नहीं है। नो विगली, नो विगली इज नॉट इन मेटा दोस्त। लूजेस ब्रैकेट स्पाइसी, यप। हाँ, नो शो। आई थिंक इट्स Iclan वर्सेस नो शो नाउ, अनलेस आई एम रॉन्ग। अभी साथ में दूसरा ब्रैकेट भी हो गया, आईएक्स वर्सेस जो भी टीम थी, मेरा नाम भूल जाता हूँ यार, उनका मैच भी हो गया होगा। भाई एकदम खतरनाक मैच है। ओवरलॉर्ड का गेम हो चुका है दोस्तों, अभी वो इस गेम के बाद एक और गेम है, उसके बाद आएगा उनका सेमीफाइनल्स का मैच। यप, नो शो का स्नोरलैक्स ओपी यार, ब्लॉसम तो जहर है भाई, वो सबसे जहर स्नोरलैक्स है। जी जी, टायरेंटर मैंने, यप टायरेंटर एंड ग्लेशियन का पता नहीं, टायरेंटर तो डेफिनेटली बैंड है, ग्लेशियन आई डोंट नो। टीम फाइट कॉम से डोमिनेटिंग, यप। हाउ टू लर्न हूपा फॉर कॉम्पिटिटिव, ये तो मैक्रो पे डिपेंड करता है दोस्त, आपकी अवेयरनेस। हूपा इज लाइक यू हैव टू बी अवेयर, सेल्फ अवेयरनेस इज नीडेड फॉर हूपा, कि आपकी टीम को किस टाइम पे कब का पोर्टल चाहिए, आप रेडी रहो पोर्टल के साथ, कब पोर्टल देना है, एग्रेसिव पोर्टल देना है कि डिफेंसिव के लिए वेट करो, बहुत कुछ मैटर करता है। एक टाइम पे हर प्लेयर के लिए 50 to 60 फैक्टर्स होते हैं एक टाइम पे, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, बट काफी फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं। इंटरव्यू आ रहा है भाई, चलो भाई, आरएनएस का इंटरव्यू आ रहा है। इनडायरेक्टली बोलो मैदान से ऊपर मत सीखो। ओ भाई, ये तो अपना जेफ हुगलैंड राइट? मास्क पहन लिया भाई ने। माइट भाई अगर एम्बलम्स इनेबल होते तो क्या लगता है सब मैच के रिजल्ट सेम रहते डिफरेंट? फिर तो ना काफी कुछ चेंजेस भी दिख सकते थे, कुछ पोकेमॉन और मेटा में आते हैं जैसे डेलफॉक्स, शायद एक नंबर स्कोर रोकता तो स्कोर रोक पाते। भाई क्या स्कोर रोकते भाई, उधर टाइम उनके पास वो था, ज़ैप्टस था, ज़ैप्टस पे क्या स्कोर रोकोगे? 1 सेकंड के लोग जितने सेकंड के रोक सकते हो, मार भी नहीं सकते। वीनस और है भाई। मगेश जी नो हेट प्लीज, दे डिड देयर बेस्ट। इन द एंड हम हारे ना क्वालीफायर्स में यार। यस, आरएनटी बाहर हो गए विजिटो भाई, दे लॉस्ट इन द ग्रुप स्टेजेस, राउंड रॉबिन विंस। चलो गाइस, ये सुन लो एडवाइस आप लोगों के लिए। You have to grind really hard and really like this game. Yeah, it takes a lot to be on this stage, and all the teams have sacrificed a lot to be here. So ये लोग गाइस सुन लिया ना?
सुन लिया ना, ग्राइंड करो। Excellent. Well, thank you बहुत कुछ लगता है, for your सैक्रिफाइस भी time बहुत and होते हैं। good luck in the सुन rest लिया ना of your गाइस, matches today अगर with आना है कॉम्पिटिटिव में और इस Renaissance. स्टेज पे तो Send it back काफी on मेहनत up करनी to पड़ेगी। Dube Snacks and Spraggles at the desk. पता नहीं नारुतो भाई। Very much, What a Jeff. legend. एक सेकंड गाइस, कॉल आ रहा है। What a legend. You got to grind really hard. You got to like this game. See, the question is, Dube Snacks. I grind really hard. I love this game. चलो Why गाइस, am वी I आर not बैक। this good? It's because we keep playing with each other. हाँ भाई, Don't न्यू you मैप know में the रैंडम numbers और दे रहे are भाई, वो तो But I mean, like what a nice player, big Yes. time win. Could have really put it on the back भाई। of them and their teams. But the first thing मगेश they जी, no decided to hate, talk please, about no hate, was please। all the other teams that came and सच्ची qualified में for the बैन है World क्या? Championships क्या and बैन है what it दोस्त? takes to get to that point. To have, I mean, class act. Yeah, absolutely. And you know, it's true. भाई इंडिया There बहुत are कुछ कर so सकता है, many बट amazing यार देखो teams यार, अब तो coming टाइम आ from रहा है, all over the world. तो इन I दी am एंड so सब कुछ ठीक ही impressed होगा। with everything I'm seeing. Every time a team wins, I'm elated. At the same They didn't time, even I'm show the match। heartbroken कोई ना because यार, some of these सेमीफाइनल दिख teams are जाएगा। heading home. ऊपर But के no खेले, one उसके has बदले gone यूज home खेले, today डिपेंड yet. करता है We भाई। have not seen anything in our losers bracket. Let's take a look at what's ARS Army, don't spam please buddy। T2 Nouns Esports. I mean, what a series. T2, Japan's region team, beating the EU Titan in Nouns Esports. Yeah, Nouns Esports, a lot of Good, yeah, people's भाई, favorites गजब coming आदमी है into भाई। this thing, sent to the losers चलो bracket. गाइस, They've got an ब्रैकेट्स uphill climb to try and get to the finish आईएक्स line. गेमिंग और इटर्निटी का मैचेस चल रहा है ऑफलाइन चल रहे हैं अभी। आईएक्स गेमिंग एक जीत चुकी है एंड लूजर ब्रैकेट अब आएगा। T2 वर्सेस रेनेसेंस है, अब रेनेसेंस है T2 वर्सेस, और नीचे से ब्लैक एंड वर्सेस आईएक्स और इटर्निटी का विनर। जी जी भाई। आईएक्स मैच कब हुआ है? वो ऑफलाइन चल रहे हैं गाइस, 2 मैचेस टॉप 8 के ऑफलाइन हो रहे हैं। लूजर ब्रैकेट में अभी अपडेट आएगा दोस्त, मुझे खुद भी नहीं पता। अरे भाई, गोल भाई आ गए चैट में यार। नेक्स्ट किसका पता? नेक्स्ट अभी ओके, आईएक्स वर्सेस इटर्निटी के शायद मैचेस आएंगे अब। आई थिंक मैच 2 या मैच 3 जो भी चल रहा है उनका बीच में। एंड लूजर्स, आई थिंक आईएक्स वर्सेस इटर्निटी जो लूज करेगा उनका मैच होगा नो शो अगेंस्ट, जितना मेरे को लग रहा है। दैट्स इट। एंड उसके बाद सेमीफाइनल होगा ब्लैक एंड वर्सेस जो भी अभी जीतेगा आईएक्स वर्सेस इटर्निटी में। हुपर एलडी, हुपर डेफिनेटली यार, एलडी का भी अपने स्पेसिफिक यूजेस हैं यार, वो टीम पे डिपेंड करता है वो कैसे यूज करते हैं, बिकॉज काफी टीम्स हुपा यूज नहीं की हैं। ओके, काफी टीम्स ने हुपा यूज नहीं किया एंड स्टिल अभी टॉप 8 में है। आरएनटी बारे का यस दोस्त, आरएनटी इज आउट। They lost in the group stages, but they did the best. भाई जहर चल रहा है भाई। वॉच पार्टी पसंद आ जाएगा इस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को, एंड गिव में एंटर कर देना जरूर। मैं कोई भी स्पीड से मेटा में नहीं है क्या? अभी के लिए वर्ड्स में तो कोई नहीं दिख रहा यार। और आपके लिए टॉप 3 टीम कौन सी है? आरएनएस, आईएक्स एंड अभी ब्लैक हैंड। 4th पे T2 आती है मेरे लिए। माइट भाई आज तो 8-9 घंटे स्ट्रीम, लेट्स गो भाई। 한국에서 온 팀 비턴이 T고요. अरे मैजिशियन भाई, 6월부터 चिल चिल। 6월까지 쭉 함께했습니다. 여기는 세준. 저는 루이고. नोडो आईएक्स का कैरी है, देखते हैं भाई गिव का रिजल्ट कब है? 23rd को रिजल्ट आ जाएगा दोस्त। 식스맨인 NQ 선수가. ओ भाई सब्स्टिट्यूट पीछे उनका सब्स्टिट्यूट हाथ हिला रहा है। जहर भाई, मैं एक्शन गाइस कुछ खाने के लिए ले आऊं यार, 2 मिनट में वापस मैचेस चालू होंगे। BRB 1 सेकंड। आप जरा स्ट्रीम के मजे लें। 1등하고 2등을 이제 하게 됐는데 마지막 6월에서 저희가 2등을 해가지고 이번 대회에서는 노쇼보다 더 좋은 모습 보여드리도록 하겠습니다. 처음으로 그거 지역 결정전 준우승을 월드 챔피언에 와서 되게 긴장이 되지만 이제 그 아메리카나 유럽 쪽이 아시아 쪽을 살짝 무시하고 있는 경향이 있어가지고 저희가 이번 대회 확실하게 보여드려서 북미 쪽 이제 좀 큰 코 다치게 해드리겠습니다. Our message to all the other teams is we're gonna take all the objectives and I'm gonna invade your area all the time and take all of the wild Pokemon.
हेलो गाइस, वी आर बैक। थोड़ा फ्रूट खा लो लंडो, भूख तो लगी रही है। एंड अपने आप को हाइड्रेटेड जरूर रखना गाइस। अकॉर्डिंग टू यू, ये जो जैप के टाइम पर हुपा ओपोनेंट के बेस में जाके सरप्राइज इवेंट देके बोल देता है ना, वो कर देते हैं। इसका एक्यूरेट काउंटर क्या होना चाहिए? एक्यूरेट काउंटर तो बेसिकली है उसका रोटेशन कैंसिल कर दो। अगर एक चीज मैटर करता है ना, अब एनिमी पे अगर हुपा नहीं है पहली चीज, तो ये स्ट्रेटजी बहुत इफेक्टिव है। कुछ टीम्स हुपा नहीं खेलती, उनके लिए अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है स्ट्रेटजी। मेन काउंटर ये होता है कि अपना एक प्लेयर उधर भेज दो ताकि वो हुपा को पूरा लो कर दे, या फिर 2-3 प्लेयर्स, एंड अपना हुपा मिड पे रहे। अगर एनिमी 50-50 के जाए उनको काउंटर कर दे। चलो गाइस, आईएस गेमिंग वर्सेस इटर्निटी 1-1 हो चुका है स्कोर। भाई स्नोर डबल एक्सपी शेयर, नूडो दिख रहा है अपने को, ओजी ओके, ट्रिपल ऑलराउंडर अगेन। उधर ग्रीडेंट दिख रहा है। ओ भाई गोल्डन बैच, भाई गोल्डन बैच, ग्रीडेंट और विगलीटफ, लेट्स गो गोल्डन भाई, लेट्स गो यार। बिल्कुल पेश भाई, hope to reach that stage one day यार। तब तक जरा इनका ही देख ले भाई। यार ये डब्बा क्यों नहीं खुल रहा? Let's go भाई, मैच चालू हो गया भाई। लूका स्नोरलैक स्टॉप, ब्लिसी सरीना बॉटम, एंड उधर से बिगली बॉटम, ब्लिसी सरीना टॉप, ड्राइनर जंगल एंड ग्रीन टीम मेड हो गया स्टार्टिंग से ही। हाँ भाई, वेरी सैड टून एंड फ्लैट। कोई ना यार, देखते हैं, हर टीम का कुछ ना कुछ चेंज होगा ही। ये कर लो मगेश जी। यप, नो ओपन बोथ। अबे ग्रीडेंट को कैसे करेंगे भाई? ले गया, अब जिंदा बच जाएगा। फोकस ट्रिगर, जीजी ले गया भाई। जीजी यार, आया चाह गया, रिकॉल भी कर लिया जंगल से। ओजी लुका, The big thing is they are stopping it from getting its level 8 before Dreadnought. If they can starve that Dragonite of experience, this is going to be massive for Eternity. मेरे को तो लाइट है भाई। फर्स्ट बीस, लॉल, सब इनको ही मिल गया भाई, इटर्निटी वालों को। Here we go. They're fighting here actually on this goal. OG trying to stop this here, but there are 3 members of Eternity. Looks like Pikachu. अब नहीं होगा, स्नोलैक्स ही हो गया। We're pushing you off. स्नोलैक्स ही कर गया। शाउट आउट टू ऑलमाइट का गुरु भाई, मेरे गुरु क्या भाई, लेट्स गो यार। अबे ये छोड़ना नहीं चाहिए था, अब 5 हो गया वो। अरे ओ डूड, ओ भाई, ओ भाई, अबे मिनियन, हेलो नो, अबे इसने एक और बफ ले लिया। पोकेमॉन आरएनटी बैच कहाँ से मिल, पोकेमॉन में, अच्छा पोकेमॉन में बैच कहाँ से मिलता है? वो आपके गेम प्ले पे, लाइक जितना गेम्स खेल रहे हो उतने पे डिपेंड करता है दोस्त। पॉइंट्स मिलते हैं आपको खेलने पे, जीतने पे एक्चुअली। भाई 1 HP यार, ग्रेड कितना क्यूट लग रहा है। मर्सी भाई खेलने वाले हैं क्या इधर ग्रेड भाई? हाँ भाई, अभी स्कूल से आ रहे हो, रेखा बाज स्ट्रीम। ओ भाई, लेट्स गो भाई। Here we go. 10 seconds 20 still, second, 30 seconds here until the big Dreadnought here at the bottom of that. IX ready to go here in the bottom path. भाई 4v3 नहीं 4v4 ही है भाई नीचे तो। ओ आई थिंक ज्यादा 20 इटर्निटी को मिली पर लॉस हो गया उनका एक प्लेयर का, एंड अब वो घुस सकते हैं पर नहीं ग्रीडेंट है। दोनों ही रोटेट कर रही हैं टीम। ओह नूडो जीजी, भाई 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 भाई, सरीना है इनकी पर ड्रैगन ऑलरेडी सिक्योर पे लगा हुआ है ना। ओजी भाई जीजी, ओजी एंड सरीना नूडो भाई जीजी कर गए। खेलना था, जीत जाते हैं।
heavy slams have hit less than 2 players in that. यार एस आर्मी भाई नहीं दोस्त, यार एस आर्मी भाई मैं पहले लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, स्पैम मत करो दोस्त, वॉच पार्टी चल रहा है भाई, मैच आपके मैसेज नहीं देखे जाएंगे, प्लीज स्टॉप स्पैमिंग मैसेजेस, लास्ट वार्निंग। उन्होंने अपना जो स्ट्रेटजी क्या किया दोस्त, दे कुडंट विन विद दैट स्ट्रेटजी, दैट्स इट, फाइनल। आप उनके शूज में जाके देखते हैं, आप नहीं कर पाते भाई कुछ, अब उन्होंने किया है तो कुछ सोच के किया होगा ना यार, अब नहीं काम किया तो नहीं किया यार। इवेंट के बाद भी ड्रैगन बन गया, यप नीचे बीच मिल गई ना थोड़ी, किल भी मिला। चलो टीज रोटम इटर्निटी ले। अरे राघव जी बस भाई बस, ये कलंकित जी भाई पीका डिप को छिल दिया भाई, सरीना छिल दी भाई, नूडो बच गया। ओ भाई 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 घुस गया पूरा भाई, जी जी, पर ये हाइपर बीम पड़ेगी। ड्रॉप की मस्त खेल रहा है यार, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया उसने, कैचअप नहीं कर सकते। हेलो मिस्टर गेमिंग स्ट्रीम, आरएनटी का क्या हुआ दोस्त, दे लॉस्ट यस्टरडे, couldn't qualify, ग्रुप स्टेजेस में ही आउट हो गए। गोल के मामले में तो आगे, बट लेवल ठीक है, ग्रीडन का थोड़ा अंडरफॉर्म बोलूंगा पर हो जाएगा। ओ भाई ग्रीन को पकड़ लिया भाई, ग्रीन को पकड़ लिया, बच गया फिर, ग्रीन को 9 हिट हो जाएगा, ग्रीन का 9 हिट हो जाएगा। पर आएक्स इस रेड पे फोकस नहीं कर रही है, ड्रैगनेट वर्सेस ड्रैगनेट चालू हो गया, इटर्निटी थोड़ा लीड में है, और रोल आउट वीकली भाई, रोल आउट वीकली खेला जा रहा है गाइस, लेट्स गो। स्नोरलेक्स हो गया भाई, स्नोरलेक्स के लिए बुरा लगने वाला है जो होने वाला है स्नोरलेक्स से सर। ओ अरे भाई व्हाट द फक भाई, जी यार ऐसा लग रहा था आएक्स जीत रही है भाई, और जीत भी गई थी भाई, ड्रैगनेट था पर ग्रीडेंट भाई, ग्रीडेंट ले गया। Yeah, sad for anti but queen यार, they did their best right, can't expect more, they did what they had to do, practice किया जो किया, चले गए। नूडो नहीं कैरी करता है भाई, मुझे भी लगा स्टील कर लिया है भाई, ये सोलो स्टार्ट कर दिया क्या पिकाडे, गुच्चू गुच्चू ले गया भाई, गुच्चू गुच्चू ओपी। हाइपर भी मारी क्यों रहा है यार, मैच के डिगनिंग भाई। जैम जोन जामुन लगा मेरे को भाई, अभी जामुन बोलने वाला था मैं। ओ तेरी लॉल भाई, ब्लॉक से निकल गए एटलीस्ट। नोडा को उठा भाई, विगली विगली भाई, विगली का रोल आउट जीजी, विगली का रोल आउट जीजी। आरएनटी में से भाई इंडियन मेटा पे बात है यार, उनके थोड़े इंडियन मेटा काम नहीं किया ना, दैट्स इट यार, एक्सपोजर नहीं था उतना, बट इस बार मिला तो चलो होप फॉर द बेस्ट। नाउ अभी टूर्नामेंट्स होंगे और दोस्त बाहर की टीम्स के साथ, जो भी ये टीम्स देख रहे हैं इनके तो बाहर की टीम के मैचेस चलते रहते हैं, पूरा रीजन है, इंडिया में अपना एक रीजन था स्पेसिफिक यूनाइट का, तो इंडियन टीम्स के अगेंस्ट ही मैचेस होते थे, बाहर की टीम्स के अगेंस्ट या तो लैग मेजर या फिर होता ही नहीं था, अब थोड़ा एक्सपोजर मिला है तो होपफुली आगे जाएंगे। राघव भाई इतना मेजर डिफरेंस नहीं हो सकता है, हाँ थोड़ा माइनर डिफरेंस होगा, बट उतना मेजरली डिफरेंस नहीं हो सकता ना भाई, इतना मेजर नहीं होगा भाई। इटर्निटी तो भाई जोन बनाने में चले गए, बट जोन भी उतना नहीं बना पाए हैं, लुका तो फुल घुस रहा है भाई। भाई बिगली बहुत तंग करने वाला है इनको भाई, बिगली बहुत तंग करने वाला है इटर्निटी का, अकेले बंदे हैं बिगली खेल रहे हैं जो,
Yeah, Greedon kind of goes in, starts scoring. Zarina bubbles लास्ट them में back out. डैमेज That's दिख Nudo, of कर course, देना कि as नूडो the कैरी rest कर of रहा है IX हो रहा Gaming is है positioning around the Zapdos आई मीन pit. लेवल They're नूडो not का letting इतना टीम Eternity में anywhere near this नूडो ही डैमेज दे रहा है इटर्निटी का तो भाई जोन भी इतना रेड पे गए ना जोन बना पाए भाई विगली जहर अरे पर अरे जी जी हक दिया इटर्निटी ने हक दिया लास्ट हिट यप हक दिया इटर्निटी ने इटर्निटी ने हक दिया विगली पे ब्लिसी कैबिनेट क्यों यार क्यों And now IX Gaming needs all 500 points here and they need to get चीटर back. ने भी खेला था लिसे याद नहीं दोस्त जी जी यार putting points on the board at the same time. I don't know if Blissy's going to make it. No, getting landed on by the Blissy. जी हो गया Pika and Retsu pushing him around. ब्लिसी क्यों नाइट भाई 252. भाई पॉकेन की आवाज बड़ी भाई मैं इधर करता हूं मेरे को पॉकेन का नॉलेज ही नहीं है It was the secure there from the Lucario. I just thought it was भाई क्या मिस्टेक भाई उसका यूनाइट ही नहीं लगा यार मिस्टेक क्या भाई यूनाइट ही नहीं लगा यूनाइट विगली को दे दिया ब्लिसी ने इतना स्पिन मार लो टूने से पीपी ही है पर पप बोलते हैं चलो गाइस पीपी किसी को ऑकवर्ड साउंड कर रहे हैं ना क्या ही बोले भाई just under that 500 point mark, which means we need to fill pockets, we need to get to goal zones, and we need everybody to score. Here we go. हरेंटी ने बहुत अच्छा खेला यार moving in. Zarina, ब्लिसी नाइट विगली भाई हार्ट शॉट के लिए बच्चा लेती ब्लिसी भाई नहीं ना स्नोरलैक्स भाई वो बेस पे पहुंचा रहे यहाँ पे गोल दो भाई यहाँ पे गोल दो बोल रहा है यहाँ पे गोल दो भाई उधर क्यों देना है यहाँ पे गोल दो भाई फिर से चिपका दिया पीका डिफ भाई जी जी ब्लैक एंड वर्सेस आईएक्स यप I'm sorry, Eternity. Renewal be happy seeing them in yep. ट्रेवरेंट खेला जा रहा था आदित्य जी गेटलू भाई ने खेला ओपी ट्रेवरेंट खेला गेटलू भाई ने defense right there, pushing them all the way towards their main goal, and it was not open, so they're just pushing them back into this flux. So हैशटैग हक दिया भाई भाई मोराल तो अच्छा है भाई एक्स का मोराल तो अच्छा है एक्स का भाई ये देखो ना ये दूसरा वेन्यू है ये बैक स्टेज वेन्यू समझ लो थोड़ा वेल प्लेड भाई चलो गाइस आईएक्स जीत गए इटर्निटी के अगेंस्ट अब शायद अपने सारे फर्स्ट राउंड के मैचेस हो चुके हैं मेरे ख्याल से अब सारे फर्स्ट राउंड के मैचेस हो चुके हैं अपने अब सेमीफाइनल्स एंड लूजर राउंड 1 होंगे लूजर राउंड 1 पता नहीं शायद ऑफ स्ट्रीम हो गया कि क्या होगा पता नहीं हेलो लीड गेमर भाई वेलकम द स्ट्रीम रेवेनेंट का कैसे इन हर्ष भाई दे लॉस्ट यस्टरडे इन द ग्रुप स्टेजेस भाई फोन ठोकने वाला था क्या भाई ऑडियंस देख रहे हो भाई ये पूरा बैक स्टेज है भाई उधर सिंड्रेस का छोटू रोबोट बैठा है इस पूरी टीम है ना नो इटर्निटी इज कोरिया दोस्त इटर्निटी इज कोरिया मैंने बहुत सही सरीना खेलता है यप मामा जी यस मिस्ट्री गेमिंग फुल ट्राई रहेगा दोस्त स्ट्रीम होगा लूजर राउंड 1 उसके बाद से हम ये देखते हैं पार्थ भाई हम तो सब टीम को सपोर्ट कर रहे हैं यार मे द बेस्ट वन विन अब क्या होगा रेवेनेंट का लूजर बैक एंड नो दोस्त बोला तो राउंड रॉबिन में बाहर हो गए भाई राउंड रॉबिन में कौन सा लूजर ब्रैकेट होता है सेसेटियल नहीं भाई नो नॉट अ मेंबर नूडो को दूसरे मैच भी खेलना है टूर्नामेंट के बाद तुरंत मतलब कौन से मैच पता नहीं लीवाई भाई बट इन दी एंड जो भी कांड हो तो उनके ही हुआ ना उनकी वजह से मेरी स्ट्रीम की क्वालिटी गिर गई क्या इस सेक्शन में बताना तो स्ट्रीम की क्वालिटी तो नहीं गिर गई नूडो अरे भाई चैट मिस नहीं दोस्त बोला तो स्ट्रीम की क्वालिटी तो नहीं खराब हो गई गाइस बिटरेट कम हो गया यार मेरा वाईफाई बीटी दे रहा है क्या फिर से नहीं ठीक है ठीक है हेलो हंसमर जल्दी स्ट्रीम ब्रो हाउ टू मेक अ टीम अपने रैंडम प्लेस अरे गाइस लूजर ब्रैकेट्स आ गए T2 वर्सेस रेनोसेंस ब्लैक एंड वर्सेस आईएक्स गेमिंग लूजर ब्रैकेट में आईक्लेन वर्सेस नाउन्स एंड नो शो वर्सेस इटर्निटी भाई भाई ये तो जल्दी प्रोसीड कर रहे हैं हाउ टू गेट वो अपने गेम पे डिपेंड करता है गाइस आपके गेम पे डिपेंड करता है कितना खेलते हो
क्षितिज भाई नहीं भाई, सही कर रहे हैं भाई, फॉर द फर्स्ट टाइम सही है ये इन्हें कभी और बहुत वही नहीं यार जो भी हुआ स्पोर्ट्समैनशिप भी एक यू नो चैनल बट नो कमेंट्स यार नो कमेंट्स स्पोर्ट्समैनशिप इज आल्सो थिंग दैट आज का खत्म हो गया है क्या? नहीं दोस्त, नहीं अभी एक ही मैच खत्म है, छोटा ब्रेक आएगा। हाउ टू मेक टीम ब्रो, अपने रैंडम्स के साथ टीम बनाने के साथ रैंक खेलते हैं, मिलते हो दोस्त, दैट्स इट। उसके बाद टूर्नामेंट्स में एंटर करो, गेम प्ले दिखाओगे तो ही बेटर टीम रिक्रूट करेगी ना, स्टार्टिंग में कोई टीम रिक्रूट नहीं कर सकती ना आपको दोस्त, बात तो वो है ना। एक सीन सेटल होना चालू हो गया है अब। हाउ टू मेक टीममेट्स, अपने रैंक के दोस्तों ही ले लो यार, अगर कोई रैंक में मिलता है उसके साथ बना लो भाई, आजा खेल ले ऐसा कुछ। अरे नहीं एलिट गेमर भाई बोला तो नहीं। ओवरलॉर्ड वर्सेस ओजी, नाउ दैट विल बी डोप, ऐसा क्या भाई? सेम लाइक बैजेस दे शुड गिव शाइनी स्किन, मतलब अगर देखते हैं भाई देखते हैं। कल देखा था स्क्रीन बंद, अरे ये तो कोई अनफॉर्चुनेट सक्सेस हो सकते हैं ना भाई, कुछ नहीं कह सकते। इन द एंड उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको ही देखना। अरे भाई रैंक में नू बड़े टीममेट्स मिलते हैं, कुछ तो अच्छे मिल जाते हैं कभी कभी, डुओ है कोई आता ही नहीं है। अरे भाई अब है मजा भाई। अभी नो शो वर्सेस इटर्निटी है, लूजर्स राउंड 1 दिखेंगे, उसके बाद ब्लैक हैंड वर्सेस आईएक्स गेमिंग सेमीफाइनल्स होगा, एंड देन लूजर्स राउंड 2। वो टू बी डिसाइडेड क्यों आ रहा है? अच्छा राउंड 2, ठीक है। तो लूजर्स वेट व्हाट, ये अपडेट नहीं है शायद, या फिर लूजर्स राउंड 1 एक ऑफलाइन होगा एंड फिर देन आगे जाएंगे। इंडियन टीम में कौन कौन है? तक्कू भाई, रेवेनेंट थी बट दे लॉस्ट यस्टरडे। ब्रो आप क्यों नहीं जा रहे भाई? नहीं हो पाए क्वालिफाई तो नहीं गए ना यार। रियोगा भाई ये तो मैच में दिखेगा। ये पारेंटिन अच्छा खेला दोस्त, मैं कुछ नहीं जानता फोन वगैरह के बारे में, लेकिन खेलता हूँ गेम्स से, ये गेम्स से बस सही है यार। ये पारेंटिन अच्छा खेला दोस्त, रैंडम ओपी मिलता है भाई। हेलो जेम जी, वेलकम टू स्ट्रीम बडी। कैन वी रीच 300 लाइक्स बॉयज, लेट्स गो यार। लाइक बटन पे थोड़ा प्यार दिखा दीजिए एंड मेक श्योर टू शेयर द स्ट्रीम एज वेल। वी आर 21 subs away to 5.6k यार, जल्दी दबा दो बटन एंड मेक श्योर टू एंटर द गिवअवे एज वेल। लाइव चैट में लिंक पिन है गिवअवे का। हानमा भाई बिकॉज लूजर ब्रैकेट टॉप 8 से स्टार्ट हुआ है, आरएनटी टॉप 8 में नहीं एंटर किए दोस्त, वो डबल राउंड रॉबिन में ही आउट हो गए। कितना समझाना पड़ता है बंदों का भाई। हाँ भाई, टॉप पोकेमॉन हो, रैंक पुश ट्राई हो, आपने रोल्स के हिसाब से जो आपका बेस्ट है भाई। बटन दबाओ भाई, बटन दबाओ। कल हिंदी लाइव स्ट्रीम की चैट देखी आपके और के फैंस। अरे भाई दोज आर नॉट फैंस भाई, दोज आर नॉट फैंस। वो तो भाई ऐसे आते हैं यार, सबको पता है। लाइक टीम इंडिया गई है यार, अब वारंटी नहीं थी, वो देवर टीम इंडिया। सो यू नो जो भी हेट दे रहे हैं जस्ट इग्नोर देम। ब्रो टीटीवी कहाँ पे है? टीटीवी की भाई टीटीवी टीम नहीं है यार, वो तो बस उनके आए दिन होते थे अपने ट्विच चैनल्स को प्रमोट करने के। नेक्स्ट इंडिया का, इंडिया इज नॉट इन वर्ल्ड्स एनीमोर दोस्त, दे लॉस्ट यस्टरडे। ये कर लो स्कैलर्ड भाई, बटन गेमिंग करो भाई, बटन गेमिंग बिल्कुल बिल्कुल। चलो गाइस 30 सेकंड में अगला मैच है, 1 सेकंड आया गाइस। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। टेक्नो भाई उन्होंने टीम फाइट ली बट उनका कॉम्प ऐसा था कि यू नो इफेक्ट नहीं पड़ा, एनिमी ने फुल काउंटर कर रखा था। म्यू 2 सितंबर को आ रहा है रेक्स भाई। चलो गाइस फिर से एंट्री होगी टीम्स की। लूजर ब्रैकेट नो शो वर्सेस इटर्निटी। No show versus eternity, the
first and second place teams Mr. by no hit, from please. the Korea regional Yep, T2 finals. means to be. These teams got something to prove. If you're Eternity, you're trying to say, we are the number one seed from our region. दो बार like दबा लिया खुश रहो. ठीक है डैड भाई. ये कर लो भाई. Exactly. GG कहाँ है? GG didn't qualify for Worlds दोस्त. Or give it up, but the stakes are even bigger today. ये लो guys. Win or go home scenario. भाई नो शो का वोलन देख के लगता है भाई फुल सीरियस. वो होते हैं ना भाई एकदम पेल देंगे. वैसी फील आती है भाई वोलन देख के. Our incredible squad. We saw that Zarina pop up there on screen. चलो भाई मेरे को लगा टीट्स वगैरह नहीं भाई. ऑफिशियल कास्टर नहीं है ना टीट्स. कंटेंट क्रिएटर है. टीटी के बारे में क्या ख्याल है मेहता भाई? क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है पर अब आरएनएस के अगेंस्ट मैच है, देखते हैं यार. तुम लोग इसे शेयर है कोई ना दे भाई. आरएनटी का की हाल मैं थोड़ा बिजी. कोई ना 5-6 by the lost yesterday in the group stages so they couldn't qualify for top 8 now. टॉप 8 में अभी टीम्स आ रखी हैं. IX, Eternity, No Show, T2, RNS, Black Hand और दो टीम मैं भूल गया हूँ यार. Do you think your team can take on these teams? Current situation, no. We have to get better. Hello Punk bhai, welcome to stream. कोई ना फर्स्ट टाइम एंटी है. कामरू भैया ने तो आग लगा दी थी भाई. T2 जीतेगा फाइनल्स. देखते हैं भाई. T2 वर्सेस RNS is gonna be OP. अपनी क्वालिटी ठीक है ना? कौन सी टीम जीतेगी? I am voting for Black and T2 and RNS. देखते हैं. I don't think Rex by T2 है भाई. Tons of competitive experience in Pokemon's largest tournaments, such as the championship. चलो भाई जल्दी स्टार्ट होने वाला है. This is kind of a rubber band match. सोने का टाइम आ गया. उठ के स्ट्रीम देखा. ओके बाय बाय हरिंदर जी. थैंक यू फॉर कमिंग दोस्त. आरएनएस कहाँ पे है? अभी वो सेमीफाइनल्स में दोस्त वर्सेस T2. अभी वो बाद में तो शो करेंगे. अभी लूजर ब्रैकेट चल रहा है. टेक्नो भाई मैं कंफर्म नहीं कह सकता बिकॉज वो अभी सब्स्टिट्यूट्स हैं कुछ टीम्स के लिए अगर उनको नीड पड़े. विच टीम विल विन? होपिंग फॉर RNS, T2 और फ्रॉम दीस टू आई थिंक नो शो जीत सकती है. नो शो का बेटर चांस है. Favoring a great for most of this tournament. Character we don't see a ton of, but offers a ton bye bye of bye. Welcome to stream. Thank you for coming. Ability to navigate around the battlefield while being resistant to being pushed around. Yeah, Sejun and Black Hand का तो दूसरी टीम से मैच RNS से नहीं है दोस्त. Black Hand का IX से. हाँ टॉक्सी भाई उनके बादशाह भाई को वीजा इश्यूज हो गए थे. कोई बात नहीं. T2 जीत गया तो रेड का इज्जत खत्म. हमारे गुंटू भाई कोई ना. वेलकम टू स्ट्रीम. अरे बीस स्टेट्स भाई ये कर लो यार. ये कर लो बिस्टेट भाई. बहुत सही यार बहुत सही. क्या ही बोलूं मैं. No show here have leveraged a very powerful effect. Yes, exactly. Namely, one makes me think of his Heron on that कोई ना यार ट्राई करेंगे. A option that अगली बार डेफिनेटली ट्राई करेंगे. बेटर करेंगे. By surprise, so Eternity playing that, but you're right. No show has some of their own tricks up their sleeve. क्रैश ने स्ट्रीम पे किसी ने बोला था. हाँ हाँ हाँ. Teams are thank you दोस्त. for their bracket to begin. This match is so important. We are in losers bracket. भाई ये तो फुल भाई मोह माया छोड़ के टेंशन फ्री होके बैठा लौंडा यार. Your world championship run would end here, and that is the opposite of what I. बीशर भी अपने कंटेंट क्रिएटर हैं भाई. एचएस भाई. A long road for whichever team manages to win this. The lower bracket, the losers. भाई दो एड़ा बे भाई. शुभा सिंह जी सॉरी दोस्त. Absolute most matches of Pokemon. बीस्टेड भाई बनेंगे ऑफिशियल कास्ट हिंदी. आपका एजेंट क्या है? मेरा है टॉक्सी भाई. सही है यार. सही है यार भाई. ये कर लो यार. रॉकेट दिखाने के वर्ड्स में भाई देखते हैं भाई. इंडियन प्रेडिक्शन बढ़िया लगते हैं. एग्जांपल गोल्ड मेडल तो मिलेगा. आफ्टर समटाइम सिल्वर तो मिलेगा भाई. नहीं भाई अच्छा ठीक है भाई. ठीक है ठीक है. अब दिखेंगे गाइस अपने वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्नोरलैक्स ब्लॉसम.
नो शो के डबल एक्सपी से रन हो रहा है, इधर भी नहीं, सिंगल एक्सपी से रन हो रहा है। एजी स्लैश सरीना ड्रैगनाइट हुपा, उधर ग्रीडेंट ड्रैगनाइट सरीना विगली एंड ब्लिसी ऑन इटर्निटी साइड। विगली पे आ गए ये लोग भाई, सही है यार। स्कोर शील्ड जहर बैग क्या, 2 स्कोर शील्ड्स। Different build on it. The choice specs, the muscle band, and most specifically that X attack pop out to Blossom by OP यार, more damaged focused build. जहर स्मॉल एक्स यार, जहर स्मॉल एक्स really impressive numbers in terms of damage metrics for what's supposed to be a support. Yep, this is losers round 1. Support character not in the hands of Shobo. Bye bye Mux, bye, thank you for coming those. A damage dealing Pokemon. Of course all Pokemon have attacks in इनका रीसेट हो गया लगता है। getting some wild boosts on. ये लोडिंग चल रही है। Yeah, actually transforming into an attacker class character when those rings go unbound, you get those reset now, I hope. beams and the big punchy fists that rain on down and deliver those Chat miss, अरे भाई इंडिया की तरह केस जी, इंडिया लॉस्ट इन द ग्रुप स्टेजेस राउंड रॉबिन 1। जो कार्य टोटल वीडियो बना रहे, मैं कहाँ होता हूँ भाई बनाने वाला। ब्लॉसम आ गया अब, और मैं वहाँ जाकर कुछ अच्छा पोस्ट देना बाकी टीम्स की तरह। चलो गाइस, गेम 1 चालू हो गया भाई। फिर से सैमी जंगल लिप अप लिया एंड ड्रैगनाइट को जंगल दे दिया। चलो भाई लेट्स गो। विगली तो फुल फार्म, हाथ जोड़कर खड़े मत हो जाना भाई, ये कर लो। मींस बाहर मींस बाहर ब्रो, दे आर आउट, दे लॉस्ट इन द ग्रुप स्टेजेस। टॉप 16 ग्रुप स्टेजेस थे, अब टॉप 8 हैं, तो आरएनटी टॉप 16 में बाहर हो गए दोस्त। दे कुडंट मेक इट टू टॉप 8। ये सैमी जंगल अच्छा चल रहा है वैसे, ये काफी चल रहा है फास्ट रोटेशन के लिए, प्लस इनवेट काउंटर हो जाता है भाई। सरीना तो गया, ब्लॉसम जहर है भाई। मिस्टेज भाई मैं को तो कैरेक्टर बना रहा है, मैं तो नूब हूं यार। व्हाट डू यू थिंक ग्रेडिएंट विद जंगल इन्वेड विद दिस स्टेज इज इफेक्टिव? यप, इट्स इफेक्टिव। ग्रेडिएंट भाई बहुत इफेक्टिव है भाई, ग्रेडिएंट का टीम फाइट में जितने स्टन देता है ना वो भाई। 20 से ब्लॉसम को थोड़े मिला, बाकी इटर्निटी को गए। नीचे भी नो शो थोड़ा एडवांटेज में है, बट इनका वोलोन थोड़ा सा, आई होप एजी की तलवार बढ़ जाए थोड़ी जल्दी। ब्लॉसम फिर लुइस के पीछे पड़ गया यार। यूआर कार्य पर ना ब्रो मीनू, पिन मैसेज में लिख दो इंडेक्स की। अरे भाई कोई ना यार, ये तो लव ही है टीम्स के लिए। टॉप 16 टॉप 13, हां टॉप 13। यप, स्नोलेक्स थ्रोस फ्रॉम द रेड टू द फाइनल। यप भाई विगली क्या भागा यार, विगली क्या भागा है। विगली का रोल आउट खेलने में भी भाई दिमाग चाहिए। एजी के लिए बुरा, ये लो इतना सीसी भाई, इतना सीसी है ग्रेडेंट का, उसको सीधा खड़ा नहीं होने दिया उसने, तलवार तोड़ दी भाई उसकी। हुपा वर्सेस नोपा बहुत डिप देता है बीटी। नहीं, टीम्स नो हाउ टू काउंटर हुपा वर्सेस नोपा भाई। कुछ चीजें हैं जो नहीं हो सकती काउंटर, बट सेम गोस फॉर द टीम विद हुपा। अरे गोना फॉलो द ग्लोबल टीममेट्स, डिपेंड करता है दोस्त, इंडियन मेटा भी फॉलो होगा, और थोड़ा सा यू नो विद द ग्लोबल शैडो समझ लो या कुछ भी। चलो सेकंड भी जा रहा है, सेकंड बीच पे देखते हैं। स्ट्रीम को शेयर जरूर कर देना गाइस। चलो भाई लेट्स गो। ब्लॉसम फिर शेयर कर दिया। विगली, अरे नहीं इसका रोल आउट पूरा नहीं लगा। ब्लॉक नहीं आया पर अभी, पर उधर ही तलवार को छील दिया। ड्रैगनेट अटका है, उधर उनका भी अटका है। 7 चाहिए यार, अगर जोन नहीं बना तो इनका जीती हो जाएगा। 7 हो जाना चाहिए भाई विगली। चलो 7 हुआ। जी भाई, इटर्निटी ने ले लिया। एजी स्लैश जितना टाइम बाय कर सकता कर रहा है, पर इंस्टेंट डिलीट। 4v5 जीत गए इटर्निटी। पर अब नो शो संताची आ गया भाई। नो शो का भी सरीना अच्छा है, काफी बहुत अच्छा है संताची भी, मरता नहीं है। श्रेय भाई को टीम में लेना पड़ेगा क्या भाई? संताची का भी सरीना ओपी है,
7 breakpoint as Lewis here backs out on Zarina, dashing away from certain Rotom इनका advantage हो गया rotation की वजह से. The other objective in the game, Jeff, I know you love Rotom, so a great success there. They secure it and try to set it towards goal zone. Eternity will be able to deal with this in quick fashion. 4v4 हो गया ऊपर तो. Just buying a little bit of time here. Map pressure in the top path. Eternity doesn't. But इनका वो point Simlex बहुत underfarmed है और AG Slash भी बहुत underfarmed है भाई. ये लोग तो बहुत underfarmed. Look at the levels. Look at all of the levels. खुशी तो रखे हैं भाई ये तो. 6 का ऊपर 7 का Simlex 8 का AG हुआ चलो. At just barely ticking 7 on their hoopa. उनका बिगली नॉक है यार. Been able to get many dunks in either, which is meaning that they're stacking items that are going to be on Saitachi have not been scaling very well for damage from शायद 9 हो जाए ऊपर. Serena still a strong Pokemon on its own, but if you have an attack weight, Expicious काम आएंगे इनके. Blossom 9 हो जाएगा. Blossom on the other hand is finding a way to do so. I expect we'll see No-Show funnel a little bit of experience into specifically Hoopa and Aegislash here at this point. Santachi निकल solo को मेरा yap. For the second Dreadnought and these characters would really like to hit their level 9 breakpoint to unlock their Unite move. Dreadnought आने वाला है 22 सेकंड में. अरे इसका गोल नहीं हुआ यार. अभी सरीना का बीटी होगा. जी सरीना ने दे दिया. ये थोड़ा थ्रो गेमिंग हो रहा है, मेरे को फील आ रही है. यप थ्रो गेमिंग हो रहा है, फील आ रही है भाई. भाई पूरा यूनाइट यूज करके भागा है यार. जी पर उधर फाइट स्नो ब्लॉसम भाई ब्लॉसम. यप Santachi ले गया पर इंस्टेंट डेड यार. उसने हाइपर बीम खा ली पूरी. इनका लुइस फिर ऊपर रह गया पर ना 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 ना. ओहो हो वॉलन भाई हील कर गया पूरा वो. भाई शील्ड वाइड गार्ड बचा लिया भाई. वॉलन ने बचा लिया. वॉलन ने बचा लिया पूरा यार. पूरी फाइट बचा ली वॉलन ने. सस्टेन कर रही है पूरी फाइट. लेवल अब हल्के मिल गए इनको. ऊपर अब लिंक फार्म भी आ गया है यार. फाइट कैंसिल हो गई. Santachi and Blossom ओपी भाई. ये कौन लेगा? लॉल दोनों ड्रैगनाइट का कांड हो गया. Down the path here. I imagine we're not going to push this. We'll see though. Eternity's early positioning definitely giving them the favor there in terms of the Rotom. Dragon की तरफ बीटी हो रहा है इनका. Dragon Dance stacks up a little bit earlier than No-Show was able to do so, and they get the secure. Might chat साफ कर लो. क्या हो गया भाई? करने दो लॉन्डो को बातें अपनी. Watch party है यार. सब अपने फ्री हैं यार. गंदी बातें तो नहीं चल रही हैं अभी से. एक दूसरे में झगड़ा मत कर लेना गाइस. Moving up, Saitachi and S4L are both pretty close, but you are right. चलो दूसरा रेड आने वाला है थोड़े टाइम में. वेट सॉरी तीसरा रेड. Santachi भाई इस बार. ओ भाई आया गया. नाइस हाइपर बीम. ग्रेडेंट तो मर ही नहीं रहा है भाई. ग्रेडेंट मर ही नहीं रहा है. ब्लिसिन एंडर से रोक दिया. जीजी वेल प्लेड. बच गए पर बच गए. ये मेलन वाली हरकत क्यों की ऊपर ने जो पोर्टल से वापस आए. भाई ब्लॉसम जी शील दिया पर नहीं. ये अल्टी यूज कर दी इसने. चलो भाई Santachi फिर ले गया भाई. Santachi फिर से ले गया. अब लुइस गया. बिगली जहर कर दिया. इनका बिगली भी मरेगा अब तो. यप बिगली डेड. अब लेवल कैचअप हो गया गाइस. एंड ओवरडंक भी गंदा होगा. ओवरडंक भी गंदा होगा. ओवरडंक नहीं कर रहे क्या ये. ओवरडंक हो जाएगा नीचे. एंड इनको हील नहीं करना भाई. हील करवा लो भाई. हुपा है तुम पे. हील करवाओ. फुल लीड हो गया. Santachi खुद हील कर लेगा.
99 points up. Yeah, okay, yes, Oh, exactly. oh, 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 oh. Very close scoreline here. Hoopa यार बीटी संताची भाई बच गया भाई फुल सरवाइव कर लिया भाई उधर अलग जहर चल रहा है विगली को काउंटर कर दिया विगली ब्लिसी को ग्रीन एंड हाथ ओ भाई ब्लॉसम भाई लुइस अच्छा कर रहा है बट नहीं नोप नोप लास्ट हिट अब ड्रैगनेट और ग्रीन एंड भाई ऊपर गया इनका रीसेट नहीं होगा अब एजी ने यूनाइट यूज कर दिया एंड जी 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 भाई भाई अभी फटी थी यार हाइपर इनके बाद 1 एचपी ज़ैप्टोस और विगली ने डेजनिंगली मारा है अपना डेजनिंग का इनिशियल डैमेज लगता जीजे था भाई ये स्ट्रीम के लैग कर गई ये स्ट्रीम को लैग कर गई जीजी वेल प्लेड मेरी आवाज आ रही है ना गाइस ये स्ट्रीम लैग कर गई क्या इनकी हेलो जीजी वेल प्लेड हो गया गाइस चैट जिंदा है अपनी 360 some point lead soon yep, to be a 400 point lead here as another 100 dunk hits the net. आ रही आवाज में तो भाई ऐसा क्या भाई जी भाई ऐसा ही होता रहता है वही ना यार थोड़ी प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करते हैं काफी पीछे होंगे गेम चलो गाइस फास्ट फॉरवर्ड ब्ला 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 चलो गाइस इधर रोक देते हैं एक बार संताची एक बार पे ध्यान दो यार संताची भाई जीजी की है यार 1 एचपी पे सर्वाइव किए थे उधर और टाइम पेनल्टी दी थी अपनी आज तो मैं बीमार हूँ कोई ना थैंक्स भाई कोई ना इट विल सून ये स्पीड सोलो की यार सोलो क्यों होता कहाँ है मेरा यार Wow, the momentum shifted so heavily in that final minute or two of Blossom GG यार Blossom GG was playing out of their mind, really keeping control of that game as a whole. Achilles को हाइडर दो भाई क्यों The huge dreadnought team fight win, 3 Achilles भाई टेंशन ना लो ज़्यादा हेड में मत फैलाओ यार 1-0. Yeah, pretty even spread of knockouts here, and you kind of tell the tale of this game was Eternity. सही खेले भाई सही खेले काफी टक्कर का मैच था संताची का डैमेज भाई पर एजी भाई वोलोन का डैमेज आया इस बार एनिमी टीम ने संताची को पूरा शटडाउन का किया है बाकी टीम को भूल गए वही हुआ ना संताची को फुल शटडाउन का ट्राई किया इन्होंने ट्राई करता हूँ मिस्ट्रीज भाई थोड़े दिनों में ट्राई करता हूँ जहर भाई जहर जीत गए इन दी एंड तो Let's take a look at what happened over the course of that match here. First match तो जहर था भाई victorious in. We had some nice pushes. ग्रेनेड अभी नहीं चलता कोशिश नहीं ग्रेनेड चलता है दोस्त सही से यूज करो तो चल सकता है कल मस्त ग्रेनेड दिखे थे भाई आज भी दिखेंगे ग्रेनेड तो दिखेगा नो शो भी बोलते क्या बोले भाई 619 रे मिस्टीरियो ये पता है शरीर भाई एनडी पर भी पंजाबी है पता है दोस्त चलो गाइस कैन वी रीच 300 लाइक्स यार कम ऑन एंड मेक श्योर टू शेयर द वॉच पार्टी एंड सब्सक्राइब भी कर देना 19 सब्स टू 5.6 के एंड जिन्होंने भी गिव में एंटर नहीं किया है लाइव चैट में लिंक पिन है दोस्त मेक श्योर टू गो टू लिंक विजिट करना है बस एंड यू आर गुड टू गो 23rd को रिजल्ट्स आ जाएंगे गिव अवे के आई एम न्यू इंडिया की टीम गेम ऑफ आईटी दोस्त इंडिया की टीम कल हार गई दोस्त ग्रुप स्टेजेस में टॉप 8 में नहीं रीच कर पाए वो सो आज इनके मैचेस नहीं होंगे कोई ना दे डिड द बेट वोलोन ने तो भाई मस्त खेला यार बॉटम पे उसने जो टाइम बाय किया फर्स्ट सेकंड रेड पे शायद ये सेकंड रेड पे सही खेला सांगता चाहिए सही किया भाई पंजाबी होता है कनाडा का वीजा तैयार होगा ना भाई नहीं भाई नहीं इधर ही बैठ रहा हूँ मैं पहले प्लान था अब नहीं है सही खेल गया भाई ये
तो। अब दूसरा मैच चालू होगा बॉयज। इंडिया बियर बाय ओरिजिन ही इज इंडियन बट अभी वो बाहर रहते हैं। इटर्निटी आउट के नहीं दोस्त, ये मैच अगर हारते हैं इटर्निटी तो टूर्नामेंट से बाहर हैं वो। ग्रेडिएंट वापस दिख रहा है ब्लिसी, कॉम्पचिंग तो नहीं दिख रहा है इनका, दोनों साइड कॉम्पचिंग नहीं दिख रहा है। और भाई वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो। जो पहले वो कोई टूर्नामेंट हुआ था ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप था क्या, कौन सा शंक्स भाई, वॉलन कोस भी रहे थे, कौन सा टूर्नामेंट शंक्स ब्रो, किस टूर्नामेंट की बात कर रहे हो, बिल्ड कर स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई ये कर लो यार भाई, कब तक स्ट्रीम करोगे, मैं तब 3GB वाईफाई का अरे डाटा मैं तो पूरा करने वाला हूं यार। क्षितिज भाई आई थिंक अ लिटिल बिट, मैंने भी कल ध्यान दिया कि एक एक्सपी से रन ही नहीं किया उन्होंने। ये कम्युनिकेट करते दिखते नहीं भाई, हेडफोन है भाई, उनके मास्क है भाई, आपको मुंह कहां से हिलते दिखेंगे, मुझे एक चीज बताओ, मुंह कहां से हिलते दिखेंगे उनके। हाँ एओस कप्स थे, फिर रीजनल क्वालिफायर्स थे जहाँ इंडिया नहीं था, इंडिया नहीं, कौन सा वो दूसरे रीजन के कप्स होंगे ना दोस्त, एओस कप्स या किसी दूसरे रीजन का रीजनल फाइनल्स। 10 मिनट बाद के बाय बाय टॉक्सी बाय, थैंक यू फॉर कमिंग। अटैकिंग कॉस्ट फिर कोई इज्जत ही नहीं है भाई, इन द एंड कुछ भी कर लो, एक चीज का मेटा होता है, उन्होंने मेटा बनाया है, ये कर लो लाइट गेम भाई। चलो गाइस दूसरा मैच चालू हो गया, नोशो वर्सेस इटर्निटी। अगर इटर्निटी हार जाती है तो दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। आपकी टीम रीजनल ब्रो, रीजन खत्म हो चुके हैं भाई, ये तो फाइनल चल रहा है वर्ल्ड्स का भाई, अब कौन से रीजनल, अब तो अगले साल के वर्ल्ड्स के रीजनल आएंगे। Yeah, getting countered last time, they definitely want to change up their strategy as to make sure सही बोला डीएम भाई। अरे परदेसी भाई क्या अपडेट भाई चल रहा है यार, सेमीफाइनल्स में इट्स ब्लैक हैंड वर्सेस आईएक्स एंड आरएनएस वर्सेस टी2, लूजर ब्रैकेट में अभी नोशो वर्सेस इटर्निटी चल रहा है, और आई थिंक दूसरी साइड पे है आई क्लैन वर्सेस, नाम भूल गया यार उनका, Honestly, good call by Woolan to not chase यार that नाम भूल गया, KO. सॉरी टीम का, That Greedent was in range of that citrus berry. More टीम का importantly, नाम they भूल know गया that they मैं। would get in range to get KO'd themselves. So making sure they use that speed dash ability चलो भाई, not to chase, but to remain back. अभी तो स्टेबल ही दिख रहा है हर जगह। फर्स्ट बीस, हाँ नाउन्स एक दूसरे से आ गए क्या, इस बार 20 जीतनी चाहिए, मजा आएगा फिर भाई। नेक्स्ट ईयर न्यू मैप टूर्नामेंट में देखते हैं। अब थोड़ा ब्लॉसम भाई, पहली बार ब्लॉसम मरा है यार, पहली बार टॉप पे ब्लॉसम मरा है। अरे अरे लॉल लॉल, चलो गाइस इन्वाइट चालू अपना। अरे भाई ग्रेडिएंट ब्लैक इसकी तो me. I'm walking back out. I understand there's no free eats here. A bit of a hide and seek here. Chobo finds a nice भाई ग्रेडिएंट को तो फुल शील्ड दिया, फिर भी बच रहा है वो। अरे 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 लॉल मार दिया, बिगली भी मर गया बॉटम के, क्या व्हाट द talking about free eats, some green was available in the center for चलो भाई उधर सरीना 6 हो जाएगा इनका लूज थोड़े टाइम में, अगर टॉप 10 फॉर्म मिला, पर सांताची भी 6 होने वाला है। अब सांताची 6 हो गया, ग्रेडिएंट इवॉल्वर क्या, चलो अब ग्रेडिएंट तंग करेगा सबको। सांताची 6 है इनका, अभी लूज 6 नहीं हुआ है। We see those next set of contested wild Pokemon getting ready to spawn. राउंड 2 में नाउन्स एक से आ गया, और ओके ओके बड़ी, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग भाई। उसका स्कोर हो गया भाई, लेट्स गो। बिगली का रोल आउट भाई जहर, ब्लॉसम ने स्किन नहीं बदली, लोल शिट मैन। ऐसा भाई अगले साल की रीजनल में 4 जीजी प्लेस भाई डेफिनेटली करेंगे यार, क्या बात करते हैं यार, देखते हैं ना अभी अगले साल का रोड मैप आएगा, अब तो अगले साल का रोड मैप वगैरह सब कुछ आएगा, टेंशन ना लो। चलो भाई फर्स्ट रेड ना उनका ड्रैगनेट नहीं, इटर्निटी का अभी तक तो बन जाएगा शायद, एक फॉर्म ले रहा है अभी, ये बन गया, पर लुइस अभी तक नहीं है। हाँ लुइस नहीं आया इनका, संताची आ गया है। अरे यार उसकी बीम पहले इनिशिएट हो गई जी, बट
बट अभी भी जीत रहे हैं ये। यप, नो शो जीत रही है फाइट। ग्रीडन टपकेगा। अभी ड्रैगनाइट वर्सेस ड्रैगनाइट। ओ भाई, वेल प्लेड ड्यूड। भाई इसकी तो छील रहे हैं भाई, छील रहे हैं। बाय बाय शैंक्स भाई, एसेट वेल बिल्कुल भाई, ये कर लो भाई, बिल्कुल भाई, making sure that we all know they're one of the most gifted mechanical players in their region. Absolutely love the Hoopa here clearing the central. S4 अच्छा खेल गया भाई। Well chances of not getting banned, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। It's really important that you be level 9 before the ओ भाई, second Dreadnought. Let's make sure we get the संताची को तो छिल दिया। ए, Lucial, let's go भाई। लगता है इनको ये T2 T1 टावर चाहिए। यप, स्कोर हो जाएगा। नीचे भी गोल खा लिए। गोल का ट्रिप आने चाहिए दोस्त। वो गलत मेटा है भाई, वो नहीं आएगा। हर आइटम नहीं हो सकती मेटा में गाइस, हर आइटम मेटा में नहीं हो सकती इन दी एंड। कुछ आइटम यूजलेस ही रहेंगी, हर मोबा में ये रहता ही रहता है। कुछ आइटम्स बैटल आइटम्स यूज नहीं होते हैं। ये तो फुल पुश के लिए रेडी है भाई। भाई 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 भाई, ब्लॉसम डेड ऑलरेडी। ऊपर गया, एज से जा टैंक नहीं कर पा रहा है, पर कर गया। डेड, जंपर है नहीं यार। इटर्निटी वालों ने, ओहो हो, उसका गोल रोक दिया लॉल। ओ भाई भाई, ब्लॉसम जहर किया यार। वेल प्लेड यार। A KO streak at 3 from Sangtachi is nice, but their home goal zone is available for scoring. I mean, Eternity got that point, but at ड्रैगन पे गोल नहीं भाई, नहीं भाई, इस ब्लॉसम ओपी यार। a ton of experience over. I know no shows behind. अरे टेंशन ना लो गोल की यार। I feel like they've got to be happy with where they're at in terms of levels now. गोल, अरे जी नहीं, यूनाइट थोड़ा सा बीटी, पर स्टिल फाइट जीत सकते हैं। संताची पे फिर यूनाइट खोल दिया गया है। संताची सर्वाइव नहीं कर पाया, पर नहीं, इनके 2 टैंक्स ही बचे। अब ड्रैगनेट आएगा, ड्रैगनेट के साथ आ गया। अब बीटी है, अब बीटी है, अब बीटी है, अब बीटी है। ओह, हाइपर बीम डबल को लगा यार। लेवल एडवांटेज देखो तो अभी हल्का सा है इटर्निटी के पास, पर उतना नहीं। गोल तो डिफेंड हो रहा है, पर टूट जाएगा। स्कोर शील्ड गया। संताची पूरा भाई, संताची तो टेंशन ही नहीं है उसको भाई, घुस रहा है। ब्रव का टीम है, यार मैं नाम भूल गया ब्रव का, ब्रव की टीम का, पर है ब्रव की टीम है। क्या नाम था यार? नाउनज़ेप है, नाउनज़ स्पोर्ट लूजर ब्रैकेट में है दोस्त। इंडिया की टीम कौन है? इंडिया की टीम मिस्टर आर रेवेनेंट थी, बट दे लॉस्ट इन द ग्रुप स्टेजेस, तो वो टॉप 8 के लिए क्वालीफाई नहीं हुए। भाई सीधा उल्ट दिया भाई संताची ने तो। भाई ब्लॉसम तो भाई क्या जा रहे यार। भाई ड्रैगनेट भी लग, माफ कर दे यार, घर जाने दे यार। अब गोल्स होंगे, जी भाई। संताची को तो छील दिया, 40 दे दिया, पर नीचे पर ऊपर इनके। ओ भाई गोल तो नहीं हो रहे। नहीं, गोल नहीं हो रहे। मरना चाहिए, मरना चाहिए। चलो एजिस नेशन भी होल्ड करवा लिया। भागने वाला था ड्रैगनेट भाई। चलो गाइस, लास्ट 3rd रेड, पर आई थिंक ये तो नो शो को मिलना चाहिए, वो रेडी बैठे हैं। लेवल एडवांटेज कैचअप हो जाएगा। कैचअप क्या आगे? अरे भाई, नोशन ने तो फुल कैचअप कर लिया। चलो नोशन ने कैचअप कर लिया लेवल्स अब। यप, फुल कैचअप हो गया। ऑलमोस्ट इनके मेजर फाइटर्स 13 है, स्नोलेक्स 12 है, हुपा 11 है। सेम यूजर है इनके। मेजर फाइटर्स लेवल 13 है, ग्रेड 12 है बस। अब चाहिए जैप डॉस। यप, यूनाइट सरीना का यूनाइट
यूनाइट नहीं दिख रहा अभी तक मेरे को। दोनों सरीनास का यूनाइट नहीं है, संताची का भी नहीं, लुइस का भी नहीं। जिनका भी यूनाइट पहले है, चलो संताची का आ गया, लुइस का भी आ गया। संताची को तो सीधा उठा लिया भाई, संताची ने सीधा अल्ट दबाया अपना, उनके बिगली ने थोड़ा मैसअप कर दिया यूनाइट टाइमिंग। भाई 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 क्या फाइट है ये। नेवरगिन का ग्रीन नाइस हाइपर बीम, जी जी। वोलॉन बिना अल्ट के गया पर यार, वोलॉन बिना अल्ट के गया। अब हाइपर बीम पे आता है गाइस, अब हाइपर बीम का गेम है, इसका हाइपर बीम गया। नहीं ड्रैगनेट वर्सेस ड्रैगनेट हो गया, उन्होंने ड्रैगनेट पे सरीना आ रहा है अब यार। लुइस क्या सिक्योर कर, ओए भाई भाई क्या किया इसने ऑलमोस्ट भाई, क्यों क्यों भाई, हाथ भाई दिल हाथ में आ गया था यार। भाई 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 धक धक हो गई थी यार। किरत भाई मेरे को नहीं पता दोस्त, मेरे को वीजीसी का नहीं पता, सॉरी। जहर गेमिंग हो गई थी तो गाइस, बचे बाल बाल भाई, बाल बाल। अब पुश का टाइम भी नहीं है, अब स्नोरलैक्स इन पे होगा ही नहीं पुश, चाहे 200 गोली चाहिए हो, 205 गोल्स चाहिए इनको। और ड्रैगन इनका बंदे भी, इनके बंदे भी डेड हैं। जी है गाइस, चलो गाइस सबसे पहली टीम बाहर होने के लिए टूर्नामेंट से इटर्निटी ऑफिशियली आउट ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 8 के ब्रैकेट्स में ऑब्वियसली। कोरिया रीजन शायद पूरा बाहर हो गया है अब। मोहम्मद जी डोंट स्पैम प्लीज। भाई भाई चलो गाइस, वेल प्लेड इटर्निटी यार, जी। नोशन ने तो डोमिनेट किया भाई, थक गया यार बेचारों ने भाई, मुंबई से दूर है भाई। नोशो कोरिया का है ना एक्चुअली, हाँ नोशो भी कोरिया की है, ये कोरिया वर्सेस कोरिया था, सॉरी गाइस रॉन्ग इन्फो। कोरिया वर्सेस कोरिया में नोशो आ गई, सॉरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। दोनों ही कोरिया थे, मेरा ध्यान नहीं था। रेड बुल प्लेऑफ से भाई हालत खराब हो गई भाई यार, मेरे को तो मैच देख के थकावट हो रही है यार। Blossom has definitely been a star that has emerged, but seriously, S4L these last couple of days might have taken. लुइस का डैमेज अच्छा है भाई, S4L भाई, S4L ने पूरा कैरी किया भाई ड्रैगनेट से। सेजुन थोड़ा बोलूंगा, कल वाला इम्पैक्ट नहीं दिखाया सेजुन का, ग्रीडेंट का तो बहुत इम्पैक्ट दिखता है फाइट में। ये कर लो भाई, ये सब मैचेस क्लोज जा रहे हैं, लिटरल क्लोज मैचेस यार, लिटरल क्लोज मैचेस। इस्तेमाल गोड इन ई-स्पोर्ट्स जी, अब ऊपर कड़े में नहीं भाई कोई नहीं। No show at this second dreadnought, really starting to इन catch देशों के up in a game where they have otherwise been behind to start. खेला भाई ऊपर भी, not giving them anything for free here, getting pushes of their own in these mid-game portions. This, I believe, was that moment that you thought. मिस्टर आर भाई बोला तो रेवेनेंट थी, बट वो कल हार गई दोस्त। आज इंडिया की टीम कोई नहीं है, एक ही टीम गई थी, वो हार चुकी है कल दोस्त। इधर S4L ने ऑस्मोस टच कर लिया था पर हार गया यार। इसका हाइपर बीम पहले है बेटी। ड्रैगनेट बिल तो मसल फोकस रेजर चल रहा है दोस्त, यहाँ स्कोप है रेजर, यूजुअली रेजर। जो विन हो जाए वो हमारी टीम ही है, सही है यार टीम में भाई। इंडिया से एक ही टीम भाई, एक ही टीम गई काफी है भाई। लाइक दूसरे इंडिया को ऐसा कंप्लीट रीजन माना गया, एपेक में इंक्लूड नहीं है इंडिया, समझ रहे हो भाई। बी हैप्पी यार, कम ऑन यार, हर चीज पे कंप्लेंट मत किया करो यार, कम ऑन। पाकिस्तान की कोई टीम नहीं है दोस्त।
नहीं दोस्त, इंडिया से 2 टीम नहीं, बिकॉज अभी हर रीजन से पूरा रीजन से 2 टीमें आ रही हैं यार। एपेक्स से 2 टीम समझ लो, इधर से 2 टीम। इंडिया एज अ कंट्री को भी रीजन माना गया और 1 टीम गई है उधर से। गजब करते हो यार। यस एजी से मेटा थोड़ा हो गया दोस्त काफी, पर प्रॉपर यूज है। क्या ही बोले भाई। वेल प्लेड यार। I know that No Show now has the biggest fans in the world. Eternity is going to be cheering them on in the rest of the नहीं दोस्त, आरएनटी और नहीं खेलेगी। Sounds like we have an interview. Arey guys, no hate to any other country दोस्त। Let's send it on down to Spraggles now to find out more. चलो भाई, स्प्रेगल्स इंटरव्यू ले रहा है अब। No Show, what an incredible victory. अरे थैंक यू फॉर 300 likes guys, welcome to stream again। How does it feel to be going up against the other massive team from Korea here in the losers bracket? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर देना याद से। 한국의 또 다른 강적이랑 싸웠는데 어땠어요? नो शो मस्त खेली अब भाई। स्पोर्ट्स से अच्छा फिजिकल गेम्स हैं, हेल्थ अच्छी रहती है भाई। इस हिसाब से तो कोडिंग से अच्छा कुछ और कर लो, जो घर पे बैठ के कोडिंग करते हैं। 저번에도 약간 인터뷰 때 말하긴 했는데 오늘 ऐसे ओपिनियंस क्यों भाई? इन द एंड इट्स एन इंडस्ट्री। आपकी फिजिकल हेल्थ तो आप पे डिपेंड करती है ना भाई। अगर आप 8 घंटा काम कर रहे हो तो उसके बाद थोड़ा बहुत लाइक यू नो स्ट्रेस फ्री करो, सारा कुछ वर्कआउट कर लो जो करना है। ये तो पर्सन पे डिपेंड करता है। ऑफिस जाने वाले का क्या है भाई? ऑफिस जाने वाले भी उधर कौन सी फिजिकल है, उधर भी उसको कुर्सी पे बैठना है। सारे फील्ड जॉब थोड़ी होते हैं। अब इलॉन मस्क कौन सा भाई रेसिंग कर रहा होता है। नाउंस जीत गए लूजर्स राउंड 2 2-0 से। ओ भाई, तो कौन सी टीम बाहर गई? आइकलैंड इज आउट देन भाई। वी डब्ल्यू कौन है? डब्ल्यू मतलब बहुत कौन? मजा आया। यप मजा आया। 카미르라는 선수가 잘하는 것 같아서 좀 많이 무섭습니다. I think सेजिंग को ग्रीन तो नहीं सिखाया ना छोटू, ये कर लो भाई, ये कर लो। especially the player Guardian, I think he's excellent, so I think I have to watch out for him. Amazing. And what do you have to say to इन्वेस्ट कर पीओ को खरीद लेगा तो क्या होगा भाई, पता नहीं भाई। आरएनटी कल ही बार हुई क्या फिर? यस दोस्त, कल ही बार हो गई। यस इंडिया इज आउट, यस्टरडे बार हो गए थे डे 1 पे। मैं तो ब्लैक एंड मैच के लिए यप भाई। उसका देखो भाई, पसीना देखो बेचारे का, फुल मेहनत लग रही है भाई, फुल ट्राई हार्ड चल रहा है, देख रहे हो ना। पूरा वेन्यू मतलब समझ लो वेंटिलेटेड ही होगा ना यार। अरे अल्फा भाई गुड मॉर्निंग मेरे भाई, क्या हाल है? अभी तो आए थे ब्राइटनेस देखने स्ट्रीम की, फिर चले गए। इंडियाज बेस्ट लुकारी प्लेयर बने हो आप, किसने बोल दिया भाई? व्हाट द फक? जिराफ भाई हैं यार। इन फ्यूचर यूनाइटेड में मैजिक कप हो सकता है। That is No Show. I'm going to send it back up to you guys. Enjoy. Oh भाई। Thank you very much, Spraggles, for giving us that great interview. Great to hear Alpha from baby, No like, Show after an amazing second match shit I में। believe we have an update off of our इसमें लूजर ब्रैकेट नहीं रहना ना, लूजर ब्रैकेट ही था दोस्त। अल्फा भाई ये लूजर ब्रैकेट ही चल रहा है अभी। इटर्निटी बाहर हो चुकी है, अभी ब्रैकेट्स आएंगे, देखते हैं। जिराफ भाई होते तो अर्नेस को Another region cross out the board. OCE no longer going to be in our game, but a very nice performance, making it out of groups. ओशियाना का रीजन नहीं रहा अब टूर्नामेंट में दोस्त। We have more action coming up for you अभी देखते हैं। Do not go anywhere. More ब्रेक आने वाला है coming up next. भाई। ऑडियंस तो जाए भाई, ऑडियंस तो है गाइस, पूरी भारत बैठी है। अल्फा स्पोर्ट्स कमिंग सून। कहाँ भाई? ओके गाइस, फर्स्ट सेमीफाइनल्स अब आने वाला है, ब्लैक हैंड वर्सेस आई। उसके बाद लूजर्स राउंड 2 नो शो वर्सेस आई थिंक जो भी सेमीफाइनल्स में लूज करेगा। क्वालिटी की MCB6 ने कर दी। ऑडियंस तो ताबड़तोड़ है भाई। आई थिंक यूनाइट को भी एक्सपोजर मिलेगा, ये प्रॉपर नहीं है अभी पूरा ऑडियंस। बाकी जितने गेम्स का ऑडियंस है पोकेमॉन की, उस तरह इससे तो कमी है, बट आएगा अभी। अरे आन्या फॉर जज वेलकम टू स्ट्रीम। आईएक्स नोडा MVP, लेट्स गो। मैजिक का भी जंगल सही है भाई। आई एम सपोर्टिंग यार, लेट्स गो भाई। अब तो 6 टीम्स बची ना टूर्नामेंट में गाइस, 8 से 6 हो गई हैं टीम्स अब।
क्षितिज भाई मेरे को नहीं पता दोस्त, ये तो जब स्विच मिलेगा तब पता लगेगा ना, जब स्विच मिलेगा तब पता लगेगा मेरे भाई। इमेजिन मैजिक लेवल 5 तक स्प्लैश यूज करता रहे, बिल्कुल भाई। We are IX Gaming and we are from North America. भाई What I'm most excited about is to be here. लौंडा फुल कूल भाई, RNS वर्सेस T2 मजा I'm एकदम। mostly excited about competing against all the other regions, playing on the same playing ground. नाइस फॉर जो स्टिक करना रे भाई। हेलो टॉक्सी भाई, वेलकम बैक। पहले तो वो क्षितिज मैं सपोर्टिंग ब्लैक एंड, और ये कर लो भाई। इंडिया से होना था यार एटलीस्ट टॉप 5, तो इंडिया में क्रेज बढ़ता है यार। कोई ना यार, दे डिड देयर बेस्ट इन द एंड यार। टॉप 13 वर्ल्ड में भी इजी नहीं है यार। One thing that Retsu is good at is that समझ रहे हो ना, really good. He's very vocal, मतलब पूरे वर्ड से आए हैं, ये चलता है। कोई भी टीम किसी टाइम भी कुछ भी करके दिखा सकती है। कोई लेफ्ट आईएक्स मेरे को नहीं पता दोस्त, मेरे को कोई आईएक्स में था भी क्या है, वही सोच रहा हूँ मैं। Everybody's having their advantage and disadvantage. Yep. Full try Sohail जी। Pika Diff का hairstyle, अरे कोई ना। चिल बंदा है Pika Diff, स्नोलेक्स मस्त खेलता है, गोल गोल घूमता रहता है। Which team are you rooting for, Black and or IX? Both. हुई FM, हाँ हुई तो फॉरेन फेमस में था मेरे ख्याल से, राइट? आपके साथ टूर्नामेंट कौन जीतेगा यार? कोई भी RNS जीत सकती है, T2 जीत सकती है, कुछ नहीं बोल सकता मैं। नो कमेंट्स यार। हु इज आईजेल ऑफ एसएटीएल? मेलन भाई। आरएनटी का कोई मैच नहीं है दोस्त। हुई आईएक्स में था उस टाइम, आईएक्स दूसरी टीम थी। ओके ओके। ओजी वाज टेकन, मेरे को नहीं पता यार, मैंने फेस पे ध्यान नहीं दिया। टॉप टीम भी आसान नहीं है। यप यप यप, सब रिलैक्स्ड है यार। कोई ना यार, कोई ना, फर्स्ट टाइम था एफ भाई। ये एफ बैंड हो गई। अरे भाई गोल भाई फिर से आ गए यार, लेट्स गो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आईजेल? इन गेम लीडर दोस्त, जो आपको कमांड्स देता है, गाइड करता है मैच में, मैक्रो वगैरह, रोटेशन, सारा कुछ समझ रहे हो। जगरग जीजे में था दोस्त, दे कुडंट क्वालिफाई दोस्त। एनएस वर्सेस ट्रेंडी में कौन जीता? एनएस दोस्त। वेल्सिफाई को जानते हो? नहीं दोस्त। रियल ऑफ RNS इज ऑल माइट, ये कर लो। मेरे चेयर का इधर भी बैठी। उफ, बिल्कुल बिल्कुल अल्फा भाई। गोल है क्या? थैंक्स टू फुल सेंड। अरे भाई मोस्ट ऑफ टीम्स में तो सपोर्ट ही आईजेल होते हैं ना, डिपेंड करता है यार। बॉटम में नजर होते हैं यूजुअली। व्हाट विल हैपन इफ टीम डोंट चूज बिस्सी? कुछ नहीं पता भाई। नींद आ रही है, बारिश हो रही है, मूड बन रहा है पूरा है। So guys, 18 subs to 5.6k यार, जल्दी जल्दी स्ट्रीम शेयर कर दो यार। RNS T2 में से कोई जीतेगा? RNS मेरे ख्याल से, पर मैं दोनों टीम को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। दोनों एकदम टक्कर के मैच देने वाली हैं। ओवरलॉर्ड पिका डिफ यार, दोनों ही अलग अलग रोल हैं यार। पिका डिफ स्नोलेस खेलता है, ओवरलॉर्ड निंजा और लुकारियो खेलता है। ये भाई लोग फिर से आ गए यार, एकदम भाई लगते हैं स्प्रेगोज और डूब्सनेक से यार। Next on the main stage. बाकी इनका ग्लोबल इंग्लिश में मतलब the last 2 minutes of game 2 between Nouns and iClan. It is an absolute barn burner. Yeah, this is going to Nouns और iClan का लास्ट के 2 मिनट का आने वाला है शायद, देखते हैं। The EU Titan sent down to the losers bracket. iClan being taken down by Resistance earlier, and here ये लास्ट के 2 मिनट दिखने वाले हैं इनके भाई। Great spacing. Gatlu can do a ton of damage on that Trevenant, and they're trying to find a way. And look at Bruv on the mine. This is their pick from Mime लिया हुआ, hello? They've been on this thing. I'm pretty sure they get Bruv ने Mime लिया है। Mime play offline every single day. They love this character. I love me some Mr. Mime. I can't wait to show this to Jeff Hoagland, who always makes fun of me for भाई ब्लिसी को तो चिल दिया, पेंगू पे यूनाइट दिया। चलो ब्लिसी का अंडा थोड़ा सा ऑफ टाइम हुआ यार। सरीना को ट्रेवेनेंट का यूनाइट जीजी। भाई गेट टू द फुल टैंक कर रहा है यार। ओ भाई स्टन भाई, what the hell? भाई ही फिर ब्लिसी को छिल दिया ऊपर। उनकी वो सिल्वियन कहाँ है? ड्रैगनेट को मार दिया
Nouns Esports trying to get it done here. This is ना game one उनकी action. I said game two, सिलियो ने this is game घुस one के action. मारा ड्रैगनेट को भाई Here we go. आइकलन की Nouns with the big secure right here. You saw that. भाई भाई barrier भाई just भाई able भाई to माइमी find ओपी out. Couldn't even get to it. माइम मेटा मैंने सिखा दिया गाइस Holding it down. Gotlu coming in here with a big score. Is it a Daisu Bhai. first? There we go. Yeah. Let Sylveon put the points in first. Yeah, Gatland has a much easier time getting to that home goal zone to get those points in the face of Iclan here. And of course, a game that was so close. You mentioned it, Iclan getting रेडमो ने फाइनली लुकारिया छोड़ दिया गाइस पावर snowballed पंच in वाला the favor of शायद Nouns थोड़ा Esports, उनको लगा काम despite नहीं कर रहा Iclan है having a very decent re-engage. काट ली ओपी भाई ब्रो एचडी में मस्त खेला लिसी की आधी एचपी कर दिया एक इस उसमें ट्रिपल स्पेक्स वगैरह है क्या भाई Sent down to this losers bracket here with Iclan, and Nouns is going to take this here, and they are going to be moving forward. तो दोनों ओशियाना की टीम्स आउट हो गई हैं के ना I mean, I didn't इटर्निटी expect भी that we एंड would say आइकलन भी Nouns is in the losers bracket so early, but if any team can climb through it, it's Nouns. In fact, in their first regional championship, they made it all the way through the losers bracket to the grand finals, reset the grand finals, बाय बाय आइकलन एज वेल डेवस की टीम के बीच क्या हुआ था पता नहीं भाई बट दे डिडंट विन सो दिस ब्लाइंडेड दैट्स इट चलो गाइस ये सेमीफाइनल्स का सेकंड सेमीफाइनल है फर्स्ट सेमीफाइनल्स अभी स्ट्रीम नहीं हो रहा है पता नहीं या तो ऑफलाइन होगा या पता नहीं हो चुका है आज नाइट बॉट मैं नहीं जा रहा भाई 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 जहर मजा आ रहा है यार गाइस देखते हैं North America champions coming out of their regional finals. Oh, Mr. Mime मैंने यप still भाई Mr. Mime इधर खेलना. Fire in this tournament. आइए. Every single player. Jabbed. Raising the zap up. Oh भाई jabbed us. Jungle Book, and I've seen Jungle Book today. नहीं अल्फा भाई आज ही है आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा. टॉप 8 का लूजर ब्रैकेट कल कैसे आएगा? आज ही आएगा ना? राउंड रॉबिन में लूजर ब्रैकेट नहीं था. We're seeing them for the first time as you are at home. Yes. And that's Zapdos raising the Zapdos. भाई उन्होंने बोला Zapdos हमारा. But on the other hand, IX Gaming, of course, another team we're very familiar with. And अरे भाई. Little Ginyu Force action. Looks like they're at Dragon Ball Z. अच्छा टॉप 8 ऐसे ही है टॉप 8 से लूजर ब्रैकेट है. Wow. पिका डिफ तो फुल बॉडी फ्लेक्स भाई ऊपर पिकाचू बना लेता है यार ये लो गाइस ओजी आ गया अपना कीरा वाज टेकन का भाई ओजी वाज टेकन ये मैनेजमेंट वाले अरे नहीं वो तो प्लेयर्स का है ना भाई वो तो प्लेयर्स का है वो तो प्लेयर्स की मर्जी है उनको कौन सा पोस्ट करना है मैनेजमेंट बस आइडिया दिस वो लड़का गेम प्ले है ऐसा क्या भाई 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 जहर गेमिंग हो रही है यार भाई चलो गाइस फर्स्ट मैच ऑफ द सेमीफाइनल्स एनए वर्सेस एनए ओवरलॉर्ड वर्सेस ओजी इंडिया का मैच कब है यशराज जी इंडिया कल हार चुकी ग्रुप स्टेज में दोस्त आज वो नहीं खेलेंगे इसलिए इंडिया बाहर हो चुकी है अपने अमित भाई वेलकम स्ट्रीम जिसको पता नहीं उन्होंने गिन्नी फोर्स का पोस्ट मारा था लंबे डीबी फैंस वही ना यार लॉन्डो को पता नहीं है ड्रैगन बॉल जी का पोस्ट था पूरा वो एमबीपी पर नूडो डीएम भाई इधर नूडो से ज्यादा खतरनाक लड़ाई चलने वाली है ओजी वर्सेस ओवरलॉर्ड की सिंगल एक्सपी शेयर नहीं डबल एक्सपी शेयर है और डबल दोनों टीम्स पर डबल एक्सपी शेयर लेट्स गो पीका डिफ को आज जीएफ मिल जाएगी सालों की मेहनत के बाद ऐसा क्या भाई लेट्स गो कॉम तो जोड़ है भाई क्या ही बोले भाई insanely powerful in Pokemon Unite right now, and they are doing some Let's go यार ये ब्लैक हैंड क्या नाम ये रैंडम टाइप किया था क्या पता नहीं भाई पर उन्होंने एक अच्छा नाम है यार साथ में स्ट्रीम करो ना अमृत भाई के साथ अरे भाई अमृत भाई आना है क्या कमेंट्स देने आ जाओ पर आप तो खेल रहे हो क्या स्ट्रीम कर रहे हो अमृत भाई आरएनटी के लिए बुरा लग कोई ना यार पॉकेट डेंजर भाई दैट डिड द बेस्ट इंटेंस फाइटिंग एंड वी आर इनटू गेम 1 गाइस Black Hand versus IX Gaming, NA versus NA, Luca versus नहीं sorry, Serena versus Serena, yes.
in the bottom path here as both Serena versus Serena है ना? नहीं दिया है। नहीं Serena versus Serena नहीं है। They're putting the pressure on Nuda. They're trying to get this KO before they can score the points. Nuda goes to the backside. Can they get their 5? And they अभी just फ्री लाइव करने वाला हूँ, पहले बता देते। अरे कोई ना यार, कोई ना। करो लाइव। Hello XYZ Gamer Pokemon दोस्त, welcome to stream. चलो guys, next target 350 likes यार। And stream को सब्सक्राइब करना। DM भाई, नूडो भाई को तो चिल दिया, पर स्टैक हो गए उसके। चलो guys, it's Machem versus IX का डिफिकल्ट टीम है। यप। That puts him just a shade closer, and a Pokemon that you'd like to get to level 4. Pikachu Bilex हो लेता हूँ थोड़ा सा। It's gonna be Serena versus Machem. Boji versus Overlord. Overlord भाई अंडर फार्म है थोड़े अभी। बोजी भाई फार्म हो रहे हैं ऊपर। विलर टीम पे नो दोस्त, we didn't qualify for the Worlds. अगर मेरी टीम खेल रही होती तो मैं यहाँ ना होता भाई, वहाँ होता यार। आप भी ज्वाइन कर लो मेरी करे, कोई ना भाई। ये तो अमित भाई पे डिपेंड करता है। मतलब हार गई। यप। Overlord fuck the world भाई। Slash is such an incredible Blissey player. You'll see the amazing heads-up plays by this Pokemon. Yeah, most of the moves होना पड़ेगा। नूडो भाई, नूडो को तो फुल सप्रेस कर रहे हैं। नूडो को तो फुल सप्रेस किया जा रहा है। All offense all the time for Slash can. अब ओवरलॉर्ड भी छिल सकता है। नहीं पर गोल हो गया ओवरलॉर्ड का। 6 जल्दी होगा। नाइस। ट्रिपल एक्सेल ले लिया गलती से यार। ट्रिपल एक्सेल किसने लिया? गलती से किसी ने कहा था भाई, सरप्राइज भी तो हो सकता है। ट्रिपल एक्सेल किसने लिया पर? ओ भाई। एक परसेंट भी चांस नहीं क्वालीफाई होने का। अरे भाई कोई ना। XYZ गेम में बोला तो दोस्त नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोच रही है क्या भाई? देखते हैं किसने ट्रिपल एक्सेल लिया। अब बैक कर्स में गोल नहीं होता। नूडो भाई क्या कर रहे हो यार? Easy to stack when you only have 2 points unless a Trevenant is in that top path using Curse. And the stars come out. Travis Presley. भाई नूडो तो सप्रेस हो गया भाई पूरा। 3 बार मर चुका है नूडो। ओवरलॉर्ड उधर 7 हो गया है। स्टार्टिंग में ओवरलॉर्ड अंडर फार्म था पर काउंटर हो गया भाई। अकेला संभाल रहा है ओवरलॉर्ड बिसी के साथ। ओहो I mean, we're looking at some MVP performances for अंडे मार दे भाई। स्लैश भाई अंडे मारे उसको। चलो बेरी आ गई। नूडो ले लिया ये अद्वैत। लेट्स गो ब्लैक हैंड भाई। चलो ओवरलॉर्ड हील हो गया पूरा, पर ऊपर से रोटेशन भी नहीं आया। ऊपर ही नहीं उन पे फार्म हो रहे हैं। नूडो चलो 6 हो गया। 7 सॉरी। ऊपर तो भाई देखते हैं, पीछे ले रहे हैं। ले लिया जंगल इन्वेट चालू। या ओवरलॉर्ड सोलो लुकिंग कर रहा था। और ब्लिसियर्ड भाई क्रेटोस को तो छील दिया भाई। ब्लिसियर्ड को तो छील दिया भाई। क्रेटोस भी लग मार रहा यार भाई। नूडो पे पीछे फिर पड़ गया यार। जी पॉइंट उठा। नाइस। माचेम भी नहीं भाग रहा मेरे ख्याल से, तो पकड़ लेंगे उसको। ओजी को लुका लेना। क्यों भाई? टीम कॉम्पियन दी एंड। ओवरलॉर्ड ने भी इनको लिया। That's a free Rotom? Wow. I feel like I pay so much for it when my teammates go to Rotom. BC ने नेट दिया था ना, तो स्टैक कर रही है। The question is, do they break this? This is a big overdunk right here. Nice 40 points into that top 20 दिलवा देते यार थोड़े। Blackhand ahead on score right now. Yeah, a good 25-point overcap. They're up by 90. Quick math. The Blackhand doing work, सही looking चल good रहा है अभी ahead तो। on levels, and IX Gaming is trying to fight from behind. IX भी कमबैक कर सकती है। लिन फार्म आ गया उनका, पर मिड फार्म तो पूरा इनका ही है। पीका डिफ भाई बेचारा बोल रहा है। अरे ले लिया भाई पीका डिफ कट भाई। डैमेज क्या डैमेज पड़ा है? 11 का ड्रैगनेट ऑलरेडी। इस पे स्कोर शील्ड है क्या? अरे भाई आउटप्ले देना। और फुल टाइम बाय कर रहा है भाई। फुल टाइम बाय कर रहा है पीका डिफ। कैमरामैन फाइट नहीं दिखा रहा सही से। दिखा रहे हैं भाई, दिखा रहे हैं। हर जगह फाइट नहीं दिखा सकता ना भाई। अगर एक साइड फाइट हो रही है, दूसरी साइड हो रही है, तो एक ही जगह दिखाएगा ना। ओके ये गंदा डैमेज पड़ा, पर फिर से ओवरलॉर्ड भी लाइक इधर से मेरा बेस है, चाहे तुम्हारा ही हो। ये क्रेटस भाई ने थोड़ा सा खराब वर्ल्ड। उधर ओजी ने ये तो डैनियल मिल भाई दिख गए यार। ये तो डैनियल भाई दिख गए।
ये तो अपने डैनियल भाई दिखे हैं यार, डैनियल अल्ट मार दिया। ओवरलॉर्ड शील्ड रहा है यार। जी जी, ब्लैक हैंड ने फिर से कर दिया काम। डैनियल मिल दिख गया यार, ये तो वर्ल्ड्स में डैनियल अल्ट दिख गया ये तो। Put them onto Overlord, make them even stronger. It's going to be such a difficult Pokemon to deal with. Right now, Black Hand looking incredible right here. I would say they are फिर से जोन बन गया है। पिकाडू चलो, पिकाडू की पोजीशन रिवील होगी मेरे ख्याल से, बीच ने रिवील कर दी। reference from earlier today, Spraggles. Well done, sir. As Curios gets हवा में हेड सही था भाई। their side of the map to make it just a little bit easier for them to secure. इंस्टेंट रोटेशन भाई, भाव ही नहीं दिया उधर। ओ ओवरलॉर्ड को देखो भाई, अकेला 3 बंदों को संभालने वाला फील आ रही है। नहीं बच निकाला यार, बीच में ओजी पकड़ा जाएगा। नहीं सॉरी, नूडो नॉट ओजी। बच गया। 50 more points in that bottom path goal. IX Gaming is spread all over this map like peanut butter. They have no way to contest. पूरा कंट्रोल है यार उनको, पूरा मतलब ना 60% मैप कंट्रोल अभी ब्लैक हैंड का है। 60 का 70% समझ लो। 15 seconds. IX Gaming right GG है। now. Clearly behind. IX is struggling definitely. Yep. Just waiting in this tall grass. If anyone comes by, they are ready. They're charging up their boosted attacks so they can just stomp on their heads. Boom, boom, boom. ये माचेम गलत टाइम पे नहीं गया। हाँ माचेम सही है यार, ओजी को याद आ गया भाई बीज आनी है, मिस कर दी सारी बीज। ये क्या हो गया? ये इनके ओवरलेस को क्या हो गया? हेलो गाइस, दिख रहा है ये ओवरले खराब? They can secure this even क्या कर दिया without इन्होंने? sending too many Pokemon down. They've got this mean Dragonite. Yeah, when you have that level advantage, you don't have to commit as Graphic many resources teams, to that hello sir. Dreadnought as you might need in other circumstances. UI बंद कर दिया भाई, UI बंद ही कर दिया। Now we're taking a look here. You can see that it looks like Alex is just positioning themselves right around पूरा this चेंज हो गया They say we're not going to deal with this. चलो गाइस आ गया। We want to win a big fight. Nice little catch ये तो by Machamp, but I mean, you're punching a Blissey. It's going to take a अरे long भाई भाई time भाई for भाई that भाई Pokemon भाई to भाई go भाई down the भाई भाई most भाई HP भूल in गए the क्या? हेलो साइबर entire गेमिंग game. स्ट्रीम, ओवरलेस गॉन टू स्लीप भाई। पहला चलो लास्ट ड्रेडनॉट तो इनको ही मिला, ब्लैक हैंड को। यार ये तो हेल्प कर रहे हैं। नूडो ने यूनाइट दे दिया, पर उधर ही बिल्सी का नेट पड़ा है। पिका डिप्स हो गया एंड जीजी। ट्रिपल एक्स पिका डे 1 HP। नूडो डेड। माचम कल्ट खुला है, ओजी कल्ट खुला है। ओजी अल्ट मार पाएगा गाइस? ओजी कल्ट कहाँ खुला? यूज्ड है यार, ओजी कल्ट तो यूज्ड है। ओजी में डैनियल कार्ड नॉट भाई। यार सारे यूनिट्स यूज हो गए। चलो गाइस फाइनली ओवरले इज बैक। ग्राफिक टीम को याद आ गया कौन सा ओवरले कहाँ पे है। कोई ना यार, होता है भाई, होता है। ब्लिस्सी और सरीना का यूनिट अभी तक, ओवरलॉर्ड का यूनिट अभी तक है और उनके ब्लिस्सी का यूनिट अभी तक है। ओ भाई वापस आते ही ब्लिस्सी वाले को यूनिट खोल दिया। ट्रेवन एंड डेड है यार, पर ना माचम नहीं सस्टेन कर पाएगा। जी 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 जी, ब्लैक हैंड फर्स्ट में जीत गई। ब्लैक हैंड जीत गई भाई, लेट्स गो यार। अभी करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड गाइस। ये हमारा पीछे चल रहा थोड़ा स्ट्रीम, मेरे को लग रहा है। ब्ला 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 के लिए रेडी हो जाओ गाइस। 79 गोल्स भाई, क्या ही बोले। कितना पीछे थे स्ट्रीम में? हेलो कितना पीछे थे स्ट्रीम में? कुछ ज्यादा ही पीछे थे गाइस, स्ट्रीम पे ज्यादा ही पीछे थे गाइस। जल्दी जल्दी 500 लाइक्स कर दो यार अपनी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम। चलो गए नॉर्मल पे आगे फाइनली। काफी पीछे थे। वाह क्या सीन है। काफी पीछे थे यार। विक्ट्री भाई, विक्ट्री। ब्लैक हैंड IX 1-0 स्कोर है अभी, सॉरी। IX के फैंस के लिए बुरा लग रहा है।
आपका साबुन स्लो तो है। ओ भाई ओवरलॉर्ड का डैमेज भाई, पर नूडो का भी गलत पिक हो गया। damage from Overlord, क्या ही बोले, 36,000 पिकाचू ने बॉटिंग किया है। Like you said, that's not only because of Overlord, it's all the support, it's all the stuns, इसलिए मम्मी कहती है दूध पिया करो ब्रेन डिफ आदमी भाई, ये कर लो। मैं तो एलन का फैन हूँ ब्रो, कोई ना यार। एल लाइन, अच्छा एल लाइन, अरे एस फिक्टा ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम। मेरे को सेम में प्रोनाउंस नहीं होता है, मेरे से बोलिए भी मैं जिप फाइल। वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस, मेक श्योर टू चेक आउट आवर फ्रेंड्स चैनल यार, अपने काफी ओल्ड फ्रेंड हैं एसफिक्शिया जी, मैं सही में प्रोनाउंस नहीं कर सकता। अपने ओल्ड फ्रेंड काफी क्लैश ऑफ टाइटंस खेलते हैं। नूडो स्टॉप लेता तो बताता तुमको। नहीं जिन्नू भाई टेंशन ना लो, मुझे लूका देखना है, सबको लूका देखना है, पर कोई ना। नूडो ने गलती से ट्रिपल एस, कोई ना यार। अब सेकंड टर्न पे सही बोला, ठीक है यार। एसफिक्शिया क्या यार, कोई और नाम नहीं मिला। I agree. Here we go. This Dreadnought went to the side of Black King. Great team fight. OG tried their best. Their whole team was wiped. And after जहर कर दिया ब्लैक हैंड ने तो यार। Here we go. Zapdos was easy work, but the entire enemy team down. ये नूडो का डैमेज मेहताब जैसा क्यों लग रहा है? आर्टिस्ट भाई ये कर लो यार। पर यार जो भी बोलो, ओजी भाई ने डायनामिक की आत्मा आ गई ओजी भाई में। I would say Blackhand ahead the entire time. IX is going to need to figure out what went wrong there because लाइफ में 7 से 8 बस यूटी डाउनलोड किया है, लेकिन कभी भी समझ नहीं आया क्यों, क्या मैं मेलन हूँ। टेंशन ना लो। ओवरलॉर्ड भाई एमवीपी अगेन बॉयज। इटर्निटी वैसे नोशम जीत गए दोस्त, नोशम जीत गए भाई। चलो गाइस 350 लाइक्स जल्दी कर दो यार, कम ऑन कम ऑन। 16 subs to 5.6k, let's go। ओवरलॉर्ड भी लाइक भाई थक गया यार, आंखें थक गई ब्रो, ओवरलॉर्ड को ज्यादा ओपी है। यप He's really saying like I was like लगता है 3k नूडो भाई ने जिराफ भाई से इंस्पिरेशन। अरे भाई फाइनल्स में बैन सिस्टम रहेगा, पता नहीं है भाई, अभी तक तो कोई बैन सिस्टम नहीं करा मेरे को। ओवरलॉर्ड कुछ भी चला देता है भाई। ये फाइनल है नहीं केओस भाई, दिस इज सेमीफाइनल्स। अब विनर ब्रैकेट का सेमीफाइनल्स है ये। पोजीशन की टीम क्वालीफाई हुई थी, उसमें एक 14 साल का बच्चा था, इसलिए डिस्क्वालीफाई। अरे भाई चलो गाइस सेकंड मैच। और ठीक है अपना। अगेन गाइस ओजी भाई लुकारियो पे आ गए हैं। ओवरलॉर्ड भाई ने बोला है मेरे को मनी उनका कुछ नहीं करना है, मेरे को टीम जितवानी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं सीरियस होने की। कौन सी मैं? चलो भाई एओस को अटैक विद फोकस, ट्रेवनेट तो मरने नहीं वाला। डबल एक्सपी शेयर अगेन दोनों साइड से। यप दोनों साइड से डबल एक्सपी शेयर है। नो फोकस ब्लिसी चलता है, स्कोर शील्ड है ना। यही चल रहा है आजकल। डोंट माइंड किस चीज का दोस्त, किस चीज का माइंड नहीं करना है। क्या लिख दिया आपने फ्रेंक्स भाई? मेरे को तो चैट भी नहीं दिख रहा आपका, क्या चीज माइंड नहीं करनी। ब्लैक हैंड चांस है भाई, ब्लैक हैंड का चांस है। अटैक इज ऑन पर नहीं देखें सिर्फ कल से। चलो भाई देखें भाई, कितना क्लोज कैमरा शॉट है। अंकल बुढ़े लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है अंकल जी हैं। एओस कुकी ब्लैक कलर का चैप्टर पढ़ा यस दोस्त, पर इधर स्पॉयलर्स मत देना किसी को। ब्लैक हैंड बस 62 फाइनल्स देखते हैं। आरएनएस इज नॉट एन इजी टीम ईदर। ई स्पीड में सोलर मेरे से इंस्पायर्ड हो गया भाई। चलो गाइस ब्लैक हैंड वर्सेस आईएक्स, सेकंड मैच ऑफ द डे, सेमीफाइनल्स नॉट द डे। क्या नो फर्स्ट रेड में पता चलेगा भाई, जिसको फर्स्ट रेड नहीं मिला वो टूर्नामेंट जीता। ओजी भाई तो जिराफ भाई बन के बैठे हैं। Excuse me, Blackhand sent more bottom than IX did. Yeah, Blackhand sticking with their 3v2 चल रहा है, ऊपर 113 यप 113 कर रहे हैं। And of course, how good can Blackhand hold it down up top? डिपेंड करता है कि ट्रेवनेंट कितना करेगा टैंक। दोनों साइड पे ट्रेवनेंट नहीं, दोनों सॉरी सरीना कितना टैंक करेगा। अरे आपने मना करा था, क्यों दूंगा भाई। भाई चुल मचती है सबको। They're innovating a little ब्रेक bit में here. मौका नहीं देती है, देखते हैं। बनाना पड़ता है मौका भाई, देने आते क्या है। Overlord, most
prolifically stack here. मत करने As देना Nudo's free का trying to यार. get their points in, but 21 is a lot to try and get in the face of 4. Here we go. 20 तो इनको मिल गए भाई. अब चढ़ रहे हैं भाई. एक्सपीड मार के आ रहा है भाई लोंडा. चढ़ने वाले हैं ये तो. ड्रैगनेट का हो गया, उसका हो गया, ट्रैप का भी हो जाएगा. यप बस ऊपर ने भी किया शायद अगर ये फ्री का स्टॉर्म क्यों खाया ओवरलॉर्ड ने? ये तो ओ भाई बेरी दूसरी आई यार. Action for them, of course. Getting that KO is huge. ओजी भाई इन्वाइट कर गया भाई. अरे हक दिया. For a little bit of some dancing, some do-si-doing happening here in the central area of Blackhand as OG just moving in trying to steal some of that wild Pokemon experience. Yeah, oh nice. Curio's trying to catch him out, and between the two, they get the KO. Oh bye. Go core fish going down to the speed वाली बेरी आ गई भाई. इधर अलग बीटी चल रहा है. I mean, it's hard to score 30 points, Dupes next. It's really hard. It takes a long time, much longer than having 4. Overlord able to stack up. Nudo. अरे shit. गया. अब गया. Here comes Slash for the support on Overlord. They don't want ओ Overlord to go down भाई right now. कर लिया भाई. बचा लिया. Slash ने बचा लिया भाई. Back off for just a moment as they're looking for an engage to try and take that APA जी from under him. भाई हक दी लीड. हक दी लीड. Oh no! I mean, what an unfortunate play there for IX Gaming. They thought they were close, but as soon as Slash came up to support, I think that moment was gone. You weren't going to get that KO on Overlord. पूरे stacking जी. Now Overlord gets the stack. ओजी भाई ग्रेडेंट नहीं बनते भाई. Curious got that curse going. यार. Find his mark. Overcommit यार. मेरे से इंस्पिरेशन ले ली भाई. They're trying to find their mark. Curious wants to get into that action too. लूका किल में तो 7 हो गया जी. They come through, try to get the B. Pikachu stomps them up. Blackhand though, looking for that re-engage. His jungle उधर रोटेशन है. नूडो टॉप ही रहेगा. नूडो गोल करेगा. And they're trying to follow them as OG's back into the action. Retsu supporting them, but as OG's यहाँ पर ओजी भाई गए लगता है. यप ओजी गया. ड्रैगनेट आउट होने वाला है. पर एक फार्म चाहिए एवोल्यूशन के लिए. एवोल्यूशन स्टक है. एक फार्म है किल. चलो ड्रैगनेट सांप छिपकली बन गया गाइस. पेडीएस मिस करवाता है. वही ना. ये स्ट्रीम क्यों लैग कर रही है बीटी? चलो गाइस मिला तो सही. ब्लैक हैंड को मिला तो. यार ये स्ट्रीम क्यों लैग कर रहा है इतना गंदा? हेलो व्हाट द फक. ये बीटी है यार. ये बहुत गलत है यार इनका. रुको गाइस रिफ्रेश कर लें. एक बार रिफ्रेश करें. मुझे बीटी है. Like Baby Driver just trying to get out of there. Serena KO stricken 2 for Overlord. They're trying to get it done. JB's playing in the face as hard as they can. Overlord's coming in. Bliss is इनका स्ट्रीम लैग कर गया बे पूरा. पता नहीं. It looks like it does. पिकाडिप तो ट्राई कर रहा है. JB hanging out, but now they're forced to. ब्लैक हेड को रेड ना मिला. टेंशन ना लो. Is it just a retreat? आज पहली बार रेड की चीज स्ट्रॉन्ग में दिख रही भाई. स्पेक्टेट में हो रहा है ऐसा क्या? Does Arena Unite buying enough time? You know they're working in tandem. They said you come back, use your Unite, come back around. I'm using my Unite, you burn them down, and they got it. ओवरलॉर्ड का गोल नहीं होने दे रहा. गुस्सा हो गया ओवरलॉर्ड. भाई ड्रैगनेट को छोड़ दिया यार. ड्रैगनेट को बेचारे को अकेले छोड़ दिया. अल्ट मार दे यार. ट्विच वाली स्ट्रीम चला देना अगर ज्यादा हो. ट्विच पे पता नहीं यार. मैं कभी देखा नहीं ट्विच. बहुत कम देखता हूं. ओवरलॉर्ड ने रैक कर दिया स्ट्रीम. बिल्कुल. ब्रिसी मरेगी शायद. रेस्ट नहीं मरा. चलो बच गए. IX ने लीड ले लिया वापस. बट लेवल लीड एक्चुअली इक्वल है. लेवल भी इक्वल ही है दोनों के. पर ब्लैक हैंड के डिफिकल्ट नहीं है अभी. IX का है तो वो पुश में यूज कर सकते हैं. ये 40 हो जाएगा क्या? अच्छा ये तो अपने गोल. मैं क्या बोल रहा हूँ यार. बुरा लगा जंगल बुक के लिए. कोई ना यार. कोई ना. चलो गोल पॉइंट उठा. इनका फार्म आएगा बीटी. कैरियोस तो सही कर रहा है पर ओ भाई नूडो भी लाइक माफ कर दो सर. भाई लोंडा टेंशन नहीं है भाई. अरे एंटी भाई क्या ही रिकॉल है यार. Absolutely. Overlord looking to keep leveling up and get over the top of the whole rest of the team, and so far they've been successful. Jungle Book as well, level 10. Overlord hitting level 11. ओजी का लुका भाई काउंटेड है यार. काउंटेड है वो.
एपीजे ये तो एपीजे वैसे पूछो यार जेनिस भाई भाई ड्रेडनो किसको मिला चलो आईएक्स ड्रेड ले गई भाई फिर से ले आया केरियोस यार बच गए ये वाली ट्रेवलेंट स्किल ले लो चेकबुक दे I thought Blackhand might be running back there to re-engage. I mean, everybody came home, but they decided, no, we're going to run to the top path here. We don't want this level Rotom भी walking actually towards Blackhand our आ गया tier 2 goal. हल्की सी Despite the level lead that Blackhand Sarina has, Yordle IX hit कर Gaming is चुका है ahead on the scoreboard, having broken 2 goal zones. Blackhand haven't scuffed one off the map at all. Here we go. It looks like, oh, we got a pumpkin. Sending him home. Pika Diff and कद्दू देख लो Kratos guys getting ready to take this Rotom possibly. Just pushing it back their way. Making it sure it's just a little harder for Blackhand to get to. ये तो पूरा इग्नोर कर दिया इन्होंने Absolutely. Blackhand are going to try and pick this Rotom up on their side of the map where they देखते can हैं do so अब safely. क्या सीन है नीचे थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर बना रहे हैं ये टपक ना जाए नीचे और हुपा है पर्सनल भी और दूसरी भी कैंसिल करा सकते हैं मेरे को तो पता नहीं जानिस भाई मेरे को तो मेरे फ़ॉन्ट का नाम नहीं पता है जो मेरा एडिटर यूज करता है थंबनेल वाला माइक्स तो क्राउड्स का देख सकते सुन सकते हो गाइस क्राउड कितना चिल्ला रहे हैं भाई फुल सपोर्ट भाई ओवरलॉर्ड को तो फंसा दिया यार भाई ओवरलॉर्ड ने बोला मार मेरे को इधर आजा 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 पकड़ता आरएनएस 1-0 अगेंस्ट वेट उधर का सेमीफाइनल ऑफलाइन करवा रहे हैं ये व्हाट द हेल यार ये ऑफलाइन नहीं होना चाहिए Let me tell you, this level advantage, when Serena has a level advantage, woo, it's scary. 14, dude. Level 14. Level 14 भाई Overlord level 14 है एक ही ड्रेड नाउ मिलने के बाद ये लगा इस ओजी का लुका थोड़ा देख लो ओ भाई what the fuck what the hell भाई जंगल बुक भाई भाई उसका स्टैक भी नहीं था पूरा हाइपर बीम यार उसका पूरा हाइपर बीम स्टैक भी नहीं था भाई आईएक्स वाला कुछ ओवरलॉर्ड पे ब्लिसी कार्ड अरे ब्लिसी कार्ड कैंसिल हुआ शायद जी जी ये थोड़ी टाइमिंग खराब हुई है ब्लिसी कार्ड कैंसिल हुआ है पर रिस्टोर नहीं हुआ शायद रिस्टोर नहीं हुआ ब्लिसी कार्ड ये रीसेट चाहिए ओ भाई स्नोलेक्स पिकाडी हवा में मर गया भाई जी भाई उधर पिकाडिफ का अगर स्लैम लगता दो बंदे मरते दो बंदे मरते अगर पिकाडिफ का स्लैम लगता उधर वो स्लैम में ही मर गया हवा में एंड उधर ब्लिसी कार्ड पूरा कैंसिल रीसेट भी नहीं हुआ भाई बिना ब्लिसी कार्ड के जीते हैं ब्लैक हैंड वाले चलो गाइस क्या ही बोले So Spraggles, this is the World Championships. You don't give up till that timer GG's, runs yaar. down to 0. Absolutely not. And so IX Gaming is on to the losers bracket now, guys. Black Hand पहुंच चुकी है. Winners finals. Also make sure that there's Let's nothing go, यार. on this side of the map for IX Gaming. आ गए भाई. They can't charge their IX का loser होगा अब. Got one for Serena, one for Dragonite, but you've got 3 on the side of Black Hand. They're coming in, and that's a Trevenant Unite move. Going to try and kick this. भाई क्या कूदे हैं 5 लोग. भाई क्या कूदे हैं. To score, but they are caught out and snuffed out as Nudo's double stomping their way through Elo, and they do get the KO. That's one down. That's a good start. Nudo trying to engage back on Book. Oh, bye, Book's bye, caught out, bye, and they're bye, pushed bye. out, but there's only 18 seconds left. And they यार have नहीं to हिटमैन destroy देवी it. भाई KO के straight to अरमानों पे Book पानी because, फेर of दिया course, गया. they're working through absolute mutant. ओवरलॉर्ड भाई. And Blackhand has made the stand. There we go. Blackhand wipes. छोड़ भाई बिना ब्लिसियर्ड के जीते हैं सोच लो यार बिना ब्लिसियर्ड के जीते हैं ब्लैक हैंड. But they have lost this series. They're heading down to इतनी better team fight गई उनकी. There you go. Blackhand moving forward. Well played यार. Moving forward and again in a convincing भाई बोला ना fashion. मौका No नहीं देते hands वो out here वही are ना easy, यार. but when you're playing like they ओजी are थ्रो as a कर रहे हैं team नहीं as भाई they काउंटेड है are, यार making तुम एक it चीज look देख that लो way. उन पे ट्रेवेनेंट है Absolutely right.
वो काट सकता है वो भाई ई स्पीड का। ब्लिसी का एक बम है, कुछ भी हो सकता है फाइट में भाई। ये तो है नहीं ना भाई सोलो कैरी, यू कांट एक्सपेक्ट सोलो कैरी बिटवीन टॉप टीम्स यार, अनलेस कुछ नेक्स्ट लेवल गॉड हो कोई। कुछ नहीं कर सकता कोई भाई। बेस्ट दिया दोनों टीम्स ने। भाई भाई वेल प्लेड, ब्लैक हैंड फॉर द विन, नाइस गेम यार, वेल प्लेड बोथ टीम्स। कौन ही थ्रो किया भाई, ये कर लो भाई एंटेटमेंट। बाय डैमेज, बाय डैमेज, ओवरलॉर्ड का भी ओजी का भी डैमेज है। नूडू को भी पूरा काउंटर कर दिया इन्होंने, नूडू ने थोड़ा ओवर कमिट भी कर दिया। ट्रैव इरिटेट तो करता है यार। जी भाई, एंड टाइम में भी तो नूडू है। सही है यार। माइट बाय स्ट्रीम पीछे है, एक सेकंड रुको। 19 again, yep. Yep, RNS का ऑफलाइन हो रहा है। इधर से रखते हैं गाइस, अगर पूरा आगे चल रहे तो थोड़ा का लैग होता है स्ट्रीम। नेक्स्ट लेवल गॉड भाई, नेक्स्ट लेवल गॉड एम क्यू वापस आना पड़ेगा, मेरे को वापस आना पड़ेगा। आ जाओ बीस्टेड भाई, आ जाओ यार, आ जाओ। ये देखो गाइस, यूनाइट कैंसिल हुआ ब्लिसी का वहां पे। ओवरलॉर्ड वर्सेस माइट, ओवरलॉर्ड यार, मैं कौन हूं भाई। इधर ऑलमोस्ट इसका गोल कैंसिल हो गया था, पर नूडू ऐसे ही खेलता है, अटैकिंग घुस के एप्सल वाली हैबिट कोई ना। आरएनटी खेल रही क्या? नहीं, टीडीएक्स टीम ब्रो, आरएनटी लॉस्ट यस्टरडे इन ग्रुप स्टेजेस। आ जाओ, और कितना बोलूं वापस आने का अब्दुल भाई भी लाइक। No, not for Overlord, but again, the story of the game is Overlord on the stat line, but that is only made possible through Elo and Slash, and we saw it in spades there. Next level god मैं हूँ ना, मेरे को सब आता है, सही है भाई। अरे भाई कास्टर आ गए गाइस, ऑलमोस्ट दोनों सेम लगते हैं यार, डूब स्नैक्स और स्प्रेगल्स। North America looking great in this tournament still. Yeah, I mean IX going to be dropping to the losers bracket, but a little bit further ahead than their Overlord को लंच करा के सुला दो। Blackhand, they're running a heater right now, and बेस्ट लुक ऑफ आपजी ने, अरे नहीं भाई, they don't want to lose this momentum at all. Unfortunately, they might get put on ice. देखते हैं। That's what happens when you win a whole bunch. Overlord की ब्लड सेंटर जंगल के स्कोरिंग्स, अरे भाई। We have losers brackets games coming up. We have a lot of important games that are going to be happening. ओ भाई, एक स्प्रेगल्स और दूसरा लोलन स्प्रेगल। स्प्रेगल्स और लोलन स्प्रेगल्स, ये सही था यार, ये सही था। I'm finding out right now. Yep, I'm going to अद्वैत भाई बिल्कुल आपको ना यार। There is one caster gone, which means they're down on the stage. If they are ready to go. क्या मतलब टीम को हराने में गॉड बिल्कुल भाई। Yes they are. Here we go. Throw it down. Throw it down. Throw it down. इंटरव्यू आ गया गाइस। मेरे को एक कास्टर का नाम नहीं पता। Awesome. Thank you for that throw, everybody. Congratulations. ये कर लो वोल्क ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम बड़ी। On making it to the winners. उन लोग का ओवरलॉर्ड है, हम लोग का OPAllMight। We are not same bro। ठीक है यार। And I know IX is such an incredible team. Ian का ट्रेवनेंट गाइस, ब्लैक हैंड का। So getting that win over them, and I think in a commanding fashion and knowing exactly what we want to do. तुम्हारे स्क्वाड को स्ट्रांग बनाओ और लीग के लिए चले जाओ। ठीक है यार। Confidence makes sense. गोल भाई, लेवल 13 नो नो। In this tournament so far, you're cruising right फिलहाल now. मामे वर्सेस ओवरलॉर्ड देखने में जाएगा। यप 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 यप। You have not played. Can we reach 350 likes boys यार? Come on, स्ट्रीम को शेयर कर दो यार। What was the mindset वॉच पार्टी के साथ playing this Pokemon मस्ती करते हैं, and still 16 subs to 5.6k यार। Just in general, we've had a history. थोड़ा सा है ना, फुर्ती बढ़ाओ यार, बटन गेमिंग करो। माचम सरीना में क्या सही पिक है अभी? सरीना माचम भी चलता है, बट लिमिटेड यूज है। इन द एंड यूनाइट कितना अच्छा मार सकते हो, नेक्स्ट ईयर तो लुकारे नर्फ करके आउट ऑफ गेम कर देंगे, वही कुछ भी आ सकता है। ऐसा क्या गोल भाई, लेवल 10 काफी अवॉइड में, लेट्स गो यार। Your synergy looked flawless out there. I mean, a 2-0 victory looks amazing. Like I said, you were undefeated in this tournament so far, heading into the बेस्ट लुक का तो मैं हूँ यार, हरी स्पीड मिस। सरीना नर्फ के बाद अब ट्रेनेटर आने वाला है। आज से सरीना खेलेंगे भाई, ऊपर भाई। ठीक है डॉक्सी भाई, ड्राफ्ट पिक देखते हैं, ये कॉन्फ्रेंस मुझे भी चाहिए भाई। नूबड़ा सरीना, उनके पास तो अच्छा अटैकर भी, बाकी आपके जस क्या है। Good luck, Kyrios, in the rest of your games here. I will throw it back up to the desk.
Well, अभी we कॉम्पिटिटिव में appreciate the टाइम much टेस्टिंग cleaner बचा है शिट transition that मैन we sent down to you. जिससे Mainly टर्निटर that was ओपी mainly कॉम्बो my fault. I'm not gonna lie. That was scuffed. Okay, here we go. But we have an update. Spraggles, run us through it. Yeah, so we were just hearing about Update T2. है However, Renaissance faced off against T2 and they just won 2-0. Bye, So GG. They might not be running into him anytime soon. Yeah, जी I जी don't think Blackhand plans on रेनेसांस ने टीटू को हरा दिया गाइस न्यूज़ आ गई है for the next little bit. And of course, कांग्रेचुलेशन दर्शील भाई जीजी गाइस रेनेसांस ने टीटू को हरा दिया 2-0 कर दिया है जीजी वेल प्लेड लूजर ब्रैकेट भी अब ना एकदम जहर होने वाला है यार T2 लूजर ब्रैकेट में है IX लूजर ब्रैकेट में है पीछे से नाउंस ये लो लूजर ब्रैकेट गाइस T2 वर्सेस नो शो IX वर्सेस नाउंस जीजी भाई लूजर ब्रैकेट भी जहर है जी जी नो शो भी जीत सकती है यार T2 वर्सेस नो शो फिर से देखने मिलेगा आइकलन नहीं सोचा था इतनी जल्दी मिनटों की पर ग्रैंड फाइनल्स अब आरएनएस रेनेसांस वर्सेस ब्लैकहैंड होगा विनर फाइनल सॉरी विनर ग्रैंड फाइनल नहीं रैंडम में टेंशन ना लो आई क्लैन क्लियरली बीट नाउंस बाय द वे यप जीजी मतलब गुड गेम चलो गाइस 4 मिनट का ब्रेक आया है एनए फाइनल्स अरे बट अब इधर तो बड़े हो गए आगे ना लाइक डिफरेंस हो गया इधर ऑलरेडी गुड यार ये लोग सेमीज ऑफ नहीं क्यों करवा रहे हैं वही ना यार आई थिंक शेड्यूल थोड़ा मेस्ड अप है इनका क्योंकि बिकॉज़ इन द एंड कितनी गेम्स चल रही हैं एक साथ तो इनको लाइक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे होंगे डेफिनेटली बीटी में तो खराब चीज होगी समझ लो सिरदर्द वाली चीज नवंबर में आएगा भाई नो जी जी मतलब गेमिंग रेडिएटर ये कर लो मेहता भैया क्या सच में लुका को नर्फ करके आउट ऑफ गेम करेंगे यार डिपेंड करता है यार अब कितने टाइम तक एक चीज मेटा में रख सकते हो परमानेंट चीज तो कोई मेटा में नहीं रहती ना एक टाइम तो आता है मेटा में जाने का अरे रैंडम भाई थोड़ी इज्जत से भाई बड़े लोग हैं यार आईएक्स का आइजल जंगलर को बैन कर दिया बहुत सैड हुआ भाई वो तो यू नो sportsmanship in the end is an important part of community, right? Really good at Lucario playing top lane and 1v1 other top laners. Pika बाल का क्या हुआ तेरे जैसे रखे हैं? He's mostly known for his Absol attacker and Serena as well. Also चलो भाई to all of our भाई पिका डिफ भाई तो भाई पूरा मतलब यू नो फैशन वैशन करके आए हैं 2.5 मिनट में वापस आते हैं गाइस यार लूका बफ होना चाहिए अभी तो अच्छे से सीखा है भाई ठीक है यार ऊपर का हाइपर स्पेस तो 20 सेकंड का कूलडाउन देते तो अच्छा ठीक है यार नारुतो में जो रामेन सर्व करता है ठीक है यार वो लड़ क्या ही गोटी दे रही है यप पिका डिफ भाई ये सामुराई वाला स्टाइल रखे हुए हैं यार जंगलर रिटर्न नेक्स्ट टाइम ऐसे आ रहे देखते हैं भाई is mainly just playing against all the teams we haven't had the opportunity to mainly an even playing in the European region we create our own meta that came to other regions like NA we started playing for example in the EOS Cup 1 comp North American region saw it ये तो पुराने इंटरव्यू है North American region with our ये नया नहीं है ना मेरे ख्याल से ये पुराने इंटरव्यू है कल वाले इंटरव्यू दिखा रहे हैं developers What we also do as a team is we adapt to the things. ये जॉनी भैया कहाँ से आ गए ना उसमें? ब्रो क्या हैंडसम दिखता है? I think unique from other teams. To be the first ever champion to lift the trophy. ये रेडमो है ओके भाई ये रेडमो है. Hello positive stream. I heard Rain Nice का जंगल said some. Yep he's like you know like वो थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़े like aggressive statements हो गए थे तो you know पोकेमॉन कंपनी थोड़ी सेंसिटिव लेती है ये इश्यूज को तो उन्होंने कर दिया ब्रो लेफ्ट से सेकंड वाला है यप 1 मिनट टू गो गाइस आई हैड हिंदी को ट्रेस्ट तो क्या पता नहीं वोल्ट मैंने ज़्यादा देखा नहीं मेरे को पता ही नहीं रिनेश यानी पता नहीं दोस्त मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं रखता प्लेयर्स का T2 से नो शो लाइव होगा होपफुली ये शेड्यूल कुछ नहीं कह सकते यार अभी IX वर्सेस नाउन है लूजर राउंड 2 देन T2 वर्सेस नो शो देन देयर इज विनर्स फाइनल्स फिर लूजर फाइनल होगा भाई ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया इस गेम क्या बोलते हो यार
आजा दिल्ली ब्रो, ध्यान से बोल भाई, गोल कलेक्शन ठीक नहीं है। येटलू का आवाज जॉड ऐसा क्या? वैसे 4 फेमस क्यों डिसबैंड हुई थी पता है आपको? कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा होगा और क्या है भाई, लाइक दे डिडंट परफॉर्म वेल इन देयर ओन रीजन। एफएफ में लड़ाई हुई थी आपस में बहुत, तो अलग हो गए आई थिंक, यस। क्या ही कर सकते हैं भाई। चलो गाइस, 14 लाइक्स टू 350 यार। Welcome back everybody to an 15 subs to 35.6k. बटन दबाओ यार, बटन दबाओ, बटन दबाओ। Championships here in London. Our next एफएफ की शायद स्ट्रीम पे लड़ाई हो गई थी एक बार। for a rematch from the group जी फुल stage. टॉप कर लिया, यप। बट क्या कर सकते हैं यार, फेक गोल रियल गोल है, यस। डेव के सबने छोड़ दिया तो ये भी पॉसिबल है यार, अब नहीं शूट किया होगा। आई एम बैक, वेलकम बैक। दो एक्चुअली उनका कॉन्ट्रैक्ट बस चैंपियनशिप तक था। वर्ल्ड चैंपियन के बहाने सबकी मुंह दिखाई हो गई। नाइस। एफएफ की स्ट्रीम पर डेली लड़ाई होती थी भाई, नो रिलैक्स। चलो गाइस, आईएक्स वर्सेस नाउंस, ये भी जीजी मैचअप है यार। गाटलू भाई क्या करते हैं? एफएफ का 4 घंटे का आ रहा था वो भाई, सेंसिटिव को बहुत बंदे देखते हैं पहले, अब्यूज पता नहीं अब यार, डिफरेंसेस हो गए टीम में जिससे डिस्पेंड। आई मीन क्या बोल सकते हैं भाई, एक पर्सन का एटीट्यूड है, नो कमेंट्स ऑन दैट। ये भी मैच जीजी है भाई। More win to the roster here today in the World Championships. देखते हैं भाई। भाई होल्डर देखो इनके स्विच के, पिकाचू वगैरह ईवी लगा रखे हैं। कौन जीतेगा टूर्नामेंट? हम। क्या वर्ल्ड, क्या वोल्क भाई, कैसा कम्युनिटी पोस्ट देख लिया मेरा? मैंने कब मसाले वाला कम्युनिटी पोस्ट डाला है? एनए वर्सेस एएमए फाइनल जैसा है क्या? इधर ईयू है, एएमए तो नहीं होता मेरे ख्याल से। इनको कपड़ा क्यों नहीं मिला? वो तो यार टीम पे ये मेरे को क्या पता यार। जिराफ भैया लॉर्ड है, ओवरलॉर्ड के सही है यार। ऐसा क्या दी भाई? नूडो एब्सोल्यूट से मैं उससे कमिंग सून 2x करूं क्या फिर से को यार? So far this week and stomping around the battlefield. Yes, exactly. They are exceptional at that. And right there you saw the last player, Kratos, has locked in the Dragon Knight for चलो guys, इधर double XP share again on IX Gaming and इधर XP share, single XP share है and Mr. Mime is back boys. जरा 2x करें। Kratos से secure नहीं हो रहा कोई ना। But Mr. Mime may be where they have really Mr. Mime भाई, Mr. Yes Wolf bro, they played Mr. Mime last match and won. In the early era of Pokemon Unite, और मैं T2 की टीम का क्या हुआ? They lost and they are in losers bracket right now. RNS won semi-finals. Even as the months went on, as more and more people dropped away from the Mr. Mime, Bruv kept up with it and still found amazing value. You know, if I recall, Bruv भाई Epiphany Rose, yep, he literally won using Mime though last match. Pre-game ritual was asking his team if he could play something that wasn't. Yep, they lost through our Renaissance by 0-2. They have granted his request. Well, when on the world stage, you will give Bruv whatever Game they focus करो need guys, चलो. if you feel like it can help you win a championship right now. Like I said, we are in a win or go. भाई crowd देखो यार. North America ओ भाई. versus EU. We are getting a quick lobby reset. The players. बाप रे भाई, support तो है यार, support तो है. We are just getting that set up. It will be together in just a matter of minutes. Support तो है guys. Are playing one of the highest stakes matches of Pokemon Unite that has ever taken place. Our tournament has a $500,000 prize pool, and we are in full the support भाई. elimination bracket on the second day here. Full in this lower support. part of the bracket. Next World Overall versus Might Finals. ठीक है बोल क्या? ठीक है भाई, बिल्कुल शाउट आउट दे देना भाई, ठीक है यार, मैं तो क्राउड देख के भाग जाऊं भाई।
अरे फ्रेंड लिस्ट देख लो गाइस, फ्रेंड लिस्ट देख लो बंदे की। These players need to prove it to us, everyone watching, and more importantly, they need to prove it to themselves that they are capable of winning a championship. IX Gaming hasn't won an entire tournament just yet, but you know what they have won? They've won लॉबी कोड। चलो गाइस एटलीस्ट 5 एडमिन बैठे हैं, वरना लॉबी कोड से बैठ जाते लोंडे। And they are looking to do it again today. That's when I was mentioning लॉबी कोड दिखा दिया भाई। नहीं एडमिन्स फुल है तो लॉबी एड ही नहीं है। मुझे ऑलमाइट दिखा फ्रेंड लिस्ट में, ठीक है यार, मैं ऑनलाइन भी नहीं हूँ। मैं ऑनलाइन भी नहीं हूँ यार। कम ऑन चिल, लॉबी कोड भाई। जहर भाई जहर। मैं कल घुसा था T2 वाले मैच में, लॉबी आईडी लीक हुई थी। ठीक है शिरीष भाई, स्टार्ट भी कर देते मैच। अच्छा फिर वो ब्लॉक लिस्ट होगी, बिल्कुल बिल्कुल। अबे हैं? हैं? ओ हेलो, फिर से चलो गाइस, फिर से डबल एक्सपीशियर और IX गेमिंग से ड्रैगनेट सरीना माचैंप लेके आ रहे हैं। उधर सरीना माइम सिल्वियन ट्रेवेनेंट, उधर सिंगल एक्सपीशियर है। बता भाई RNT का कैसा लगा परफॉर्मेंस? डिसेंट था यार, एक्सपोजर मिला फाइनली। हिंदी स्ट्रीम क्लैशिंग भाई यार डिलेड है यार, चैट में आके लोग स्पॉइल कर देते हैं फिर। कल लॉबी कोड दिखा था, शिट मैन भाई माचैंप, मे बी दे आर ट्राइंग टू काउंटर समथिंग। काउंटर कर सकता है, मैं तो देख लेता। हिंदी स्ट्रीम में देखने का प्लान था क्लैशिंग भाई, पर वो डिले चल रही है यार। भाई 20 चैट भाई गुस्सा हो गए, मैं तो मस्ती कर रहा था भाई। जिराफ जैसा माइम, शिट मैन। इतना भी रोशन दर्शील भाई, ये वाला लूजर वाला है ना वापस। यप यप, दिस इज लूजर सेमीफाइनल समझ लो, लूजर का सेमीफाइनल समझ लो। नाउन्स वर्सेस IX। गेम के साथ माइंड भी रिफ्रेश कर लिया क्या? शिट मैन, इंडो काश एक बार मिल जाए। क्या हो गया अंश भाई, जो ये गेम जीता वो T2 के अगेंस्ट जाएगा ना? पता नहीं यार, पता नहीं, मेरे को नहीं पता। नहीं नहीं, T2 का मैच तो उनके अगेंस्ट है। क्या नाम है यार? नो शो। T2 वर्सेस नो शो हो रहा है अभी। ये लूजर सेमीफाइनल समझ लो, T2 वर्सेस नो शो भी है। तो उसके ये दोनों भी लूजर्स से, ये दोनों जीता तो लूजर फाइनल्स में जाएंगे। मैं जाओ कास्टिंग कर जाओ इल्फा भाई, जाओ जाओ जाओ, शाउट आउट दे देना। ये कितने दिन चलेगा? आज खत्म दोस्त, आज खत्म। आरादी ब्रो, ओमन की टीम लॉस्ट यस्टरडे, RNT लॉस्ट यस्टरडे दोस्त इन द ग्रुप स्टेजेस। आज टॉप 8 है। Big knockout here from Nudo, getting the KO, some AO synergy. भाई नूडो को कुछ होने वाला है, गलत मरेगा मरेगा। Yep, dead. Confusion there, seeing the power of Mr. Mime in the hands of Bruv. Early game especially huge Gatlu farm हो गया। things like the confusion that can actually do even more damage. कल ज्यादा कोई वॉच पावर ही नहीं कर रहा था, स्विच नहीं करना पड़ता। आज आपकी और इंटरव्यू में बार स्विच करना पड़ रहा है। ठीक है यार, ठीक है यार। That is true. I'd love to have that argument. इनकी इंग्लिश फालतू है नहीं भाई, Let's go and let's see. ऐसे किसी को नहीं बोलते भाई। Damage. Their focus band does get procced by Gatlu. They're gonna need to retreat, but thanks to चलो that gluttony दिखता है भाई। passive, they are healed right up to full. We see our teams brawling around here. Sylveon stopping off in the central area after ओजी गया, ओजी जाना चाहिए। ओ बच गया, We see them almost at level 6 here. Can they मर जाएगा। chase down OG? This would be a huge knockout. There we GG go, well up to played. level 6 here for Adesu. I thought Pikachu had done the Farm protection secure हो job and गया। saved them there, but no, the E-speed coming out, or X-speed rather, coming out of Sylveon there closes the gap. कंफर्ट पिक्स खेल रहे हैं भाई, कंफर्ट पिक्स पे क्या ही करें अब, उनका काम चल रहा है कंफर्ट पिक्स से जब तक। नहीं पर रेडमो का कंफर्ट पिक तो लुकारियो है ना, रेडमो का कंफर्ट पिक तो लुकारियो है। नहीं दोस्त, टूर्नामेंट में इंडिया की टीम कोई नहीं है अब दोस्त। बेरोजगारी का असली सर्टिफिकेट मेरे पास, इंजीनियरिंग की डिग्री पढ़ी है। शिट में पहले मेरे को फेस रिवील से पहले जिराफ बहुत पसंद था, फिर अरे नहीं भाई कम डाउन, ऐसे किसी को नहीं करते। ऑलराइट भाई, मैं शुद्ध बेरोजगार हूँ। ठीक है भाई, गिव लाइक्स टू स्ट्रीमर, सब्सक्राइब टू, थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। सेकंड बीस तो चलो गाइस, जीजी वेल प्लेड। लास्ट हिट भी अच्छे हैं, पहली बार 2 ड्रैगनेट नहीं वैसे दिख ही जाते हैं। ड्रैगनेट तो नहीं दिखा दोनों टीम पे इस बार एटलीस्ट। माइम भाई लास्ट, भाई क्या ब्लॉकआउट किया यार माइम ने भाई, उनकी टीम ही ब्लॉकआउट कर दी पूरी।
लास्ट भी ले लिया. Big secure right there from Bruv. Redmo's going to get a nice reset, get fully topped up on HP. भाई जॉब नहीं है मोड का यार अभी. तुम्हारा फेवरेट मोड तू हटने वाला है. तू तो हटने वाला है. मोड का काम नहीं करते आप सर. अब तो खेलने वाला काम करते हो. इसका अल्टी फोर्स होने वाला है मेरे को फील आ रही है. नूडो अंडर फार्म्ड है यार रेडमो से. व्हाट द हेल. नूडो तो यूजुअली फार्म कर लेता है. गोल नहीं करने दिया लगता है. मोड जब भाई स्पॉन्सर्ड बाय वोल्व. क्रेटोस 9 का है. सिल्वन बच गई. नहीं मर गई थी शायद. फेस कैम का. फेस कैम बहुत टाइम है भाई. अरे भाई माइम कार्ड जीजी. अरे मिस कर दिया. पुशेबल है पर. अबे क्या कर रहा है ब्रू भाई. ब्रू. चलो ये टावर तो गया सैक्रिफाइस. सिक्योरिटी में आने से पता है दोस्त. वो पता है दैट आई नो. वो गेम देखना था. ब्लैक एंड खेली सिंडर इज शिट मैन. चैनल का ओनरशिप कब दे रहे हो. ठीक है यार आ जाओ भाई. मार लो. खड़ा हो जाता हूँ. जिराफ भाई क्या दागी करो भाई. कोई ना यार. आप फेस कैम करोगे. अरे नहीं भाई टेंशन ना लो यार. करेंगे किसी दिन. अभी तो नहीं है मेरे पास. कल आने ये पता है दोस्त तेरे को भाई. देखा था कल माइट माइम का ड्रैगनेट हाइपरविंग ऐसे कर सकता है क्या. एक बार स्टार्ट हो गई तो नहीं. नो एक बार हाइपरविंग स्टार्ट. एक बार एबिलिटी स्टार्ट हो जाए तो नहीं. लाइक ज़ेरोरा का वर्ड्स भी समझ लो कैंसिल हो सकता है. पर हाइपरविंग एक सिंगल एबिलिटी है ना. एकदम हो गई तो हो गई. कैंसिल नहीं होगा. या इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट पिक वाज सरीना. We see the team fight quickly going in now. भाई फुल जोन आउट भाई. Here comes the Dragonite. Can this be the अरे thing भाई. that turns the tides? अरे ले लिया भाई. जीजी यार. आयक से कमबैक कर लिया थोड़ा सा. ओ हेलो. What the fuck. अबे ये क्या हुआ. Really exceptional team fight there. And yeah, no worries everybody. Just a pause. We're going to be back in just a moment. Yeah, ये क्या हुआ. Engagement there is looking so good for Nouns to start. भाई शुक्र है लास्ट पे नहीं हुआ ये. The Blissey came in, Pikachu, heavy slam, knocked everybody up, giving Blissey time to secure that first objective. What the hell? And the fight quickly went in. किसी का डिवाइस हक दिया क्या. With that healing and shields from the Dreadnought. किसी का डिवाइस कांड कर गया लगता है. स्ट्रेटेजिक टाइम मोड. ऐसे टाइम पे स्ट्रेटेजिक टाइम मोड तो नहीं. टेक्निकल लग रहा है मेरे को ज्यादा स्ट्रेटेजिक से. पर डिवाइस तो किसी का दिख नहीं रहा ऐसा. क्या हो गया भाई. एडमिन में रैंडम आ गया क्या. लेट्स गो. Yeah, and that's kind of the big difference between इंडिवियर कौन है. इंडिवियर कहाँ आ गया इधर से. हेलो. टाइम प्लीज भाई. कैमरा वगैरह गिर गया क्या किसी का. कि इंटरव्यू लेना है बीच में. हेलो द जेनेसिस 602 वेलकम स्ट्रीम. डीआरएस लिया होगा. डीआरएस लिया है क्या. थर्ड एम्पायर कौन है. पानी पीने का ब्रेक. टेक्नीशियन के लिए ऑलरेडी सॉरी बोला है. शिट मैन. पर अभी क्या टेक्निकल इशू आ गया सडनली. Pokemon Unite game that comes down to positioning more than anything in this game number 1. Not even just positioning. कराउली पे ट्रॉफी लेके भाग गए क्या. कुछ स्टेटस डाला है क्या कराउली ने. रुको मैं देखता हूं. कराउली ने कुछ स्टेटस डाल दिया क्या. Both have very different tools. On the Hoopa side, you have the ability to reposition your team as you choose, paired with the barriers from the mine. But on the Snorlax side, that character can push you a really far distance, especially when that block is combined with उधर सोल बूट कैंप पे बीएमपीएस की ट्रॉफी आ गई गाइस. All of a sudden you're in your home goal zone and let's go. So you definitely can cruise across remote stadium with that combination of a move and battle item. So it is a very यार कितनी स्टोरियां डल गई भाई. ट्रॉली भाई की दिखी नहीं रही. Counter moves on counter moves. ट्रॉली भाई की स्टोरी दिख नहीं रही मेरे को. Even the story of game 1, no adaptation even yet into game 2. We are already playing the thickest of mind games. Pikachu, the Snorlax player we've been talking about a lot, had some thoughts on their mindset going in today. Let's take a look at that here. Pikachu back in the lab, jobs not finished. Jobs not finished. Yeah. #IX Admin को सूसू लगी है क्या.
Unite. Just fantastic support. Who secured it? Admin bro. Player this weekend for their team, getting their teammates out of sticky situations. भाई प्लेयर्स इतने काम कैसे हैं मुझे ये जानना है. प्लेयर इतने ठंडे कैसे हैं? उसके फाइट के बीच पॉज हुआ. ठंडे कैसे रह गए भाई? अपने कुछ लोग होते हैं ना सीधा पकड़ लेते हैं भाई. इधर आ तू. फाइट हारते रेड ले गए. अब थोड़ा लेट कर दिया इन्होंने रेड का इनिशिएशन. चलो गाइस रिज्यूम. भाई घाटली अपने हॉर्नलीच में अटका हुआ था यार. घाटली अपने हॉर्नलीच में अटका हुआ था यार. जीजी यार. The second objective of the map, they are pushing up on this point. And there's that heavy slam from Pikachu that we were just गुस्सा हो गए तो about. पॉज के लिए गुस्सा हो गया लगता है. IX Gaming is keeping the advance going. Pikachu creating Pikachu ऐसे ऊपर से स्क्रीन का लगता है भाई. don't want to give any experience over to Adesu. Redmaw is ओ भाई Redmaw जीजी. Kratos takes a ton of damage. Retsu on that soft boiled is going to keep the HP bars up. 20 तो ले गया Pikachu. Turns around and blocks some wild इन Pokemon तो as well. भी आवाज आती. कौन गधा पॉज किया रे अभी तू पास. अब हम भी करेंगे भाई. Taking their point was gone. There's no objective, nothing to fight over. भाई अपने यार ले होते तो बोले ऐसा होगा तो हम नहीं खेलेंगे. Perhaps considering this road time in the top path at some point for now. करौली भाई तो पकड़ लेते भाई. Mark of the EU and North American regions has been they want to get the wild Pokemon चलो off the map. नाउंस तो पहुंच गई रोटन के लिए. भाई उसने तो फुल जोन आउट कर रखा है यार. ग्रुप ने फुल जोन आउट कर. ओ भाई ले लिया. चलो माइम का अल्ट आ गया जीजी. ओ भाई हाइपर बीम से बच गया भाई. ब्रो बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे. ये आधी एचपी पे कहां जा रहा है? हेलो नीचे 40 का गोल हुआ. चलो भाई 1 पॉइंट का डेफिसिट. 1 पॉइंट का डेफिसिट. हाँ आरएनडी के मैच में एक पॉज हुआ था याद आया. नींद आ रही है. तेरे को डिस्कॉर्ड टैग जितने क्यों आ गए? And look at this, IX Gaming has had to completely throw in the towel in terms of positioning around this third and final Dreadnought. They do not have the benefit of a Hoopa to bring them all down via a hyperspace hole. They have to go there the old-fashioned way. Looking at the levels in this game as we head on in towards the final engagement, it looks like को मोबाइल लिंक पेंटर पे ऐसे वर्ड करना अलाउड नहीं है. team having a level 13 yet here. Because you know Unite specific है तो ऐसे लिंक यूज करना पड़ेगा. 3 for 3, that is definitely what we have come Nouns to तो पूरा expect कम out of pregnant Nouns को Esports. So an impressive play from them. They are now retreating to the wild Pokemon area. IX एक टाइम पे हमने सोचा था PVPL पे कि ड्रैगनेट नहीं दिख रहा. ड्रैगनेट का मेटा खत्म. आता है वर्ल्ड. 13 में से 12 टीम या 11 टीम ने ड्रैगनेट यूज किया है कॉन्स्टेंटली. डेफिसिट मैं भी कमर्स वाला ही हूँ दोस्त. मैं कमर्स वाला हूँ. One more bit of experience here. Maybe they can catch this mine before it starts, but cross chop out, but no knockout. आपकी चैट दिख रही है दोस्त. कौन सी वाली? कौन सी चैट यार? हाँ दिख रही है दिख रही है. A huge flank here, but it hasn't really paid off so far. अबे हेलो? He's going to use its unite move to get out of danger there. A big unite move though from Nudo locks up. माइम का unite. घाट लियो. As the brawl starts in the central area, we see the hyperspace. Bye. To bring Adesu back. A huge Machamp unite cutting through now. भाई इधर सरीना पेल रही है. सरीना पेल रही है. पर इनका मरीन सिल्वियन का यूनाइट अभी तक है. It was a massive unite move that pinned them all up against the wall, but their survivability is माइम का स्टन. finds a KO onto Nudo with a well-placed move there. सिल्वियन यूनाइट दे दिया अपना. All focusing on the Zapdos, but their HP bars are so low. A re-engage from IS Gaming could turn things around. This is an extremely close photo finish. Absolutely love to take a second to reset here and get that objective away. माचेम भी था इनका यार. ओजी ही ले सकता था. ये क्या पोजीशन था भाई? भाई. Redmaw don't need no power up punch. Serena will get the job done. भाई सिल्वियन का यूनाइट एंड तक बचा हुआ था यार. What the hell? नाउंस ओपी ड्यूड. EU वर्सेस एनए में नाउंस ले गई भाई. भाई मार भी दिया. अबे This knockout on the Dragonite means that a game that was almost certainly over is definitely over, as IX Gaming just does not have the resources to put together a भाई गाड़ लियो विलक. जाने दे रहा मैं. Very, very true. Nouns Esports is going to be headed into the 1-0 area of this game. IX Gaming is going to be headed Dragonite तो bully हो रहा है भाई.
भाई सीजन कितना अच्छा फ्लैंक की डैम भाई फुल स्पेसिंग कर दी फुल स्पेसिंग बना दी सिल्वियन ने भाई जिसकी स्किन जैसी उसका एफएस ड्रॉप होता है स्किन से या फिर उसके लाइक स्किल्स नहीं दिखते ढंग से तो होता है ना भाई घाटली को तो भाई कोने में जाके पेला यार घाटली को तो दुश्मनी निकाल दी घाटली के लिए बुरा लगा यार मोटा सा हो गया ये सब कैलकुलेट द वायरस would someone choose Trev and Maimon yep Yeah, just incredible sustain from Nouns Esports composition and an incredible scoreline 7-0-6 to 145. Nouns Esports wins the first game of this match. In a really मेरे को सेकंड गेम लग रहा था अभी पता लग रहा है फर्स्ट गेम है भाई सीक्रेट शिप की क्या हाइप बनाई थी बट डूब गई वही ना यार उम्मीदें थी सीक्रेट शिप से पर गंगार देखा भाई गंगार लगा कुछ और ही होने वाला है पर बीजी वेल प्लेड माइम लेके जीत रही टीम भाई मेरे से इंस्पायर्ड भाई बॉल माइम ने जोन आउट मस्त किया यार सोलो जोन आउट पेड़ डैमेज फार्म कर ओ भाई हीलिंग देखो पेड़ की यार इस बार डैमेज कम है पर हीलिंग भाई हीलिंग और टैंक देखो जी वेल प्लेड Yeah, I think the thing that really stands First out match gaya loser semi-finals का announce is it really shows the flexibility that Nouns has. So guys, 350 likes, 6 to go yaar. Make sure to share the stream as well. Objective focus, they're going to be securing and playing team focus on that. But they know NA loves to team fight and they showed up with a team fight composition. हिंदी वाली 4 मिनट ले आया. Yep. It's very true. It's great to have a team fight composition when you choose exactly where the team fight is. Mr. Mime, barriers, even Gratlu pushing the enemy around with Horde Leech. They are going to set up the fights that they want to take. We see this engagement here around this Dreadnought that ultimately went in the way of IX Gaming here and then led them to a push up overall on this outside goal zone. Yeah, that's true. IX Gaming netting up that first one. Pikachu here with a pretty big thug gaya yaar. Last chance for IX. Yep. Desu with 2 KOs outside of the Zapdos. Yep, Lucario इस पे न्यू मैप पे अच्छा चल सकता है. फार्म तो है बट वही है ना यार. डिपेंड करता है कैसे करते हो. Their target was the enemy team. Yeah, Snorlax. New map पे it's gonna be more about macro rather than team fight in my opinion. Team fight भी मैटर करेगा but macro way more मैटर करने वाला है अब. आपका macro पहले आएगा team fight से. But the grin is there and I got a kiss blown at me from stage. My bucket list is complete, Jeff. A Desu has made my dreams come true. Thank you so much. And honestly, my dreams have been made true by watching this team play. Such exceptional Pokemon Unite. चल सकता है फार्म ही हर जगह है ऑलमोस्ट मिड पे भी फार्म आ गया ना तो रोटेशन फास्ट हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी भाई 5 मिनट अभी आया ओके टॉक्सी भाई थैंक यू फॉर कमिंग लगता है लुकारियो हैज बीन अप टू पॉइंट ऑन एक्सट्रीमली स्किल्ड शेयर कैन गेट वैल्यू यप hyper voice to the maximum and then a little bit of muscle band to make sure your auto attacks have that extra push they need when your Sylveon is not screaming. सेकंड मैच किसी टाइम में टकले है जॉनी भैया ओपी maybe muscle band will get an auto attack extra in here and there and get you up to that level quickly. All right, if you're IX Nudo need absolute power. against the wall here, this is the yep Nudo अंडर लेवल रहा बहुत सक्सेसफुल रहे वो चलो ये डुरालोडन को दिखा मेरे को अभी 1 सेकंड के लिए OG is on Luca and almost same comp है दोनों साइड से टकले की मारो है तबला I like this change a lot actually, Jeff. I think OG's Lucario चलो भाई let's go through gaming. stuff of legend, especially if you spend any time on the North America ladder. That player has made your win percentage look भाई ये मैच देखने में टायरिंग है खेलने में तो फट जाएगी यार definitely an amazing देखने में player. I think they're going to put a show on here in game number 2. पेड़ पे फ्लफी टेल कर सिक्योर के लिए आई थिंक यप लूका है यहाँ से लूका है माइम डिफ हो रहे हैं माइट भाई क्या ही बोले ओजी बस टेकन है क्या yep excellence he's on IX IX ऊपर क्यों नहीं चला रहे भाई बॉटिंग ऊपर नहीं चला रहे बॉटिंग ऊपर नहीं चला रहे
आईएक्स वालों के मुंह पे बहुत प्रेशर दिख रहा है वही लूका है चलो गाइस वी आर इनटू सेकंड मैच ऑफ द लूजर सेमीफाइनल्स नाउंस वर्सेस आईएक्स पहला मैच नाउंस जीत चुकी है ये जॉनी भैया भी अभी देखते हैं ओ भाई नूडो फिर से पिटने वाला था यार नूडो फिर से पिटने वाला था इतनी खुशी लुका की रिन्ने कहाँ गया he got banned for some reasons OG's not making out. The early push up from a Desu here, securing the KO on the Lucario in the top path. One blue buff and you're out of that central area ने लुकारी को मार दिया चलो 3 मिनट में भाई जंगल ले लिया क्या उसका जी जी जंगल क्रैब ले लिया एक का तो पर ओजी फिर भी 5 हो जाएगा भाई चलो लेवल मेंटेन तो किया एटलीस्ट 5 हो जाएगा ओजी अब देखते हैं ये स्पीड वर्सेस हाइपर वॉइस कैसा रहेगा पावर अप पंच भाई ओजी पावर अप पंच खेल रहा है गलती से तो नहीं ले लिया मर सकती है एक्चुअली वो नहीं पर ये पॉसिबल था कि मर सकती थी इस स्पीड में इतना हो इसके लिया होगा ठीक है यार ठीक है यार नीचे तो अलग बीटी भाई नूडो को छील दिया फिर से अंडर पाम अब नूडो जंगल जाएगा शायद Nouns Esports taking a firm grasp on the early game right now. IX Gaming's hopes are definitely going to be on the leveling up as quickly as possible. माइम ब्रूजर खेला यार माइम तो ब्रूजर ही होता है सब माइम सपोर्ट खेल नहीं सकता ना ब्लॉक कर सकता है ब्लूज कर सकता है दैट्स see how the engagement goes around this right now. It looks like Kratos is likely going to be level 8, so if they're not on the beach on time though we could see Nouns try and break that objective again. Yeah, that's very true. Again, no who 30 seconds to dead rotam quickly, so they're going to have to come दृश्य 4 हो गए इनकी all the फाइनली way back through their central area. 25 seconds though, Desu starts getting some early poke damage. भाई माइम 8 का है व्हाट द combined with a high speed character like भाई is you can create areas हेलो that are so hard to push through if you're the 8 का माइम Love the cheeky play from Nudo here going into Nouns central area saying hey I know you all are likely preoccupied somewhere else. I really need this level 6 power spike. Let's go grab a buff. Level 6 power spike and a blue buff when you were trying to secure a क्या ही कर दिया यार फार्म ही नहीं ले सकते तुम माइम के अगेंस्ट वही है 9 हो गया माइम 9 है अल्टी खुल गई जी जी पूरी टीम वाइप हो गई ऑलमोस्ट गेट बाय 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 माइम जंगलर भाई माइम 10 का है यार यार उनका जंगलर 8 का है इनका खुद का जंगलर 9 का है Lucario getting out on a narrow margin perhaps here. Yeah, they might be running, but they're running right up to Bruv and Gatlu, who are starting up a goal zone. Mine be like भाई chill दिया भाई chill दिया अरे गोल नहीं हुआ माइम का यार पिकाडिप गोल कर ब्रव एक्चुअली ब्रव तोड़ने का ट्राई हो रहा था ये थोड़ा थ्रो हो गया फील आ रहा है थोड़ा सा थ्रो हो रहा है फील आ रहा है यप थोड़ा थ्रो कर दिया है उन्होंने गोल तोड़ने के चक्कर में क्लोज कम्बैट है 28 मार दे भाई उधर से एक उठा ले और थोड़ा सा थ्रो किया इन्होंने इधर आज से माइम बिल्कुल सर वोल के एचडी भाई हुपा आते मुक्का खाया मुंह पे यार ओ भाई जहर ओ भाई हुपा आउट प्ले clever play there by OG to expect the teleport coming up via keys when they saw the indicator on the goal zone and X can come back. Yup.
We see the second Dreadnought getting ready to spawn जहर हो रहा है in यार. the bottom path. The scoreboard is close in terms of AO's energy deposit, and so are the levels across Second both raid on the way, teams. 15 secs. Nouns looking to bring their team इसका तो in गोल हो ही via जाएगा. Rings Unbound getting a 39 3 ults हैं इन पे अभी. IX के साइड पे भी 3 ults हैं. Mime ult used, BC ult used, Luca ult used, Dragonite ult used. Oh भाई nice travel यार. See that tree symbol go above these characters. That means they take additional damage Bye, as long GG. as that debuff is on them. And double KO for Cat. Bye. Wait, Luca Unite not used. My bad, wrong call. Luca Unite मारा है. भाई Pikachu ले जाएगा यार. बच गए भाई. ब्रव ने निकाल दिया. Bruv expertly last sitting with that Mr. Mime. ओ भाई. नूडो ने गोल क्यों नहीं किया? उसको जोन आउट कर रखा था दोस्त. मेरे ख्याल से तो जोन आउट रखे थे वो. या फिर उनको फार्म नहीं देना था. Maybe that can be the mentality. Mime is GG यार. Noun sync is good. Yep. Pikachu का काट दिया यार आदेश और ब्रव ने. अरे आक्रमण ब्रो. Welcome to the stream bro. How are you यार? Long time no see. ये Mime TTV bro है क्या? Yep yep bro HD. That could be a mistake that definitely hurts them moving on in the future of this game so far. Rotom's going to be shredded very quickly by IX Gaming. They know Nouns Esports likes to get cheeky with these AO synergy Stream 2x कर देना Zapdos से पहले. अभी कर देते हैं. अभी objective नहीं है कोई. Almost close है भाई. जरूरत नहीं था. हम almost close थे. अब थोड़ा लैग होगा. वो जब 2x पे पूरा क्लोज हो जाता है ना, हल्का सा लैग होना शुरू हो जाता है फीड के साथ, बिकॉज़ फीड स्लो होती है. चलो भाई. ऊपर का अल्ट नहीं है अभी. उनके BC का अल्ट नहीं है इधर, तो BC का आ गया. OG को छील रहे हैं. ऊपर हल्का सा फार्म कर रहा है. IX एक भी टूर्नी नहीं जीतेगी. इनका पुराना जंगल ओपी था. अब नीड 1000 स्कोर. ठीक है यार. माइम 13 का जैप से पहले. जैसे माइम का भी थोड़ा सा हल्का सा देखो थ्रो हुआ है गेम बीच में, बिकॉज अगर फर्स्ट रेड पे वो 9 था, अब तक तो इन अ परफेक्ट गेम अगर वो गोल वाला थ्रो ना होता तो 14 हो सकता था. 14-15 पॉसिबल था, बिकॉज उनका फार्म इन्वेड हो सकता है ना माइम से इजीली. लास्ट रेड के लिए कोई नहीं जा रहा. चलो भाई. आदेश कौन सी साइड पे बैठा है? आदेश कहाँ से जोन बना रहा है? हेलो गैटलू ने तो ओजी को ब्लिसी डेड बिना अल्ट के. स्मॉलेस्ट का अल्ट यूज्ड. नूडो का अल्ट यूज्ड हो रखा है यार. ब्लिसी बिना अल्ट के गया यार. ओजी डेड ऑलमोस्ट. ओजी गया. गैटलू के पीछे क्रेटोस चढ़ा है. ओ भाई बिग अल्ट. अब ब्लिसी का ड्रैगनेट पे आएगा आई थिंक, अगर वो जिंदा बचा तो. बाय ब्लिसी यूजलेस है. जी 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 It's all right. Kratos is the last hope to secure there. I guess Retsu can take up that role now. The supportive play they do have. Egg bomb, but not this time around. They hold off, wait for the egg bomb to be on cooldown, and they turn their attention to the Zapdos. Now it's Esports game number 2 to move on. It looks like we're gonna get. Chalo guys, it's bye bye to one of the NA teams. IX Gaming is out of the tournament. They waited, yep, fully waited. ये स्ट्रीम को क्या हो गया भाई? ऐसा लग रहा है स्नोलेक्स लात मार रहा है उधर. माइम को लात मार दी स्नोलेक्स ने, ऐसा लग रहा है. नाउन्स ओपी टीम है यार. खत्म. टाटा बाय बाय. यप यप यप. ये देखो ऐसे प्रोनाउंस टू द मैक्स. देखते हैं. दे कैन इजीली विन. ट्रिगर डिसिप्लिन भाई. ये देखो बोला था ना फुल 2x किया तो लैग होना स्टार्ट हो जाता है स्ट्रीम. वेल कमबैक पॉसिबल है. T1 पे ओवर इधर 50 2 गोल्स और चाहिए यार इसके बाद. एक्चुअली कमबैक पॉसिबल है यार. एक्चुअली कमबैक पॉसिबल है. शिट. इधर ओवर टंक हुआ तो जीजी.
All right, now Red Maw is the first up for defense. A Unite move though from Nudo is going to lock them up in place. Keys takes a lot of damage. Pika Dip blocking everybody. Redsus Unite went onto the Snorlax as he was trying to push them away. Dragonite finds a KO. Big moves there from Kratos. Now Esports is starting to come off of respawn now. IX Gaming needs to win another team fight and another one after that. Mr. Run's Unite move has bought more than enough time here, and as the timer is ticking down, IX's chances of winning this game are going out the window along with their chances of being your world champions. Hello guys, IX Gaming is out finally. GG's. EU's hopes are still alive as they move along in your bracket with a 2-0 victory Nouns is into the losers finals. Kind of the star of that set. I feel like they're that quick. Loser finals? नहीं. Sorry guys, अगर ये गलत है शायद actually हाँ. That game was so winnable from IX Gaming until Bruv came out of the respawn timer. I'm correct. मैं bracket भूल गया यार. Every little bit of an advance. Now Esports with a very even KO distribution. IX Gaming was searching for him for sure. भाई सारी area damage net पे वही पे अब nouns 1 loser bracket. No अभी loser bracket का finals रहता है दोस्त. RNT कल हार गए PC Flex भाई. Early jungle push with the Daisu that they've kind of been known they lost in the group stages. With the pressure from Bruv and the Zarina, really fantastic. Victory नहीं चाहिए क्या बोल के भाई टकला ले गया हो चुकी भाई जॉनी भैया इमोशनल हो गया जी यार चलो गाइस 2 लाख तो 350 कम ऑन यार टीम को लाइक जरूर कर दीजिए यार वॉच पार्टी पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए वी आर 15 subs to 5.6k यार थोड़ा प्यार दिखाओ यार गिवअवे में भी एंटर कर देना दोस्तों अभी ऑलमोस्ट 1800 एंट्रीज हो गई हैं विक्टरी फेवरेट पोकेमॉन शिटमैन माइम सरीना प्रैक्टिस स्टार्ट ठीक है यार भाई लूजर सेमीफाइनल्स का सेकंड मैच अब भी तो होगा या पे T2 वर्सेस नोशो आई थिंक ऑफलाइन ना हो जाए वो बस थोड़ा प्यार भाई थोड़ा प्यार माइम का डैमेज देखा पूछो मत लाइक्स कर दो आज 6k सब्सक्राइबर्स सोन यस बडी थैंक यू फॉर 350 लाइक्स क्या हम आज पहली बार 500 लाइक्स रीच करेंगे स्ट्रीम के रोजी विल ऑलवेज सपोर्ट यू स्पीड गॉड यप यार कोई ना यार वो भी लर्न करेगा ना सबके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस ही है इन द एंड सब अच्छी टीम्स हैं इधर इन द एंड किसी टीम को तो हारना ही है सारी टीम्स तो नहीं जीत सकती ना यस आरएनटी पूरे कंप्लीटली इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट ठीक है यस जी यार ये कर लो मेरे साथ आप 3 आवर्स की तो स्ट्रीम तो है 4 आवर्स की हो गई टॉक्सी भाई 4 आवर्स की हो गई है मेरे लाल भाई गैटलियो यार वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर्स है इस टूर्नामेंट का सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर्स गैटलियो बहुत कंसिस्टेंट है यार कंसिस्टेंट ओपी यूनाइट दे रहा है जोन बना रहा है आपका ग्लोबल जा रहे बहुत टाइम बाद कॉन्टेक्ट समझा करो मैं ठीक है यार अरे नहीं ये करसड भाई का नाम लगा के कौन आ रहा है ये गाइस हेटर्स को इग्नोर कर देना जो यू नो रेप्टाइल सेकंड अकाउंट बना के आ रहे हैं इनको जरा मैं खुद इग्नोर करता हूं जरा रुको यार कैट लिंडन दिख रहा है ठीक है भाई issues in the day one we lost confidence in our comp and now we have our confidence again. I'll tell you what, a way to find confidence is playing Trevenant and is playing Mr. Mime. How did you find your way onto those characters? कोई ना Like इनको रूम को शिफ्ट कर दिया भाई कर दिया टेंशन ना लो we think it's good in the meta right now because everyone is playing Serena. It's just Serena all over the place. कर्ष भाई चैट में थोड़ी आते हैं बड़े भाई कर्ष भाई पे मॉड है पहली चीज तो नकली कर्ष बन के आ रहे हैं कूल बन रहे हैं proved well in that game as you guys take a big win against a formidable team. Congratulations Gatlu. Yep, को technical knowledge yep Thank you चलो very भाई much, intense matches for a fantastic interview. I love hearing from Gatlu, one of the best players that we have here at the दूसरी टीम सेटअप करने आएंगे love watching them play. We're gonna take a look here before we इंडियन ने पता नहीं break at the bracket, see what we've seen brackets so आ गए far, guys what we have coming up. Okay अब losers okay ठीक है lower bracket moving along there, and we have Renaissance and Blackhand waiting to अब जो भी जीतेगा
विनर्स फाइनल्स में से अब T2 नो शो इधर आएंगी। आरनेस और ब्लैक हैंड में से जो हारेगा वो अगले ब्रैकेट में एंड T2 नो शो के विनर के अगेंस्ट फेस करेगा। एसएटीएल का ठीक है यार, एसएटीएल क्वालिफाई नहीं दोस्त वर्ल्ड्स के लिए दोस्त। आरएनटी हुई थी एंड दे लॉस्ट इन द ग्रुप स्टेजेस। 4 minutes to the losers round 2 दोस्तों, then there is winner finals and loser finals। ठीक है नो शो बेटर बी T2 देखते हैं भाई। my last hope on RNS भाई। I mean this is gonna be OP, RNS versus black hand। अद्वैत भी है क्या? बिल्कुल भाई ये कर लो। सैड लाइफ भाई, थक गए भाई। T2 वर्सेस नो शो OP होने वाला है, क्या बोलते हो लंडो? बाय बाय जी, प्लेड वेल यार, कोई ना। क्यों इंडियन है कंट्रोल करते हैं? अरे भाई रेक्स भाई अभी तो कोई प्लान नहीं दोस्त। इंडी पर हाउस इंडियन यप नेक्स्ट एपिसोड ठीक है यार। पंक भाई ट्राई करेंगे। ओपी जा रहे हैं मैचेस यार, ओपी जा रहे हैं। भाई वन शॉट बिल्ड वर्सेस, अरे भाई ठीक है यार। एसएटीएल वॉच पार्टी करेगा इस बार, नेक्स्ट ईयर पे लेंगे। ठीक है विस्टर्स भाई, उम्मीद तो यही है, बेस्ट देना है। काउंटर एक्सपर्ट कौन आ गया भाई? भाई रैंगुटेन अपनी इंडिया वाली ऑर्गेनाइजेशन, यप उन्होंने बाहर की टीम को एक्वायर किया था, नो लुकारियो को। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? सारी टीम्स को यार। कोई सब टीम इधर मेहनत करके पहुंची हैं यार, क्या ही बोल रहे हैं। अब अभी 5 टीम बची हैं, जब T2 वर्सेस नो शो हो जाएगा तो 4 टीम्स बचेंगी। भाई मैं कौन होता हूँ यार? सांगटेचेस फुलन बॉसम वापस एक्शन में दिखेंगे। नो शो भाई बहुत स्ट्रांग टीम है। यप ओमन भैया स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे हैं यार? इस भाई वो वर्ड्स की प्रेप कर रहे होंगे ना यार, सारा उनमें बिजी होंगे, कुछ नहीं कह सकते। दागनेरे गॉन भाई कौन सही है जंगल के लिए? भाई डिपेंड करता है आप कौन सा बेटर खेलते हो। कामरूल भाई पहले ड्रैगनेट खेलते थे, फिर गाड़ी पे आ गए, उनका गाड़ी बेटर, उनको लगता है टीम फाइट में बेटर है। हर चीज़ का पर्सनल प्रेफरेंस होता है, ये आपकी टीम पे डिपेंड करता है। सोलो क्यों में तो चलो जो आपका बेटर है वो चल जाएगा। मैं 1 सेकंड आएगा इस बस, स्टे ट्यून्ड, BRB in 1 minute। हेलो लॉन्डो, ऐसे तो वर्ल्ड में रैंडम्स की तरह पेलेंगे। ठीक है भाई, आप जाओगे ना वर्ल्ड्स ब्रो, आप जाने वाले हो ना वर्ल्ड्स। गौतम भाई जाओ यार, गुड लक, जीत के आना भाई। सर क्या लगता है कौन सा यार? जस्ट पॉकी गेमर भाई कुछ भी हो सकता है यार, सब टीम्स ओपी रखी हैं। तो व्हाट इज द नेम? रेवेनेंट दोस्त, RNT नाम था। दे लॉस्ट इन द ग्रुप सीरीज ब्रो, कल हार गए थे वो, सो आज उनके मैचेस नहीं है दोस्त। दरबारी भाई ने तो RS को रैंडम से रहता ही, रैंक का नहीं होता भाई। रैंक में तो भाई कुछ भी हो सकता है। कौन सा पोकेमॉन मैंने टायरन ग्लेशियन दोस्त? ये लगता है जो सोल कर्स की आईडी से आए थे वही आ गए हिट पे लाने। कोई ना,
इनको बेचते हैं हम कूड़ेदान में। bleachers are filling up exactly for this type of matchup between T2 and No Show on the big stage. का बंदा क्रू में पता नहीं क्या मतलब क्या भाई। माइट भाई इतने जॉर्ड हैं वर्ल्ड में रैंडम पिक करेंगे, ठीक है यार। ऑटोग्राफ कब, ठीक है यार। loses this series, they are going home. But if they move on, they can make their way all the way through. चलो भाई फाइनल्स किसके बीच में? अभी फाइनल्स दोस्त विनर फाइनल्स है रेनेसांस वर्सेस ब्लैक हैंड एंड अभी लूजर्स के राउंड 2 चल रहा है। इसके बाद लूजर्स का सेमीज एंड देन फाइनल्स। दिस इज नाउ लूजर्स राउंड 2 T2 वर्सेस नो शो। जो टीम जीती वो फेस करेगी अपने यार क्या नाम था, नाउन्स स्पोर्ट्स एके रैंडम गेमिंग। दोनों टीम टक्कर की हैं भाई। कामर भैया को तो डिप दिया है, ठीक है यार, ठीक है यार, रैंक में कुछ नहीं होता। फाइनल देखूंगा सीधा, ठीक है भाई। देखते हैं भाई, आज ओपी होने वाला है, मजा आएगा। डेलफॉक्स इतनी बार दिखाया उन्होंने पर डेलफॉक्स यूज ही नहीं हो रहा। T2 इज फ्रॉम जापान बाय द वे गाइस एंड नो शो पता नहीं कहां से है पर है यार। रीजंस की नॉलेज मेरे को बिल्कुल नहीं है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हर एक को दोनों ही ओपी टीम्स हैं, दोनों ही ओपी टीम्स हैं, इक्वल पे हैं। It's the gamer tags that we're judging here. That's what we're really trying to do. And look at that. I'm judging how busy he was there in that moment. No show is scoring. Okay. अभी स्टार्ट हुई क्या? पा जाइए क्या डीआर में भी? नहीं मैच स्ट्रीम तो 4 घंटे से चल रहा है दोस्त। ये सुबह 4 घंटे 1:30 बजे से स्टार्ट है, 1:30 से। सुपर सेल इज अ विन गोली पर। नाइस। ब्लॉसम फुल सपोर्ट भाई। नो शो के ब्लॉसम का देखना गाइस, स्नोरलैक्स ओपी। ताकि सीमा नमस्ते, ये कर लो यार भाई। एसएसएन डेव की टीम का क्या हुआ? दे डिडंट क्वालीफाई ब्रो, डिडंट क्वालीफाई, दैट्स इट गाइस। मेरा नाम भी टॉक्सी करके, ठीक है यार। देयर विल बी अ ग्रेट, दिस विल बी अ ग्रेट गेम। चैट क्या दोस्त सर आपकी टीम के सारे बंदे क्या आपके रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब से मिलते हैं? नहीं दोस्त, मेरे टीम यूट्यूब से थोड़ी मिली मेरे को, मेरी टीम। क्या बात करते हो यार? यूट्यूब तो मैंने बाद में स्टार्ट किया टीम मिलने के, क्या बात करते हो यार? क्या लगता है भाई कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। वो लोग भैया पीओ द्रोही मत बनो। इंडिया का मैच कब? इंडिया हार चुकी कल दोस्त डीआर में ब्रो। रेवेनेंट लॉस्ट यस्टरडे इन ग्रुप स्टेजेस। एसएस और आरएनटी इनका मैच होता तो परफेक्ट होता एक दूसरे के लिए। एसएस कौन सी टीम? एसएस कौन सी टीम है भाई? भाई उसके कंधे में ऑडिश पड़ा है यार, बंदा भी। लेट्स गो भाई, आपका ब्लॉसम आ गया, ठीक है यार। Oddish is not in the game. They're going a little off script here, but let's take a look at Secret ship. I mean, previous matchup here as to how T2 ended in this position. That's right. Yeah, we have some exciting footage here. T2 versus Renaissance. Okay, T2 versus RNS के फुटेज आइए गाइस, जो स्ट्रीम पे नहीं हुआ था सेमीफाइनल्स का मैच विनर्स का। छील दिया इन्होंने तो लगता है। सेम स्ट्रेटजी अगेन। ओ डुरालुडॉन, दुर्लादन भाई। You'll notice Renaissance, the only team to bring Gardevoir here lost a very into close the group. World Bro, Championship. This feels like a Pokemon that a lot of people well, 0 bring points up यार, and कुछ think नहीं is कह very, सकते। very good, but That was close oftentimes though, it yep. doesn't make the professional roster. I think it will maybe start भाई now दुर्लादन after दिखने को seeing मिला what गाइस, Renaissance दुर्लादन do ओपी। I mean, Yang has been absolutely brutal on this Venusaur, moving with rebounds, and of course Camiro just shooting shots over their shoulders as they're getting busy up front. Big win here inside of game 1. पर वैसे क्लोज मैच था यार, T2 ने भी इनका बेस तक पहुंच गए थे T2 लोग। कितने गोल से आ रहे? नेवर माइंड, एक साइड पूरी साफ की थी इन्होंने। 100 points almost to 231 as we head into game number
ये गेम 2 इनका 2-0 हुआ था. For Renaissance there, and they're looking to push that advantage and keep it going. They really seem to have been one of the teams that solved the mystery of containing a Zarina. You mentioned they've been taking over all weekend, and the key to success is how you shut that down. Renaissance has found a recipe for success through that Gardevoir. Yeah, that Gardevoir is दूरा को फार्म करवा दिया. Some of these unite. That oh भाई. Mame, I'm so sorry. मामे को तो छील दिया यार. Play ninja into गाड़ी win easy bro. Easy. But when the name of the game is stopping Zarina, you can expand that for a 1-1. One BCL to dead. See a big fight there at Zapdos. Looks like भाई Zapdos का? Okay नहीं, close नहीं समझ रहा है, close है. Big moment here. We can see T2. पर बेस फिर भी खुला ही हुआ था इनका. बेस फिर भी खुला ही हुआ था इनका एक हिसाब से. T2 ने खोल दिया बेस इनका लॉल. Decent खेली T2 यार. Big triple KO. Close matches. Well, yeah, of course from Yang, and the scores are going to populate up here, and we're going to see that Renaissance won themselves. Completely nerf नहीं हुआ है Storm, complete nerf नहीं हुआ है, like damage decrease हुआ है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा. Depend करता है अब कितना होगा. Major इतना fully major nerf नहीं है यार. Although considering Tyranitar, I think अब Serena भी ना, अब वो nerf से होगा ऐसा क्या कि Serena, Machamp, Lucario will be on the same level. It will be literally on the same level. They are on the same level after the Serena nerf. That's predicted. Just the Oddish hanging out. Equal. They're just deep in their seat, focused on what फिर the team game comps पे आ has जाएगा. to present. Excluding Tyranitar. We've got a draft. चलो guys, T2 vs no show. Volon again on AG Slash. भाई Venus और क्या दिख रहा था? Blossom Trevenant. यार Snorlax. T2 throwing much different looks compared to some of the other things. उधर single XP share दिख रहा है T2 पे. T2 पे single XP share and on could definitely be. We've got no show, 0 XP share, okay. No show, 0 XP share. I mean, we've seen just such an amazing Snorlax player, but looks like they're भाई आज Trevenant दिखने वाला है guys Blossom का. This is pretty exciting, and honestly, I'm very surprised. They buff Tyranitar, yep, cooldown reduction and damage increase on Dark Pulse. And shield is they get extra shields on Ancient Power. Yeah, there's a huge. Tita was too weak, so yep, Tita was weak, yeah. That is Zarina and a huge player. That is Mame, one of the best in the world. If they can shut that down, they might be able to win all the big fights they need to. I'm just looking for big time in भाई ये ऑडी सिंह ने इधर रखने वाला है क्या? लकी चार में के कुछ? And opening the door for Mame to find their way in and take some Sandra buff क्यों किया था इतना बुरा? अरे पब्लिक टेस्ट में buff हुआ है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? पब्लिक टेस्ट में buff हुआ है. ऐसा थोड़ी रियल गेम में two teams, T2, no show, Japan, Korea. This is it. One of them are going home. चलो भाई. भाई वो कैमरामैन को कितना लादा हुआ है? बख्श दो भाई. 2 के 3 कैमरा उठा के बैठा था. At being the world champions. Here we go. Bye. Hard fed going straight to the central area. 4 ऑलराउंडर यार. नो शो पे 4 ऑलराउंडर हैं यार. I'm sorry, we've got Wiggly heading into the central area. We've got Trevenant heading into the central area of T2. We have a double invasion Full invade भाई. happening right now. Both teams making their way to the central area. भाई पूरा काउंटर किया मामे को. उनको पता है मामे ये करता है. We are off the rails already and we're only 35 seconds. नहीं मिला बफ. Here we go. Blossom. वेट मिल गया? क्या नहीं? नहीं मिला. मामे ने ले लिया बफ भाई. Wow, Blossom actually almost was able to take down 2 enemy Pokemon. Supercell. Oh, I was gonna say not as lucky, but that was pretty lucky. Come on, grabbing these berries. No, you gotta go home. Big KO. Yeah, 3-on-1, but grabbing both berries isn't a bad exchange. If you're T2, you gotta 4 नहीं 3 है. 4 है मेरे लाल. Trevenant. Trevenant ऑलराउंडर ही एक समय आता है एक तरफ से. क्या ही बोलें? Is this final? No, this is losers round 2. A lot of it secured there. इसके बाद losers semi-finals होगा. Yeah, but not a bad look by Santachi. They did get a couple of those. They do have to glide back, but they're sitting just shade of level 5 and just behind Mame, who actually got to take that central area. And here's the problem. As soon as Mame hits this level 6, it's going to be so much more powerful than Santachi. So, yeah, here it comes. Here comes Mame. Drive defender है यार, all-rounder है यार. Blossom and Santachi. The big stomps coming in. A berry being sold. मैंने बोल दिया ना. Trying to chase it down. Moving back towards this goal zone here as Santachi पिट रहा है यार. more damage down there they go. Huge KO and they're looking Counter for a इनका काम second नहीं and they're able किया. to Blossom कितना टाइम बाइक कर रहा है? ओ भाई स्कोर रोक दिया उसने. अबे स्कोर रोक.
पर ऊपर मार दिया अब जीजी वेल प्लेड ऐसा बोला करो ना सर क्या बोलना भाई बिना हिम्मत करे मैं ऐसा क्या भाई कोई ना Yeah, Supercell trying to work it through. You can see that bar. They're just trying to tick over to 6, but they need a wild Pokemon to help them out. They're backing off a little bit. Not willing to engage too much. मोटा ही हो गया यार कोई ना. The question is, what is Supercell going to be playing here? Do we have a Sing Wigglytuff or do we have a roll out Wigglytuff? Invade हो गया भाई. Incredibly powerful, putting the enemies to sleep so that your team can maybe, I don't know, stomp on them from the air. I think that would be pretty गोल हो exciting. जाता. But roll out extremely popular actually. क्रैम बहुत ज़्यादा दिक्कत है ये पेप डिसेंट है. यही तो क्रैम खेल रहा है. ओ भाई ये तो घुसने के प्लान में है. बैरी ले ले सारे. Santachi trying to hold it down, get some points in as that Serena's just bubbled out from T2. No show looking amazing right GG here. bhai. And they are able to start taking this Dreadnought, and it looks like T2 They once picked again really a play I've somewhat, seen yeah. from them earlier, not even sending their Cramorant down to deal with this, just keeping it in the top path to get early mess up के experience. बाद भी इन्होंने कर लिया catch up actually guys. Able to secure that Dreadnought. I mean, in the face of a Dragonite, T2 does not have anything of the secure Jungle invade तो चालू है. magnitude as they do, as that Doublade is still sitting there, not quite yet an Aegislash, whereas that would have been your counterpart had it been that level already. ब्लॉसम पे चढ़ने वाले हैं लोग वैसे. अल्टी तो नहीं खोलेगा मामे. नहीं मर गया. Wow, no show doing a great job right here. No show ने ये ले लिया. KOing that Serena. This is looking nice for them. You know, no show वापस यार black and semi-final में बैठे. Final में बैठे sorry. Calculate their points in. We got 21, Possible we got 20, we got an overdunk. Let's go. Yeah, beautiful scoring here from No Show. They're ahead on points. अभी तो team पर depend करता है ना. They seem to be controlling the map very well. They are taking अभी over this game. level advantage decent है. Slowly but surely building Not big but ठीक है यार. T2 did get a goal zone down early in the top half. But No Show returning in kind, taking one out themselves. Santachi looking to get some experience here. This is going to give them their unite move. And farm ले रहे हैं at least ये. No Show वाले पता है इनको T2 वाले farm लेने आते हैं. It's the Serena versus Serena, two of the best in the world, and they back off. Despite Mame getting kind of fed by T2, No Show's Zarina is just behind at level 9, but No Show actually has a level lead across all of their defender क्या ही बोले. That's right. Running down here through this central area. They're just hanging out. ना भाई already इतना बड़ा OP लगता है जी का cape. No worries about that. Maybe all the way into the enemy respawn zone. Well, when you got a Hooper, you can certainly move much more freely than भाई T2 can. They're going to have to इसको उठाना दे. मेरे को फील आ रही है उठने वाला है. अल्टी मारेगा ये भी. They don't want them joining into the action. They're working through Takashima. बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे. यार क्लोजर ने अल्टी मार देता. Achilles के नहीं अब. Well, sure, we're not going to be at Dreadnought, but the enemy won't have a Dragonite, right? We KO'd that one. KO timer is going to be up though, and they are going to be able. विश्वास राजे, I don't care भाई. Down here, ooh, big fight breaking out. Cram Unite forced out. Supercell getting low, so is Haruta. They're trying to find their way in, and that's a Bliss's back to the middle. Cram getting his KO on this arena. They're moving forward there. 2 players down for No Show, and they're looking pretty good. Hoopa I is don't on care. They're working forward. They're trying to find their way. S4L is up and spawn, but they get KO'd Oh भाई, immediately. GG. Holy smokes, the Aegislash is heating up. Haruta trying to find another one, but this Aegislash back Brah. picking up a Wigglytuff. Aegislash यार. Comeback कर लिया T2 ने. This one might be theirs. T2 making a show of it. Yeah, बाप रे. ओए बच गए. एक सिंगल लगा ले जाएगा भाई Blossom. They are not able to. Blossom not able to stop what's happening and just getting beat down on मामे ने मामा जी कर दिया यार सबको. Getting fed. KO Shriek at 3 is tons of good experience for them, and they're trying to get a big Blisters and Cram Dam. Oh भाई. They were fossilized so quickly you might find them in the Sky Ruins. Lol. We see Santachi heading up through this central Went area to us in practice. here, just picking up all the experience they can. You know, I think that Unite move was kind of intended for the Zarina, but they got the Cramorant, and that's a big pickup as well. Yeah, you know what? At that point, you'll take any KO. Rotom से sacrifice हो रहा है T2 की तरफ से. Presence of mind to take this thing down as T2 is ये nowhere personal था लग तो No रहा है. Show's looking pretty good here. Level-wise, it's a little more on the side of T2, but this match बहुत is personal था भाई, बहुत personal close था. score-wise. Big Unite move coming down from Dragonite. The क्या ही Hornleaf's बोले. pushing him around, and we got some scores coming in with the cape. Yeah, I mean, this Rotom is GG causing well some played. damage to T2. They're split all over the place. S4L's trying to find some bodies. They already caught 2. Takashima on the retreat. They egg bomb themselves to try and keep themselves up. But it's भाई घुस गए भाई घुस गए. पर एजी का यूनाइट. भाई नाइस काउंटर ट्रैप जीजी. अरे इसकी हाइपर बीम इधर आ गई यार, उधर मर जाता वो. अब नहीं मरेगा. पर नहीं यार, एजी को काउंटर कर दिया, वो फुल कर सकता था भाई. जीजी. Just disappearing in the night. How did it happen?
क्लोज चल रहा है अभी तो, क्या लगता है भाई? कुछ भी भाई, बहुत क्लोज मैच है। मेटा होगा क्या चीज भाई? ऑलरेडी इतना कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ, मेटा के बारे में ऐसे टाइम पे मत पूछ यार। एजी अल्ट हक दिया? नहीं नहीं नहीं, ठीक था यार। एजी का अल्ट ऑलरेडी हार्ड टू हिट है, हार्ड टू हिट है ऑलरेडी। यू कांट बी लाइक एजी अल्ट हक दिया ना, मूवमेंट एनिमी टीम पे वेरी हार्ड टू हिट। इन न्यू मैप 3 ऑलराउंडर्स परमानेंट दिखने वाले हैं, फील आ रही है, जब तक कुछ स्पेसिफिक चेंजेस नहीं आते। अटैक ने डायरेक्ट होल में यूनाइट मूव मारे और बेस चला गया। यप यप यप, स्वाइप फॉर न्यू मैप। यप T2 ने चलो एक डेड ने इग्नोर किया T2 ने भाई। बीटी अरे शील्ड क्यों खोली? ओ हेलो, ब्लिस असिस्टेंस एजी पे, एजी को उठा दिया। ट्रैवल्ड एजी, अरे ट्रैवल्ड थोड़ा सा हक दिया यार, पिलारी ट्रैवल्ड हक दिया थोड़ा सा। अरे वाह हारूटा भैया, भाई 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 भाई, नो शो शायद हार जाए। यप हार गई। ड्रैगनेट बचा बस, अल्ट मार के आएगा ड्रैगनेट तो। भाई टाइम मार दे भाई, ये अल्ट टाइम का। हेलो ओ यार, हल्का लेट कर दिया इसने। न्यू मैप को आई डोंट थिंक सो यार, हल्का सा लेट कर ड्रैगनेट ने, हल्का सा माइनर सा। फर्स्ट मैच T2 लेके जाते हुए गाइस, ठीक है यार, बोल भाई उसने सही बोला। ये शायद थर्ड मैच तक जा सकता है ये मैच, मेरे को लग रहा है पिला रही है। शिंग शिंग भाई, जी यार, जी चल रहा है मैच। लॉल जहर कर रहे हैं भाई, absolute guillotine of a maneuver there. They get the KO right back the other way. They're trying to close out S4L for the full team wipe. Can Mame do it in time? They're going to go for the double stomp. Can they get it before the tree comes up? Nope. All 5 pips are not flanked out. Trevenant is back. Mame trying to score. Now, obviously, at this point, T2 is just asserting their dominance right here. They had an amazing match, and these two teams are kind of just brawling around right now. Absolutely. And important to note, we didn't see them too much on the engages there when Supercell was on Sing instead of rollout, and that's an important Mame OP bhai, sound from boosted ages, ASMR bhai. Koi na yaar, well played to both teams. Big win and dominant performance at that Zapdos. I would say that was extremely No show का तो no show कर दिया। नहीं यार, both teams well played यार। I think वो AG यूनिट unnecessary था। ब्लॉसम का ट्रेव यूनिट भी थोड़ा अंडर हो गया, कोई कुछ सरेना ने ऊपर उठा दिया ना एजी को, तो उसका अल्ट भी इम्पैक्ट नहीं दिया। एक मिनट बढ़ लगा उस ट्रेव का। एजी खेल गया भाई, एजी ही खेल रहे हैं। We've got Takashima here, the blissing with 12 assists. I think I know where those assists were. Yep, right into Mame. That's Takashima's job, is sticking to Mame like glue and making sure they never go down. We see 106,000 damage from Mame. Yeah, what a huge round here for T2. They are that much closer to moving forward in our tournament, and no show is that much closer. अरे जो वहाँ खेल रहा है उनका क्या हो रहा होगा? Might by win finals. इसके बाद I think winners finals होगा इस मैच के बाद, then losers finals and losers semi-finals and losers finals. अभी शेड्यूल आएगा दोस्त, अभी शेड्यूल आएगा थोड़े टाइम में, पहले ये मैच हो जाए। मामे MVP भाई, लेट्स गो। Got ruined, working through. This is a good little push. This is where they get through the KOs. I mean, they're trying to send Tachi Plus, trying to hold it down. They're under-leveled, they're not evolved, and they're in front of 2 big Pokemon that are willing to stop I think 6 or 8 PM में से कुछ। मामे और ओवरलॉर्ड चाहिए बस, ठीक है यार, दिख जाएगा ओवरलॉर्ड। They were over-leveled the entire time.
always comeback चाहिए भाई, comeback ahead of चाहिए. their counterpart Santachi, and that was just so difficult for No Show to deal with. That's without a doubt. No Show getting themselves a courtesy rotom here as they're sending. मैं उतना ड्रैगन से स्टील का था. ठीक है भाई. and they buy a lot of real estate here. ग्रैंड फाइनल आज सब आज होगा दोस्त, सब मैचेस आज ही खत्म हैं. Extremely close throughout this match as we see T2 putting some points on the board and securing this stretch. Yeah, and then diving all over Blossom, and of course they take all the bodies here, convert on Zapdos, and it's easy select. Boom. And yeah, लॉल भाई इधर चिल दिया. Again, at this point, the match was pretty much set to go, and they were just moving around, showing them that they. Oh, बोला 92 मैम लुका उस तरह दिखते हैं भाई, दिखते हैं. T2 ने कमबैक किया. यप ये ठीक है यार, एम्बलम लगा के खेल रहे हैं यार. 93 Eos energy deposited, a great showing by them. And their team really delivered to give them the opportunity to take over. Now the question is, how is No Show going to deal with this? What are they going to do to deal with Mame? Because I think they have a Mame problem. If this player gets fed, if they get enough experience, show us emblems. Yeah, so they went to the tree with Blossom. And bro, emblems are banned. Key to success. I mean, there's plenty other tools you can. Emblems are in rank only as of now. Tournament mode में emblems included ही नहीं है, तो emblems नहीं use हो रहे हैं. ये समझ लो पहले. But Blossom, second match. चलो guys. Is this tree, and they need to just get their roots deep into the ground. सेम कॉम दिख रहा है T2 की साइड से तो, बट ऑन द अदर हैंड नो शो भी सेम कॉम दिख रहा है. No Show heading in with the same team. Same teams guys, let's go. अभी गेम से वर्ल्ड चैंपियनशिप का ऑप्शन हटने वाला है. टूर्नामेंट मोड तो नहीं हट, आई थिंक उसका नाम चेंज हो जाएगा, रीनेम होगा. रीनेम होगा. पिपलप पड़ा है यार, कितना क्यूट लग रहा है यार पिपलप. Well, I mean, I think पिपलप कितना क्यूट लग रहा है गाइस. भाई इसको एम भी चाहिए लेकिन ठीक है यार. Yeah, you don't want to be अभी गेम से वर्ल्ड चैंपियनशिप. अरे पंग भाई हेलो. ये मुझे स्पैम चालू है क्या? मैं तो थक गया यार. अभी पता नहीं कितने घंटे और स्ट्रीम चलेगी. एनर्जी एम्पलीफायर यप ऑलमोस्ट स्टार्ट से चल रहा है. ऑलमोस्ट स्टार्ट से चल रहा है एनर्जी एम्पलीफायर जी. और ऑब्जेक्टिव पे अल्ट आ रहे हैं ना, हर एक मिनट के अंदर अल्ट आ रहे हैं यार. ऑब्जेक्टिव छोड़. चलो गाइस सेकंड मैच बस T2 वर्सेस नो शो. जापान वर्सेस कोरिया स्टार्टेड. चलो भाई शहर देखते हैं. तब तक आप जरा 400 लाइक्स करें यार, स्ट्रीम को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, एंड 5.6 सब्स भी करवा दे यार. स्पेशल सब्स पे गो. लेट्स गो भाई, रिवेंज आएगा, देखते हैं. अर्ली गेम फिर से नो शो आगे जा रही है, पर T2 लेट गेम कमबैक करती है. देखते हैं वो एक मेटा फॉलो होता है इनका. सॉरी मोमेंटम, सॉरी नॉट मेटा. ठीक है यार, और डिश लेके भागोगे भाई. इस बार सांताची अगर फार्म हो गया मामे से तो बेटर है, बिकॉज लास्ट टाइम मामा जी 6 हो गए थे और सांताची 4-5 का घूम रहा था. बच गया. जापान की कौन सी? जापान की T2, कोरिया की नो शो. यार 20 तो नहीं ले सकता कोई क्रैम से ऑलमोस्ट, अगर ढंग से खेले तो. ओ भाई जीजी जीजी हो गया ऊपर तो भाई. नो शो ने जीजी कर दिया. वेल प्लेड भाई. फुल नम शो T2. ओह ये एक्चुअली करते हैं. In fact, T2 sending their Zarina into the central area to make sure they get the experience they need. They know how important it is for Mame to be Zarina and start doing their thing. Blossom seeing that that's going to be an opportunity that they have, and they're trying to take some of that experience. Japanese secret ship is out those. Looks like Mame almost chasing down, and now here in the bottom path. T2 Japanese है, दो टीम आई थी ना जापान से. secret ship out हो गई ग्रुप स्टेजेस में ही. T2 shut down. Not जापान के दो टीम्स थी, T2 एंड secret ship. secret ship ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो गई एंड T2 आगे आ गई. T2 एंड नो शो दोनों ही अपने रेवेनेंट के ग्रुप से हैं एंड फिर से मिली हैं. भाई ब्लॉसम बेचारा यार
picking him up. यार स्नोरलेक्स होता तो बेटर रहता। मैं हूँ गेमर भाई, कुछ नहीं कह सकते यार, एकदम नेल बाइटिंग कंपटीशन है। इस बार मामे थोड़ा सा पैसे हो रहा है यार। ओ भाई बच गया भाई, पर अब सुपर सेल को मार सकता है। नहीं, ताकाशी मैंने फुल हील कर दिया भाई। ये जा सकता है, बच गया। It looks like they slid away while they were asleep. Dupes next. No show can do it. तो हारेंगे तो बहुत सेड होगा। Both teams can do it यार, कुछ भी कह सकते हैं। लेवल ही ऐसा यार, you can't be like के अगर एक टीम 2-0 भी होती है तो भी नहीं कह सकते ना कि स्टॉम्प था। इतना क्लोज जाते हैं दोनों में सारे मैचेस। फुल जोन आउट है भाई, फुल जोन आउट है। मार दिया भाई। नो शो ले गए। उधर मामा जी सेंताची के साथ फाइट कर रहे हैं। भाई क्या टाइम वेस्ट करा रहा है यार, क्या टाइम वेस्ट करा रहा है, क्या टाइम वेस्ट कराया उसने दूर भगाने के लिए। जी जी, ये नौका गोल इसने, एक सेकेंड, क्या जरूरी था क्या नौका गोल मारना? इंडिया की दो भाई, इंडिया की एक टीम कुछ बनाओ यार। उधर रीजन के स्लॉट में इंडिया एज अ कंट्री रीजन कंसीडर किया गया। फुटबॉल कबड्डी का मेरे को नहीं पता दोस्त, मैं इतना फॉलो नहीं करता। गजब करते हैं यार, सपोर्ट मिला, खुश रहो यार। ब्रो निगलेक्टेड रीजन नहीं है दोस्त भाई, तुम एपेक समझ लो, एपेक इतना कंट्रीज आती हैं एपेक में, उनमें 2 स्लॉट मिले हैं। इंडिया एज अ कंसीडर फुल रीजन किया गया और उसको 1 स्लॉट दिया गया है, और तुम इसमें बोल रहे गलत है। फिर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो एपेक को 2 स्लॉट दे, उसी में इंडिया को इंक्लूड करें, फिर तुम बोलोगे इंडिया निगलेक्टेड रीजन है। ये तो फिर कुछ ज्यादा ही है। फुटबॉल मतलब टीटर, ठीक है यार। Yeah, big inflection point here. Mame level 9. However, most of No Show is also level 9. That's true. That is true. No Show's looking good across the board. Oh भाई अल्टी खोल दी मामा जी ने। When you got Mame, I don't know if you need to be looking good across the board. Maybe you just need Mame to be looking good. Big time Unite move. Takashima's in their pocket. They use their Unite move, do tons of damage, but they intelligently भाई फिर घुस गया और फिर निकल गया। जी Takashima's still sitting in their pocket. Here we go, big hyper beam coming in, just pushing him out a little bit, healing it up with the egg. नेपाल का मौका नहीं मिला, डिपेंड करता है दोस्त, कुछ रीजन में गेम नहीं है, इतना मेरे को पता है कि कुछ रीजन में गेम नहीं है। सेकंड रेड आ रहा है, चलो गाइस, पहला तो दोनों नो शो को मिले। 5 seconds until Dreadnought. No one's really ready for it, but Chobo is ready to bring the whole team खुलने वाला है। No Show is about to show. ओ भाई फुल एग्रेसिव अल्ट भाई, एकदम बीच में। Supercell getting right in front of it, trying to put him to sleep, doesn't catch anybody. Aegis slash, shing, getting with the big time engage. Supercell ने अकेला अल्ट खोला। T2's all over Dreadnought though. Can No Show convert and flip on him? Supercell. ओ भाई, but T2's T2 ले भाई, हारुता ले गया यार। They get the KO on Supercell, and Blossom is trying to score in the wake of losing. 40 दे दिया पर इसने, नाइस। भाई T2 की स्टेट नो शो भी फॉलो करी और ऑब्जेक्टिव भी ले रही है, ये सही है यार। भाई वॉलर ने पूरा सस्टेन कर लिया उसका अल्ट यार, ऑलमोस्ट। जी यार, वॉलर ने पूरा यूनाइट सस्टेन कर लिया उसका, ताकि किसी को डैमेज ना पड़े। Yeah, they're going to get that one for free. Tachi going to be responsible for catching that one. As look where the Dragonite is. They're just trying to be, they're trying to do shades of green here. Just be ये पकड़ा गया, अगर ये अल्टी, ओ अल्टी मार रहा है, लो। Pokemon, so much so that they're willing to use their Unite move. They're getting low on HP. Their Hyper Beam did find a mark, but it wasn't enough for a KO. As S4L is getting slashed through, and no way they get out of this. भाई outplayed यार। Getting it done. Tons of pressure, tons of time wasted, and exactly what No Show wanted out of that performance. Wow, S4L actually made it. माँ में फिर घुसा हुआ है यार, पर इस बार पकड़ा जाना चाहिए। ये मुझे क्यों लग रहा है ये S4L मरने सकता है। बच गया। Wow, almost taking down S4L there. Yeah, that Hyper Beam found its mark. It was just an auto attack, not an auto attack, an A press away from getting that. ओ भाई फिर अल्ट खुला है जी का, Big Unite move और टपक गया। Wallon getting the KO there. वॉलन ने नेट खोला नहीं, Pretty good. वॉलन ने थोड़ी खोला। Behind on points. Got stuck on repeat there for a second. Spraggles, thanks for bailing me out. Getting another KO is No Show, and they're looking very impressive here in Mama game 2. on fire, baby. Take a look at Ruin here. I mean, we have not seen Ruin in many of the fights, but already a level
level 13. I think it's been important because they just haven't been participating as much, but they're moving around the entire map, cleaning up every little bit of experience. Now, they're chasing out 3 members of No-Show. Yeah, I mean, No-Show moved ये sound किसकी आ रही है यार इनके feed से? Took them out from under T2's nose, and that experience goes to them. T2 now scavenging to try and find any experience. Zapdos से पहले फुल में वोट कर लो भाई. 2 गोल सुपर सेल के लिए कुछ भी हो सकता है. बाप रे बाप रे ये तो पूरी बारात ले आए, पूरी बारात ले आए भाई. Yeah, the sword catches the back end of a tree push. आरुता फिर पकड़ा गया. थर्ड रेड के लिए टाइम बैक कर देते क्या? कितना ले पाए? Moving down here towards this dreadnought, and you know I got कंट्रोल पर टीटो ले रही है. नहीं पर चलो ब्लॉसम ने थोड़ा रीजन कंट्रोल दिया. लेवल एडवांटेज तो नहीं है यार एक्चुअली में. भाई T2 के बंदे देखो यार 2 लेवल 13, नो-शो का भी 2 लेवल 13 और बाकी सारे 12, 11, 11 इधर 12, 11, 12 बस एक बंदे का लेवल डिफ है और वो भी इतना मैटर नहीं करता. The question is who is going to get that big catch at the start here? Who is going to start this fight? Everyone's looking at each other. We got a little bit of a showdown as Wiggly's singing and trying to run back. मुझे लगा यूनाइट कैंसिल हुआ अभी Teams are pushing back here. We're still not engaging. T2 blinked for a moment. No-Show was willing to go in as Mame sitting behind them now, going to be able to collapse from both sides. No-Show's coming in. That भाई क्रैम push. भाई क्रैम डिलीट हो जाएगा क्या? नहीं Trevenant Unite and the Hoopa Unite comes through as well. They're trying to find some damage. They're trying to push through. Zarina Unite. भाई क्या चल रहा है फाइट में? As the Aegis Last gets KO back on No-Show. Blizzy getting a KO on Dragon. सांताची भाई सांताची नहीं मर जाएगा. And they do get a KO on the Aegis Last, but there's 4 players down because the Cowboy Cram is absolute clean with it. Colt 45. Last hit guys, can Hoopa do it? Players down T2 smothering the bird. Can No-Show is not Hoopa do showing it? their Hoopa just yet. They're looking for a little bit of a steal here. Are they able to get Nope. it? No, they are GG. not. T2 grabs that Zapdos and they might be able to win this Roll on game. mechanics They on need to point, put but these points not in. enough. अरे ये क्या हो रहा है इनकी स्ट्रीम को भाई? What the hell यार? इनकी फीड खराब हो They रही are है. behind right now, but they're going to be up चलो here. 100 GG's points No-Show to that bottom goal. is I think possibly out Waiting guys. for a moment. It looks like they're letting Wigglytuff score in that bottom path, and then Mommy's going to sneak in. ये time buy कर रहा है. Yep, Wigglytuff finally collapsing onto that goal zone. S4L unable to stop them 3 from goals scoring. चाहिए As जीतने Mame के gets लिए. their points माँ in, में मरेगा and नहीं now they're भाई. just माँ में going ना to मर work. रहा. They're going to try and Full stack time up buy those करेगा. damage numbers here. Santachi and company are collapsing on top of them. They Full know time that buy there's भाई. not much GG. time left, and to take down Mame is the key चलो to their guys. success if they want to get back into it. Yeah, Big DB sitting fight too strong यार. Right now, and also just not get KO'd so that they could defend S4 their तो base. full try You know, कर रहा this है. game is close At least score-wise, first but base, yeah, No-Show definitely. is running out of time. Not It's only in GG this guys. tournament, चलो but guys. in this match, they need to score T2 ने here team in fight the में next GG कर 15 दिया seconds. No-Show का. They have the points, 2-0. but they need to win the fights. I don't know if they can Korea put is a out big of the unite for tournament, I Graham. think, The completely. Zarinas are stomping all over the place, and they're just not able to score. Yep, next game is gonna be one of the win this best thing, and ones. No-Show is heading home. Japan keeps their Next tournament game is dreams gonna be the alive best with one. No-Show on the back end of a tough loss and a भाई rough Mame. ये टायरिंग हो रहा है. Wow, what a performance. मामे निंजा है क्या? नहीं दोस्त. Obviously, as we say, you know, highs and lows. The celebration from the team continuing. T2 from which country? Japan The team दोस्त. is going to be heading home here. Big win there. Well played. No-Show यार. Well played. Energized Supercell with the big smile Tension on नहीं their है. face. Let's take a look at the numbers. सही खेले लौंडे. Mame, of course, once again with this Santachi, S4L Bolon, तो वो भाई Blossom. चल सकता था Snowlex यार ऐसे. Indian Trevenant भी तो उतना नहीं चला यार. Snowlex better चल सकता था मेरे ख्याल से. मामे को अंडर फॉर्म रख सकता था Snowlex से. अपना गेम का बैच दिमाग से अपनी टीम हार चुकी है ग्रुप स्टेज में दोस्त. आज आपको इंडिया का मैच नहीं. इंडिया इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट. चलो गाइस, एज अकॉर्डिंग टू द पोल T2 जीत चुकी है. टक्कर तो थी भाई पोल में भी. Love to see it, but Blossom doing tons of good work for No-Show, and I think if they could just चलो भाई, अब अगला मैच जहरा रहेगा गाइस. earlier, they might have been able to find themselves छोटी सी ब्रेक के बाद अगला मैच जहरा आने वाला है. and potentially moving on. Yeah, that's right. Take a look here. I mean, you see the score was so incredibly close. We're going to see some highlights from this match. This was MC Gaming क्यों भाई टेंशन ना लो यार. उनका कोई प्लानिंग था तो होता ना. They were actually winning in this top path, but T2 really smart play sent their Serena into that. मैंने जीतने के बाद वोट किया. ठीक है यार. नेक्स्ट मैच इज गोना बी आई थिंक Renaissance versus Black Hand. Up winner bracket finals. Whoever wins goes into the grand finals, boys. Close that gap
And this was one of those moments where they get a big-time KO. Haruda does their double blade. They're trying to get the Aegis Slash, and them getting that KO specifically, tons of experience. Oh, bhaiya Cindy or Ninja. How is Mame above Santachi once again? And it's just because they are funneling that experience towards their Serena here. Nice secure there by No Show. Yep, great hyper beam. That's exactly what you expect out of S4L, and they delivered again. No Show closing out that goal zone and just backing off as S4L will be one of the best Dragonite in the tournament. Here we go. Nice little fight at Dreadnought here. But Big moment for the Aegis Slash there on T2, putting in some work, but No Show able to clean it up. Black Hand जीतेगा पक्का देखते हैं अनुराग भाई कुछ भी हो सकता है यार everything is possible. To use that, build off that, and of course find themselves a huge Unite move from Graham right here, but they were able to push them out. It's just such a fun Unite move to use against so many multiple. They have to decide, are we moving in? Are we coming out? What are we going to do against this? Yeah, absolutely. Mame caught out, and they're trying to get chased down at this 4L. Hits the hyper beam. T2 versus any होगा अभी अब यप T2 versus now in sport अब शायद नहीं अब शायद RNS versus Black Hand है पहले उसके बाद T2 versus वो होगा मेरे ख्याल से तो if I'm not wrong. Oh भाई we'll all out play Ninja. Let's see. They knew it was over. Yeah, absolutely. And you like just the strategic play of Mame sitting in the grass, waiting for the Wigglytuff, the sturdier Pokemon to get to that outside goal zone so they can just glide in and score easy peasy. Nice big KOs here. Big question, I mean, it's what you would expect. T2 looking incredible right now, moving forward here in this tournament. फाइनल में स्ट्रीम पे ना हो तो बिल्कुल यार मामे भाई मामा जी ओपी यार मामे ओपी सुबह हो गई मामू चलो गाइस वॉच पार्टी पसंद आ रहा हो तो 400 लाइक जल्दी कर देना यार एंड स्टिल 12 सब्स टू 5.6 के जल्दी ठोक दो यार वो लूका या सरीना आई थिंक नॉट स्वॉर्ड अरे अरे कास्टिंग दो गाइस कास्टिंग कजन आ गए That's without a doubt. Japan standing strong, representing their region and pushing forward in this tournament. And we actually have an interview down on the stage. चलो फिर से एक इंटरव्यू आगे गाइस ढिंढोरा का T2 मामा ठीक है भाई You've now made it to the top 4 of our tournament. How does it feel to be one of the few remaining teams in the World Championship? अब कितने मैच बाकी हैं फाइनल से पहले देखो अभी रहता है विनर्स फाइनल्स देन लूजर सेमीफाइनल्स लूजर्स फाइनल्स एंड देन ग्रैंड फाइनल्स और अगर ग्रैंड फाइनल्स में लूजर ब्रैकेट से आई टीम जीतती है तो ग्रैंड फाइनल रीसेट होगा एक पूरा BFF अलग से होगा स्प्रेगल्स एंड अलोलन स्प्रेगल्स यप we are representing all people from Japan, so we'd like to proceed even further. Excellent. Your team composition is truly fantastic. The way your support and defender players work around Mame. How do you coordinate that? 8 matches before grand finals में भी अच्छा full matches हाँ grand final reset पे क्या होगा फिर से बताना अगर देखो लूजर ब्रैकेट वाली टीम जीतती है ग्रैंड फाइनल्स देन ब्रैकेट रीसेट होता है एंड उनका मैच फिर से होता है ऐसा है प्राइस मनी कितना है टोटल ऑफ $500,000 फर्स्ट को शायद $100,000 है इफ आई एम करेक्ट 100,000 के 200 में कोई याद नहीं यार मैं निकलता स्टार्टिंग करना क्या है ब्रो थैंक यू फॉर कमिंग मिलते हैं अगली बार ब्रैकेट रीसेट विनिंग टीम का 100,000 यार भाई थक गया यार टोटल टीम्स कितनी हैं 8 थी दोस्त अब 4 बची हैं ब्रैकेट आगे गाइस ये देखो RNS versus Black Hand, Noun versus T2. Noun versus T2 में loser final में जाएगा अब. Then RNS versus Black Hand में जो हारेगा वो losers finals में, and then there is grand finals. Reset का क्यों नहीं है पता नहीं शायद reset तभी होगा जब वो जीतेंगे ना तो इसलिए उन्होंने रखा है. जहरीला मैच नेक्स्ट सारे मैच जहरीले हैं यार रैंडम गेमिंग पहुंच गई है कुछ भी करो स्टार्टिंग में आ रहे थे अभी पहुंच गए हैं We have so much more coming up here at the Pokemon Unite World Championships. Do not go anywhere. We'll be right back. ब्रेक गेमिंग होने वाली लगता है गाइस अगला मैच अब है ये लो गाइस अगला मैच
ओके सो आई थिंक गाइस अब ये सीन है कि विनर्स फाइनल्स के साथ साथ लूजर सेमीफाइनल्स भी ऑफलाइन होगा। विनर्स फाइनल्स अभी ऑनलाइन होगा और साथ में लूजर सेमीफाइनल्स ऑफलाइन होगा। नॉट टायर्ड रीडिंग चैट, वेरी टायर्ड यार, वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, डोंट वरी। आरएनएस और जब ब्लैक एंड चल रहा होगा आरएनएस वर्सेस तो T2 वर्सेस वो चल रहा होगा, क्या नाम है यार, नाउन्स राइट, T2 वर्सेस नाउन्स चल रहा होगा। Bro, U7 was told me U7 is SCTL, bro. U7 एक independent team थी, then SCTL took us, so we are under SCTL now. तो चलो गाइस, अब T2 वर्सेस नाउन्स ई-स्पोर्ट ऑफलाइन होगा, उनका रिजल्ट हमें बाद में मिलेगा। जीजी हो गया। कास्टिंग करने वालों को क्या है, ये वही ना यार, वही ना हालत हो गई होगी, पर वो तो एक्सपर्ट्स हैं। चलो यार, मैं तो प्रो नूब हूँ। चार 6 लंबा ब्रेक है इस बार गाइस, 6 मिनट का ब्रेक था शायद, 6 कि 7 मिनट का भाई जी हेर। देखते हैं अब क्या होता है। प्रो नूब सही है यार, बिल्कुल। आरएनएस वर्सेस ब्लैक एंड मजा आएगा। यप यप यप, ये BO5 होने वाला है मेरे ख्याल से। विनर फाइनल, लूजर फाइनल, ग्रैंड फाइनल सब BO5 है अब लंबी गेम्स आने वाली हैं। हेलो गोपाल भाई, वेलकम टू स्ट्रीम। चलो चाय पी लो, तब मैं चाय नहीं पीता दोस्त। चलो चलता हूँ, बाय बाय खिलीस दोस्त। अब 3v3 होगा, ठीक है यार। यप 100 के, यप 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 3v3 करना है क्या भाई, ये कर लो। सांस फूल गई मेरे भाई। इमेजिन ग्रैंड फाइनल भी होना है। चुप चुप, सभी टीम से एक पोकेमॉन ले लो बस। मैं वही, प्ले स्टाइल्स अलग है, पोकेमॉन तो ऑलमोस्ट सारे सेम है। ऑलमोस्ट, कंप्लीटली नहीं, ऑलमोस्ट। भाई भाई हालत खराब हो गई है यार। आपको हिंदी मैच से ज्यादा वॉचिंग आ रहा है? अरे भाई हैं, पहले तो काफी थी यार, पहले तो स्टार्टिंग में 200 लोग देख रहे थे। कोई ना, सब थक जाते हैं यार, सब थक जाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। भाई सही चल रहा है वैसे यार, सपोर्ट तो सही है कम्युनिटी का, इट्स गुड। सोचो लास्ट मैच में सेम स्कोर हो जाए, ठीक है यार। T2 हुपा छोड़ रही है। यप यप, आज मेरे अपने में भाई मैं जीत गया, सही है। कांग्रेचुलेशन दोस्त। यस्टरडे का 300 कब मिलेगा? मतलब बोल के भाई, मुझे तो नींद आ गई थी, देखते देखते वापस जगाऊं, स्ट्रीम चल रही थी, ठीक है यार। बोल ब्रो, कौन सा 300 ब्रो? नाइस भाई, विंडो स्नोलेक्स का अंडा खा रहे हैं, व्हाट द फक। लेकिन हिंदी वालों के कमेंटेटर का आवाज बड़ा है इंग्लिश वालों से। आई मीन यार, लेकिन जोश है यार, जोश है पूरा। इंडियंस का जोश अलग होता है यार कास्टिंग में। तो अपने फिक्सर्स भाई, ओशन भाई, सारे यू नो BGMI से वही अब यूनाइट में है। अपने फिनिक्स, क्लैशिंग भाई, देन ब्लोटर भाई नाम था शायद, देन रेवेज, सारा स्टार्ट कैसिंग, स्कैमिंग फ्रॉम प्राइज मनी, ठीक है यार। मुझे भी नींद आई तभी उठ के आया, ठीक है यार। ओशन थोड़ी है अभी कास्टिंग में भाई, ओशन भाई थोड़ी है कास्टिंग में मेरे ख्याल से, यूनाइट की थोड़ी है। ओशन भाई कोको में कास्टिंग कर रहे हैं। यप 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 भाई, ये कब खत्म होगी ब्रेक यार, हालत खराब हो रही है। फ्री में कर थोड़ी ना स्नोलेक्स खेलूंगा। खेल ले यार, खेल लिया करो यार, खेल लिया करो, अच्छा रहता है। आप ही बोले? अरे मैं एज इन लाइक वैसे बोल रहा हूँ, इंडियन कास्टर्स को बोल रहा हूँ, यूनाइट के अकेले नहीं।
भाई क्या वेन्यू है यार, क्या ही वेन्यू है। कल सोलो के भाई टीम की वजह से यार, टीम इट वाज टीम वर्सेस टीम, नॉट प्लेयर वर्सेस प्लेयर मेरे भाई, चिल रहो यार। होल टाइम RNS वर्सेस ब्लैकहेड भाई हाल खराब है यार। This match is gonna be one of the best ever in Pokemon Unite history, guys. So make sure to not miss it. Oh भाई जीजी होने वाला है अब। ये ऐड क्यों आ गई? Dignified. Oh. क्या आ रहा है ये? Welcome to the Polite League. Pokemon Polite League. क्या चल रहा है? Hello, gentlemen. It is a pleasure to see you. अबे क्राउली? My name is Lucy Challenger. अबे I क्राउली? am an expert in British etiquette. I teach the world how to behave in a polite British setting. As you can see today, the nature of your work means that you travel around the world, meeting different people from different cultures and customs. क्राउली भाई बैठे हैं guys. Today we find ourselves. ये बात आज का ऐड क्यों आ रहा है भाई? So it's important that you know how to. ये कॉमेडी इवेंट हुआ होगा guys. देखते हैं सुनते हैं. Following the specific. Sound increase करता हूँ थोड़ी. Okay, gentlemen. So we're going to play a game. This game is what not to do with handshakes. There are 3 rules. The first rule is you cannot blink. The second rule is you cannot look away. The third rule is you cannot break hand contact. If you break a rule, you're out. So, gentlemen, if you like to stand up, look at each other in the eyes, present your hands, hold hands. ये गलत लग रहा है थोड़ा guys. If you blink, you're blinking, you're I think out. we're not sure. हार गए. Is definitely the hardest part. Hardest part. Oh my god, I'm going to blink. Oh my god. He's fighting it. He's fighting it. What do you mean? No contact on the face. भाई इनकी मस्ती चल रही है यार. क्राउली कहाँ है? Are you looking over? As you can see, gentlemen, an extended handshake is very awkward. On to the next segment, which is about how to win gracefully and lose. I'm going to have a bag with emotional stakes within it. I'm going to invite 2 of you up. क्राउली भाई सीन बढ़ा के क्या? So, 2 gentlemen at the end, if you'd like to come. क्राउली आ रहा है शायद अब. Congratulations, नहीं भाई. Thank you. क्राउली नहीं है अभी. Thank you. Okay. And how do you feel about the losing? Oh. How do you feel about losing? कौन पूछता है यार? You seem a bit sad. Yeah, I do look a bit sad. Yeah, a bit sad. Bye. Okay, all right, well done on your win. All right. Yeah, okay, good job. How do you feel about your win today? ये कामिरू ला गया. Easiest game of my life. Oh. It was a walk in the park, actually. Okay, but he lost. वो रहा क्राउली. Are you happy with your win? Yeah, definitely. We already predicted this long. Oh भाई. Yeah, we knew it. निकाल दिया भाई. नहीं बैठा हुआ है. Very happy that he's lost. If you struggle to accept defeat, क्राउली भाई इवेंट करो take यार. time to reflect and think about it, because that will help you come back stronger next time. Thank you, gentlemen. I am delighted to say you have all passed the etiquette training today. I hope these techniques will come in handy next time you find yourself in a formal British setting, or indeed have the pleasure of meeting the Queen. Thank you very much. भाई ये तो क्राउली को दिखाया नहीं यार, ये गलत है यार. ये क्राउली भाई से मांगना पड़ेगा पूछ के यार. Welcome back to the Pokemon Unite World Championships here in London, England. ठीक है यार. We are going to be watching the winners finals match very shortly. That's right. We are in top 4 territory. चालू हो गया भाई top 4 teams. I am joined by the wonderful Zoinks here today to help bring in all of the action. We started with 13 teams yesterday. We narrowed the field to just 8 today. शायद कल हुआ क्राउली भाई का इसलिए आज
दिखाया bracket, and now सेवेज just कामरुल भाई 4 remain as we move on into our winners finals. ठीक है One of the last कल दिया matches था ना in ठीक है our मेरे को कल का upper पता नहीं Two of these teams, they are looking यश भाई fierce. ऐसे कोई Renaissance and कमेंट्स मत करो Blackhand. प्लीज नो Renaissance ऑफेंसिव from कमेंट्स प्लीज the APAC region and Blackhand from North America. Yeah, Renaissance has looked चलो भाई really impressive so लेट्स far सी today. I think आपने really हीरा चुरा putting के रखा on हुआ है display ठीक है for all यार of us that Pokémon Unite is a game that you can play exactly how you want to. Oh, definitely. They have भाई मेरे को players एक सिंगल that म्यूज love लड़की लग रही थी specific भाई Pokemon कल and they love to show off their mastery कंफर्म of करना some. पड़ा Let's take a look at the inner workings of Team Renaissance. Harness be like nothing can stop me. Yep. Kirali भाई सीधा क्वीन से निकलने गए RJ Gaming now has to answer. How am I gonna deal with this pesky team? कौन मीवेस इनका ये मीवेस जो देखो actually गोल्डन हेयर वाला we've been playing together for over 6 months. So actually we've been क्या काला आज doing this जीतेगा since last year. कुछ नहीं बोल सकते भाई कुछ नहीं बोल सकते कुछ नहीं बोल सकते because we worked really hard for the past 6 months. Biggest match before grand finals. I mean, even still the biggest match after grand finals. I think. Playing in front of such a big stage, right? NA versus EU again, यार हर गेम में होता है almost ये. NA versus EU. Yeah, we're quite confident from where we are right GG well played. Winning it all will be a very special moment. If I win first place, I guess I'll be getting using the money to get a Pokemon tattoo on myself, maybe on my. Confirm कैसे किया ये जरा उस डायरेक्शन में ना लेकर जाए तो अच्छा है. I think we will win it all. कराली भाई को ट्रॉफी लग गई थी सर पे सही में क्या आरएनटी के हारने पर क्या कहोगे कुछ नहीं यार एक्सपोजर मिला चलेगा ये आरएनएस वर्सेस आरजे गेमिंग भाई ये भी क्लोज मैचेस थे Yep, Shitid bhai. Some of Renaissance earlier Tribong today. versus I Overlord. one of their players on stage, just absolutely fantastic attitude and कामरुल तो भाई upbeat घूसा मार दे उधर excited to see them make our winners बंदा गिर जाए यार उधर They have been representing their region very well, carving a path through this top 8 Let's go guys. They have been playing Reebongs तो बीनी पहन कर आया यार very interesting Pokemon selections, use of strategies, but they are finding Overlord themselves chill on है the गाड़ी को winner's देखते side हैं of this आज top पता लग 4. जाएगा They're one of the only teams in this tournament that's been leveraging a number of Pokemon Unite powerful चलो guys 400 likes का target है यार 21 to go Gardevoir sure in their share, central stream and like area and so subscribe as far, well, and Venusaur as their secondary attacker. Special attack has been huge. But also, some of the only ranged attackers we've seen मैं in the कामरुल का entirety पर्सन of जानता this हूँ नहीं tournament. Melee attackers definitely dominating this current metagame, but Renaissance has turned Lucario away from now such a देखते thing हैं I am and have found Zapdos their own यार path to success. Yeah, talking about how it's just their comfort picks, and that's what you can do in Pokemon. Play it the way you think is best to play. Well, let's take a look भाई at जल्दी their करो यार opponent's team, Blackhand from चलो North America. 4th place in the AOS Cup, but regional finals, they were first, representing North America with a huge win there. Speaking of winning, that's all they've done since they've gotten तो 500 here. का था ना 2 पहले 400 wins कंप्लीट करे थे inside of 500 the round करेंगे ना मेरे robin, भाई now undefeated into our winners finals today. कामरुल Let's learn a पाउट little bit more भाई about Blackhand. ओ भाई अपने ही ओवरलॉर्ड को सिखाया ना भाई बिल्कुल लेविटेशन भाई चाचा जी का बेटा था बचपन से सिखाया उसको ये क्वालिटी कम हो रही है क्या We're Team Blackhand from North America, and we're excited to compete at Worlds. So we were a brand new team, regionals, pretty new roster. We had only played a few tournaments together prior, but we managed to piece it together for regionals. भाई उधर regulations है भाई कुछ regulations हैं उधर LAN event conduct करने के लिए permissions मिली हैं rules follow होंगे तभी यार health rules हैं कोरोना अभी भी है भाई कोरोना गया नहीं है यार अभी भी लिंगर कर रहा है हर जगह यार कोरोना आपने इस बार क्वालिफाइड रह गया बोला तो भाई आरएनटी से आ रहे हैं हम आरएनटी से एज इन लाइक सॉरी एसेंशियल से आ गए एंड देन वी लॉस्ट टू रिपर्स not qualified they are your North American regional finals champions. ठीक है यार टगमी भाई एक बैड न्यूज़ भैया मैं Blackhand has looked amazing in this tournament, like you said, खेलने का तो अभी कुछ नहीं भाई what it looks like to me, the amount of preparation they have put into this tournament is paying off. Every match they are heading into, they are adapting their composition slightly for their opponents they're running into. Great adaptation, और ये Zapdos यार
Yeah, Black Hand, as one of their players mentioned, not playing together nearly as long as Renaissance has been, but they've been putting in the work to practice and be the best that they can be here at the Pokemon Unite World Championships. अभी सब गेम्स नहीं है दोस्त, अभी नहीं खेल सकते भाई, अभी वॉच पार्टी चल रहा है, पोल चल रहा है दोस्त, RNS से 50% एंड वेल 50-50 चल रहा है। मितेश भाई मुझसे करके खेलो तुम, ये कर लो यार, आप किसके साथ हो? दोनों के साथ ही हूँ यार, दोनों ही अच्छी टीम्स हैं, कुछ नहीं कह सकता यार, इतना नेल बैटिंग है तो किसको आप ग्रैंड फाइनल कंसीडर कर सकते हो? इतना टफ कंपटीशन है। T2 और नोशन में कौन जीता? T2 दोस्त नहीं जीते तो ओवरलॉर्ड को इनके ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है यार। गैस मारो कौन जीतेगा? नहीं मर सकता यार, कुछ नहीं गैस मार सकता। जरा भाई वॉच पार्टी करने दो यार, अरे को An Overlord, a player fully capable of doing something like in this match. Now, Black Hand is going up against Apex Renaissance, a team that plays a lot of Pokemon that Black Hand is not much official practice against, at least not in official tournaments in compositions like Daniel भाई से नस्तर लगवा देते हैं, दूसरी टीम से परसेंटेज ले लेंगे, क्या बोलते हो गाइस? Daniel भाई से नाम बुलवा लेते हैं टीम का, दूसरी टीम हमें परसेंटेज दे देगी। जी We've seen Black Hand background sound कम करो क्या? रुको over the course of this tournament. I'm going to be interested to see what they choose at the draft. No chat game पे focus भाई। Renaissance, because Renaissance chat ने तो थकाया है मेरे को। Locked into what they know. They've been playing this Gardevoir and this Venusaur game in and game out, and it's been working for them. But Black Hand's going to know भाई घुसा दे कैमरा। That's true. The intel is definitely there for Black Hand to latch कोई ना onto. डैंगर को बोलने बोलो Black Hand। ठीक है, it is fine. This is winners bracket finals, upper bracket finals समझ लो। It's going to be a really interesting match. I mean, winners finals. Both of these teams have worked very hard. जरा भाई सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी भाई के इंटरव्यू में आ रहे हैं। अरे भाई end game starts now. Yep, this is the end game. Top 4 teams of the tournament are here finally. The winner of this match is going to be in the best ठीक है, सब मिलकर position to यार, take away ठीक है यार। first place in $100,000 मेरा नेट दम तोड़ने वाला है। अरे भाई फाइनल चल रहा है, अपर ब्रैकेट फाइनल्स बेस्ट भी भाई, अपर ब्रैकेट विनर ब्रैकेट फाइनल्स best of 3, it's best of 5. Best of 5 है by the way। From the upper bracket, you have to lose not 1 but 2 best of 5 matches to not be the champion. आज एक्स बहुत प्रेशर में खिलाई है, अब काश के बाद बड़ा मजा आएगा। अभी तुम बोल रहे हो ज्यादा कम है यार, followed by another best of 5. That's not a हल्का सा marathon, बढ़ा that is a देता हूँ। journey around the entire world. So yes, you definitely want to put yourself in pole position for a tournament championship here in the winners finals is your key to doing so. Now, the loser चलो of भाई this match BO5 ये तो रात तक चलेगा। देखो अभी टोटल एक BO5, देन अगेन एक ऑफलाइन मैच चल रहा है सेमीफाइनल्स का, लूजर ब्रैकेट का, देन लूजर फाइनल्स BO5 होगा, देन ग्रैंड फाइनल्स BO5। एंड अगर लूजर ब्रैकेट से टीम जीती, लूजर ब्रैकेट से टीम जीती तो ग्रैंड फाइनल्स रीसेट होगा, एक और BO5, मैक्सिमम 4 BO5 पेंडिंग है अभी, मैक्सिमम। चलो गाइस खाना आ गया है, कड़ा और पूरी खाओगे क्या? मैं सोच रहा ग्रैंड फाइनल्स सेज द ब्रैकेट सिस्टम वेयर द लूजर ब्रैकेट सिस्टम। यप आई मीन उनको भी चांस मिला ना विनर ब्रैकेट को, जो लूजर ब्रैकेट में नहीं गए हैं। ओवरलॉर्ड ने मास्क चेंज कर दिया, टूट गया होगा यार, या अनकंफर्टेबल होगा, या फिर लकी मास्क भी हो सकता है। हाँ खाएंगे ना भाई, आ जाओ यार। For what our first worlds would look like. Speaking of stacked, this tournament's been stacked from regions all 10 PM से पहले हो over the जाएगा यार। world. We really didn't have a feel going into this which regions were stronger or worse than others, and we now have a top 4 with teams from भारत पे कर दे 4 पूरी गंदे different इंसान, ठीक regions है यार। being represented. Yes, many different regions. चलो many भाई। different metas that we're going to see on display. Let's see. सिंडरेल दिख रहा है क्या? Renaissance decides to pick डबल their एक्सपी शेयर ऑन साइड ऑफ choices. रेनेसांस। Black Hand is locking in a few interesting selections. ओए हेलो, उल्टा है ये तो। ब्लैक एंड लेफ्ट पे और हाँ ठीक हुआ। ब्लैक हैंड की तरफ से सिंड्रेस गाइस, डबल एक्सपी शेयर फ्रॉम ब्लैक हैंड एंड उधर से भी डबल एक्सपी शेयर फ्रॉम रेनेसांस। सिंडी दिख रहा है गाइस, ब्लैक हैंड आई थिंक समवट दे आर ट्राइंग टू गाड़ी।
quite embarrassing in a lot of instances. Yeah, Jungle Book. देखते हैं कितना काम करते हैं. Phenomenal Cinderace, very well known for that Pokemon Hype selection. by hype. I mean, that was definitely जिराफ भाई तो एकदम खुश हो गए. they rose to fame in the North America region upon Cinderace. अपने करसड़ भाई भी खुश हो गए होंगे. Pokemon in the metagame at the time, but Jungle Book can still Not for Cinderace, I think. Offline match में Cinderace lose किया है. Jungle Book playing a mix of both the top path and Dragonite. Largely in the ये कामरू को देख के लगता है गाड़ी में डिस्प्ले के सोलो में खेल के औकात याद आ जाती है. Into a competition where they feel like their star Pokemon. वो लोग लुका पे आ गया. अच्छा है ना? We were talking about if Blackhand was prepared enough or worried about the compositions that Renaissance may bring out, but it seems like Jungle Book may get to crack their fingers. EU versus NA भाई, let's go यार. The never-ending matchups. EU versus NA. The enemy of Renaissance. Ult cancel आएगा क्या? Hopefully not. It's going to be an important selection, and we'll see how it pays off for Blackhand. Well, I think it's also important to acknowledge though that while Cinderace is going to be चलो guys, into the Gardevoir, I think it does इसको अपना ग्रैंड फाइनल समझ लो वर्ड्स का यार. चाहे है नहीं पर समझ सकते हो. Renaissance has also been running. Venusaur ट्रिपल ऑलराउंडर कहाँ गायब हो गया? a little bit more durable. NA टीम्स नहीं यूज करती उसको यार. On top of Cinderace, and more importantly, keep up when it tries to blaze kick away thanks to that pedal dance. Could prove troublesome. Yeah, Yang is a phenom on that Venusaur as well. Jungle Book का फेवरेट सिंडर सही है यार. This entire tournament and have definitely found डुकल शील्ड जगह वो गाड़ी को एक बार क्लोज गया तो Venusaur running after your Cinderace, you're right, but when it's क्लोज गया तो by Yang, एंड अगर क्लोज जाता भी है तो भी more afraid than the normal वे आउट है कमरू के पास. This could, you know, potentially be the key to the success that Renaissance has been having. The weaknesses that Gardevoir can have, such as into something like Cinderace, जंगल बुक गोल्ड बेस इंडी है क्या? हाँ ये. By a character like Venusaur. That makes a lot of sense. Renaissance covering their own weaknesses, which makes me Apex think versus NA. has Blackhand also done the counter Actually, move in हाँ that sorry, situation? Apex versus. What is going to be covering Apex versus NA. Sorry guys, Cinderace EU versus NA कर दिया when a मैंने. Venusaur is charging forward? Sorry. I have to look towards Slashcan or even शुरू कब होगा? मैं भी जाना चाहता हूँ. melee attacker they're choosing to use. Yeah, Machamp, a character that's capable of dealing large amounts of damages very quickly. It's dynamic. OPAllMight इसमें भी रैंडम Pokémon चेंज करता है. ठीक है यार. ठीक है यार. ये कर लो. Out of a situation where the Venusaur is chasing them down. Yes, exactly. मेरे को क्यों लग रहा है पिक फेज फिर से स्टार्ट होने वाला है. जितना टाइम लग रहा है ड्राफ्ट फिर से स्टार्ट होने वाला है ऐसा लग रहा है. That may be your best bet to KO it before it really becomes dangerous for Jungle Book to be in the fight. Now we'll have to see here exactly how they approach. एनी टीम रहता शायद है हाँ शायद हाँ. And more importantly, where they Yep. फिर से स्टार्ट होने वाला पिक गाइस. लेट्स गो. Gardevoir in the central area. However, Venusaur is another character that can Restart very easily take that spot to scale up. गलती की है तो 10 मेंबरशिप गिफ्ट कर दो. मैं नहीं कर सकता यार. Sure, when we've मेरे seen पे ऑप्शन ही Renaissance नहीं play है. in this tournament on broadcast so far, Kamira has found themselves, like you said, in the central area at the beginning. But yes, they are willing to give some of that experience आप नारुतो देखते हो when दिखता required. I mean, थोड़ा बहुत देखा Kamira has यार been finding completely नहीं. experience in a lot of places, not just their own wild Pokemon, but Black certainly and जिराफ को बुला लेके finding maybe many KOs. This player has been putting up देख a सकते हैं. highlight reel on the Pokemon. Cinder's wrong pick तो नहीं था. Gardevoir's Psyshock when it comes out of that central area at level 5. Next towards OPAllMight Lucario. ठीक है यार. Wolf Snorlax. Pushes in Pokemon Unite right now. Not only do the subsequently timed shocks जिराफ भाई की टीम जा रही है next time. Let's go यार. Full We've seen a support. lot of melee characters in this drafts so far today. Any melees that Chat में full on cheering भाई. चलो guys pick phase वापस. Cinderace वापस दिख रहा है हमें. I think same picks ही हैं. Yep, same picks ही हैं. बस एक restart हुआ था. Game number 1 of our winners finals in our first ever. Wait, this is BO3. Chance for Pokemon Unite. BO5 नहीं है guys. BO3 है winner finals. The hell. So I think loser final भी BO3 होगा. We're waiting for Renaissance. Ooh, Jungle Book reconsidering the Cinderace. Oh no. Okay, no. All right. मेरा का BO5 करेंगे. My bad guys. BO3 है. So दो BO3s then max to max दो BO5 उसके बाद एक और रीसेट होगा. रीसेट नहीं रीसेट एक बार अगर लूजर ब्रैकेट की टीम जीती तो. जिराफ कौन है? यस भाई कोई ना टेंशन नहीं. कोई नहीं भाई. You know, noteworthy to talk about Jungle Book Cinderace a little bit more. The item loadout that they had selected on that screen there, तक जाएगा possibly भाई. They were notably ठंडे यार मत कर यार. Scope Lens and Razor Claw. वापस रीस्टार्ट नहीं लोडिंग हो रहा है शायद अब तो. थम्स अप दिया था उन्होंने. I assume we are talking about that Cinderace on Jungle Book. Yep, I think चालू हो गया है. is the auto critical hit
attack. वो टीम्स खड़ी क्यों So हैं? when you अच्छा are नहीं, landing ऑफिशियल्स हैं that, वो and तो. any boost to your critical hit damage that you have राष्ट्र भी हंस via दिया those टाइमिंग तो held है items भाई. could be a huge asset. Yeah, not only that, but I think Cinderace start is हो a रहा है. character where its short dash comes up on a 5-second cooldown. कास्टर्स and ये Razor Claw ऑडियंस gives के लिए you स्क्रीन्स additional कहाँ पे damage हैं? every ऑडियंस के लिए time you स्क्रीन press कहाँ one पे of लगी your हुई है skills, मैच and then देखने use को? an auto attack afterwards. So when you're pushing your buttons frequently, as Cinderace is known to do as it dashes around नहीं the दोस्त battle, आरएनटी ही you थी get इंडिया की तरफ extra से. damage from that Razor Claw passive. Flame charge is a ठीक great है यार, मेरा combined लोकल इतना ability. फेमस है क्या? More chances स्पीड at इतना रखता हूँ crits, and मैं. of course, Razor Claw procs every time you're moving around with it. Very, भाई very चालू कर दो important. यार. Look, leveraging 3 damaging items. ब्रेकर which is कहाँ very है? common भाई when you कास्टर्स का find ब्रेक होता है हर yourself मैच के in the बिटवीन. central area. You give up सेम कास्टर नहीं रखते वो. some things like a कास्टर्स को भी ब्रेक focus चाहिए ना band or बीच a में buddy भाई. barrier in exchange for ऑडियंस को भी वाइट टीवी देखना होगा क्या? The best defense is क्या बात करते हो यार? solid offense. Yeah, joints. If I the have to entire opposing team is knocked Bracket out, you don't दिखाएंगे. need any survivability. भाई. That is true. That is true. I think the confidence play is भाई. very important. Let's take a look at our bracket and how it's been playing out the story so far. We've talked a lot about our Final Four, but we unfortunately sent a few teams home now. I think notably, we only have one representation from each region now. So North America, APAC, and Japan, and Europe all had one team go out already. We have Blackhand and Renaissance, the match that we have upcoming here in our winners bracket, but in the lower bracket we have two excellent teams for the championship. Well, Nouns Esports and T2 will be facing off in the losers semifinals following this winners finals. उसका Then full there will be a name क्या है गेम आईडी? पता नहीं यार. आईएक्स बार हो गई. यस दोस्त, आईएक्स इज आउट. नाउन्स Esports से हार गई आईएक्स. अभी जो बाहर हो चुकी है टीम. अरे यार ब्रैकेट देखना था. कोई ना. T2 वर्सेस नाउन नहीं दिख रहा है. नहीं दिखेगा. बहुत लेट हो जाएगा भाई. T2 वर्सेस RYZEN लूजर कुछ नहीं पता भाई. कुछ नहीं पता. Or if you're coming in from the upper bracket, as one of these teams is going to be doing, you only have to win 3 matches, and you get 2 chances to win 3 games inside of a match. So you're saying if I win now, I win later too? It is. Winning more early means you have to win even less later. चलो भाई, Right, hopefully. well, I hope both of those teams have learned that life lesson as well, Jeff. We भाई are कास्टर्स का headed मुंह नहीं into देखना. game number 1 for real this time. Blackhand भाई उन versus कास्टर्स को भी पता है भाई. Curios and Overlord both locking into these melee चलो guys, finally picks confirm. stacking items. I'm interested to see अब restart हुआ तो मैं stream बंद कर रहा हूँ. We're going to see a support plus an all-rounder. आपके CPU को हाथ लगाओ. Bottom for Blackhand अच्छा. while Renaissance continues to lock in the Temperature तो ठीक है, nothing hot. all tournament. I'm interested to see about Slash's Blissey play. EU versus Japan and NA versus Japan थोड़ी. Hello. Battle here for game number 1 does not include a focus. This is NA versus APAC, Singapore, I think, right? And a score bro, I was scrolling through phone. What did you find, bro? Is this the third time? Yep. Bottom goal zones a little bit early with third smaller time, bro. scores than you would expect, just to guarantee that speed flux Restarting. goes away. Yeah, that score shield. अब शायद restart नहीं है guys. बंदे देख रहे हैं. Yeah, finally. Pushing you off of their goal zones. We see that Sai, the Gardevoir entering the central area. That will be Sai shocking. Let's go, Blackhand, Renaissance. Don't you worry about it, Jeff. Right now, this bottom fight already starting off a little bit here. जोगिंदर बॉट नाइस है यार, फार्म ले सकता है वो. And Curios, a match for the ages. Now, notable here in the bottom path, Curios is going to have a little bit of a more difficult time getting those attack weight stacks in to start. So we're probably going to need to see Blackhand prioritize getting them those hits later. Huge knockout. Speaking of hits here, as they get not only a last hit, but a knockout hit as well. ने auto attack is so powerful. Not only does it do a big burst of damage, but it also stuns. First time, not first time I think. Second match है Cindy का. Well, final 10 MB. अरे भाई. अरे भाई. टाइडर को कैसे मारे हैं? उसका ancient power use होने दो, उसके बाद engage कर दो दोस्त. या उसको CC कर दो. Cold tackle, blaze kick, Snorlax का heavy stamina block, Wigglytuff. चलो, decent farm मिला. Cinder skin तो use कर रहा है चलो. And immediately you're going to be returning to base. You know what doesn't struggle at that first set of bees? The Gardevoir that has one of the most powerful नीचे जा रहा है Lucario. level 5 mark. They secure a वीना control farm रखने का plan है मेरे ख्याल से. in the bottom path. They are almost level 7 before they even start their second rotation here. Amiro is getting fed at the start of this game. Curios तो पिट रहा है. That side shock along with Overlord. They could not chase that KO in the Yang. They had to bail and avoid that ever-present side shock threat. Guardian gonna hit definitely. Final evolution of
Gardevoir at level 8, which they will easily have after they clear the central area here. We see Jungle Book clearing their center a little bit quicker since they left the top path, and they are looking for their level 7 still, only 6.5. Overlord has an interesting choice here on Lucario in terms of moveset. Power Punch and Extreme Speed, both great options for this Pokemon. They need to counter that rotation. Different reasons for you to be able to select them. Vinna bhi साथ हो जाना चाहिए. Vinna will reach level 7, I think. Unite move to secure, and level 8 possibly. I don't know if you need the power up punch, but it's up to Overlord to choose. Man, Venusaur here in the bottom path for Yang, already at level 6 and 3/4 here. They are easily going to be 7 before this first Dreadnought, unlocking that ever important GG चल रहा है ये तो. Cinder's bottom दिख गया उनको. Kami bottom आ रहा है. Yep, yeah, I think ये भी तो ये लेकर जाएंगे. RNS भी लेकर जाएंगे. GG, सारी भी लेकर. कर ही नहीं सकता कोई गाड़ी. After getting a last hit on one of those bees, and they are going to trickle into a Unite move. देखो movement चाहिए आपको, perfect movement use करना पड़ेगा. Unite usually full HP and 70% HP पे करो. Unless बड़ी barrier है आप पे. रोहित जी बोला तो मैंने यार, अभी फिर से आपको बोलना पड़ेगा क्या? अभी बोला तो थोड़े टाइम पहले. भाई कामिरुल कार्ड. ओ भाई हुपा ले गया. Bye. Even bother to show up, not thinking that they had a chance in this team fight, and they didn't. But invade हो गया पर उधर. But still, Dreadnought मिला पर farm गया. ओ तेरी. लुका चढ़ सकता है. Overlord ने ult use कर दिया. Bye. They're looking for more. They finally go down. A collapse from Renaissance shuts down the phenom of Overlord. Overlord was one reset away there from a full team wipe, I think, by a भाई एक reset और GG हो जाता उधर पूरी team fight का. एक reset और बस. And one loud gasp for sure. This game all of a sudden got a little bit closer. One goal. Cinder's 11 hit कर रहा है. Either side, but this first goal भी कर दिए. Goals देखो. Jungle Book, we're like, look, we're gonna lose the team fight if we all show up. We're not even gonna try. तो भाई फिर से इनकी. पर matchup अच्छा combination है यार. If you don't get it, that was also a fine outcome. Counter कर सकता है Vinability को. Instead, by the way, the enemy central Overlord ये can't stream पे रोज करता है भाई. Some of those Bufalon and Ludicolo to get those buffs for themselves. हम भी करते हैं can't stream पे. Deny it away from Chimera. Uno reverse वाला पर. They have the level advantage over the enemy central area player. Yeah, it is worth noting that level to level we're pretty even overall. Small edge to Jungle Book, but that भाई क्या चल रहा है भाई? बैठा हुआ है कब से? Can back up to parity when they were behind in the early game. Overlord second red आते हुए. Wanting to get these 40 points in. They do have Hoopa तो दोनों teams पे है चलो. Hoopa is probably using the teleport and they do escape. Now they're going to go in for 40 points. Hyperspace hole is on cooldown. No one's going to be able to stop this 40. Look at the incredible patience there from Overlord. Like, yep, you take that highway down. I'm going to go ahead and get my चलो भाई Vinna damage तो खा रहा है. Hoopa का bait out करवा रहे हैं पूरा. Rings unbound and we have an all-out brawl here in the bottom. इनका Hoopa पूरा भाग कर रहा है भाई Machamp. ओ भाई Machamp बिना ult के गया. Overlord dead. Last hit भी इसको मिला. Cinder का ult से मिला नहीं. GG. भाई RNS ने team fight दिखा दी. RNS ने team fight दिखा दी. Definitely feels like every team fight has gone in the way of Renaissance. If Blackhand had stolen that first objective in a fortunate manner, oh, this is a huge catcher. I cannot believe that Gardevoir stepped up there without protection. Chimera, you do not belong there, and anybody who knows better than that is Blackhand. They collapsed and punished that huge mistake right there. A close comment on rebounds. अरे unstoppable heal था उसका शायद. Full heal. On Jungle Book. Did they go faint? I didn't catch that. Full Are heal था they क्या? fainting? I suppose that's very useful into something like Psyshock or Moonblast. Okay, we'll have to keep an eye on that. I don't know that for Full sure. heal था क्या faint था? And dodged a Serena Unite move. Great play there from Jungle Book, and they were able to secure the Rotom as well. We see the Rotom getting pushed off very quickly here by OPAllMight खेल रहेगा. ठीक है Renaissance. यार. Levels still looking pretty good across the board on both teams. Honestly, this game is very close, both in score and experience currently. And the experience has been found in completely different Cinder ways. 13 already हो चुका है. Overlord looking for a little bit of split push and scores. Jungle Book trying देखना to find a पड़ेगा. bit of output Full while heal है they I can, think but yeah. Renaissance has been putting the pressure. Overlord को थोड़ा सा Overlord is pressure going में. to use every dash reset available to them to get out of danger. He's Rebounds full cannot heal chase yeah. that KO.
We see a push in the bottom path by Jungle Book, forcing Chimera out. The Psyshock's going to do what it can, but a couple of points do go in here from the Slash's score shield actually coming into play there, a little bit blocking that damage there. Not going to help them on the retreat, but those scores are going in. ऊपर फिर स्कोर यार. अरे. Huge chest by the Watch party, yes दोस्त. Did that launch pad miss getting that score stopped? Overlord मरेगा. That tier 2 goal zone is left on almost no HP, but the chase on the Overlord pays off. Renaissance finds that almost 100 का lead है Black Hand पे, but level lead अब Cinder का kill मिल गया एक तो उनको भाई. Cinder का kill भी मिला. Kamrul 13 का हो गया. चलो अब level defeat कम है. Yang भी बिना 13 है तो जीत दी. अरे वो पता नहीं यार क्षितिज भाई अलग-अलग है. अलग-अलग खेल. Their team composition needs to push and make room for Camiro, so they are safe. On the other hand, we need to see Curio step up on this champ and find a way in to shut down this Gardevoir. They are the best asset to do so. एकदम center team fight भाई. पूरा एकदम Yang center is team level fight. 14 and every character on Renaissance has hit their important break point while both Hoopa and Blissey are still missing. Cinder stop bush में यार meta है क्या Cinder stop bush का कुछ? Capture Blackhand right now. 50 going in for Overlord. They're looking for that full 50 Hunger रोक दिया. Shadow Ball stops them. A lot of time wasted. They're going to keep it up, but the rest of their team is showing focus. Yeah, it Overlord looks like Renaissance is potentially किया. starting the Zapdos, looking to draw Blackhand in, but Blackhand is not taking the bait here. They are going to दो force scores, potentially a score full हुआ है. flip situation with this kiting away. भाई क्या fight चल रही है. Even if they do lose the Zapdos, भाई they Yang. can charge in and score themselves. Blissey is used on Yang. They're under the Hoopa, but now भाई Cinder बिना ult के. Blissey बिना ult के. This is huge. Blissey is down and neither of गाड़ी का थोड़ा underwhelming था. Renaissance is absolutely dominating this team fight. भाई लुका गया. Only match है. Curios is now finally here to fight. Close combat. Oh! No way! Blackhand is still in this game. They are all close combat से ले गया respawns now. There's no way Renaissance is going to get this push. Slash can stop this 50. They're मुश्किल going लग to रहा है. break the top tier goal zone on the top path. No problem. But Jungle Book is going to be there for the rest of the defense. Blackhand still is in the lead. We have time for a push here, but it's going to be very, very short. They need to यार run ये this BT हो outside गई ना. goal. ये The BT Blissey हो is going to get in. गई. Can they catch this Blissey and get a 4v5 push here? जीतना इनको. They're down over 100 points now. Over 100 points, Unless इसको 40 मार seconds पाएं. left in the game, and no Unite moves to speak of. Knocking out 4v4 Slash is a start, उन पे Unite but it is moves only हैं. a start to a long, long journey for Renaissance. भाई उन्होंने डैमेज दे दिया यार. वेट कर लेते क्लोज कॉम्बैट का. 30 seconds left. Get on गोल this point चाहिए and यार. get पूरा these एक गोल से knockouts ज़्यादा if चाहिए you're going to a actually. game 2. Down a game. Jungle Book hadn't even united yet. Blazing bicycle kick finally lands and actually does a decent burst of damage. It's pushing them away. Yang is going in. Camiro is still full health and dealing a ton of damage themselves. But Jungle Book is a difference maker, knocking them out Solo one by clutch कर गया बंदा one. यार. A defensive play from Blackhand. We're done. It's over. Blackhand Solo is clutch going कर to गया यार. take Solo one here clutch. in our winners final against Renaissance. Curios, you भाई. deserve a cape, a crown, and whatever else that क्लोज कॉम्बैट से ले गया भाई. थोड़ा सा वेट कर लेते ये. in the final seconds of that game. You see him popping off on camera right now. जोगिंदर What ओपी भाई. amazing play from that player to give Blackhand a game number 1 win. लक पे गई है गेम तो यार. Team Blackhand right now, you gotta feel like you stole Blissey तो मर गई ना. उस पे आया था ही नहीं. the knockouts in this game. यार ये गलत हुआ यार. A handful of them. जेन्युइनली बुरा लगा यार आरएन इसके लिए. Dominated every team fight. They even dominated the Zapdos fight. So they did. क्या ही करें यार. Renaissance shut them down at every turn. You saw Blackhand trying to keep that score up. That Kamrul seemed to be their साथ में most भाई. important incentive heading into the Comeback हो game. जाए A बस. few back caps in a couple of directions, and look at the scoreline. It ended यार. up paying off for them. And of course, thanks to a heroic play from Curios. Zap के बाद Blissey ने स्कोर भी किया ना. On the Renaissance side, you saw the entire team फाइनल में मीटिंग हुई stop क्या hitting देखते हैं. Zapdos when that Machamp walked up, and perhaps they're just supposed to go in and say, the 4 of us are certainly going to get this, not the Machamp. Yeah, right. 4v1 would be the situation. Whether it was a mistake or a fumble, Curios capitalizes, and Blackhand is currently up 1-0 in our series. Take a look at our wonderful players here. They have to be super excited as we head on into some highlights here
from the game. Overlord again, like next world OPAllMight match time. ठीक है यार, again and again, ठीक है यार, these extra points. ऐसे steal करेगा, ठीक है यार. Renaissance dominated this dreadnought, but Blackhand basically just didn't show up. Cigarettes cleared the central area, and Overlord got extra experience top. क्या ही करें? Objective Secures definitely kept Blackhand in the game, allowing them to implement this strategy of splitting up their team and getting value elsewhere. Elo, another hero in this game, that first dreadnought, a great statistic to win the game. उधर एंटी न मरता तो मे भी चांस था बेटर इनका, ब्लिसी होती तो. Makes an amazing play to go up 1-0, and look at this again. Elo got that 40 in the nick. सिंडी का वैल्यू यार भाई बिना यूनिट के मरा है सिंडी, उस पे घुस गए सिंडी पे पूरा, मतलब एक नहीं पता है भाई घुस गया, सरीना घुसा, गाड़ी घुसा, सब घुसे, स्टन दे दिया, जीजी वेल पेड कर दिया. To go in for these back caps in the top path. Yeah, Masam can counter stun. Executed throughout the entire game. I talked about preparation for this team looking so good throughout the tournament. I think I'm proven right yet again. Blackhand seems to have the soul read on this World Championships tournament and is calling out every other team, and they get a huge win here. Renaissance again, an amazing performance. Time लगता है target ult या was not fed what they needed. पर वो सिंडर तो एक सेकंड में मेल्ट हुआ, अगर अल्ट हो भी जाता तो भी रास्ते में जाता. Player of the game, not a ton of engagements here, but damage rate दिखानी चाहिए यार. Scoring with that 185 on them alone. Okay, yes. Not often do we see Overlord at a high बिना rate of के 185 score भाई. with only one knockout. So an impressive stat line to make their way up अरे to the स्कोर player पहले of the कर दी game, हम but थोड़ी I जीत think जाते, they वो may तो have जैप मिला ना. some huge split pushes like you were mentioning. But yeah, we are going to be taking a look at some highlights of how these teams got to the winner final spot here. They have been playing all day long and all day yesterday. Let's take a look at Renaissance path to the winners finals. चलो भाई. I'm excited to see how this team कास्टर भी लेग स्क्रीन को शिफ्ट नहीं हुई. a ton of winning to get to this position. थोड़ा डिले हो गया. Neither of them have lost a match on the day, and Blackhand didn't lose a match yesterday either. Yeah, exactly. A spotless record for them right now. These teams are living the dream here on the world stage. This is the highlights from the game we just hung out here. If you missed it, Renaissance dominating every team fight. इधर भाई हुप्पा लेकर गया, पता नहीं कैसे भाई. Securing objectives was kind of the tail of the कैसे ले गया यार हुप्पा. Went to Blackhand, the Zapdos. इनकी लास्ट वीडियो हल्की सी वीक है ना, इनकी लास्ट वीडियो हल्की सी वीक है हारनेस की. If you're not finishing the job on the objectives. इधर तो अलग बीटी था भाई, अब और 2 घंटे लग गए क्या. Games are so close. Yep. भाई GG well played. Games are very close Karan bhai, very close. The damage is a little bit too much. They don't have any poke, mitigation as they are trying to push in. Yeah, that makes a lot of sense. Even Venusaur to a degree is often. भाई ये फेस कैम है कि हेयर कैम है यार. But the boosted auto attacks on. ऐसा मजा जैसा सेम सीन मैंने माध्यम से एक बार किया. सही यार फैट गम भाई. पढ़ाई करो यार. लुका में भी रहेगा, लुका में भी है दोस्त. But they're different रहेगा. ठीक है यार. ठीक है भाई. हमारे पास टैंकी पोकेमॉन स्टन है भाई, लेकिन हमारे पास लास्ट हिट है. ठीक है यार. सेकंड में चालू करो भाई. Footage of how they got here. Winners finals is their destination. Let's see how they got here. लगता है थोड़ा ब्रेक आ गया है. Renaissance versus iClen here. Dominating performance for them in this. ब्रेक है गाइस. They've been sticking tried and true. कुछ टेक्निकल इशू लग रहे हैं मेरे ख्याल से, और क्या हो सकता है, और कुछ तो बनता नहीं है. Yes, and those secures with the Psyshock are nothing to be scoffed at. Renaissance always in the game at any moment. Kamiru is just a phenomenal star player right now. I think the big thing that jumps out to me about the Psyshocks with this iClen आ रहे हैं तो एक ही ग्रुप में थे अब. शायद हाँ. 10 मिनट का मैच, 10 मिनट का ब्रेक. यार नहीं यार. आने सारे सेगमेंट में क्या है? कोई ना यार, आ जाएंगे वापस. iClen का अरे पुराने मैचेस दिखा रहे हैं वो इसी टूर्नामेंट के वर्ल्ड्स के. ग्रुप मैचेस भी थे ना, ग्रुप मैचेस हुए थे जो कल हुए थे. 2 मिनट वेट करेगा इस मैच अपने हैंड वॉश करके. दोस्त हल्का भी होकर आया. ड्राफ्ट पिक स्टार्ट हो गया तो देख लेना यार. BRB
of our winner finals. Black Hand is up a game, but Renaissance is down, but not out. They can rally back and win games 2 and 3 to still make it to our grand finals today. Absolutely. Well, we took a look at some of Renaissance's highlight moments. Let's see how Black Hand arrives in the winners finals themselves. They've had one of the shorter journeys today. The winner's upside is you get to play the least amount of matches to make it all the way in here, but they've had commanding performances in the matches that they've played, beating No Show earlier today. No Show was looking like a very, very fierce opponent. Blossom Snorlax, definitely a problem that Black Hand had to figure out how to solve. It seems like Overlord's Aegislash was up to the job. Aegislash, very powerful character, and one of the many that we've seen Overlord lean into this way. In fact, I think Overlord might have the record for most variety of characters we've seen a single player play this week. We've seen what? Lucario, Zarina, Greninja, Aegislash. Have they touched Machamp yet? Potentially off stream, maybe. I think I heard whispers of that. Definitely a statistic we'll have to nab up at some point for sure. Overlord looking like potentially the best player here has shown up at Worlds. Black Hand going up against No Show was a really exciting match, I think, in total. It was a close one. Did end in a 2-0, I believe, but still an exciting match nonetheless. Yep, even here, where they miss the Zapdos, but they secure the push and knockouts afterwards. Time and time again, Black Hand makes it work regardless of how other things go in the game for them. Exactly. All right, so not a 2-0 victory. I was mistaken, but still, these final moments tell it all. This was where Black Hand was able to knock No Show down to the loser. चलो भाई वापस आ गए अभी तक चालू नहीं हुआ क्या हेलो There you go. Zero Aura did make an appearance in this tournament. It gets in the highlight reel as it is chosen to be done. Just honestly, an incredible range of character selections in the tournament we've seen this weekend. Even in this winners finals, you know, we have what, 8 different characters, I believe, in this this match that we just watched. So many excellent both range and melee attackers to choose from competitive. A lot of options in the metagame right now. Pokemon Unite definitely has had that cracked wide open at this World Championships. So much variety, so many options, but counterplay really seemed to be अरे भाई ये तो घोल है यार ये तो अपना घोल है ये तो घोल है यार that wouldn't fit in my carry-on because otherwise I would have bought it on Wednesday when we got here before they did. Yeah, well, I'm sure Slowpoke can float. You just send it to the waves, it'll find its way home. I'm sure is how it'll work. Now, these two teams are queuing up and getting into a lobby right now. Black Hand is currently on one game. तनुज भाई इतने पोकेमॉन्स नहीं है कि ये रूल अप्लाई हो जाए अगर आपको पता है तो दोस्त I think this is going to be one of those instances where I actually expect पोकेमॉन्स रन आउट हो जाएंगे भाई won that match to change their composition far more than I expect the team that just lost. Not only has Renaissance been consistently bringing these same 5 Pokemon, but they गोल है भाई ये गोल नहीं गोल single fight inside of that. अरे चलो यार फाइनली What are you doing? Kamiru's Absol. अबे ब्लैक हैंड अच्छा ठीक है फाइनली ठीक है मुझे ओवरलॉर्ड विनसर दिख रहा है भाई भाई कामरुल भाई तो पीयूपीएल खेल रहे हैं ये तो पीयूपीएल वाली फील आ रही है एप्सोल भाई भाई सही में एप्सोल ले रहा है क्या ये I'm honestly shocked that Black Hand is hovering all 5 जीजी हो जाएगा भाई characters like the engages were not close in that last game, Zoinks. They were not. The only one I thought would maybe change would be Curios on this Machamp. I don't think they found any kind of value early game, but this is what I like to see. Overlord Greninja, Jungle Book Greedin, Curios on the Venusaur. All right, we've got 2 repeats on each team, and those Hoopas and the Chalo Blizzies, guys. but the range of all the other characters is so Absol the agent disaster भाई GG well played होने वाला है अब तो I actually really like this change overall. I don't know that I love Greninja into the Absol with the way this has worked out, but I do like Greninja into the Gardevoir. That honestly, if House's on Black Hand side, I'd be shocked that they're not running back their composition. देखते हैं भाई I would be.
I am shocked they're not running back their same composition. So yeah, I can definitely think that Blackhand is feeling the same way. Overlord's going to have a task cut out for them on the Greninja in the central area for sure. But they are going to have access to Curios on the Venusaur, a Pokemon that can put up a little bit more of a fight against Absol in the later stage. But using Ninja into Absol. Is that when Overlord plays this Greninja, we saw this yesterday, they actually change Caster locations they play on the map with Jungle Book. Jungle Book playing that top role on the green while Overlord takes over the central area with Greninja. North America has loved Gradient over the Arena. top path, not invading अभी तक तो Gradient को try है भाई. playing it like a lot of other melee Focus attackers trigger in हुआ the क्या top नहीं? path right now. We see Gradient getting pushed out a little bit 2-1. You can kind of expect भाई Gradient को farm ही रखने दे रहे. जंगल को कंट्र farm हुआ. नीचे इस बार फाइनल फार्म नहीं मिला इनको. नीचे इस बार आरएनएस को फार्म नहीं मिला. क्यूरियस ले गया. एक लेवल का पूरा डिफ है. बेटा करो चाहिए क्या? मेरे को भी चाहिए वैसे तो. भाई ऑलमोस्ट कांड कर दिया कामिरुल ने यार. ओ भाई जी 20 मिस कर दिया पूरा. Elo and Curios, the stun of Astonish lined up with the Razor Leaf. What incredible coordination on their team. And another to get huge Razor Leaf knockout. Overlord making it out of this engagement alive feels criminal. You know who's not getting out alive though? No, Metagross will defender. Yeah, Elo made the choice. Save 2 of us and not just 1 of us. Throwing down the hyperspace hole to get the reset on 2. Speed surge is ready, bro. Coming. Gets another in the bottom path. They must have come back through that hyperspace hole and Kamiru expected and the Venusaur goes down to just भाई comeback हो गया guys. On this Absol start and comeback हो गया. Renaissance is starting to pick up the pace and they're already at a full sprint. Blackhand is going to need to find. भाई जो lose किया था gain भी कर लिया. Ninja से आगे चला गया level में भाई. Good news is though, Jungle Book has started to covet. All right, the Greninja has re-entered the bottom path in the hands of Overlord, but I believe Absol needs to back up here and clear their central area. We'll see if Overlord can make something happen here while they're gone. That is true. Kamiru's been hanging out here in path for a very long time, not knocking out wild Pokemon as quickly as Blackhand has, so they are keeping pace in terms of experience. It is worth noting second beast पे तो नहीं आ सकता. वैसे actually आ सकता है Absol यार. 3-4 सेकंड डिले होगा पर ऊपर ही जाएगा ये second beast के लिए तो नीचे आना. Unless ऊपर करे कुछ. on a Serena, you can take over games. It's one of the reasons that this Pokemon has become so popular in the metagame, especially here at the World Championships. Both Greninja and Absol reached their Unite move at level 9. There's a very Absol 9 भाई. Characters. We see Absol already having that in the top path for Renaissance, but Overlord, not to be outdone, is clearing their central area one more time. The question is, can they get Serena का portal cancel हुआ क्या? शायद Serena का portal cancel हो गया guys. यहाँ पर वो top रही है. Slashcan is on Egg Bomb, going to try to do a lot of that. So is NT. यह portal cancel हुआ था. Here by Absol already. They're starting to do a ton of damage, but they still have that Unite move in pocket whenever they want to launch it. Overlord is here and Absol is getting out. The Unite move a little bit late from Overlord there, and Absol is absolutely decimating and cleaning up here. Oh, and they go down to Overlord. Curio saved so much time there by getting the भाई V9 instant 9 हुआ है. But they are able to get knocked down. Renaissance turning this fight yet again. Slash gets in another little bit of score thanks to some score shield, but they do get knocked out. Incredibly Jungle Book ने solo ले लिया. In the bottom path is the highest level characters on both sides go down, but Serena's like, nah, this is not even anymore. I am stomping on in here, and we are breaking this goal zone. Blackhand sticking with his strategy of a lot of split push. Jungle Book taking up the responsibility of getting in these split AOS energy deposits now. अब एक स्ट्रीम क्लियर कर रही है. Sorry for the lag guys. बस स्ट्रीम लैग कर रही है इनकी. ओके मुझे बैक. ओ भाई ओवरलॉर्ड को पकड़ दिया. छोड़ भी दिया. Takes down Overlord yet again. Overlord got absolutely caught out. 20 का गोल कर मेरे लाल. Good. Jumped on him at the same point and got a big 35 का overdunk भाई. 35 point overdunk right now. Renaissance was behind in score last game. That is not the case now. They are holding on to that lead as well as a sizable experience. भाई नीचे भी जाके पिल दिया यार. Kamiru
here in full dominate हो रहा है यार ये. Blackhand right now has to be so focused on the late game. This early and mid game have both been in shambles for them. Renaissance has been taking भाई support वो solo जा रहा है. Blackhand has to have their eyes on a huge second Dreadnought team fight. We see Jungle Book dancing the top path, waiting for those Vespa Queen and her Combees to spawn and acquire extra experience for whoever can get them as Rebongs here pushes them out. Rebongs pushes them out and Kamira jumps on to get some extra damage. Jungle Book on Greedon is a notorious escape artist and they are able to get out no problem at all. Kamiru cannot close the gap on that KO. Not sure if they're very worried about it though. They're about to take the 12. The Rings Unbound bring in the squad. नीचे आगे 5v5 है. Hyperspace Fist start flying here ओ भाई. Some stun. The team fight and nice. Every button is pressed. Rig, Blissey unite onto both Venusaurs. So Kyrios and Yang are going to be dealing a ton of damage as well. भाई दोनों Venusaur नहीं मर रहे हैं. उनका unite है पर Serena का unite है अभी तक यार. जी Serena ने unite दे दिया. भाई जी वीना वर्सेस वीना फिर चालू हो रहा है क्या? Kyrios, I hope your cape is not far. We're gonna need another hero from you, but this time it's from Overlord. Steals it again. Are you kidding me? They can't keep getting away with it, Zoinks. He didn't steal that from Renaissance. He stole that from Kyrios, and I know that for a fact. He deserved that one, but he takes it away from him. Overlord, bhai. Knockout streak for Overlord there, just dominating with this Greninja pick. Black-handed. I was saying they needed a big second Dreadnought teamfight win. I'm not sure if they got it, but they certainly have an orange circle in the top right side of our screen. Overlord now almost level 14 at the 3-minute and 30-second mark, while Renaissance is struggling to even have a level 13 Overlord bhai. Overlord takeover is certainly 13 का काम रूल हो जाएगा अब. वीना 13 चाहिए पर उनका तो 14 का हो गया यार. GG level advantage GG है. Down the top path. Blackhand going to rotate to it. They're going to do absolutely nothing. Real ID से हो भाई गोल भाई. As they fan out to try and get some experience. भाई 1 HP था ऊपर से वो. ये भी नहीं था कि full HP है. To Blackhand not scoring a lot of points here is Renaissance doesn't have a lot of experience to farm here. That is true. Their late game scaling is going a little bit slow. 15 हो जाएगा ये तो. Hit that level 13 important benchmark. And look how Blackhand is spread यार Serena 12 नहीं है इनकी. Rebongs को 12 होना पड़ेगा. थोड़ा advantage तो मिले. In the later moments of this game. Yeah, Overlord could realistically be a level 15 Greninja. Rebongs 12 कैसे नहीं है पर मुझे समझ नहीं आ रहा. इतना farm मिला. They don't even have a level 13. ये तो 15 है भाई. Well, Overlord is absolutely going to be level 15, which is honestly at this point I'm never surprised when I see it anymore. But I am always impressed. Overlord is going to be absolutely fed and looking to feast upon. Serena 12 हुआ, वीना 13 होने वाला है इनका. इनका 14 होने वाला है भाई. Match of Pokemon Unite and the stat increases you get at levels 14 चलो उसके लिस्ट वो वेस्ट करवा रहे हैं. वीना 13 हो गया चलो. Should be the first one in. They know that they can tank any amount of damage that Renaissance would throw for them. They get in that bush for intel, and now the refight can begin. Fight engage हो गई. Hyperspace holes opening up ओह and the सारे split हो गए. उसका unite वेस्ट करवा के. Pokemon turn into attackers. Rebongs takes a lot of damage in the early moments of this game, and so does Yang. We're gonna need to get Oh, bhai, nice hit. there. A Bliss assistance onto the Absol. अरे पर वीना. Use it for their unite move. Kyrios is absolutely cleaning up with the help of Overlord. Elo is hanging out. We still have a bunch of unite moves on the side of Blackhand to utilize. Yang went down without using their Venusaur unite move, which is a huge power detriment in this endgame engagement. There is the Greninja unite, and we are cleaning this objective up before people can refund. This might be a 2-0 for Blackhand. I've seen miracles happen before. I didn't know if it was going to happen for OPA, NT, Blissey, but Serena, Blackhand absolutely dominates the final fight of our game वीना number 2. Serena तीनों यूनाइट के बिना मरे यार. इतना होल्ड. वीना कैसे मर गया यार? वीना कैसे मर गया? उसने बड़ी क्यों नहीं खोला अपना? 4 KO streak plus a Zapdos. बड़ी खोलना चाहिए था अपना. An absolutely fantastic pivot of a pick from them. Oh yes, Overlord really can Engage take over perfect games था on इनका. multiple स्प्लिट भी हो गए Pokemon, थे. but फालतू का डैमेज खाया. उधर हुपा केट से सारी टीम स्प्लिट हो गई और कामेरू अंदर घुस गया यार. हुपा केट से सब पीछे हो गई ताकि उसका अल्ट वेस्ट हुआ पर कामेरू अंदर घुस गया ऐसा लगा और ब्लिसी को जाना पड़ा अल्ट देके. कामेरू का अल्ट भी वेस्ट गया. एक बंदे को लगा बस वो भी हुपा और वो भी आ गया.
just caught the ये थोड़ा खराब हुआ यार. member of उसके बाद Black. विन We gotta ऊपर go, कैसे मर and we सकता है gotta बिना go अल्ट right के? now. All 5 of us are here. The points gotta get in this goal zone, and they gotta push इनके before these यूनाइट्स other तो teams हैं. respond. 38 and क्या 100 लगता है are guys? going to be scored in now. They are over 300 points down, but the Black Candles decided to mount their defense here. Camiro finds a KO. A couple of smaller scores start moving in. भाई? A huge unite move from Rebongs to take Elo completely out of the fight. Yang finds another KO. Overlord is back. Whoop. These scores keep coming in from There's Renaissance. just not enough Aos energy. Their pockets are empty, Zoinks. They've भाई? successfully pushed here at the end, भाई? but they just don't have the points in their pockets to get dunked in. Renaissance भाई with क्या an स्कोर होगा? absolutely incredibly admirable attempt there at the end, but if you are right, we are looking at a भाई! Black Hand victory by the narrowest of margins. You know for a fact, I feel like this is the second time that Black Hand यार! came that close to a game Man, loss. if you are on Renaissance, you got to be wondering, could we have stopped and picked up some points as we ran across the map? That was a less than 50-point differential at the end. That push was so... Look at the knockouts on Black Hand's side. Just, 10 for Overlord. If there was ever a player to pick up a game and carry it on their back, यार it's उधर बिना definitely अर्ट्स के ना मरते We're फाइटिंग looking की at a team थी. name change. It's now Overlord Hand. ऐसा That क्या has to आर्टिस्ट be भाई? what we are looking at नहीं right इरफान now. गेमर भाई Only किसने बोल दिया? 66k damage, so they were definitely क्या playing फालतू डिफेंड the किया? नहीं भाई वो sweeper गोल्स करने के role टाइम में there मर in गए. Pokemon Unite, फालतू getting डिफेंड the इसमें क्या है KOs भाई? rather than all of the आप damage, जज but नहीं it कर still सकते इस लेवल looks पे भाई. really impressive. Black Hand with a 2-0 victory in the winners finals, and they are going to be headed to the grand final. They have given themselves the best possible chance they can get to be our future champions. We're going to भाई find that out कितना later कैरी कर today for सकता है sure. यार? Let's take a look at some of the highlights from this game before we move एक on. प्लेयर This कितना match कैरी कर definitely सकता seemed to be more favored towards Black Hand in the later parts of that game. आपने तो Renaissance हाँ भाई was ठीक है यार. dominating the early and mid game. Yeah, it was really surprising to me how well दो mistakes और Renaissance loser bracket took में जाओ every भाई. engagement. It really felt up until Renaissance lost that fight at the अभी Zapdos, loser they were just semi-finals in the कौन जीता driver's है? seat for every T2 other versus The investment into Nouns. Camiro played off really वो well next in the level early parts देखना of है this भाई. game. They were getting in many KOs, not to mention some great scores. This Dreadnought secured up as well, except, yeah, they did get the first one. Yeah, as we see here, these objectives kind of the name भाई of the कामिरो की matchup, फटी but थी so उधर this कि मैं point गलत was जगह आ stolen गया हूँ. again and again by Black ये Hand, ninja यहाँ क्यों है? despite Renaissance having incredible team fights around them. Black Hand knows they are never आपका out अगला बेटा भी of पता the नहीं game, दोस्त. one of the best Break चल रहा teams in the tournaments world, का. and they are proving it match after नाम match. जीतो They भी. stay देखते हैं भाई. undefeated on the world stage over these Absolute 2 damage days. They're भाई. their Yep. last remaining completely Well played undefeated यार. team here as they push into the Second grand round में ठीक finals था यार. today. उसके बाद And as we mistake mentioned इतना before, गंदा. Renaissance path here at Worlds is not over. दोनों They मैच are में headed mistake into किया the यार. lower दोनों मैच में bracket to play mistakes the किए. winner of Nouns and T2. That is इस not going level to पे be an नहीं easy हो game, सकती यार. but इस I level know पे they are mistakes नहीं कर thankful for a सकते आप. second shot. They are going to get one more chance इधर later देखो in this tournament as यार. वो Renaissance उसका clutch ही नहीं push दिखाया. their way वाह. back to the grand finals and come up from the lowers to potentially still be our world champions. There in that final team Bye. fight, Renaissance chose to use the Unite move onto the Absol, the Bliss assistance, but they were able to KO the Absol even through that. That really seemed like a game-changing moment in that team fight for बहुत me. भाई from नहीं उधर Blackhand. देख मैं लिटरली बोल रहा हूँ इधर थोड़ा ना कोऑर्डिनेशन डिप हुआ है बिकॉज उनके 3 प्लेयर्स इवन बिस्सी थोड़े पीछे हो गए जैसे ऊपर नेट खोला पीछे हो गए ताकि उसका अल्ट जाने दे और वो जा भी गया था पर कामिरुल शायद सेकंड पन से घुस गया अंदर कह नहीं सकते ना उनका प्लान क्या था ये तो प्लान डिप हो गया अरे ये भी देखो ना ग्रेडेंट ने पॉइंट्स उठा लिए एंड पे ग्रेडेंट पॉइंट्स भी उठाए उतने गिरे नहीं ग्रेडेंट से पॉइंट्स enough AOS energy lying around for Renaissance to overcome the incredible amount Blackhand had put on the scoreboard. Those are two of some of my favorite games we have ever seen so far in this tournament. Ina I bhi can't aage choose घुसा a यार. favorite. Kyrgios's absolute hero moment नहीं पहले in तो game number पहले 1, एप्सुल or उसका maybe एंगेज हुआ even ना in game number 2. पहले एप्सुल मारा Overlord taking over with फिर KO लीना सर after इंस्टेंट मारा KO. उसके बाद They are going to be your player of the game. 10 knockouts, शायद 1 उसका assist, कॉल आ गया and होगा a ना very कि आ जाओ nice, एंगेज करो clean 100 तो score. उसी में शायद उनके विनर ने अल्ट दे दिया और इनका विनर रिएक्ट नहीं कर पाया Overlord when we हो see गया them get on that player लेवल of डिफ the तो नहीं game लेवल डिफ at नहीं the था end. लेवल डिफ नहीं था लेवल डिफ नहीं मैटर किया Sounds like जीत सकते थे we've फाइट भाई got one of the members उनका of ऊपर Blackhand ऑलमोस्ट वेस्ट गया Curious था down on the floor to talk to after that match. Let's see how they're feeling about making it all the way to the grand finals.
All right, yep. here we are. Overlord What an insane 2 games ये लो guys, you got to play. Blackhand is heading to the grand finals. Congratulations, by the way. Absolutely amazing. I guess my first question is, how about that game 1 steal? I mean, yeah, that was like probably the craziest moment of the tournament yet. Just everyone was there. There was me against 4 of them. They played the fight extremely well, and then वही देख रहा हूँ यार, उधर डिप हो गया। हेलो टॉक्सी भाई। अच्छा ही हो बोल रहे हैं, मुझे लगा हेलो बोल रहे हो। ही हाँ। That was the adrenaline rush that we needed, the confidence booster. I think, yeah, that really वीना से डैमेज खाया। ओवरलोड हिट प्लेयर भाई, वो लेना चाहिए था ग्रैंड के लिए। क्या लेना चाहिए था ग्रैंड के लिए? Through game 1, I mean, Renaissance was easy match हो गया भाई, ओवरलोड डिप। What were your thoughts heading RS ने थ्रो कर दिया, यप, a little bit थ्रो हुआ है। थ्रो तो हुआ है भाई। They played really well both games. But yeah, I think we just weren't as used to what they were doing in the game 1. Black and Khaki team में दोस्त North America. We thought a lot about like what their jungler wanted to do, especially. I think Kamiru is by himself is just an incredible player. So playing around him is really difficult. And as we also saw, the Absol kind of coming slow bro नहीं रे, ना against us. They had the team composition perfect था उनका यार, execution में कांड हुआ, execution में diff हुआ. But once we kind of like got a good comp they wanted to play around. Composition perfect था Cameroons की टीम का, दोनों टीम्स का अच्छा था. पोल लगा तो हुआ है भाई, ऊपर लगा तो है पोल, क्या बात कर रहे हो? ये लो पोल का रिजल्ट बंद करता हूँ अभी. वैसे तो ब्लैक एंड हार रही थी पोल में, इधर जीत गई है. That's really tough. It's a hard one. I made it hard on purpose. Yeah. भाई. Yeah, Overlord तो GG भाई. Of course, Nouns could be up there. Extremely talented. Yep, मैचअप वाले टाइम भी बहुत गंदा इशू था. We could definitely see them again. They played so. गोल भाई बॉटम में जोगिंदर पे जोगिंदर ही नहीं बनेंगे भाई. And that kind of मेरे को लिंक वाला दिख रहा. Shit man. So I don't even know how the series would have went if we didn't get लिंक that. दबा दो चलो. चलो guys, 3 likes to 400 यार. Come on, show some love यार. And congratulations, you are all amazing. 7 subs to 5.6k. जल्दी बटन दबाओ guys. That is Blackhand. Back up to you, gentlemen. Thank you so much, Spraggles. That was an amazing game. Kyros, you're a hero. Okay, just wanted to make sure he knew it from me personally. But yeah, so what a great game that we got to see in the winners finals. Let's take a look at our complete finals में BH अभी के लिए BH only confirmed. Finals में BH confirm है guys. नीचे रहने से पहुंच चुके. Nouns T2 हुआ नहीं है क्या अभी तक? Hello. From the losers bracket, Nouns Esports versus schedule में तो दिखाई नहीं इन्होंने. Japan region and European region clashing in that loser semifinals. You then have to go up against Renaissance. मतलब ये भी स्ट्रीम होगा यार. In the grand final. मुझे लगा था ऑफलाइन हो रहा है. शेड्यूल में तो डाला नहीं इन्होंने. लास्ट को सही था, अगर कौन ज्यादा होते तो यप. फाइनल लाइक्स करो फिर होगा वाईटी मेंबरशिप गिव अवे. देख लो गाइस, डीएम भाई ने बोल दिया है 500 लाइक्स करो यार. अब लूजर सेमीफाइनल्स है गाइस, देन लूजर्स फाइनल्स, देन ग्रैंड फाइनल्स. लंबा दिन है बॉयज. हेलो मिस्ट्रीज गेमिंग वेलकम स्ट्रीम. एडिट भाई देख लो भाई, ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई. अगर आए हो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में हुआ तो यू नो उनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता. यप, और 50 का गोल चाहिए था. 25 एक्चुअली, 25 24 का भी चलता, 24 23 चलता. कहीं और ही गोल था. Yep, RNS is now in loser bracket. GG well played भाई, GG well played. कब खत्म होगा? घर वाले भी बोल रहे कब से फोन लेके बैठे हो. अरे लेट्स गो गाइस, 400 लाइक्स. थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट टाइम अपनी लाइव स्ट्रीम पे 400 हिट किया यार. लेट्स गो. वैसे चलाने का मैंने बस ताकत नहीं है गाइस, बिल्कुल भी. 6 घंटा स्ट्रीम भाई, वॉच पार्टी चल रही है भाई पूरी. मजा आ रहा है देख के. वैसे जो भी बोलो, मुझे लग रहा है कि फिर से फाइनल आ रहा है वैसे BH होगा. यप, एंड अगर रीसेट गया तो सारे लोग सो जाएंगे. RNS will come back hopefully. Yes they do. हालत खराब हो गई भाई. RNS is due to possibly lose bet. Yup. नॉन भी हो सकता है एक्चुअली.
ये प्लेस का वही ना यार प्लेयर्स भाई, और इधर उतना रेस्टिंग एरिया भी वैसा नहीं है, लाइक यू नो काउचेस वगैरह तो नहीं है मेरे ख्याल से वहाँ पे। टेबल चेयर ही लगा हुआ है सर हर जगह। अपडेट कब आएगा? 2 सितंबर बोल ब्रो। फाइनल में किधर सेमीफाइनल में 4 टीम, उनमें से 2 टीम फाइनल में आ गई। अरे सेजर ब्रो द थिंग इज फाइनल अपर ब्रैकेट फाइनल्स हुआ, अभी अपर ब्रैकेट फाइनल्स हुआ तो ब्लैक हैंड जीती, दे आर इन द ग्रैंड फाइनल्स, खत्म। अब जो रेनेसेंस जो हारी है वो लूजर फाइनल्स में जा चुकी है। अब लूजर सेमीफाइनल्स में T2 वर्सेस नाउन है, उनमें से जो जीतेगा वो जाएगा वर्सेस रेनेसेंस इन लूजर्स फाइनल्स। जो हारा है वो टूर्नामेंट से बाहर है। अब 3 टीम्स बची एंड अगेन द वन हु विंस लूजर्स फाइनल्स वो जाएगा अपर ब्रैकेट अब ग्रैंड फाइनल्स में, एंड जो हार चुका है इज आउट। सो 2 टीम्स लेफ्ट इन द एंड। चैट मिस क्या हो गया बेस्ट भी? कौन सी चैट मिस कर दी मेरे भाई? 51 to 48 एक क्या स्ट्रीमलेस के मैच डिफ। अरे भाई जिराफ को बोलना है बोलो तो अच्छे ख्याल से सही। अरे भाई काम डाउन भाई काम डाउन। मैं देखो आई होप ट्रोल में बोल रहा हूँ, ज्यादा ना हो जाए भाई। नो प्रॉब्लम से भाई। भाई क्लोज मैचेस थे यार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। नॉट गोना लाई। एनी वर्सेस T2 फुल टाइम भाई। DM भाई बी भाई फुल सपोर्ट भाई, लेट्स गो। गाइस बीस्ट हेड्स भाई, ये जरा एवोल्यूशन का याद है बीस्ट हेड्स भाई? वहां पे कुछ हुआ था ना, जिसने किया था वो समझ जा भाई, रेफरेंस दे रहा हूँ। वैसे बॉटम लेन लुका प्लेयर है, नो लुकारियो का, एके ओजी का। अब नहीं है शायद, अब नहीं है ना? हाँ अब नहीं है। अब आरजे जी जिराफ हो गया ना, ग्रीन खेल गया में हो। यप भाई ऑडियंस तो है यार, गाइस ऑडियंस तो है यार, ऑडियंस तो है। आयुष भाई अभी तो लंबा स्ट्रीम चलने वाला है भाई, ऑडियंस तो है गाइस। ऊपर भी बैठे हैं, नीचे भी है, खड़े भी हैं लोग, टीम के साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं। ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप गाइस, ये भी सीखनी पड़ेगी प्लेयर्स को यार। ये शायद आइकलिन के फैंस थे, नेक्स्ट से बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। भाई फोन के केसेस भी कितने अजीब अजीब देखने को मिल रहे हैं यार। गेम बॉय का केस कैसा कैसा, बट क्लियर डिफरेंट। हाँ तू ये कर ले यार, बोल। अरे गाइस स्नोरलेक्स लुकारियो भाई जैसे सस्पेंड होना। यप 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 भाई ये बहुत फनी है यार। ये सही है भाई। गैटलू भाई भी क्लच कर सकते हैं, नाउन जा सकते हैं गाइस, नाउन जा सकती है। लेके रैंडम गेमिंग है नाउन, अगर पता नहीं है तो। Remember to share the stream guys and make sure to hit the like and subscribe button यार। Hello everyone and welcome back to the Pokémon Championship। दिया का क्या हुआ, किसका सक्षम भी समझ नहीं आया। चलो गाइस प्लेयर्स बैठ चुके हैं। इंडिया का इंडिया कल हार गई दो ग्रुप स्टेज में। रेवेनेंट दे लॉस्ट इन द ग्रुप स्टेजेस। ये क्लियर क्या वीडियो बनाया है यार, उनको भी पता है मस्ती चल रही है, कुछ भी खेलने के रैंडम गेम वाले भाई। हेलो जो सुपर वेलकम स्ट्रीम। आरनेस मेरा स्कूल का नाम है, ठीक है यार। अरे अरे गाइस स्प्रेगल्स एंड अलोलन स्प्रेगल्स आ गए हैं।
A lot of work left to be done for these two teams, but the first step is fighting between themselves right now on the main stage. Nouns and T2. Trophy को Pikachu के हाथ में trophy. Yup. I mean, two amazing teams that we've seen play phenomenally today. भाई मजा आएगा. Welcome back, मैं हूँ गेमर दोस्त. Welcome to the stream. An incredible team. Nouns Esports really seems Yeehaw is back and with the lone form. We saw them on stage between Gatlu and Bruv, but before we can get जैसे अगर मीम बनने वाला है भाई मीम वो खुद मीम बना चुके हैं गलारियन स्प्रेगर जैसा क्या भाई अगला टूर्नामेंट कब होगा हमें भी पता नहीं दोस्त water please स्टारलॉर्ड कौन है भाई स्टारलॉर्ड water guy Nouns Esports and we are here the fight भाई कॉमेडी चल रही है इनकी तो आप किसकी साइड हो सबकी साइड यार अभी नाउंस अभी के लिए नाउंस पोल नेक्टो ने एकदम 51-49 चल रहा है यार I think I'm looking forward to the most is just playing बाकी का स्ट्रीम कल देखूंगा वरना यहाँ पर वो यार ने सर कोई ना शैंक्स भाई अभी लूजर्स ब्रैकेट में है पता नहीं किसी को यार यहाँ तो मिसकंडक्ट या मिसकंडक्ट का है मेरे ख्याल से गैटलू इंडिया का नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं one of the most consistent players in world though Gatelu the West developers. मस्त खेल रहा है. What we also do as a team is we adapt to the things other teams are following us, how we play in the late game, what we should do, and this is what makes us, I think, unique from other. भाई यार इसकी आवाज बहुत पतली बेचारे क्या निकल नहीं रही यार. नर्वस हो रखा है इंटरव्यू के लिए. Especially since it's the first ever Pokemon Unite Championship in a point of way, like setting the cornerstone for the Unite Championship. यार आवाज कितनी कम है इन लोगों की यार. Wait, sorry, अपनी आवाज कम है guys. Shit man, sorry guys. Nothing personal. मैं भूल गया अपनी आवाज कम है. ये फाइनल है. No, this is loser semi-final. Then after that it will be losers finals. Then grand finals. Water, please. Technical about we have technical knowledge बहुत है भाई. Thank you, water guy. भाई जिसका इमोजी मस्त है यार. इमोजी पोज मस्त है यार. Looking great, and they are looking to keep their tournament. शिवांश की लाइव देखो हिंदी का. भाई वो डिलेड है अदन जी. That is delayed. And they have to get through T2. 4 minutes delayed है. Shots, and that's what these 5 players are going to need to be, because the hopes and dreams of EU in Pokemon Unite rest on their shoulders. That is absolutely right, and they're going up predictions. A phenomenal team. I'm expecting 2-0 from the Japan region. This is loser bracket का semi-final है Shadow Arena bro. They are the last hope for Japan to claim that world championship. We're looking at the map, all the strategy that T2 has employed is funnel into Mame, but before let's talk more about T2, let's learn more about the squad. भाई अच्छा सीक्रेट शिप को हरा के आए थे ना तो T2 नो नाउंस 2-0 T2 दोस्त ये सोच रहा हूँ ड्राफ्ट देकर प्रेडिक्शन करूँगा पॉसिबल 星並みがとても綺麗でいい国だなと思いました。やはり海外の選手とベストな環境でプレーできるのが初めてなので楽しみにしています。भाई सेंटर वाला ऐसा लग रहा है भाई जबरदस्ती घुसाया वो बेचारे को यार このシーズン中に仕事を辞めてポケモンユナイトを下げてきたので日本でポケモンユナイトが盛り上がると信じて盛り上がると思います。いつも応援してくださり本当にありがとうございます。世界大会も必ず優勝を手にしますので応援よろしくお願いいたします。 अभी भी टाइम है क्या यार अपर ब्रैकेट फाइनल जीती है ब्लैक हैंड ट्रेवेनेंट विन ग्रेडिएंट लॉस ऐसा क्या भाई ट्रेवेनेंट ही आना चाहिए गैटल्यू का तो स्टार्टिंग में They've garnered and they've earned the support of I think Trevenant आएगा because वो सरीना जंगल करते हैं ना तो ये Trevenant आएगा because Gradient उतना एडवांटेज नहीं ले पाएगा इनवेड का 20 पेट भाई बिगचेस में आज मस्त टाइम पास हो गया मेरे तेरे कारण रहे थैंक यू विशेष भाई उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है स्ट्रीम पोकेमॉन वाले टीटू को जिताएंगे क्योंकि पोकेमॉन जापान का अरे भाई यूनाइट वाले क्या टीटू को जिताएंगे इसका क्या मीनिंग हुआ डिस्कॉर्ड पे तो पिज्जा से डोमिनोज चल रहा था भाई सही है यार चलो गाइस प्लेयर्स आ गए हैं सेटिंग अप चल रही है नहीं स्टार्ट नहीं हुआ
The rest of the other ones have a tough sledding ahead. Oh भाई 6 घंटे हो गए भाई. But they have to take care of 7:30 बज गए. Mame has been fed all day. चलो भाई, Trevenant is back, Mime is back. Original comp खेल रहे हैं, उधर भी double XP share चल रहा है and इधर भी इधर single XP share है, but stacking बहुत है इधर. अब देखते हैं भाई. Jackson bro अभी subscribers गिन नहीं चल रहे हैं दोस्त. जब कंटिन्यू वापस होंगे तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा. अरे Beasted भाई, thank you for the 400 rupees super chat. You're amazing यार, you guys are too यार. आपकी वजह से तो कर रहे हैं यार. Beasted भाई को यार एकदम ओपी बोल दीजिए. ओमपी भाई, ओमपी भाई. Love you bhai, love you. Thank you for supporting us. Getting all the credit and recognition for those big time KOs, but चलो guys, I hope you restart now यार. If those other 4 players I hope you restart now. aren't doing exactly what their roles indicate within this composition. Without question, Mame is the lead singer, but they can't do anything without that. भाई crowd बहुत है यार. Sure. कितने लोग हैं? Into our game right here, and you can see the packed crowd ready to check this out. चलो guys, let's go. Number 1, T2 Nouns Esports. T2 your purple team. सेमी जंगल इधर फिर से मेरे ख्याल से तो आधा जंगल लेके सिल्वर बटन जाएगी एंड या फिर नहीं सॉरी बॉटम अप टॉप बफ एंड टॉप जाएगी. बुरा भाई तो फुल काम पे लग गए. कुछ भी हो सकता है. नहीं ले पाया यार, नहीं ले पाया. गाटल्यू को भी थोड़ा सा तंग कर रहे हैं. मामा जी ऊपर आ गए. और को बैठी भी देखना पड़ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगता भाई. अरे नाइस रे, उसने भाई बेट किया, पूरा बेट किया, पूरा बेट किया. अरे दोनों सरी न गए क्या? दोनों सरी न गए यार. भाई पूरा बेट किया उसने यार. उसको आने दिया था स्कोर कर, विलो बिस मारा, बर्न डैमेज से स्कोर नहीं हुआ. Resources up to this top path to shut down GG, This is what they need to do. Sylveon amazing at shutting down these top path Pokemon like Lucario, Zarina, Machamp. 20 तो नहीं मिल रही यार, मेरे को फील आ रही है. Do anything when this hyper voice is नस्तर लगा दी लगता है. Gatlu's getting in the face this Beasted भाई तो अमेजिंग निकले भाई. भाई मामा को फुल सप्रेस कर दिया भाई. मामा जी को तो फुल सप्रेस. रेनेसेंस तो मेरे स्कूल का नेम है यार. ठीक है यार, इन्वेट चालू हो गया गाइस. फुल प्रैक्टिस है भाई उसको अंडर फार्म रखने का. माइम 4 का हो गया, चलो मर के भी अब माइम फार्म ले पाएगा. फार्म नहीं ले पाएगा भाई. कितना भाई इसका फोकस है पर भाई. Dude! Dude! We're going to need a replay at some point. I don't know. I think all that HP was gone. Bruv here in the central area trying to deal with this Blissey right here. A little bit of an invasion. ताकाशिमा को तो छील देंगे यार. भागा भागा भागा. Can I hire Bruv? Yeah, Bruv. My house, those walls are going up quick. Bruv looking good and lacing those walls all over the place, setting up Redma for another big यार. confusion blast into the wall for Bruv. Bang, done. ये तो domination चालू है. 7 minutes 40 seconds and Gotlu's almost level 9. Right now, Nouns is in total control of this match. However, Mame just became Zarina, and that is when it becomes. भाई इसका स्कोर हो जाएगा. Right here, I don't know if it's going to be able to peel back and grab those berries. They do. Mame just so incredibly गजब भाई. रेडमो ने आधा जंगल लिया था शायद. मामे जी को मार दिया. 0 stacks, Revenant 4 stacks. GG भाई. Trevenant नॉक का है यार. 2 अल्ट्स हैं इन पे, 2 यूनिट्स हैं. पॉसिबली मैसअप नहीं कर सकते यार, पर T2 तो गोल गेम प्ले की जाएगी. अबे ऐसे टाइम पे लैग क्यों है स्ट्रीम भाई? भाई ऐसे टाइम पे स्ट्रीम लैग? आर यू सीरियस यार? स्ट्रीम लैब क्यों चल रहा है यार ऐसे टाइम पे? GG well played यार. They're on the chase, and right now, since they pushed out Supercell, they're pivoting onto the Rotom. Mame trying to make. अलग ही बीटी They're on the है. chase, and right now, since they pushed out Supercell, they're pivoting onto the Rotom. Mame trying to make some action on भाई Bruv. come on यार ऐसे. Getting blasted. Here comes the Hoopa with some Dread किसको मिला? as Mame finds Takashima.
Very nice play there. ऊपर आ क्यों नहीं रहा रेड का? Drop kick so that it couldn't be chased down, and then भाई ऊपर Takashima अपडेट right करो there यार. to throw some big eggs and keep him healthy. Mame of course says no, I'm still coming into fight. ट्रैप का अल्टी यूज दिख रहा है. सिल्वियन का यूज नहीं है. इधर ब्लिसी का यूनाइट आ गया, सरीना का यूनाइट नहीं आया. व्हाट द हेल? नाउंस को मिल गया कि चलो ठीक है तो ऊपर अपडेट करो. भूल गए क्या? प्रोडक्शन. Takashima getting absolutely smothered by Bruv and company, and now they're just pivoting to Rotom. You know, and as we talked about before, that you know, Mame is नहीं supported by all T2 को तो नहीं मिल these सकता, लेवल नहीं है भाई. T2 को मिला होता तो सारे 9 होते. to deal with Mame, so I think everyone is focused on this Pokemon. Unite move, confusion, hyper voice, insane amounts of damage. इनको मिला, नाउंस को अपडेट हो गया. भाई गोल करो छोटा सा यार, कोई तो गोल छोटा सा कर दो. नहीं यार छोटा गोल. घैटलू के पास स्कोर उठा सकता था यार. रैंडम गेम में से उरुज़ो पैकेट ऊपर आती है. अभी रैंडम गेमिंग के सामने रेनेसांस है भाई, देखते हैं. मेरा जोश वापस आ गया. अरे नहीं यार उनके लिए भी हार्ड है. कोई ना यार, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम चलता है. मतलब चलता है यार, बट टाइमिंग ऐसी बिठा रही है ना प्रोडक्शन टीम. मतलब टाइमिंग इंपॉर्टेंट फाइट्स पे यार, नॉर्मल पे चलता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फाइट्स पे तो थोड़ा बीटी हो जाता है. भाई सिल्वियन को क्यों उल्ट दिया मामा जी ने? क्यों यार? सिल्वियन पे कुछ नहीं होने वाला. सिल्वियन पर कुछ नहीं हो रहा है. ओ ब्रा ले गया यार, एजी स्लैश ले गया. उधर मामा वर्सेस उसका यूनाइट यूज हो चुका है. दोनों का यूनाइट यूज हो गया भाई. गया 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 गया. आउट प्ले हो गया. आई एम विद नाउंस ब्रो. जी जी. उसको कर्स लगा क्या कि बेसिक लगा? लॉल लॉल. जी जी. आज एंड कल बस, कल एंड आज का था बस. कल ग्रुप सीरीज खत्म हो, आज राउंड 8 सीरीज खत्म हो जाएंगे. मामे भी लाइक पोर्टल क्यों दिया है बे? Oh sorry, Gatlu. Queen ने Majesty भाई. I know, but I always try. We got Rotom coming up here in just a few seconds, and it looks like Dragonite is up there. चलता है level advantage almost equal है Dragonite को छोड़. जंगलर भाई. इनका रुइन इतना level. रुइन wait. रुइन Dragonite ओके क्राइम खेलता था ना रुइन तो. ये थोड़ा weird role shift है वैसे. Oh. भाई NT यार NT. They have to use their Unite move back. Ruin trying to find some hyper beam lines up, see if they can catch one as the chase is on. Ruin pushing in the face of Nouns Esports. They're trying to hold it down in the face of all of this pressure. उसने Dragonite को Unite दे दी सरीना ने यार, ताकि उसका hyper beam ना लगे NT यार. Mame keeping the pressure on that. Rotom has a hit. Mime Unite comes Bro HD hold कर तो रहा है. अरे ये hyper beam गंदी लगी. This hyper beam was sad. दो बंदों को लग गई यार. Taken out by the Dragonite. H slash finding a mark, and Nouns Esports is having Bro trouble. HD वापस आ गया. What an insane fight. It's still going on. Godlu's still fighting, trying to get Mame. Huge Horn Leech, not able to get the KO. Big stomps coming in. Mame with another. भाई ब्रो क्या होल्ड करवा रहा है यार? Fight on this goal against 3 members of T2. Hyper beam. कितना टाइम बाय करवा दिया यार? कितना टाइम बाय किया है? The goal finally goes down. Adesu being chased. You just get Mame. भाई क्या चल रहा है ये? Not let up. You talked about Mame being behind in levels, Last and they give up just का took plan over है that game, and शायद. they're level 13 and they are ready to go. T2 191. Now पूरा टाइम बाय किया था कि फार्म ना करें यार. 2 minutes 26 seconds. Zapdos is almost here. It's been non-stop fighting with one target for Nouns Esports, and that is Mame. And even though they have a laser sight on this Pokemon, it has still managed to make its way to level 14, as well as the Dragonite here for T2. Level-wise, they are looking amazing right now. Nouns Esports gonna have to find their way in. They're behind a little ये bit. गोल हुआ तो हो जाएगा, ये गोल हो जाएगा. अब नहीं लीड में तो ओ भाई. This fight will start bringing. It looks like it is happening up above us a little bit. We've got some hyperspace holds coming in. Here we go. Trevenant Unite moves, Arena Unite move. We saw that. We're pushing forward. The walls are big, and Mime Unite's back into the face. Gatlu gets a big push. Blissey gets a KO onto the Zarina on red ball. That's huge. भाई इनके दो यूनाइट के बिना हेलो. Nouns. The hyper beam cannot go wide here. There's 2 players down for Nouns. Is it gonna be 3?
Adesiu's trying to hold down. Hypervoice trying to hit the right note. Focus Aegis trigger Slash हुआ. comes through on Mr. Mime. Bruv gets knifed straight through. Nice the unite. Adesiu uses their unite by the other way. Hypervoice working on Ruin, but the Zapdos getting worked on by T2. भाई. And then clutch it out. Ruin seals it up. Huge hyper beam right here. अभी भी जीत सकते हैं यार, अभी भी जीत सकते हैं. काउंटर पुश हो सकता है. इनके अल्ट्स यूज हो गए यार. अल्ट्स यूज कर दिए इन्होंने. We have Gatlu making a little bit of a counter score right here, but this game is about to be wildly out of control. 601 to 291. We have a minute left. मार सकते हैं यार, पर मामे तो फुल टाइम बाय करेगा यार. मामे तो फुल टाइम बाय करेगा. मामे को मार ही नहीं पाएंगे ये. Mame's trying to make it home. The Blissey does. They can't stop. Trevenant का यूनिट आने वाला होगा किसी टाइम भी. But that's miles away from how many they need here if they want to bring this thing to parity. Fill up your pockets, make that push. मामे के यूनिट है ऊपर से. वो तो फुल होल्ड करवा देगा. वो तो फुल होल्ड करवा देगा. जीजी. In the pockets of दे दिया उसने यूनिट से. here for Nouns Esports. We need a lot more than Bro dead. They're continuing to fight Mame back towards the side of Nouns GG Esports. It looks like भाई. Mame is actually winning some of these fights, taking out the Mr. Mime, almost taking down. भाई 1v3 कर रहा है यार. Unstoppable. Unbelievable. Mame's an absolute mutant, and Remo Stadium is where they live. They are taking over. Redmo trying to do their best in the last shades of this one. T2 looking Silvio ने बहुत ट्राई किया. राजेश ने बहुत ट्राई किया. Shut down Mame. It did not happen. यार क्या थ्रो किया इन्होंने यार. क्या थ्रो किया है. Mame looked so good. I was going to say we had a little bit of End concern movement, at that level yeah. here at the 5-minute mark, but in the next 3 minutes, holy smokes, did they catch up in a big way. And for them, they were just getting fed. Nouns Esports kept going to that tier 1 goal zone up top and was just bolstering their numbers, hemorrhaging experience into the face of T2, and a fed Mame is a good Mame, and they straight up took over. Absolutely. T2 Mame full carry किया भाई. 7 मिनट पे level 93 था. ये क्या हुआ वही ना भाई. Mame जीजी कर रहा है एकदम बढ़िया. गेमर साहिल जी वेलकम टू स्ट्रीम. अल्ट कर लेके जाती है यार. वही देख रहा हूँ यार. अल्ट क्यों नहीं यूज. कूपा का अल्ट कैसे नहीं यूज हो सकता है यार. कम ऑन यार. कूपा का अल्ट यूज नहीं हुआ. एक और का यूज नहीं हुआ. ना फैम फिर भी फाइट जिता देती. दैट वाज सो डिफरेंट वाच हेल्ड नाइट फॉर सो लॉन्ग फॉर नो रीजन. ना ना ना. टू पीपल डाइड विदाउट यूनाइट यार. उसमें सिल्वी का क्या है. उसने तो अपने सर्वाइव. उसने टाइम बाय के लिए यूनाइट यूज किया ना. वो कुछ भी नहीं कर सकता. And like you said, first 5 minutes for Nouns looked great, and they just had that small slip up in the middle, and it kind of fumbled the देखना है फुल डिटेल भाई. मामे वर्सेस ओवरलॉर्ड तभी तो देखना है भाई. दोनों वर्सेस भाई. फाइनल्स अभी टाइम है दोस्त. ग्रैंड फाइनल्स को टाइम है अभी. splitting that central area, getting enough experience to boom hit that hyper. थोड़ा टाइम है अभी. This was huge for Nouns Esports. Gatlu hit level 5 with 58 seconds into the game. Yeah, it was really incredible. Walking down to Dreadnought. इतना अच्छा एडवांटेज था यार इन पे. And then look at this. Oh, I got my magnifying glass out. I'm telling you, there's no HP there. That Sylveon begs to differ as Adesiu cut the reset, and Mame was doing work, but they get isolated so well by Giz and Bruv here. But Mame able to use that tropical kick to get out of there, cause a little static, and get away. 11 बजेंगे आज. कल 12 साढ़े 12 बज गए थे भाई. कल तो बहुत टाइम हो गया था. देखो आपके तो वो 2 स्टैक होने चाहिए. देन आपके 2 बेसिक अटैक के स्टैक होने चाहिए. यू गो इन विद योर स्टॉर्म. यू स्टॉर्म बेसिक स्टॉर्म आ जाता है. अगर ट्रिपल स्टॉर्म करना है. बट ट्रिपल स्टॉर्म अभी उतना नहीं वर्क करता. अभी ड्रॉप किक वर्क करता है. डबल ड्रॉप किक और स्टॉर्म. यह फाइनल्स तक लाइव है शिवम भाई. आई थ्रोट 3 लैग हुआ. I mean, कुछ नहीं कह सकते यार. ना उसका लिगम अच्छा बहुत अच्छा था यार. उन्होंने बस वो टॉप का T1 पे फाइट मैसअप कर दी. यूनाइट्स होते भी. I'm glad they made this hero graphic because they showed us that a lot this week. भाई क्या क्लच किया उसने यार. Yes, Franks bro, आपकी चैट्स दिख रही हैं दोस्त. मैं वेट पावरफुल भाई नो राइट ब्रा. शीश भाई शीश. गेम पसंद है गाइस तो लाइक बटन स्पैम कर देना यार. और शेयर भी. सब्सक्राइब तो करना ही होता है. फिर तो बैठ रहा हूँ मैं देखने भाई. आगे कर दे क्या भाई. Yeah, this is just absolutely incredible. I love that Nouns Esports had a plan to deal with this, but I mean, it's Mame, it's T2. I don't know what you do when their whole team knows
is they need to feed 6 subs to 5.6 guys. Black and 1 lost 1 those. Black and 1 the upper finals. Nouns had the strategy. It was working for 5 minutes. It looked like the game was in their control. Half their players rolled down to the इधर first रुक जाते हैं dreadnought भाई, at इधर रुक level जाते हैं. 9 with unite moves. And somehow at that 5-minute mark, they thought that tier 1 goal zone was worth laying it on the line for, and they got punished in a big way. भाई वर्ल्ड स्पेल टीम नहीं And चल रही after यार. that, it just became the Mame show. Blissy pocket, and we're off to the races. Yeah, it was just so difficult to deal with at that point. The strategy early, brilliant. देखते हैं भाई T2 versus Black Hand. Understand कि that Noun versus T2 Black knows Hand. what they need to do throughout यही this टाइम है यार match. बैक कमबैक का. That first dreadnought. अरे आक्रमण bro, welcome to the family. Thank you for joining the Saiyan squad. Make sure to spam my special emojis. ऊंचे shout out की जान नहीं है भाई, sorry. हालत खराब हो रखी है. While this is going on, you've got a Dragonite just इनकी running फ्रेंड around लिस्ट the फुल map, हो गई. क्या getting इनवाइट भेजूं every क्या? piece ठीक of है यार. experience, securing ठीक है objectives, यार. getting ready to win the game with that massive कर लो hyper. ये. So while Nouns is focused on Mame अभी and तक a lot of T2's focused on Mame, अभी तक RYZEN का मैच भी अच्छा है. बचा है दोस्त. Yeah, don't forget how अच्छा है. many Pokémon coverage वालों को damage दिखाना Rowan चाहिए dealt, जबरदस्ती which सब was कुछ क्यों है बाकी गेम 88,000, प्ले. which aside from अरे the भाई Nouns ये सब esports तो ठीक है. eclipsed DB by सुपर हीरो like की 20K anyone else on their squad. So I mean, नहीं again, the आक्रमण focus भाई keeps ये shifting नहीं. over to Mame because they're making the big चैनल बंद हो KO जाए तो plays, कोई बात. but that ठीक doesn't है यार. happen if you're not getting those ठीक big है time यार. hyper beams coming out. You don't have Supercell doing the heavy slam, big blocks, Blissy in the ये pocket, कर feeding लो the मेरे eggs, भाई. egg bombing at the right time. I mean, this whole team, and don't forget the sword. The sword came through big. They were sealing objectives while everybody else was on the top side of the map. I mean, this team is moving in unison, and yes, again, it revolves around Mame, but this is a whole solar system of players here, and they all लास्ट में revolve तो around अच्छा each नहीं other. यार. Yes, absolutely. They know how to play with RSS से लूजर ब्रैकेट होगा ना. यप यप यप. just that Serena is अपना this माइंड में good प्रो or स्ट्रीम Mame बन is गया है this भाई. good. It's 6 the hours T2 ठीक है यार. knows how to unlock. चलो गाइस मैच 2 Noun versus T2. Heading into this next game. प्राइम बन गया है. बहुत मस्त यार. क्या बोलते हो बीडू? आज मामे का दिन है क्या? क्या T2 कमबैक दे पाएगी पूरा? अरे अरे स्लोब्रो बाहर आ गया गाइस. स्लोब्रो बाहर. गेट लियो माचे. रेडमो सरीना देसो ड्रैगनाइट पे. ब्रव एचडी बैक टू ब्लिसी. उधर स्नोरलेक सी डबल. ओके डबल एक्सपी शेयर उधर है. T2 की साइड. नाउन्स की साइड सिंगल एक्सपी शेयर. स्टील करने आ गया मैच में भाई. जी जी. अभी देखना है स्लोब्रो सर्फ जाता है कि स्कार्ड. स्कार्ड ही जाएगा मेरे ख्याल से. तो स्कार्ड का यूटिल अभी में मोर यूजफुल है. 3 ऑलराउंडर्स भाई कॉमन हो गया अब तो शॉक भी नहीं लगता. स्लोब्रो मामे के लिए है critical that they are talking to each other, that they are going in. भाई. When the Slowbro hits the scald, which isn't easy on Mame's Zarina that moves around so quick, but if they do dial it in, they got to be ready बड़ी to बहर pounce को the अब moment कोई ज्यादा that यूज नहीं happens. करता. सब So डैमेज communication is फोकस gonna be किया. key if they want चलो Slowbro गाइस to take over. back into the game. Sports, your purple team. T2, your orange team. देखते हैं भाई. फर्स्ट ऑडिनो वापस से जाते हैं. इनको मिल गया लगता है फर्स्ट ऑडिनो. इसके पीछे पड़ गए भाई. ये तो मरेगा भाई. ये तो स्टार्टिंग में बुली चालू है. मामे फुल फार्म कर रहा है. Clearing out so the Dragonair can roll up. क्या तनुज भाई नजर कहाँ है? Getting a chance to stack and get all the experience it needs, and this is exactly where you don't want to be if you are now. ये लोग जिसे इसको नर्फ करवा के मानेंगे. ठीक है यार अमृत भाई. वेलकम टू स्ट्रीम यार. हो गया कि खत्म स्ट्रीम. Yeah, there's an APOM in the path. There's of course the core fish behind them for T2. Then those are just easy Pokemon for Mame to take. full zone out रखा है मामे को यार. Which it doesn't look like they will. Supercell getting a good chunk of them in the face of Redmaw, keeping Redmaw kind of anemic. Adesu with some incredible dragon dances. बड़ी बार मिड मिलेगा नेक्स्ट सीजन Mame में. right there. Mame heading back into the central area to become Serena. Oh भाई. Fight happening down here in this bottom path. Ruin coming Slowbro in survive looking for कर a लेगा. KO on the Slowbro. Not gonna भाई ये वॉल क्यों नहीं है? गेट लियो. हेलो. इतना अर्ली लीड मिला था यार. I said communication was going to be key, and Nouns better be talking. T2 यार. what happened down here? They're backing off a little bit as Haruta's looking अर्ली लीड मिला था मेरे भाई. एजी स्लैश मार दिया. भाई एजी स्लैश तो दुश्मनी लग रही है मेरे को कोई. Especially early, it does so much damage. It puts out this big
area of hot water. And you know, hot water in KO's Pokemon. चलो फाइनली मैच टाइम बना माचोक सॉरी माँ में तो फिर मामा वाले काम कर रहा है Yeah, Mame, I mean, they are in trouble here for Nouns Esports because Mame is ready to go. Sword, shing, shing, shing. Haruta doing some damage there. And this is the Pokemon, by the way, to take down something like Blissey because all those boosted attacks from Aegis/Slash do extra damage based on a Pokemon's maximum health. Yeah, and actually they got a good amount of comeback ऊपर बैकअप चाहिए रहेगा यार उनको as a Honedge, and that goal zone's already down for T2 as they're getting stomped on Redmond. They're taking भाई T2 पे घुस दिया यार lands on Geese trying to hold it down by themselves. Can they hit a skull? They're trying to line it up. Can they do it? Here comes a Dasu for that support, but a Dasu doesn't engage. Mame's going to be able to get out of this for free unless Mame says, I'm ready for that action. Great defense there by कम आप अकेले बोर तो नहीं होंगे अरे भाई मैं डिस्कॉर्ड पे नहीं हूँ यार अमृत भाई आ रहे हो क्या This might be what they need in some of these bigger team fights. Speaking of team fights, not everyone is at Dreadnought. We're all kind of walking through the central area still. तो थोड़ा चालू कर दिया भाई Gatlu's just posturing to the left hand side. We're going to see if they go for an engage. Redmond certainly engaged. Dasu goes for the hyper beam. चलो भाई ना उनको तो मिला Hyper beam. Haruta's on the retreat. They get egg bombed up. Bruv on the chase. They're trying to turn back the other way. मामे पे चढ़े हैं क्या नहीं मामा तो है नहीं मामे भाई T2 पे रोटम भाई जीजी पहुंच जाएगा रोटम पहुंच जाएगा लेट हो गई है हट यार जी जी ओ भाई Unite move, stomp, get your points in, maybe a little retreat as T2's sword downstairs. Haruta is doing tons of work. Wow, I mean, so many resources are dedicated. भाई रेडमो एक लेवल पीछे तो भी इसको डर लग रहा है यार जाने में यार Pokemon, can they stop Mame? That's a big Unstoppable रखा है भाई right now 113 wow they're trying to help out Nouns Esports in a big Best way arena world or what 13 to 151 yeah the score is not close but I will say these two teams are fighting very well levels decent है अब तो on that Dragonite I think this is काफी a close हो super गए strong pick for them Ruin right now of course also on that Dragonite they have those hyper beams contesting any of the big objectives throughout this match पर गोल का लीड बहुत ज्यादा है इनका T2 level 10 only one for Nouns Esports but there's actually more parity across रेडमो भी बोल रहा है भाई आजा बाहर मैं जा रहा मामे तो सरीना मुझे सीखने भाई ज्यादा एग्रेसिव है भाई बच रहा है वो एग्रेसिव होके भी देख रहे हो अभी गोल करने जाएगा वो देखो गया पहले जंगल चेक किया कुछ नहीं चलो भाई अभी उनका लेन फार्म अप होने वाला है उन्होंने स्लो बोरो भेजा मामे के लिए अलग से I think Mame thinks that might be their goal side I'm not sure but they're hanging out there all match yeah they've been living there rent free बैठ गया भाई जंगल आना शुरू लेन फार्म आना शुरू वो बैठा है उसको टाइम पता है scoring as Mame is like okay I'll just take your central area ब्रो दोनों के अलग फायदे हैं दो उसको किस थोड़ा टैंकिनेस बनाएगा फोकस में आपको सिचुएशन में बताएगा डिपेंड करता है भाई हर हीरो पे डिपेंड करता है over this Dreadnought except for the Snorlax here on T2 Snorlax not making it down for this one Mame continuing to store getting scalded right here but it looks like ये पकड़ने का प्लान है भाई लॉल उसको ऐसे पकड़ लिया ताकि रेड पे जाए ना भाई गाटलियो पे अल्ट absolutely but Bruv is down and they're trying to find their next mark as Mame gets a KO on भाई आज इसको तो छीन दिया भाई big push and big stun there as the Daisy has to use their unit move just to try and get out but Mame's on the chase and they get a KO streak of 3 जी यार माचम के पीछे पड़े हुए हैं ये अलग Brubs is off respawn they're going to get there a big block might sort this thing out real quick Supercell says no let's go ahead and work on some points let's see what we can do as अरे 42 points on the back end उसका स्कार्ड नहीं हिट किया out of the range of the scald and getting it done सरीना पे देखो यार अगर फोकस ही बेटर है फोकस बेटर है all been scored by Mame that's not true but I mean it sounds kind of true फोकस यू कैन गो फोकस ये उसको भी चलता है बट फोकस ज्यादा चलता है बिकॉज़ देन अगर अर्ली गेम आपके समझ लो स्टैक नहीं हुए देन लेट गेम तक आप यूजलेस हो और समझ लो अगर स्टैक ही नहीं करने देते वो तो क्या करोगे यार जीजी वेल प्लेड हो गया आपका तो बहुत रिस्की मूव है वो यू कांट बी श्योर अबाउट स्टैकिंग Here we go just looking for a fight anytime they can Haruta looking for a really nice score in the bottom half not able to make it Mame getting very low as Gatlu's chasing in with the Unite move are we able to get something out of this let's see if we can get a Unite we got to throw those fists अरे ये तो डैनियल मिल भाई की आत्मा निकल आई
tons of experience there for taking throw care कर of दिया, that. throw कर दिया, throw कर दिया. Lockdown, big block with the egg bomb combo, and Ruin there to seal it up. Here we go. Nice score there from Adesu, making some plays, trying to get home. I think they know they're there. Recall कर गया भाई. To make it out or not, but that was a scary moment. Yes, they were able to fly. मुझे खुद नहीं पता भाई, नॉन्स का ड्रैगनेट गाइस 84 है यार, ठीक है यार, विस्टर्ड भाई. A little bit over 100, but as we know in the final throws of this game, that's an ये स्लोबरो की स्किन बहुत कूल लगती है, पर यार एकदम वाटर बॉय या फिर लाइफ गार्ड कह लो. भाई लास्ट रेड नो चलो गाइस. Lay back and respond to whatever they're doing. Now ले पाएंगे क्या रेड नो? Because I think they might go in and start swinging. That's without a doubt. At least level control हो गया है, 14 हो जाएगा maximum माँ में. Just to steal is all of T2's kind of positioning. Is Gatlu going to try and make a माँ में घुस रहा है भाई already. इस बार नहीं मिला इनको और इनका प्लेयर मरेगा एक. Big wide guard gets a KO on Machamp, and I'm taking a look at their spawn timer. They're going to be back in time for Skin Zapdos. buff भाई. Yeah, I think Gatlu knew, hey, I can jump in here, give it a shot. If I'm able to secure this, it's just a KO. If I don't, and if I'm able to, hey, we get some इनका nice स्लोबरो को किल मिला experience. क्या? 12 लेवल का स्लोबरो भाई, A big deal. Gatlu is back now, and Last now red it's equal to time 1 for full down Nouns to भाई. get ready for this fight. A fight which they need to win, not only for this match, but to stay alive in this tournament. Mame 14 हो जाएगा. level 14. They've been on 13 for a long time. चलो ठीक है, लेवल कंट्रोल है, लेवल कंट्रोल है यार. नाउंस ने कमबैक किया है. Possibly send Nouns जीत गए, जीत गए, ठीक है भाई, ये कर लो. स्पॉइल मत करो किसी के लिए भाई. Versus the Japan region champions. Mame starting off, little bit of a scald. Everyone backing off. Your Snorlax coming in with a big heavy slam. Trying to engage his Mame. They're down in it. Mame को पकड़ लिया. Redmaw's trying to catch them out. उनका एजी डेड है. Gatlu uses their Unite move. Zarina Unite back the other way with the Blitz assistance. They're pushing forward. One player down. That's Aegis Last. T2 trying to find her out. Gatlu's so low. Mame's still standing though. They're trying to push in. Where's the Blissey pocket? They might go down. They're caught out. Mame making a Hyper beam एक. Nice! And Mame's down with a big hyper beam by Adesu. KO streak of 2 for the big dragon. यार पर एजी स्लैश का यूनाइट है उनका यार. T2 only 2 players down. Oh भाई outplayed. Esports, but they cannot seem to get Adesu up the भाई. map. 3 KOs back the other way for Ruin. They're heating up. Redmaw's trying to find their Oh way, nice. and they get one themselves. Another KO for Adesu, uniting back into the middle. And they're moving into the center. भाई उनको पता है वो कोई एजी स्लैश का यूनाइट है. मामे रिवाइव हो चुका है. Right now the Dragonite is down for 19 seconds and they're deciding to rip this off the map. Mame is running in. Multiple members of T2 are here, and here we go. Massive unite. Nice. Secure it now. Esports gets the Dragonite, gets it. भाई पर अब those hyper beams have goals. been flossy in the last minute, and इसका गोल रोकेंगे ये. getting big points, tons of KOs, sealing up this इनके गोल नहीं हो रहे. इनके गोल ही नहीं हो रहे. But this thing is not इनके गोल ही नहीं हो over. रहे. The score is within 7 points right now. T2 putting more points on the board, and Bravo भाई. to score 352 to 351. भाई बॉटम चाहिए. 1 point game with भाई 30 बॉटम seconds चाहिए. left. We're talking about razor thin margins here, and T2 is going to get that notice, and they're going to be sure if they're going to be up top. अबे ब्रिसी से कौन लड़ रहा है? 36 there. नीचे ब्रिसी के नीचे कोई बता. Spreading that lead a little bit, but Supercell can change that with one dunk right here as Takashima's desperately trying to get their 9 in. They can't let them score. Now Esports will be going home if they score. They need to stop them. More points going in on the bottom path. Mame bringing them up into the air, but they need to score. T2 needs to put some points in the goal to win this thing. Bottom goal broken here for Nouns Esports. 14 more points from Dragonite. I don't know math anymore, Doomsticks. Where are we? Nouns Esports. Oh my god यार ये क्या था? कौन जीता यार? अबे इधर क्यों दिखा रहे हो? भाई नाम जीते. नाम जीते, रिएक्शन से पता लग रहा है. भाई 418 to 369 यार. Adesu absolutely hard carrying in the face of an overwhelming भाई. pushing, get a KO streak of 3. भाई. The Dragonite is down. Flip that bird. Get it done. Score your points. Too easy. Here we are. Oh भाई. जोश वापस आ गया भाई पूरा. Neither of them ready to head home in this tournament. Now it's Esports. Well played यार. An amazing victory right here. We're heading into Let's go game भाई. number 3 between these two monsters. यही तो मूव है यार. भाई ऊपर आदि सुनने भाई. ड्रैगनाइट वर्सेस ड्रैगनाइट. जीजी यार. क्या मैच चल रहा है. क्रेजी गेम भाई. बिल्कुल भाई. बहुत क्रेजी मैच था यार. Take a look at that. We see how close this score was. At one point, भाई. 30 seconds left in this match. We were literally. कभी भी लंगे ड्रैगनाइट का मजा. I mean, these two teams were so incredibly लंगे close. ने तो Even कच्चे after they were able to secure the Zapdos, लास्ट में ड्रैगनाइट्स के बाद वही ना यार. Esports up to score. So after that, it was भाई आदेश को बहुत भाई बहुत सही खेला यार. the whole way through. What a match.
Both teams need to get points in, and that's a great reaction there as they see that they still have a भाई shot. क्या नेल बाइटिंग मैच चल रहे हैं यार गाइस इसी खुशी में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार एंड लाइव चैट में गिव अवे का लिंक पिन है अगर एंटर नहीं है तो कर देना यार लेट्स गो एम फॉर 500 लाइक्स यार एंड वी आर 6 subs to 5.6k यार बटन दबाओ बहुत अच्छा मैच था यार बहुत अच्छा मामे फुल कैरी भाई ड्रैगन भी लाइक मैं भी दिस इज गॉड यार सारे प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं यार सारे प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं बहुत प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं मजाक नहीं कर रहा भाई बहुत प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं अब एनी जाने नहीं देगी मौका वही ना यार 7 minutes of this game. Good words तक पहुंचे हैं सब yep that's the spirit everyone is good ये था वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइम मैच या भाई बहुत सही खेल रहे हैं भाई मामे का डर तो है यार स्लोबरो ने ऐसी यूनाइट दे दिया भाई तू नहीं जा रहा ड्रेड पे मेरी टीम को ड्रेड मिल के रहेगा ओ भाई इसका यूनाइट पूरा चार्ज नहीं था क्या ये इतना क्लोज मारा जो यहाँ वॉल किधर आ गया सब सरीना कैरी मैं तो कैरी होता है मैं बोझ हूँ मैं तो नूब हूँ यार क्या मैच चल रहे हैं भाई दिस इज वर्ल्ड यप क्रेजी मैच यार यार इसका तो मोन्टाज बन सकता है फुल मोन्टाज बन सकता है इसका तो यार भाई इसका तो फनी रहेगा यार एमवीपी तो ये रहने वाला है ज़ैप्टर्स फाइट में दोनों ब्लिसी ने डिफेंडर को यूनाइट दिया शिट मैन भाई जी है यार यही खौफ होना चाहिए भाई अरे आप भी शेफ करो हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हम ठीक ओ भाई ड्रैगनाइट का ट्रेडिंग कार्ड भाई फॉलो है शायद मेरे को नॉलेज नहीं पर शायद हॉलो है वो अच्छा वॉच पार्टी कर रहे हो तो मस्त निकल गया वरना गेम खेलने में मजा नहीं आ रहा था क्योंकि ना कॉइंस बढ़ रहे ना एनर्जी लिमिट एक्सीड हो गई ठीक है यार माइट भाई अभी स्ट्रीम पे टॉक्सी भाई जो एड्स आती है ना वो यूजर्स पर्सनलाइज्ड होती हैं जो यूजर देख रहे हैं तो ये सवाल मेरे को करने से बजाय अपने आप को कीजिए They have one game ना to decide their fate in this tournament. One game. अब समझ गया देशु का ड्रैगनाइट नंगा क्यों है बिस्टेड भाई बात तो सही है यार बंदे ने बात तो सही बोली पता लग रहा है देशु का ड्रैगनाइट नंगा क्यों And their road to victory, and you could also be seeing your favorite team heading home. ओ भाई कौन जीतेगा आदि भाई आपकी टीम टॉक्सी भाई एक्सपोज्ड टॉक्सी भाई एक सारे सीडन भाई लॉन्ग टाइम नो सी यार मेरे को रोस्ट नहीं करना है अच्छा अब समझा क्यों नॉइस बोला मैं भाई स्प्रेगल्स और अलोलन स्प्रेगल्स कास्टिंग कॉम्बो पे यार यूनाइट वालों ने बोला तुम दोनों एक साथ बैठोगे चलो मैं तो एड फ्री कंटेंट देख रहा है ये प्रीमियम फ्लेक्स Yeah, and a big question also is what is T2 going to do in response to एडन बेस आते हैं कुकीज यूज करते हैं उनके अब आज पता चल गया जॉनी भैया गेमिंग में भी अच्छे हैं भाई चलो गाइस राउंड 3 फाइनल मैच स्लोब्रो वापस आ रहा है गेटलू भाई एजी से जा रहे हैं मामे भाई तो फुल वन ट्रिक भाई वन ट्रिक कैरी भाई गेटलू भाई चैंपियन ड्रैगन डिस्टेंस सरीना को नर्फ श्योर मिलेगा मिल चुका है दोस्त बीटा टेस्ट में आ गया है अभी मेन सर्वर में भी आ जाएगा 2 सितंबर को नॉट लॉस्ट गए भाई सही है यार Blissey, they're really able to chop those big trees down because they're doing max health damage, and that's pretty huge. It's incredible. It has the incredible ability to attack these defenders in a unique way and leverage your Adesu coming through with a hyper beam, your Redmaw coming through with his Naun कहाँ की टीम है? Naun अपनी यूरोप है. Skis chalked up a couple KOs for themselves Naun is Europe. in game 2. T2 is Japan. Throwing a different look at them. I like where Naun's Random gaming है ना Naun. They have the momentum. It's time for T2 to buckle down, get Mame fed up, support them like they've been doing all weekend. भाई Naun जीते बस
मामे फुल कैरी भाई, मामे का नाम फेमस होने वाला है इंडिया में। ठीक है पंग भाई, बेटा ग्रीन को भी मिलेगा, टेंशन मत लो। चलो भाई, एम्ब्लम्स की तो एम्ब्लम्स 2 सितंबर शायद, 2 सितंबर है आई थिंक, 2 सितंबर को आ रहे हैं सारा कुछ भाई। चलो भाई, अरे गोल भाई आ गए चैट में, हटाने पड़ेंगे। घाटली वर्सेस हारूटा, घाटलू भाई बाबू होते हुए गाइस बच गए। टीटो वर्सेस ने बेस्ट ऑफ 3 भाई। भाई मामे को 16 में तेरी जगह नीचे ले लो भाई, मैं तो नूब हूं। माचम तो बस भी कोई मूवमेंट नहीं यार, माचम हेड देन मूवमेंट। चलो मामे पहली बार अंडर शटडाउन हुआ गाइस, मामा जी शटडाउन हुए पहली बार। ब्रो इंडिया में माम ठीक है यार, ये मत करो, ये मूवमेंट मत खराब करो भाई। Dragon are getting KO on the sword as Ruin is pushing forward in tandem with Takashima here. They're going to get some भाई को भी छील दिया गया है, ऊपर मामा जी को छीला गया और सुपरसेल भाई को छीला गया है। So it looks like what both teams are trying to do is overload one path. So भाई रेडमो कांड ना कर दे, बच गया। And Nouns putting a lot of effort up here into the top. चलो बचे तो हैं, मतलब इस टूर्नामेंट जिसने भी खेला कुछ फायदा ही नहीं उठा पाया भाई। Stacking and Zarina going to try and get it done. Takashima being busy in the opponent's central area. Takashima I think ये हम जा रहे हैं, उनमें क्या स्पेशल होगा? एक तो वैरायटी है, ये यूनाइट मूव चार्ज रेट इंक्रीज करने वाला एक टाइप है। हाँ आदि भाई, मैं लेना चाह रहा हूँ टीम में आपका मॉड हटा के, ठीक है ना? उसके बाद ट्राई आउट्स होंगे, आपका मॉड हटाया जा रहा है, ठीक है ना? मोस्ट एपिक मोमेंट माचम का भी है, भूलो मत ज़ैप्डो स्टील, वही ना ज़ैप्डो स्टील भूल गए लगता है गाइस, माचम को जो बोल रहे हो। They actually want to get chunks so they can grab a berry, but Redmaw beats them to it. Supercell heavy slams, and they're going to try and dart out of there. As Mommy comes in for the big time engage, Redmaw and Geese put the brakes on. You just got to be scared anytime there's tall grass around you and you haven't seen Mame for a little while. Takashima going down here to Gatlu and Adesu as they secure this. Gatlu चलो अंडर लेवल तो नहीं रहा, लेवल एक्चुअली उसका ज़्यादा है, मरने के बाद भी उसका लेवल ज़्यादा है यार। Ruin walking down here at level 8 with a massive hyper. भाई Gatlu ने इंस्टेंट लगा दी नस्तर गाइस, नस्तर लगा दी लगता है मैंने। They are Dragonite and they are ready to go for this Dreadnought. Oh भाई 5 seconds until Dreadnought. T2 really set up first mod भाई, काम तो mod। 2 members of Nouns coming down and it looks like Slowbro staying. भानु भाई पता नहीं भाई को कि टेस्ट ऑफ मेन्यू एम्ब्लम्स नहीं है, तो देखे नहीं हमने। Getting chipped, and we're going to see who throws the hyper beam in. Big engage. Oh भाई nice. Sports takes it. Adesu dials it in and knocks it down as they're pushing forward. Redmaw getting a K on the double blade. Oh भाई Snorlax. Oh भाई बचा लिया यार। Ruin is low. That's a stomp 1. भाई Stomp 2. बचा लिया यार। 3. Let's go. As Redmaw is pushing forward, and they're saying my Zarina's pretty cracked too, Mame. Wow, big moves there. I don't know if you noticed that at home, but right before the hyper beam hit Redmaw, they took Dragonite up into the sky. Sorry guys, एक साउंड आया होगा आपको गलती से, माइक पे हाथ लग गया था लॉल। Mame trying to take some experience. मामे को छील रहे हैं क्या गाइस? Get punished for it. I don't know why I said that. I think Mame gets out of everything, but we'll see. ये जिंदा निकला नहीं, इधर से मैं गेम छोड़ रहा हूँ। ये यहाँ से जिंदा निकला, मैं गेम छोड़ रहा हूँ। Oh hello. Their stomps are stronger and they're putting them in the dirt. Big unite move right there, getting some bliss assistance on our Zarina. भाई ये होता डर, भाई ये होता डर यार। Yeah, they're going to try and get some points, and this is a good time to push. They've got 4, but here comes Haroon. भाई ये डर है यार, this is called डर यार, इसको डर बोलते हैं। And you can see T2 just decided, you know what, we don't even want to fight over this. It's not a huge overdunk or anything like that. Let the road इसको डर बोलते हैं we'll guys। take the free Dinos, and yeah, goodbye Gatlu. Yeah. Oh भाई timing. Little wide guard action keeping themselves up. Here comes Takashima. Redmaw with the support. Adesu coming through. They're engaging on Mame. They're getting low. Big egg bomb. Dragonite Unite's going to hit the sky. It's going to fall back down. Going to fall just short. Mame trying to get out. भाई hyper beam मार दे। Nice. अरे भाई बट गया भाई। I can't
here comes the sword taking down मेरे को तो डर लग रहा है मिस्क्विक की जगह यार. Double here, Redmaw taking him actually up to the sky. Oh, Haruta coming in, huge hyper beam, dodged it. What a fight! All the while, Godlu was like, "Hey, wasn't I supposed to get KO'd back there? What happened?" Redmaw, level 11. You talk about scaling. They're leading the pack here. Here we go. Dreadnought coming up. Godlu moving in with a big slash right there. And it looks like we're trying to chip it down, but do we have the secure coming in? We've got the Dragonite from Nouns walking down now. Well, the hyper beam comes through, and Nouns घाटली ले गया रे. घाटली ले गया. up on this Dragonite if you haven't already considered them on fire. Redmaw picked up What the a crazy match यार. What a crazy match. KOs, and Nouns Esports is on the chase because they want those bodies. Wow. भाई पहली बार मामा जी अंडर फार्म दिख रहे हैं मेरे को 10 लेवल के 4 मिनट मार्क पे, नहीं तो अब तक 13 और रखा होता है. Single objective. They're actually going toe to toe with Mame right now, out leveling them somehow. I don't know if that's possible. Is that legal? अब नस्तर ना लगा दियो दोस्त. Certainly happening now. Nouns Esports getting it done. Supercell uses their Unite move to buy some purchase here as Redmaw still trying to stomp around. Unite move by Mame. They're finding Geese. Geese भाई स्लोवर बच गया. trying to stay up. They're pushing forward. मामा डेड. मामा जी डेड. ओह हारुटा कट मस्त है यार. That's great experience. Geese trying to hold down, but there's still two players after T2. That's another KO for Haruta. Oh. They needed a sword. They found one. Top path, pulling it out of the Oh, stone. KO streak of 3 for Haruta. And it's just a Desu trying to hold it down. Wow, Haruta coming in, पर गोल नहीं खा रही heroic है. style, slashing through every single member of Nouns Esports and pushing the big dragon back. Here comes the hyper beam from T2 with the secure on this Rotom. T2 getting themselves an objective here. The first one of the Oh, maps. भाई. Desu's pushing, but if I'm T2, बच you need जाएंगे to ये. back out. You did a lot of good work, but you don't want to get caught out. They're still trying to work अट hard, देके but चला the गया वो sword तो. goes down. Here we go, able to take this Rotom. मामे को टारगेट किया जा रहा है भाई. सही कर रहे हैं. अब तो पूरा कर दिया. और अब हारुटा भाई तंग ना कर दे. Wow, what a fight. I love the engagements here. There's भाई ये सेमीफाइनल्स है सोच रहे हो. ये सेमीफाइनल्स है. अभी तो जहर बाकी है. Two action. They're taking any opportunity they have, and we're seeing it again here. 2-on-2, even numbers. Let's get after it. Mame ready. Final dread of the semifinals. I think they're just kicking into the air. They just like to fight. Dupes next. Here we go. ये थोड़ा ओवरकमिट कर दिया. Maybe a little too far, but here comes all of T2. The big knockups. The sword coming in. Same for there. They are ready to go. भाई हारुटा भाई तो छिल दिए. Going down to Geese. आयो पादस इधर मरे ना यार. ये बहुत रिस्क ले रहा है लो एचपी पे. बहुत रिस्क ले रहा है लो एचपी पे यार. बहुत रिस्क ले रहा है. मामे पीछे से घुस जाएगा. बच गया. अल्टी. ओह रेडमो. ओ भाई. हेलो. ये तो 50-50 करने जा रहे हैं. Actually walking away from a fight. I don't know if I've ever seen something like that happen. अल्ट होने वाला है. Huge Unite moves. Yep, they are gonna 50-50. Oh my. The star player of T2 with a massive Unite move. Bliss GG. onto a Snorlax. They couldn't save it. एजी से डेड है. सरीना डेड है. ड्रैगनाइट है बस अभी यूनाइट के साथ. Yep. Now GG. They absolutely took it up. That Desu Unite, and now they're pushing forward. Bliss assistance. It's Fisher Price now. It's building block style. भाई. Those points are going in. The Hundo burgers are getting eaten, and now Z-Sports is going to punch their ticket to the next round. All they have left to do is a little defense. Nouns Esports scoring here. भाई इनके यूनाइट से पर यार. T2 is fighting back. Godlu can't get their points in. We are not down by over 500 points. Every single member of T2 is ready to fight. यार बीटी है. और 82 पे आई थिंक ओवरडन हो सकता है. अगर 82 पे ओवरडन 81 पे 40 उधर 37 होगा इस हिसाब से. अरे यार. ओह भाई टाइम बाय कर दिया. But it made that score reset happen, which means that's just more time off the clock. 72 every single second they can get. As Geese is hanging out, big heavy slam coming through, Supercell coming through as well. Redmaw hits off the jumping pad, and they're trying to find a mark. That poor block hits no one. They close the goal zone. The push is on. Here we go. They are भाई गीज मरा तो मुश्किल है. गीज नहीं मरना चाहिए. They have to be able to fight right here. If they start going बच down, गए. this could be over for them. T2 pushing in right now. This game is still incredibly close, and there are 40 seconds left while every member of T2 is fighting at the home base of Nouns. Zarina has a Unite move. They're going to try and Yeah, anyone. अब नहीं हो रहा. सब HP रिस्टोर हो गए. अल्टी आ गए यार. Big heavy sling coming back. Hyper beam finds its mark. Two भाई. players down, and Mame's one of them. Make it 3. Now Z-Sports are looking for the clean sweep. They want all 5. जी.
जी भाई Nouns Esports is भाई खेल गए रैंडम गेमिंग नाउंस खेल गए going home. They eliminated the best of the best T2 from Japan. What an incredible series. Wow. Nouns Esports pulling off an amazing victory today. Well played yaar. Can you hear this crowd, Doomsday? We can hear it through the headphones. They're coming absolutely unglued. Nouns भाई well Esports, played यार. Just best Rolex पे ड्रैगन है ठीक है यार. What a crazy man. सरीना का भाई ये नहीं पता रेडमॉक का जो सरीना अल्ट था वो मिस्टेक था के प्लान था पर दोनों भी था उस पे जो प्रॉफिट किया है उन्होंने भाई एजी स्लैश मार दिया सरीना मार दी उधर पकड़ के उनके लास्ट हिट्स खत्म कर दिए बस ड्रैगनेट था और वो लेट आया बहुत वो हाइपर भी नहीं दे पाया भाई माँ में कुछ शटडाउन कर दिया सैड भाई माँ में भाई सोलो कैरी किया यार भाई आउटस्केल होके भी 72,000 डैमेज दिया यार 30% डैमेज उसने दिया है आउटस्केल पूरे टारगेट होने के बाद भी What they needed to do was figure out the puzzle that is T2. What were they going to be able to put together? Chalo guys, it's gonna be Nouns versus Innocence. Adasu's letting us know it's the Dragonite. Johnny bhai MVP bhai. Yes. I mean that he was so well played yaar. Well played T2, well played Mame, well played Nouns, well played everyone yaar. T2 Mame का name down अरे नहीं भाई. स्लोबर कट से वजह से होता है या पर उसका शायद डैश नहीं था कोई अवेलेबल या फिर उसको लग नहीं रहा था कि वर्ल्ड देगा उसको लग नहीं रहा था उसको वर्ल्ड देगा मेरे ख्याल से पॉसिबली अरे गाइस पावर का तो बोलते ये तो जीजी हो जाएगा गाइस ये तो जीजी हो जाएगा मेरे को 1 सेकंड देना गिव मी अ सेकंड पावर कट हो गया है मेरा दूसरा मॉनिटर बंद हो गया जीजी वेल प्लेड You know how it takes a village to KO Mame? It takes every single member of Nouns Esports. It really does. Mame just fighting so incredibly well right here. The Bliss assistance. Guys, मैं एक सेकंड चेक करके लाइट का सिचुएशन फिर मैं आता हूँ अगर स्ट्रीम बंद होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता वापस आऊँगा वॉच पार्टी करने BRB 2 minutes. We've seen him with that nice hollowware, very flossy, looking great, dapper, and getting it done. And now, take a look at Haruta right here. This was just such a massive heroic play from Haruta, getting a big triple KO, pushing all members of Nouns Esports back. Of course, we have this Dreadnought fight at the end, and this actually kind of turns into the final fight of the match. They end up catching Mame right there with the huge slow bro unite, and after that, they just put the pedal to the floor, rip that Zapdos down, but it's not over. भाई एक तो पावर कट हो गया यार क्या करेगा इस and they're doing good. The team T2 holds up so long, they just don't go down. And finally, the dam breaks and Nouns Esports wipes the whole squad. माँ में कुछ सदमा लग गया मेरे को भाई पावर कट भाई जीजी 2 मिनट वेट करता हूँ अगर आ गई तो वेल एंड गुड नहीं तो फिर जब तक आती नहीं है मैं वापस आऊँगा फिर होपफुली फाइनल्स तक आ जाऊँ देखते हैं maybe GG, maybe not. Let's wait. तब तक जरा मैच देखते हैं मैं चैट नहीं देख पाऊंगा गाइस आदेशु भाई MVP बन गए अपने लेट्स गो आप भी मैच देखें मैं चैट नहीं देख पा रहा हूं गाइस रियली सॉरी आदेशु भाई जीजी खेले यार जो भी बोलो मामे भी खेला मस्त इधर से आदेशु भाई हर बार MVP बना है Amazing. Absolutely amazing. It was absolutely amazing. I mean, like I said, it's a team effort. We can focus on individuals, and I know we like to highlight the player of the game, but the story goes so much deeper than that. And none of Adasu's plays make any sense throughout Game 3 if Red Maw just doesn't come alive. I mean, they went, their hair spiked up, they went straight Super Saiyan on that Zarina. They took over the top अब 2 मैचेस बचे हैं गाइस लूजर्स फाइनल्स एंड ग्रैंड फाइनल्स अगर लूजर फाइनल्स की टीम जो ऊपर गई है वो ग्रैंड फाइनल्स जीतती है तो एक और BO5 होगा ग्रैंड फाइनल्स का रीसेट के लिए ताकि विनर टीम
टीम को एक चांस मिले। Here it is, Renaissance versus Nouns, losers finals। लेकिन जो भी जीता वो ब्लैक हैंड के अगेंस्ट जाएगा। जी। 3 टीम्स बची हैं, 3 रीजन्स, EU, APAC and NA। कौन सा रीजन आएगा ऊपर यार? On the land of the rising sun for T2, Renaissance still alive, Nouns Esports still alive. They're coming up next. Black Hand waiting patiently to take them down. But on behalf of Spraggles, Dupe Snacks, we got to take a pause for the cause. We got to get Jeff and Zoinks back in here because there's still action to come. Yeah, we'll see you soon. Sorry guys, chat नहीं देख पा रहा अभी मैं। क्राउड भी जीजी हो रखा है यार, और भर गया शायद। फुल सीट्स भाई। नेक्स्ट इज लूजर्स फाइनल्स, देन ग्रैंड फाइनल्स। एक टाइम पे ये मैच स्ट्रीम नहीं होने वाला था भाई, मेरे ख्याल से एक टाइम पे ये मैच स्ट्रीम नहीं होने वाला था, नाउन्स वर्सेस T2। शुक्र मनाओ हो गया भाई, किसको सब पता था ये इतना इंटेंस होने वाला है। 10 मिनट का ब्रेक है गाइस, 10 मिनट का ब्रेक है अब, क्योंकि नाउन्स को भी ब्रेक चाहिए रहेगा ना, नाउन्स को भी ब्रेक चाहिए। फिर क्या बोलते हो गाइस, अगर मेरा पावर आई 10 मिनट में तो मैं आ जाता हूँ, अगर नहीं तो फिर तो जीजी वेल प्लेड। हाँ अगर विनर जीते तो रीसेट नहीं होगा ना, विनर जीते तो रीसेट नहीं होगा दोस्त। लूजर फाइनल्स BO5 होगा क्या? नो इन्फो। चलो गाइस, फिर मैं थोड़े टाइम में मिलता हूँ अगर पावर आती है, अगर आ गई तो मैं इमीडिएटली आ जाऊँगा लाइव। मिलते हैं, नहीं तो फिर सी यू टुमारो। जीजी पावर कट यार। 6 ट्रेन, हाँ भाई देख ले बीस्टेड भाई एंड जिनने मेंबर ज्वाइन किया था उनकी मेहरबानी। क्या बोले भाई? नहीं करे भाई, 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ एक तो। बट दिस पैटर्न इज वेरी बैड। एक दिन में सब मैचेस तो टीम लूजर में फाइनल जीती और दिन भर खेली रही है। आई मीन विनर ब्रैकेट वाली भी, एक लूजर ब्रैकेट वाली 2 मैच एक्स्ट्रा खेली ना, बट फॉर्मेट का वेरी बैड यार। अब उनका शेड्यूल है तो है ना यार, बीजेएम वाले भी तो इतना खेलते हैं। इधर मैच छोटे हैं ना, ये भी तो देखो 10-10 मिनट के मैच हैं। उधर फॉर एग्जांपल बीजेएम में देख लो तो उधर ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स का एक मैच है, बैक टू बैक 6 खेलने हैं। इधर बैक टू बैक तो नहीं हो रहे ना, होते में तो ब्रेक है। डिस्कॉर्ड पे आ जाए क्या? अरे नहीं यार, कोई ना, आता हूँ लाइव अगर होता है तो। What if you to push the tower one at top? But वो रेडी भी थे ना, उतना टाइम नहीं था ना उनके पास। They had to go there, they had to kill them. स्टिल एक गोल ही होता है उनका, एक ही गोल होता है ना इन द एंड तो। 37 का बचा होगा टॉप पे गोल, जितना 83 स्कोर था ना उनका, तो 37 टॉप पे बचा था। अरे गाइस लेट्स गो, वी आर बैक, वी आर बैक बॉयज। वी आर बैक बॉयज। लाइट आ गई यार, लेट्स गो। 2 मिनट आपको ब्लैक स्क्रीन दिखेगा गाइस, जस्ट वेट करना, आपको ब्लैक स्क्रीन दिखने वाला है थोड़ा सा। चलो भाई, गुड टू गो। But just don't want you versus NN in finals. भाई ग्रैंड फाइनल स्टार्ट से पहले 500 लाइक्स कर दो, देख लो यार। 72 टू गो, मेरे आने से बाहर आई, ठीक है यार। पावर बैक बॉयज। असली क्लच तो इलेक्ट्रिसिटी ने किया है। अच्छा अपन पोल बंद कर देगा इसे 1 सेकंड यार, गर्मी हो गई इतनी यार, इतने टाइम से हेडफोन पहने हैं भाई, मेरे को गर्मी लगने लग पड़ी है भाई। अपने सारे पोल्स, रेवेनेंट, मीत सैत्र जी वो तो कल ग्रुप स्टेज में बाहर होगी, 2 टॉप 16 के, टेक्निकली टॉप 13।
सर्च दिखाना एक बार अपने पीसी की, ऐसा है क्या? ये कर लो भाई। 5 मिनट अभी भी बचे हैं गाइस, 5 मिनट का ब्रेक है, रेस्ट करने कर लीजिए, जो भी करने कर लीजिए। मैं तो इधर ही बैठा हूँ यार, बातें करते हैं। अभी भी बंदे आरएनटी पे अटके हैं भाई। थैंक्स भाई, नहीं मिलेगी भाई, टेंशन ना लो। अरे भाई 5 मिनट फोन चार्ज कर लेता, कर लो भाई। अरे बट इंडियन प्लेयर्स तो नहीं मैंने उनके यार। ये देख, अभी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल उन्होंने T1 पुश किया और देन उसके बाद T2 पुश किया, करेक्ट। उसके बाद अब वो बॉटम से एकदम टॉप शिफ्ट करेंगे अराउंड 20 चलो 15 सेकंड्स रोटेशन में वेस्ट। एक्चुअली 15 नहीं 20 सेकंड्स ही, क्योंकि T1 पे जाना है। रोटेशन में वेस्ट, 20 सेकंड का टाइम एनिमी को भी दे रहे हो, जो उनके तुमने प्लेयर्स मारे हैं, वो कोप अप करेंगे, हील होंगे, सब कुछ होगा। और इधर स्ट्रीम जीजी हो गई है। मेरी आवाज आ रही है ना गाइस? के ये स्ट्रीम में है, इनकी स्ट्रीम में है। Why team not play with Tyranitar and Glacier are banned? I think Buzzwole is not meta, दोस्त। Buzzwole is not meta. Buzzwole is not meta, just so we are clear. ISLM का लक चला नहीं, अब रीजनल फाइनल्स में तो गेम प्ले और लक दोनों ही नेक्स्ट लेवल चल रहा था यार। लक की बात इन दी एंड यार, लक पे नहीं कर सकते यार तुम। इस मेरा क्या बिल है? ये तो इनकी स्ट्रीम थी भाई, मेरी स्ट्रीम नहीं। ये लक तुम इस लेवल पे ये नहीं बोल सकते भाई लक खराब था। इस हिसाब से तो भाई ये लेवल उतना नहीं भाई। ग्रेशन का एसिकल स्पीड बना है, ओके। तुम इस लेवल पे नहीं बोल सकते भाई कि लक खराब है, लक नहीं चला, ऐसा यू कांट। चूजिंग बजल थ्रो गेम, या अपनी स्ट्रीम क्वालिटी थोड़ी लो कर दो। अरे नहीं रहे पैच पुराना है क्या? पैच पुराना नहीं होगा। वो अलग सर्वर पे तो नहीं खेल रहे, अलग सर्वर पे नहीं खेल रहे ब्रो, वो इसी पैच पे खेल रहे हैं। वो जो अभी करंट है, बस हीरोज बैंड है, दैट्स इट। पैच चाहिए ही है भाई। लास्ट हिट तो सारा लकी नहीं भाई, कुछ 1-2 बार लक हो जाता है। जैसे लक भी नहीं है यार, उन्होंने मैसअप किया, लक नहीं है यार। उन्होंने मैसअप किया। जैपडस पे तो कोई लक नहीं हुआ, मैसअप किया। जैपडस पे तो किसी का लक नहीं हुआ अभी तक ये टॉप मैचेस में। माचे वाला भी कैलकुलेटेड था। आरएनएस ने ऑल द अंदर हैंड मैसअप किया। यू कांट से। इन द एंड तुम बोलते तो लक पे गेम आती नहीं भाई। यू कांट से दैट। प्लेयर्स ने तो इतनी मेहनत की, सब लक। गजब यार, मतलब प्लेयर्स तो ऐसे ही है ना यार। घंटा घंटा देखते हैं, माइक्रो प्रैक्टिस करते हैं, टाइमिंग देखते हैं, परफेक्ट करते हैं, और तुम बोलते हो भाई लक अच्छा नहीं था, ये नहीं था। एक टाइम पे चलता है लक अच्छा नहीं था यार, कभी कभी, पर अब स्टेज पे नहीं। थोड़ा बहुत होता होगा पर मेजर इतना नहीं है भाई। दो मिनट में लूजर फाइनल्स गाइस। नाउन है बैन का भाई, ठीक है भाई। फ्लिप्स कमिंग, फ्लिप कॉम्प्स की भी बंदे प्रैक्टिस करते हैं, वो लग पे नहीं होता। आई मीन इधर फ्लिप कॉम्प किसी ने नहीं खेला अभी तक यार। टॉप 8 में तो 16 का कह नहीं सकता, मैंने सारे मैच नहीं देखे, पर टॉप 8 में तो किसी ने फ्लिप कॉम्प नहीं खेला यार अभी तक। फ्लिप तो हुआ ही नहीं है। जो भी PUBG में चला रहे थे अपने लौंडे फ्लिप, अभी तो कोई फ्लिप नहीं है भाई। माइटी इतने जो उसके सारे NFL आए, वेलकम टू स्ट्रीम दोस्त। क्या ही करें भाई, और दिखाना पड़ता है। 1 HP बच गए, उसको लक बोल सकते भाई, पर बचे तो ना। 1 HP बचे, पर वो तो बचने का हुआ, लास्ट का थोड़ी। क्या पता बंदे को सही लग रहा हो कि मेरी इतनी HP बच जाएगी। इंडियन उस बंदे को लगा मेरी 2% 3% HP हो जाएगी, बचती 1%। ये भी तो हो सकता है, सोचो। नाउन में तो टकलू गजब लगा भाई।
नाउन का प्रोनाउन हो गया क्या मेरे भाई? पता नहीं भाई। क्या ही बोले भाई। इंडियन में फ्लिप कॉम यार, परदेसी भाई कैसे हो यार? इंडिया में तो फ्लिप कॉम में भी गिव अवे होता है भाई। लास्ट हिट एक स्किल मूवी बनाओ। इस हिसाब से तो हमारा होगा यार लास्ट हिट एक आत्मकथा। ओ भाई नाउन्स बार नहीं दोस्त, T2 बार हुई है। नाउन्स इज इन लूजर्स फाइनल्स विद अगेंस्ट RNS। RNS को हैवी वोटिंग जाते हुए गाइस। जीत गई भाई किंकुल भाई, नाउन्स जीती है। अब RNS के अगेंस्ट उनका है फाइनल्स लूजर्स ब्रैकेट का। और ये आ रही हैं गाइस बारात पूरी प्लेयर्स की। लेट्स गो। ओ माय गॉड यस ब्रो, ओ माय गॉड ही चल रहा है। 5 steps to 5.6 गाइस। अरे ये फिर से आ गया क्या? The Pokémon Unite Championship Series presents नहीं दोस्त नहीं अलाउड। बजवॉल का नहीं पता पर टायरेंटार ग्लेशियर और नॉट अलाउड। ग्लेशियर का ऐसी का स्पीड मूव नहीं। बजवॉल अलाउड भी हुआ तो ही इज नॉट मेटा। ये अब दोपहर हो रहा है। आई थिंक अब करौली भाई का आएगा। Hello gentlemen. नहीं It's a pleasure. अरे ये तो कास्टर्स आ गए। My name is Lucy Challenger. ये तो कास्टर्स आ गए यार। How to behave in a polite British setting. So today I'm going to be showing you a few etiquette skills which should hopefully be a little bit of fun and hopefully enhance your own knowledge. So we're going to do a little exercise. We're going to practice how to introduce yourself and perform the पता नहीं भाई मैं चाय नहीं पीता। ये कौन सी टीम के हैं? That was really nice. So another tip would just be to shake 3 times. ये तो वही हैंडशेक वाला है भाई। डू स्नैक्स भाई क्या यार हंसी छूट रही है उनकी। Perhaps the wrist was a little bit limp. So you want to have a slightly firmer handshake. Oh sorry, जेफ क्या नाम था उनका यार? ये डू स्नैक्स है। वो तो जेफ हॉगलिंग्स भूल गया यार नाम। डू स्नैक्स भाई। I'm coming from Japan, so this is perfect. It was close to perfect. A hug is very familiar, as would be kissing. So I would suggest we go just in case that was going to be your next thing. On to the next segment. How to present a business card. It's a way to network. You typically will give it at the end of a conversation and politely ask to exchange. So we're going to have a go at giving and receiving a business card. My first tip is that you always ask for permission. May I give you my business card? May I give you my business card? Would it be okay if I gave you my business card? No. When you receive the business card, it's actually taken. Look guys, yeah, Jeff Hoogland, sorry. Because it's a sign of respect. थोड़ा सा गया था। Alolan Spraggles भाई, Alolan Spraggles. Wow, this was so fun. Will you accept my business card, please? I really like it. Of course it does. Jeff Hoogland भाई. Thank you. Yeah, I drew it myself. Good job, guys. Okay, so we are on to the third segment. Oh भाई भाई ये क्या चल रहा है इनका लाइक फन सेगमेंट है। Perfect cup of British tea. ये इनका लेकिन मस्ती चल रही है उधर की जो लंदन में की इन्होंने। लाइट आ गई यस दोस्त, कब की आ गई? उसी टाइम आ गई, स्ट्रीम बंद ही नहीं हुई। Into the teapot. And are you going to pour for yourself first or your guests? Definitely not Jake. Wow. अरे नहीं भाई। We serve our guests first. So. गलेरियन हुगलैंड भाई। Okay, चाय पी लो गाइस। Of the host can add their milk and sugar if required. So I'm going to correct how you're stirring your tea because we don't create a storm in a teacup. Because if you go in a circular action with bone china, you're going to shatter the bone. Yeah. How do I not have the motor skills for this? भाई कब चालू हो रहा है गेम? इसके बाद दोस्त इसी सेगमेंट के बाद। Is it close? You're staining my table. Be a good guest. So ideally, we want a silent tea drink, so no slurping. Good job, gentlemen. We are now on to the final and last. हाँ इंग्लिश मूवी की तरह इन्होंने स्टाइल किया है। उतना नहीं रुक भाई थोड़ा बहुत। मेटल्स देखता हूँ। ओ भाई हॉट डॉग है क्या? How to eat the food correctly. Okay, so now we have strawberries. So we only use the fork. We don't use the knife.
like cake. It's very difficult. It's tricky. भाई उससे स्ट्रॉबेरी बेचारा कैसे करे यार फोर्क से Bit easier, strawberry. Strawberry are bleeding. Strawberry is bleeding. Oh my! Strawberry is bleeding. The piece de resistance, the pizza. You can't have a person eat pizza like this. I'm so Strawberry is bleeding, bhai. We'll eat pizza in formal settings with a knife and fork. This is how people lose mayoral spots in New York. If you were faced with a banana in front of the Queen, how would you eat it? Am I supposed to use these to peel it? Oh God. Am I supposed to use these to peel it? Are you serious? भाई केले का छिलका नाइफ और फोर्क से उतारा जा रहा है यार. So I do hope these techniques क्या will come in मस्ती handy है next time you यार. find yourself in a formal British setting or indeed have the pleasure of meeting the Queen. Thank you, gentlemen. हल तो क्रोल खेला चल रहा था. पिज़्ज़ा भी काटे और छुरी से भाई ओपी यार. चलो गाइस. ओ भाई ये शेक क्यों हो रहा है? ये स्क्रीन क्यों शेक हो रही है? हेलो. Championships live here in London. I want to apologize right off the bat that we are not Jeff and Zoinks. We told you would be getting some Jeff and Zoinks, and I know you were quite disappointed to be seeing Spraggles and Doom Snacks. Yeah, nothing could be more disappointed than not seeing Jeff and Zoinks than seeing my own performance in that etiquette video, which was about the most embarrassing thing that's happened to me, at least today. They didn't show how I didn't figure out how to eat a small piece of cake. So I actually feel pretty good about that etiquette video. You know, Doob Snacks, we are so close to our grand finals. Yes, the next match is going to decide what two teams, finally journey end होने वाली है वर्ल्ड्स की. for the world. टॉक्सी भाई अभी तो टाइम नहीं है यार. यही तो टाइम नहीं है टॉक्सी भाई. क्या कर रहे हो यार? To the first place team. Yeah, losers finals are going to be between Renaissance and Nouns Esports. But before we jump right into that action, I kind of want to talk about how we got here today. We had a long day. Let's talk about what went down. Let's take a look right here at our winners bracket. T2 versus Noun, T2 जीती, Renaissance Cyclone, Renaissance जीती, Black Hand No Show, Black Hand जीती, IX Gaming Eternity जीती. Then Noun Esports, Cyclone को बाहर की, No Show Eternity को बाहर की. Then T2 Renaissance से हारी, Black Hand IX से जीती. उसके बाद IX बाहर हो गई Noun से. And बाकी सब मेरे को नहीं याद. On the stage. रोजेट भी आ सकता है नहीं भाई मस्ती कर रहे हैं. अभी APAC EU और NA बचेंगे गाइस. APAC से अपनी RNS, NA से Black Hand, EU से Nouns. Let's go. They switched to the tree. They had Redmond back on Lucario. They were trying to figure out, and nothing was finding success for them. And that's what sent them to the losers bracket ultimately. चप्पल आ गई भाई. बुरा लग रहा है भाई. Things were going pretty well for Nouns Esports. Felt like they were playing a really solid. Can RNS come back, or will Nouns continue their momentum? And then here Let's we go. See, big old secure there by the tree. Nouns Esports off to an early lead. Early lead indeed, and those Hundo burgers are raining in as those goal zones are unlocked when you take आज last hit भी बहुत ली है घाट लेने ट्री से यार. Was long and held on just till the end. That's right. They were able to win game 1. They ended up going. ठीक है यार. T2 figured out a strategy. They figured out how to power up that Serena. Thank you सुरजीत भाई. मुश्किल हो रहा है पर यार. To the losers bracket. Yeah, right after that we checked सूर्यांश जी ये तो मेंबर्स के लिए है. मेरे को कहाँ से मिला? मैंने किसी सर्वर से लिया था दोस्त. iClan really trying to show up, show out and represent the OCE. ये कर लो प्रंजल जी. Esports here. We're taking a look ये कर लो तुम लोग यार. Pop over to Renaissance. And right here, there's some big moments here from Nouns Esports. They lose game number 2. They win game number 1. Everything is on the line for them right here. And now we're taking a look
at Renaissance. Here we go. Renaissance, I gotta tell you, Renaissance, an amazing team, but I didn't know that they were this good. Yeah, they were just putting the screws to them. I mean, Icon has some moments of brilliance for sure. There's one of them as Pengu was getting a KO streak of 2, and they're all over Mevius there, but that was not long for this world. Let me tell you, Icon started out very, very strong, but Renaissance's strategy, feeding enough experience to their Gardevoir, I mean, it really proved to be amazing for them. And throughout this tournament, Renaissance has impressed me every single match. What a team. They end up beating Icon here 2-0, but there's some more exciting stuff within these matches. इवेंट के बारे में तो का अभी इतना नहीं पता गाइस, अभी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। ये भी खेल रहेगा नहीं दोस्त। खाली हाथ तो कोई टीम नहीं जा रही भाई, टॉप 16 में खाली हाथ कोई नहीं जा रही है, इतना याद रखना। ठीक है क्षितिज भाई, ठीक है यार, ये कर लो। Proved to be a bit too much for almost every single team that they ran into. Renaissance making it look easy out there. Massive 4 KOs here for Yang, and भाई बस करो यार, मैच चालू करो यार। ईड्स गेस्ट है, क्लोजिंग इवेंट भी देखना। क्लोजिंग इवेंट भी होगा क्या? ठीक है यार। अब क्लोजिंग इवेंट में कुछ अनाउंसमेंट हो जाए ओपी वाली। Yeah, I mean their whole performance. इंडिया कितना अमाउंट मिला? $10,000 smile inducing. They looked oppressive, impressive, and ready to go. एग्जैक्ट नहीं पता। Here we go. Black hand But I think मेजर प्राइस पूल टॉप 8 में था, उसके बाद 10,000 था शायद, जितना मेरे को नॉलेज है। बिकॉज टॉप 8 के बाद तुम रैंक डिटरमिन नहीं कर सकते ना, टॉप 8 के बाद तुम रैंक डिटरमिन नहीं कर सकते। जो राउंड रॉबिन हुआ कल, उसमें रैंक डिटरमिन नहीं हुआ है, तो सबको 10,000 है टॉप 8 को छोड़ के। रैंडम भाई नहीं भाई, टेंशन ना लो। नो 10K 10K 10K। And I love seeing Jungle Book back on that Cinderace. Oh, I love Jungle Book on that Cinderace. Will we see it in the grand finals? I am not sure. Taking a look at this fight right here, you can see Overlord on the sword down there. अभी देख लेते हैं प्राइस पूल को स्ट्रीम के स्टार्ट में जाके। वेट, हम लाइव में नहीं है क्या? लाइव में एक सेकंड रुको, अभी पता लग जाएगा। ये रहा प्राइस पूल गाइस, ये रहा प्राइस पूल, ये रहा प्राइस पूल गाइस। देखो फर्स्ट को ये देखो ना, ओके 13, क्योंकि 13 टीम्स ही आई ना। ओके ओके ओके, बिकॉज 13 टीम शो अप हुई तो प्राइस पर आई थिंक थोड़ा बॉटम टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो 13th ये देखो 13th को 5, ये क्या चक्कर है? सो दिस यहाँ तक 8th है, उसके बाद ये 5 टीम्स जो उधर निकली राउंड रॉबिन में, तो 13th प्लेस कैसे डिसाइड हुआ? ये प्राइस पूल है गाइस अपना। चलो भाई लिंक देख, किस चीज की बोल भाई? कौन सा लिंक? भाई कुछ नहीं पता। गिन्यू फोर्स आ गई गाइस। रैंडम में क्या जाता है? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या भाई? रोज ऐसी सीन चाहिए भाई। कौन सा लिंक बोल? Yeah, absolutely. In the face of adversity, 5,000 क्या? तो 13th रेवेनेंट ही कंफर्म भाई। एक ही मैच जीती थी रेवेनेंट, या वो भी लाइक BO3 का मैच, नॉट फुल BO3। चलो गाइस, कैन यू रीच 150 लाइक्स यार? कम ऑन, 15 लाइक्स टू गो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आरएनएस गाड़ीवर है, तो गाड़ीवर ऊपर डाला तो मैसेज नहीं दिख रहा यार। कितना ऊपर है? लो वोल्फ भाई मेरे को नहीं दिख रहा लिंक यार, फिर से डाल। दिख नहीं रहा मैसेज, ऐसे नहीं, मतलब लंबी स्ट्रीम चाहिए। ठीक है यार, 2 स्ट्रीम हो रही है दिन की कल थोड़े दिन से। Here we go. Nudo putting some points on the board, and it looks like Eternity is trying to make it happen. अभी रिकैप चल रहा है। यप
लिंक्स ब्लॉक्ड है क्या? अरे मेरे को व्हाट्सएप कर देना। Eternity, something they're known to do, just put all the damage on that Zapdos. Great points into those goals. But of course, like we said, IX able to beat just this also got 10k for 20k strategy that Eternity 10k yeah 10k I think 10k always keeping them on their heels. Yeah, absolutely. Yep, सबको भाई अब वर्ड्स पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना टॉप 16 को. They got a big win against Eternity early, you know, a team that nobody really knew what they were about. They kind of throw everything at the wall to see what sticks, win big. Sometimes they lose big, but IX Gaming putting that puzzle together, able to get themselves a win and move forward in this tournament. IX Gaming, one of my favorite stories throughout this entire tournament. I mean, they are just incredible. We have more Pokemon Unite World Championships coming up. We have our losers final coming up. Don't go anywhere. We will be back. It will not be Jeff and Zoinks. I don't want to disappoint you that way. Doob Snacks and I will be back in just a moment. तो ये रही पोजीशन गाइस. 5th सीक्रेट शिप 13th is RYZEN esports. ये स्ट्रीम सबसे बड़ी स्ट्रीम होगी आपके चैनल की. अगर 8 घंटे से ऊपर गई थी यस, बिकॉज मेरे 8 घंटे मैक्सिमम थी और वो मेरे को डिलीट करनी पड़ गई थी बिकॉज ऑफ अ क्लेम म्यूजिक का, तो वो रिमूव नहीं हो सकता था, याद है मेरे को. 8 घंटे से ऊपर गई तो यस, बिकॉज एक्चुअली नहीं 8 घंटे की अपनी सोलो टू मास्टर भी तो थी. स्ट्रीम को म्यूट करके नहीं यार, म्यूजिक चाहिए यार. मैं कहाँ कास्टर भाई, मेरे पे ताकत नहीं है कास्टिंग की. लंदन में खाना पीना प्लेन का खर्चा होटल का आई थिंक ये यूनाइट ने कवर किया है. मेजर पार्ट यूनाइट का कवर्ड है. जस्ट इन केस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो जाएं जो उनके रेंज से बाहर है तो वो ऑर्क्स या प्लेयर्स. युगा भाई ये तो मेरे को भी नहीं पता यार, मिल जाएगा तो बता दूंगा यार. क्या बोलते हो? $150 का भाई. चलो गाइस मैं कॉल करके आया, तब तक अब जरा 1 मिनट रुकिए. BRB Tasteful. Dignified. Oh. Welcome to the Polite League. Hello, gentlemen. It is a pleasure to see you all today. My name is Lucy Challenger. I am an expert in British etiquette. I teach the world how to behave in a polite British setting. As you can see today, the nature of your work means that you travel around the world, meeting different people from different cultures and customs. And today we find ourselves in Great Britain. So it's important that you know how to handle yourself in formal and informal settings, following the specific. Okay, gentlemen. So we're going to play this game
is what not to do with handshakes. There are 3 rules. The first rule is you cannot blink. The second rule is you cannot look away. The third rule is you cannot break hand contact. If you break a rule, you're out. So, gentlemen, if you'd like to stand up, look at each other in the eyes, ये present your hands, hold तो hands, restream है and ना? start shaking. ये तो restream है guys. Blinking, you're out. ये तो दिखा चुके हैं पहले. The hardest part. Hardest part. फिर से नहीं अकेले वाली स्ट्रीम नहीं है. Fighting it. भाई. चलो guys 10 likes to 450 यार. बटन दबा दो जल्दी जल्दी. And we are 2 subs to 5.6k. Let's go. An extended handshake is very awkward. On to the next segment, which is about how to win gracefully and lose gracefully. I'm going to have a bag with emotional states within it. I'm going to invite 2 of you up, and you're going to draw from the bag an emotional state. 2 gentlemen at the end, if you'd like to come up. Congratulations, you've won. Thank you. नहीं. Okay. नहीं. He doesn't care. You've seen a bit sad. Yeah, I do. A bit sad. Yeah, okay. All right, well done on your win. Okay. How do you feel चलो about your guys win? catch up हो गया. It was the easiest game of my life. It was a walk in the park, actually. Okay. But he lost. And you're happy with your win? Yeah, definitely. We already predicted this long ago. Okay, you knew you were going to win. क्रॉली वे पर नहीं उसका नहीं. ये तो सुबह भी हुई थी. He seems very happy that he's lost. भाई ये गेम सही है यार. उनको काट दिया गया कि आपको इसका इमोशंस रिप्रेजेंट करने हैं यार. कल वाले में जिसने क्रॉली था वो चार्मेंडर की हैट वाला बंदा था. ओ भाई. The etiquette training today. I hope these techniques will come in handy next time you find yourself in a formal British setting or indeed have the pleasure of meeting the Queen. सही है यार. Thank you. Let's go guys. फाइनलाइज कर दो यार. चलो पहले 450 फिर 500 जाते हैं. क्रॉली का तो कल हो गया. चलो guys, we are back. Hello everyone, welcome back to the Pokemon Spraggles, World Spraggles. Championship Series. Kirk Dupes next to Bay. Content Cowboy Spraggles, and we've got some more recap action because we didn't get to see all the games, so we'd like to talk about them a little bit. भाई अभी भी I think so many exciting ये रेडी कर रहे हैं सब कुछ and इनको ब्रेक दे रहे हैं. अनाउंस को थोड़ा ब्रेक चाहिए ना. कुछ ज़्यादा इंटेंस मैच था इनका. अरे बैठा था वो बोल रहा हूँ. Nouns, the team that's going to be heading into the losers momentarily looking for that world title. Yeah, we're taking a look here in Game 1. Nouns Esports going to wipe the whole squad, at least a majority of them. 4 players down. As Zapdos becomes kind of free. Take a look at that. भाई सरीना को रोक दिया यार. I'm sorry, Pengu, you can't come in. Nouns Esports taking the Zapdos. टकलू को थोड़ा सर दर्द हो गया होगा भाई. क्या ही करे भाई. Because you're not Brav. Arnes को भारी वोटिंग जा रही है guys. But of course Nouns Esports are just going to scamper all the way in and get those ducats because it's double time. Under 2 minutes, you get double the points. Nouns Esports just such an incredible team. And, you know, they had a rocky start here in this tournament, but interestingly enough, they've had this before. Dupe Snacks, their first win in February. They went all the way through the losers bracket. They might be doing that again here today. They had an amazing showing here against the great team Icon. They're track stars. They can win these things quick, or they're willing to run the marathon. ये तो वही मैच है जिसमें घाटलू ने बहुत लास्ट हिट लिए थे. Unfortunately, were sent packing by this squad. Yeah, they were. And Nouns is Arnes is from APAC. Nouns is from EU. We saw Blackhand is from NA. In the direction now, and we take a look here. You see Zapdos secured here. And it looks like Icon is putting a lot of points on the board. ये 11 बजे तक जाने वाला है guys. मेरे को तो फील आ रही है. Yeah, and they're going to have to do a little counter push Because here. And 10 बजे तक तो यही चला जाएगा. They're down by about quick math 140. 10 बजे तक तो ये सेमीफाइनल चला जाएगा लूजर्स का. और गलती से लूजर्स जीत गए ऊपर ग्रैंड फाइनल्स तो 12 बजे समझ लो. आफ्टर पार्टी तो भूल जाओ भाई. आफ्टर पार्टी तो भूल जाओ. 1 बजे चाय पी रहा नहीं पीता यार मैं. 12 घंटे बस कर यार. मार ले. पीछे खड़ा हो जाता हूँ. with 10 points. Adesu in the top path with 100
points, eking out an incredible victory. कौन जीतेगा यार? मैं कुछ नहीं बोल सकता। नाउंस के पास मोमेंटम है अपना पुराने मैच का। आरएनएस को कमबैक की जरूरत है, पर आरएनएस कर सकती है कमबैक। कुछ भी हो सकता है। ये ब्लैक एंड हारी तो ब्रैकेट रीसेट होगा। एंड अब तो BO5 आएंगे। रूजर ब्रैकेट का पता नहीं, रूजर फाइनल का नहीं पता। Going forward in this tournament, Eternity famously the team that meet and greet and saw in Sejun, looking for that world title. No show though, never one to give up an opportunity to win, as they are just putting the pressure on Eternity. पर यार वो तो मैचेस भी इतने ज्यादा थे ना। यप, नाउंस बस जीती लास्ट वाला, बहुत अच्छा जीती। By the way, S4L just playing out of their minds today. ओ भाई नो शो भी अच्छा खेली यार। S4L मस्त खेला। That's without a doubt. Eternity doing their best. पता नहीं तनुज जी BO5 लूजर्स के लिए है कि नहीं, शायद नहीं है, BO3 है शायद, मेरे ख्याल से तो BO3 है। Having a big lead on the scoreboard. Yeah, Eternity looking great inside this match here at the 5-minute mark, and they're playing the kind of Pokemon Unite they want to play, which is always keeping their opponents off, pushing, scoring, making their way into the central area. But No Show is a tough team to beat. No, and this is kind of where No Show flips the script a little bit. Eternity working through. They are a little bit higher levels here, except for the sword and of course the Dragonite coming through. Zapdos BO3 होता लूजर में शायद यार रैंक और होगा क्या स्ट्रीम में? to hold it together, but just in the final throws, the final minute, lose the grasp on that prize of that win. There we go. No Show moves forward, and our teams are getting ready for the losers finals to decide who's heading up to the grand finals. सबसे देर तक स्ट्रीम किया है, वेल डन, थैंक यू सकिल जी। क्यों, क्या हुआ? बाकी सबने वॉच पार्टी बंद कर दी क्या? Right back, and it's going to be our two faces again. I promise you, do वॉच not पार्टीज go बंद होगी anywhere. गाइस। A world champion is about to be crowned. 3 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद शायद आ रहा है गाइस। डिनर ले आओ सब, क्योंकि एक कार लगेगा ये राउंड कंप्लीट होने में। भाई टेंशन मत लो, आपके साथ आपका मन ऊपर, ठीक है भाई। 3 मिनट्स टू गो गाइस फॉर द लूजर ब्रैकेट फाइनल्स। मजा आने वाला है। जय चलो कैसे ही है भाई? 9-10 को रिचार्ज खत्म होने वाला है, जल्दी करने बोलो भाई इनको। 9-10 एक और मार लो सीजर भाई, एक और साइज मार लो। सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो फाइनल से पहले भाग जाएंगे। ठीक है यार। आपकी स्ट्रीम इंडीज क्रिस में भी 12 घंटे की, ठीक है यार। अभी 12 की तो नहीं होने वाली, 12 की तो वॉच पार्टी नहीं होने वाली, बिकॉज मैक्स टू मैक्स 10 घंटे टोटल, 10 घंटे, 12 घंटे नहीं जाएगा, 10 घंटे की जाएगी मैक्स टू मैक्स। 10:30 आफ्टर शोडाउन, आफ्टर पार्टी देख लो तो मेंस और आफ्टर इवेंट जो होगा, जो भी होगा। न्यू मैप पे साइतर का स्वाड मजा आ जाएगा। देखते हैं आज खेलना है क्या हमें? नहीं। ओ भाई मैं आ गया। क्या डिटेल्स? कुछ नहीं भाई, 1.5 मिनट में मैच चालू। ये 12 तक भाई, अगर रीसेट हुआ तो 12 तक, नहीं तो क्या ही करें बेटा। मेरे क्रोम का सर्च अपने आप याहू हो जाता है गूगल से, तो उसको डिफॉल्ट में ठीक करो भाई। BO5 होता है ना, अगर इन्हें हार गई तो फाइनल्स के टोटल 10 मैचेस। 10 मैचेस भाई। हमारे इंडियन टीम जो लंदन गए थे, जो क्वालिफायर मैचेस हुए थी, आपकी टीम भी प्रैक्टिस पड़ी थी। यस दोस्त, वी लॉस्ट इन द क्वालिफायर्स, वी लॉस्ट इन रीजनल क्वालिफायर्स। यार 11:37 मिनट तक देख रहा था भाई। ठीक है यार, ठीक भाई, कोई ना। डिफॉल्ट में 100 बार किया तभी। सैड। मैं तो ब्रेव यूज करता हूँ, ऐसा है क्या भाई?
7 seconds to go, boys. अरे यार क्यों यार क्यों Dignified. Oh. यार लास्ट मैच कितने टाइम पहले था? Hello gentlemen. It is a 40 minute हो गए भाई. My name is Lucy Challenger. I am an expert in British etiquette. 50% डिस्काउंट मिला मेरे को भाई. How to behave in वेंजर भाई की भी टीम थी शायद. अमित भाई थे क्या? नहीं भाई, वेंजर भाई की थी, अमित भाई तो नहीं थी. वेंजर भाई की टीम डिस्क्वालीफाई हो गई थी. Meeting different people from different cultures and customs. And today we find मेरे को पता था कोई ourselves मैच in नहीं होगा भाई. Great ठीक Britain. है वैसे ये 2-3 ट्रॉफीज कुकने रखे, 2 लोग विनर्स होंगे क्या? अरे वो अलग अलग आई थिंक सबसे बड़ी वाली फर्स्ट के लिए, उसके बाद जो छोटी वाली है वो सेकंड थर्ड, या फिर वो अलग गेम्स के लिए हो सकती है. बिकॉज काफी गेम्स चल रही हैं तो हर गेम के लिए सेम ट्रॉफी है ना. आज ही सारे ले ले, खत्म खेले खत्म कर देंगे सबको. डिनर ब्रेक आई थिंक लंच ब्रेक या इवनिंग ब्रेक है ताकि कुछ खा ले लोग. इमोशनल डैमेज 30 मिनट से डीक्यू किस लिए ब्रो? दे वर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग यूजिंग पीसी बट गेम में पीसी यूज नहीं कर सकते थे. And you may open your eyes. इसमें क्रॉली बोलेगा क्या? देखना. So you probably recognize it. I have the actual Pokémon trophy here. Oh, hey. And I am going to teach you how to hold it carefully and in the correct etiquette. Now, if and when you win this, they're going to most likely want to take your photo. So you're going to want to spin it around so that they can see. Gloves दिए हैं उनको भाई ट्रॉफी होल्ड करने के लिए, ये अच्छा है. And hold it just slightly closer to your body. Also rest your hand on the top rather than holding on the upright section. There you go. What not to do? Yes. What not to do? Our final section today in our etiquette lesson is how to eat food. ये कर लो क्रॉली भाई. British setting. ये कर लो क्रॉली भाई. With a type of food. French fries. ये क्या है? क्रॉली भाई ये कर लो यार. मुंह पे मार लो. How do we eat the cupcake? I'll try to spoon. What not to do, So भाई? the spoon is incorrect. What Peel say, भाई? apart What the say? bottom of the cupcake. So push your fingers through the center. Yeah. And try and get the whole of the bottom off. GG, well Practice played. with the next one if you need to. We might need another cupcake. And then you're going to place the What bottom not to do? section भाई on सिखा the रहे top हैं so खाना you can create a सीखो. sandwich. हेलो जिसपा भाई पिकाचू ने करंट मार दी. The hot dog. What do we think? किरण में बोला तो they were accused of using PC and they were so yeah they got disqualified. PC यूज नहीं कर सकते थे, emulator यूज कर रहे थे. Emulator was not allowed, so they got disqualified. We are not using our hands today. Okay. Got to be quite firm with these knives because the chef has. By cheating was कोई cheating है भाई. Now we have. They did, so they got disqualified. That's it, right? After that, it's just justifications. Knife and fork. It's time you accept. Some things have to be accepted. That you used emulator. Cut it open on the side. And now what do we do? Game अब तक start नहीं हुआ. Break दे रहे हैं उनको यार. शायद lunch break या snacks break कुछ. Because last 2 matches बड़े वाले होने वाले हैं ना एकदम back to back. Fantastic. मैं chopsticks use करता. ठीक है DM bye. Gentlemen, I am delighted to say you have all passed the etiquette training today. I hope these techniques will come in handy next time you find yourself in a formal British setting. चलो guys ये खत्म हुआ. Have the pleasure of meeting the Queen. Thank you very much. Welcome back to the चलो guys let's go. मेरे पे ट्रैवलिंग वगैरह और रहने का और फुल का पेयर किया आपके सब यूनाइट करके गया दोस्त. यूनाइट काफी यूनाइट करके देगा. चैट मिस कौन सा भाई? ये ट्रॉफी अगर अपन जीत जाते तो कौन रखता उसको? आई थिंक अगर हम लाइक एज एन और के पास ही रहती राइट. सारी ट्रॉफीज रहती हो सकता है BO5 सेटअप कर रहे होंगे. स्ट्रेटजीज के लिए टाइम दिया. यप अभी स्ट्रीम में बोल रहे थे व्यंजन में सबको पता है इसीलिए मेरा है 22 दोस्त. मेरे सब पता है भाई. देखो यार दिस इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक बट जो ट्रू था वो ही है ना इन द एंड भाई. क्या पता भाई इसमें एक तो लाइक यू नो झगड़ा वाली बात हो गई बट इन द एंड you guys were wrong to use emulator over there, right?
जब रजिस्ट्रेशन हुआ था फॉर्म्स दिए गए थे सब प्लेयर्स को, साफ साफ लिखा गया था यू आर नॉट सपोज टू यूज एमुलेटर। 3 ऑप्शन थे बस, स्विच, एंड्रॉइड, iOS, राइट? Yeah, it's pretty much that was made very clear. No matter who they're facing, they're looking pretty good. Top 24 आने से पहले, Top 24 होने से पहले ये फॉर्म्स दिए गए थे हर एक टीम को भरने के लिए। Top 24 ये Top 8 नहीं, Top 24 से पहले। IX Gaming looking really strong in a lot of these games, but I mean when you've got a level 14 overlord, हो भी ना, I think everyone is aware this is not meant to be played on emulator, right? Everyone is aware, right? ये तो फिर गुस्से वाली बात होती है ना भाई कि आप एमुलेटर पे खेल रहे कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट जो हर जगह हो रहा है, आप स्ट्रीम भी कर रहे हो, लाइक दैट इज नेग्लिजेंस। दिस इज सीरियस। बाकी सब तो चलो अपना बेंडर चलता रहता है, बट दिस वाज सीरियस, राइट? लाइक I mean, it's just so amazing. मैं एक सिचुएशन देता हूँ, अगर वो टॉप 8 में जाके उनका रिपोर्ट होता है कि पीसी यूज किया है, तो क्या सिचुएशन थी मुझे एक चीज बताना, क्या हालत होती फिर? मान लिया वो जीत के उनसे क्वालिफाई कर जाते, क्वालिफाई किए थे पर उधर डिस्क्वालीफाई हुए, ठीक है वो क्वालिफाई कर गए, वेल एंड गुड, दे प्लेड वेल, बट टॉप 8 में जाके रिपोर्ट होते तो मुझे बताओ यार क्या सीन होता फिर? इसका जवाब कौन देगा फिर? उधर तो फिर इमेज क्या जाती इंडियन सीन की? वेरी फेयर हियर। बाकी फन बेंटर तो चलता है यार, अपना मस्ती चलती रहती बीच बीच में। They had their work cut out for them with Nouns Esports. Yeah, absolutely. And Nouns Esports has truly found the pace that they want to be moving forward in this tournament, trying to go very, very deep, all the way to the grand finals. And IX Gaming was caught on the bad end of that. Yeah, I mean, इतना यूनाइट खेला होता तो ग्लोबल 1 पहुंच जाता। Anyone you run into here at the World Championship ठीक है यार। is going to be a tough team to beat. यप, इंडिया का e-sports सीन ऑलरेडी काफी लाइक यू नो सेंसिटिव है यार, बहुत सेंसिटिव है। अब इतना अच्छा ऊपर उठा है, we can't. Signs of brilliance here to Kratos. I mean, their hyper beams have been good. They've been really leveraging that. दीपक भाई हम तो क्वालिफायर्स में हार गए थे दोस्त। फाइनल एनी टाइम नो यार, किसी टाइम ही, मैक्सिमम 10 मिनट्स। Really delivered in containing that Zarina. Beautiful work here. दीपक भाई हम तो क्वालिफायर्स में हार गए दोस्त, जो जून में हुए थे। लगता है हाईलाइट देखना होगा भाई। ओमन भाई इंडिया आ गए क्या? कुछ स्टेटस वगैरह है क्या गाइस? उधर स्काउट भी अपने फैन फेवरेट प्लेयर बन गए भाई, लेट्स गो। Taking a look here. After that, we had T2 versus No Show. The best team in the Japan region, the best team. आप कौन सी टीम से हार गए थे? हम अपर ब्रैकेट असेंशन से हारे थे और लोअर ब्रैकेट ट्रू रिपर से हारे थे। नहीं भाई भाई मस्ती वाली assumptions मत लगाओ। दीपक भाई किसने बोल दिया भाई एकदम टक्कर के मैचअप से? कितना लुक क्या बोले भाई? There's always a target painted on Mame because they're always up in the mix. Absolutely. This is a unique change here by Blossom, who we've just been praising their Snorlax play up, down, left, right. But in this matchup, they went with the tree. कभी लंदन जाके देखते हैं भाई, बेस्ट देंगे तो जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। Mame their strength on Zarina, and they said, I need to switch it up if we want to contend. Yeah, that's right. Blossom doing so amazing on Snorlax that earlier I accidentally called Supercell Blossom. That's how I just connect it to Blossom at this point that they are playing Snorlax. If you're Snorlax, you are Blossom. रात को 12 बजे फाइनल्स होंगे। ऑलरेडी 9 बज गए यार। यार इवेंट एक्सटेंड चल रहा है क्या? अच्छा हुआ टॉक्सी भाई खाना खा के आ गए भाई, भूखे रह जाते। But No Show up on the scoreboard in a big way. फेस कैम ऑन करना भाई है ही नहीं। नेक्स्ट ईयर आई थिंक आरएन शुड विन द टूर्नामेंट, गो रन, लेट्स होप। भाई 1 घंटा होने वाला है बिना मैच, कुछ ज्यादा ही हो गया। Can it be Trellis बीटी भाई, does that make sense? Trelvis, well, I feel like you're मामे सोलो ओवरलॉर्ड का मामे तो चला गया नहीं क्या मतलब टॉप लाइनर्स में? अभी तो ओवरलॉर्ड है ना यार।
अभी ओवरलॉर्ड भाई है ना यार. वैसे यार इम्पैक्ट में देखा तो मामे का था यार सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था मामे का. रूलर्स का अभी पढ़ाई कर रहा होगा दोस्त. नहीं दोस्त, ये 2 मैचेस लेफ्ट है अब, इंक्लूडिंग फाइनल्स. 2 मैचेस आर लेफ्ट. ये लूजर्स फाइनल्स, देन यहाँ से जो जीता वो गोज टू ग्रैंड फाइनल्स. अगर ग्रैंड फाइनल्स में जो लूजर ब्रैकेट से टीम है वो जीतती है तो एक और BO5 होगा रीसेट का. अदरवाइज अगर ऊपर वाली टीम ही जीत जाती है देन इट्स ओवर. They are the winners. Back to Beatrice, yep. Overlord West Unite. Kinda yes. Finally start होगा क्या? दर्द. अब तक टीट जाने वाली होगी इसलिए प्रिपरेशन में टाइम लग रहा है भाई. इतना तो नहीं भाई, इतना तो हल्के में नहीं ले रहे. हुई भाई. अरे सॉरी गाइस, मेरा डिस्कॉर्ड इधर क्या है? ठीक है यार. In 3 amazing games that you and I were able to watch and cast. It was just a great showdown between these two squads. I don't know whose hearts were beating faster, ours, theirs, the viewers at home, but it was absolutely incredible. Maybe नहीं, मेरे को खेलने के लिए पूछ रहा है, इसलिए. Those hearts were beating the fastest. Just such an incredible series here. T2 winning their first game, and Nouns needed to come up with an answer. अपने STL के फेक बुल भाई. They got to play them earlier, and they couldn't figure it out. And then as they started to play them in this series, it looked like Nouns was going home. But they figured out a strategy to deal with this oppressive team. Slow grow fans unite. Geese coming up big, getting some good KOs. That Scald slow Samana से स्ट्रीम चालू है, आपके बोर नहीं हो रहे? ना मजा आ रहा है यार, सीखने को मिल रहा है. यार मैच चालू करो यार. Inside of these final 2 matches between this team, Mame just doing it here. Massive. लौंडे तक पूछ रहे हैं यार. लौंडे तक पूछ रहे हैं, खेल लो यार. This fight was amazing. It could have gone either way. You have the Blissey right here. You've got Red Maw right here. You've got that amazing juke. मतलब वो खेलने का मन कर गया भाई मैच देखने के बजाय. लौंडे तक मैसेज कर रहे हैं. RS में आइजल कौन है बताओ? पता नहीं यार, आइजल का इन्फॉर्मेशन नहीं कोई. तीर्थ नहीं पता. पेप्सी पिलाने पीने वाले हैं भाई. पी चुके एक्चुअली हम जब. Two of the best teams that we have यार seen in this tournament. फिर से ब्रैकेट. Just going through every team 2-0, 2-0, 2-0, and then comes Black. यार कब चालू होगा यार? ओके शायद आ गया. ओके अरे नहीं, ये तो अपर ब्रैकेट का दिखा रहे हैं. ये अपर ब्रैकेट का दिखा रहे हैं. इसके बाद लोअर ब्रैकेट सेमीफाइनल शायद. भाई बैठे बैठे मेरे नहीं आया. आई थिंक ये पूरा रोड मैप दिखाएंगे अभी. इसके बाद आई थिंक लूजर ब्रैकेट का आएगा जो सेमीफाइनल हुआ, उसके बाद चालू होगा. लंच करने गए होंगे. अभी लंदन में टाइम क्या है? रुको, लंदन में टाइम क्या है? 4:39 PM हो रखे हैं लंदन में यार. लंच तो ना हो रहा है ऐसे टाइम पे यार. अरे एक सेकंड गाइस, डिस्प्ले अटक गया. Blackhand is able to make an amazing victory. अब दिख गया. Game 2 a lot closer than Game 1. Game 1 it felt like Renaissance had this, and it was just one of the most incredible steals of all time. Game 2 this was such a close game. And टी if ब्रेक these two भाई, meet in टी the grand ब्रेक. finals, इतना तो क्रिकेट में नहीं होता है टेस्ट मैच में. without question, Renaissance might be able to take down Blackhand for sure. Without a doubt, Blackhand with a big composition change. Greedon, Greninja, and Venusaur coming through for them as they're pushing forward. And Overlord is in fact unstoppable sometimes. KO Shrika 2, big water shuriken onto Rebongs, taking them out. KO Shrika 3, they collapse on the Zapdos, and they lock this thing down. Big fight BT there हो रहा है for यार. Blackhand. We have not seen Greninja really throughout this tournament either, except from Blackhand. I mean, this is a Pokemon that when it gets enough experience, it just slices. कास्टर तक बोल दोगे भाई चालू कर. It just might be. It just might be. It's कास्टर तक certainly बोल looking दिए that होंगे way यार, here. चालू कर. Blackhand able to have that defensive stand, keep Renaissance from clawing back into the game, and they find themselves in the grand finals. That's right, Blackhand in the grand finals.
Renaissance heading down to the losers finals to face off against Nouns Esports. EU versus APAC. Which region will head up to the grand finals to try to take down Black Hand? We will be right back with that match we talked about earlier. T2 and Renaissance. You didn't get to see it on broadcast, but you're going to get to see it right now. We'll be right back. Teams enter कर रही हैं शायद. भाई 10 मिनट का ब्रेक. कौन जीता दोस्त? कुछ और ही बोलने वाला था. भाई मैं पनवेल के लिए निकलता हूँ गाइस. मिलते हैं या बरा. भाई निकलो आप यार. मैं यार इतने में टी2 की फ्लाइट उनके होम टाउन तो पहुंच चुके होंगे. भाई उधर से निकल चुके हुए घर पहुंच चुके होंगे टी2 वाले. अभी तक उनकी फ्लाइट निकली होगी इसी टाइम. तो आके देखेंगे फाइनल. अरे भाई चालू ही नहीं हुआ है. आप जब पनवेल कास्टिंग में कर रहे नहीं मैं सीधा गुड़गांव निकलता हूँ या दिल्ली या जहाँ भी वो यूनाइट का हिंदी वाला स्टूडियो है. सीधा वहां पहुंच के हेलो बोलता हूँ शिवांश भाई को. हेलो भाई क्या हाल है. गजब है भाई. माँ में चला गया. यस दोस्त लंदन पहुंच जाएंगे भाई. लंदन पहुंच जाएंगे. मैं अमृतसर में भाई. यार अकीलीस जो फिल्म वाली आपकी. ठीक है यार उसका नाम भूल गया मैं. फिल्म में देखी थी वो ग्लैडिएटर फिल्म थी क्या. ग्लैडिएटर फिल्म थी क्या. कोई फिल्म थी भूल गया. यहाँ अकीलीस करके ही फिल्म थी. लॉल यार अब तो डिनर भी करने का मूड नहीं है यार. भूख ही नहीं लगी है. लंदन पहुंच के उनको बोलेंगे अब तो स्टार्ट कर दो भाई. क्या ही बोले यार क्या ही बोले. चांद से वापस आ गया फ्रेंक्स भाई. इतनी देर में तो आउटिंग घर पहुंच गई होंगी भाई. टिल्टिंग हो रहा है यार. स्प्रेगल्स को डीएम कर दो भाई. मेरे चाचा जी लगते हैं. मैंने तो शिवांश को मैसेज कर दिया भाई. शिवांश को मैसेज कर दिया मैंने टिल्टो के. भाई लंदन कॉल करे क्या भाई. तो फिर अलोन स्प्रेगल्स को कर दो. ठीक है यार मेरे चाचा जी लगते हैं क्या दोनों. शायद वहां पावर ऑफ हो गया. ठीक है यार. यार इतने में रैंक पुश हो जाता. बंदे ऑलरेडी पूछ रहे हैं खेलने आओ डिस्कॉर्ड पे. जो तो ऑफलाइन बैठ के देख रहे वो तो खेल लेते हैं ना. बस 15 मिनट क्या. ठीक है भाई. टी2 वालों ने सर्वर ऑफ कर दिया. ठीक है यार. टी2 वालों ने सर्वर ऑफ कर. सर्वर न्यू को क्या गाइस. ये माइक पे फूक कौन मार रहा है. मेरी फूक की आवाज आ रही है क्या ज्यादा चीख के. 5 कस्टम रूल नहीं भाई. गेम खेलने की ताकत नहीं है भाई. मैं मजाक नहीं कर रहा. मैं ना बस जाके GT5 खेलूंगा थोड़ा स्ट्रीम के बाद. अगर 11 बजे तक खत्म हो जाती है 12 बजे तो भूल जाओ.
मैंने तो खा लिया यार, अब इवनिंग में लंच हुआ है मेरा यार। GTA 5 स्ट्रीम कर यार, करेंगे किसी दिन यार, मूड नहीं बनता स्ट्रीम करने का। GTA 5 खेलेगा, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर का, उसका क्या करना है। अरे विशेष भाई जरूर खेलेंगे किसी दिन, करते हैं। अमृत भाई भी खेलते हैं यार, विशेष भाई अमृत भाई भी खेलते हैं, पर मैं आरपी नहीं खेलता, लेकिन नॉर्मल ऑनलाइन। आरपी में टाइम नहीं लगता यार। आप बात पोलाइट ऐसा क्या भाई, मेरी टीम से पूछना। आई मीन उनके लिए भी पोलाइट हूँ, बट स्टिल थोड़ा तो टॉक्सिसिटी दिख जाती है वहाँ पे। बीस्टर पे आप भी वैसे बैठे यार इधर इतने टाइम से, सही है यार। पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन 3 ईयर वेट ब्रो, बिल्कुल भाई सीजन 3 में मिलते हैं यार। GTA 5 की 18+ स्ट्रीम हो जाएगी भाई इंस्टेंट। GTA 5 तो उधर कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर है ही नहीं यार। लाइव चैट में कुछ है नहीं क्या, बोलने को स्टार्ट कर दो यार, कमेंट भी नहीं कर सकते। आई मीन था ठीक है यार, मैं तो बीमार हूँ तो स्ट्रीम कर रहा तो अच्छा टाइम पास हो रहा है। अरे भाई टेक केयर यार। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड रुको ना। ये इधर अपना हिंदी वाला कहाँ है, हिंदी वाला कहाँ है, हिंदी वाला कहाँ है, हिंदी वाला कहाँ है अपना। मॉर्टल भाई भी स्ट्रीम कर रहे हैं क्या यार, हिंदी वाला क्यों नहीं दिख रहा। एक सेकेंड, मैं जैसे कि ब्लैक स्क्रीन कर रहा हूँ गाइस, कोई कॉपीराइट कंटेंट ना आ जाए तो ब्लैक स्क्रीन कर रहा हूँ। मेरे को तो पता भी नहीं है भाई क्या क्या पोकेमॉन कॉपीराइट हो सकता है। आ गया गाइस, लेट्स गो। क्या ही करें गाइस, इसका मतलब क्या है भाई, मस्ती भाई। हर चीज़ देखनी है भाई, जब प्लेट में जब गोल थ्रो करता है तब थोड़ा मजा आता है। ठीक है यार। ये एंटर क्यों नहीं दब रहा हैं? स्लो मोड है क्या? अरे अरे लेट्स गो गाइस, अरे लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। मैं भी सोचूं हिंदी कास्टिंग में डूब स्नैक्स कहां से आ गया भाई। अभी भी टेक अ लुक एट, ये देखा नहीं था ना। ओ हेलो ड्यूड, अबे नहीं लेट्स गो क्या बोल रहे हो, ये तो रिकास्ट हो रहा है। आरएनएस वर्सेस T2 सेमीफाइनल्स कास्ट थोड़ी हुआ था, ये तो सेकंड सेमीफाइनल जो ऑफलाइन हुआ था। But man, what exciting different strategies, Bye. dominant. Absolutely, we're talking about two different strategies right here. Kamiru in that central area and Supercell. Bro मैच स्टार्ट होगा नहीं ब्रो, पता नहीं, पर ये सेमीफाइनल्स देख लो गाइस, ये सेमीफाइनल्स ही देख लेते हैं चलो, बिकॉज़ ये देखा नहीं था ना, देखते हैं। Well, I mean, it's some exciting plays right here. Oh! There we go. Supercell with that little bit of an invasion here, and now we have Ruin running the Duraludon. You know, this is a Pokemon that I feel like is being slept on quite hard. When Duraludon came out, it was brutal, just massive, incredible. But I still think this Pokemon has such great utility. मैं भाई छोड़ रहा हूँ, ऐसे से नहीं लूजर फाइनल हो रहे हैं। Take down a Dreadnought or it can take down a Cinderace. हो रहे हैं मतलब क्या? Off stream? Don't tell me off stream हो रहा है ये। You can't be kidding यार। Off stream? Here we go. We've got the Psyshock coming in here in the bottom path. You know, I love also seeing Kamiru running the Psyshock. By the way, guys, we have hit 5.6 के सब यार। Thank you very much for showing love and support यार। Come on. Next target 5.7 के रखते हैं। आज तो नहीं हो रहा, but चलो, optimistic approach। मेरे को तो यही लगा था भाई, पता नहीं यार कहाँ ब्रो का पता नहीं, पर क्यों ब्रो पता है ये कॉन्गो भाई अच्छा मेरे दिमाग से छूट गया, अभी बोला 5.6 के और अभी देख रहा कॉन्गो, मुझे लगा मैच स्टार्ट हो इसकी कॉन्गो बोल रहे हो। ओ भाई दिमाग गया। Definitely a heavy late game. GG. Well played. Look at the move there from Supercell. Just walked right by Congo, the thank you, yeah. Thank you, everyone. Score shield there.
grabbing all the berries on its way. Eject, but okay, goodbye. I mean, that Wigglytuff has just been an absolute menace. Supercell on all these different types of defenders today, using the different patternings, the ones in the matchups that they need to see forward into this event, and they had a good showing this weekend. Renaissance here. Yellow guys, मामे जी आ गए वापस. मामे जी का समझ लो आखिरी स्ट्रीम पे मैच है. Gardevoir so much just because it's, you know, an unusual pick, but Reebongs is absolutely brutal, of course, on this going up toe-to-toe with Mame. Well, it's hard to stomp down a big old rolling Supercell. Supercell's able to get out pretty easily there as Reebongs was trying to convert on some heavy damage that was already sitting on it. Throwing some points up into this top path. We've got everyone coalescing down at the beach for this Dreadnought. Ripped to pieces. Hoopa with the secure. They said, I'll get it with the portal. And of course, that takes Kamiru over to level 9, and they're able to just use that Unite move and push into the face of T2. Always threatening, always ready to go. Big scores here, breaking that bottom path goal. You know, it's a decision that a lot of teams make. Are we going to break this? Are we going to leave it open and we continue to get all of this experience between it? Renaissance saying, no, we're just going to break it. You're going to have to walk a little bit farther. Mame never afraid to RNS versus any bro, RNS versus any 70% is on RNS favor. I mean, that really shows RNS versus ना उनका बुरा है यार. मैं खुद जानना चाहूँगा कब बुरा है. कोई tweets आए हैं कि इनके रुको मैं tweet check करता हूँ. कोई tweets ना आए हो इनके issue के. Just a second. मैं जरा tweet check कर लूँ. Just pushing into their face. अरे search कर. Moving on up to the top path. That was not on purpose. On up but it's to where the top path. It's where I got. Here we are. Venusaur now deciding if they're going to stay here or head bottom, because both these goals are open. They're able to just continue to get experience and then maybe gobble up Duraludon while they're here. But what you saw there is they set up an ambush, right? They set up the portal. Yang feigned to go into the portal as the two other players for Renaissance hid in the grass. T2 pushed too far forward. They thought they were clear, and then they jump on him, unlocking Yang for a KO streak of 3. Yang is just so incredible in all of these games. It's weird because I feel like break है अब स्टार्ट नहीं हो क्या पता नहीं भाई अभी तो जो सेकंड सेमीफाइनल था आरएनएस वर्सेस G2 वो दिखा रहे हैं इसके बाद ही आरएनएस वर्सेस नाउन्स होगा आई थिंक इससे अच्छा कल ही कर देते फाइनल रे भाई वेटिंग हो रहा है भाई. I don't know of anybody that would have said which Pokemon do you think are going to be the most played and some of the most winning teams. I don't think Gardevoir, even Venusaur, maybe certainly not Duraludon or Wigglytuff would have popped up on those lists. No, absolutely not. This is one of the best things about all of these different regions coming together. Is because inside ये कर लो भाई सेंटर की क्या हो गया जीटे खेलना भूल जाओ inside of Pokemon Unite. क्या हो गया शुभदा जी यादव जी क्या हो गया Gardevoir is better than Talonflame. You know, crazy things are ये सेकंड सेमीफाइनल्स चल रहा है दोस्त जो स्ट्रीम नहीं हुआ था ऑफलाइन हुआ था उसको रीस्ट्रीम कर रहे हैं ताकि सब देख पाएं रिकॉर्ड हुए ना bunch of different ways to play Pokemon Unite. There are strategies that maybe it works really well in, let's say, NA. फाइनल कब है अभी लूजर फाइनल होगा उसके बाद ग्रैंड फाइनल होगा दोस्त अभी शायद टीम्स को ब्रेक दिया है या कुछ इश्यूज आ गए हैं इन बॉक्स डिस्कॉर्ड का क्या getting sorted out. T2 here, of course we know their strategy is to get behind Mame. Renaissance taking a different approach than like Nouns Esports. Nouns Esports went heavy defender, big bodies getting its way. Renaissance went high damage, explode this thing off the map and take care of it by chucking all your moves at it. Big Unite move there from the Duraludon, that little ring of fire. Yeah, I guess I'll just start हो गया क्या? Yeah, you know, I'll just head out. Yeah, just like नहीं सेमीफाइनल ऑफ स्ट्रीम हो गया था ये रीस्ट्रीम कर रहे हैं प्लेयर्स को ब्रेक देने के लिए True, Ruin truly just scorching the earth around. पता नहीं भाई क्या ही बोल रहे हैं डीएम भाई ने भेजा तो ऐड अजीब चीजें ग्रैंड फाइनल क्या हो गया शुभादा जी इधर ही बता दीजिए भाई मैं किसी और की स्ट्रीम ओपन नहीं कर सकता ना ऐसे फॉरवर्ड 20 है जीटे खेलना भूल जा भाई भूल ही गए हम भूल ही गए अरे लेट्स गो गाइस 450 लाइक्स थैंक यू वेरी मच वेलकम टू स्ट्रीम एवरीवन आज फाइनली 500 का टारगेट रखते हैं क्या बोलते हैं यार क्या होता कमल भैया गिर गए हो और अरे नहीं भाई नहीं भाई काम डाउन I mean come on every single match Mame is just incredible. भाई शोडाउन खेलने इससे अच्छा पोकेमॉन शोडाउन फुल टायर्ड रहे पूरा यार जब तक मैच चालू नहीं होगा जोश नहीं आएगा
मेरा मैच पे ध्यान भी नहीं है यार, रिजल्ट पता है ना, बस सेकंड मैच देखूंगा मैं। अगर सेकंड मैच स्ट्रीम होता है, जो आई होप ना हो, बट अगर होता है तो उस पे जैप स्टील होता था और ये फिर भी जीत जाते थे। पैसे मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं क्या शुभ जी, समझ नहीं आया। अरे गोल भाई वापस आ गए यार। Because in my solo queue games, Doob Snacks, 4 of my teammates will throw themselves at this dreadnought, use all their unite moves. एक कार से ज़्यादा ब्रेक हो गया। We're on the world stage. You don't need to do this. I'm telling you. I mean, players deserve a break, but कुछ reason भी तो दे दो यार, कुछ explanation, ताकि हम भी थोड़ा break ले लें। One of them takes it. They know the big fight's happening in about 15 seconds. Everyone has their unite move indicated by those pips, except for the Zarina. चलो गाइस, जैप पे ध्यान दे देते हैं। 10 मिनट ब्रेक बोल के ज़्यादा ही कर दिया भाई। दुर्लादुन खेला था इन्होंने। अरे अरे चलो गाइस, खुशखबरी आ गए प्लेयर्स आ गए पीछे। नहीं आ गए प्लेयर्स आ गए पीछे, आ गए प्लेयर्स आ गए भाई। कास्टर भी बोल रहे होंगे एकदम से हमारी शक्ल क्यों दिखा दी। चलो गाइस, 2 मिनट के ब्रेक, फाइनल लास्ट ब्रेक अपना, इसके बाद चालू होगा। हाँ। भाई ये मैच क्या मेरे बच्चे के बाद शुरू होगा क्या? आ गया मैं लंदन मैच स्टार्ट करवा के। ठीक है यार, लोल 10 मिनट्स पहले बता दिया था मैंने। आरिशरिया, otherwise why would they pause match in between? Why would they pause the match? पर टाइमिंग देख लो यार। पोल इज ऑलरेडी देयर डीएम भाई, पोल इज ऑलरेडी देयर। लूजर फाइनल से अच्छा लोअर ब्रैकेट फाइनल बोल देते। लूजर फाइनल सुनने में बेचारों को लूजर बने। आई मीन लोअर ब्रैकेट फाइनल्स चलता है यार, इट्स नॉट लाइक वो है। They lost right, they lost one match, they are in the losers bracket. उनको विनर ब्रैकेट में आने का ही चांस होते हैं। ये तो थर्ड प्लेस बोलते ना। क्या ही करे भाई, जहर गेमिंग चल रही है भाई, जहर गेमिंग चल रही है। पोकेमॉन गो आर्ट सेरेमनी ओवर हुई है अभी, स्टेज उनके लिए बुक था, अभी खाली हुई तो प्लेयर्स। ओके, ये भी हो सकता है, बोला ने कैलोरीज लेने। हाँ ये भी है। आई थिंक स्टेज बिजी था, मेन स्टेज बिजी था। आई थिंक गाइस ये हो सकता है मेन स्टेज बिजी हो। अरे चिपमंगाए, शाउट आउट टू यार। SC12 चिप इज हियर इन द चैट गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। अरे गाइस चलो आ गए। Everyone to the Pokemon Unite World Championships. My name is Zoinks and I am of course joined by the आ गए भाई लौंडे। Good to be here Zoinks, and even better to be geared हाँ, up RNS लूजर ब्रैकेट में for this है। losers finals. The winner of this will go on to face Blackhand in our grand Fifth place final. भाई, ये We कर will लो यार। finally crown a Pokemon Unite ये कर World लो यार। Champion for the first time ever. That's right. These players are on the stage and they are playing for the biggest stakes that they have Oh ever भाई। competed for. The first place prize, मैं तो expect भी नहीं कर रहा कुछ। $100,000. RNS versus any one of Let's the take a biggest look match at one for of our top 2। teams that's going to be competing here today. Renaissance versus मैक्सी का Nouns बंदा Esports. पानी लेकर आया गाइस, Renaissance रेडी कर ले भाई, representation गला from the सुप्रीम वाला APAC कास्टिंग। region, and Nouns Esports hailing from here in Europe. Both of these teams have had incredible tournament runs so far. Renaissance has made their way through the winner's side of the bracket up until the winner's finals, only to be sent down by Blackhand, but that was the only game loss they took in the winner's bracket. They will be showing off against Nouns Esports. स्टार्टिंग फाइनली नेक्स्ट इरादा है स्टेज पे खेलने का। इरादा तो सबका होता है यार, बट इन दी एंड देखते हैं कौन जाता है। बिग मैच, यप रेडी बॉयज। गिव लाइक्स टू स्ट्रीम एंड मेक श्योर सब्सक्राइब गाइस, एंड मेक श्योर टू एंटर द गिव अवे। लिंक इज पिन्ड इन द लाइव चैट।
Renaissance really setting the mood. Rebounds versus Pokemon Unite, the way in players भी बोल रहे हैं आगे भाई, पर चलो इनको भी ब्रेक चाहिए यार, हम कौन होते हैं यार, ब्रेक मेन तो खेलने वाले हैं ना, अच्छा उनको ब्रेक मिला, हम कौन है भाई। But let's take a look at their opposition here. BLVK इंडियन ओरिजिन है, पता नहीं दोस्त, मेरे को सीरियसली नहीं पता, अगर है तो भाई सही है। The EU region and Nouns, they don't like to lose, Zoinks. They have won almost every tournament in the EU region. And where are we again? That's right. We are in their own region, London, England, here in the EU. फोटोशूट तो इनका है यार। Hometown hero crowd here is India lost bro, not disqualified. Disqualified नहीं, disqualified नहीं। India lost. Disqualified is the wrong term to use bro. Disqualified तब होते हैं जब आपने rules void किए, ये term interchange मत करो मेरे भाई, बहुत confusion हो सकता है। Maybe इसके पास 3K gem sponsorship ले लो क्या? Absolutely longest path to get to where they are, but they are not looking to slow down now. They have won a lower bracket में नहीं है कौन? इंडिया नहीं दोस्त, इंडिया is not in lower bracket दोस्त। इंडिया बोला तो यार, इंडिया हार नहीं है आज, इंडिया की मैचेस नहीं है आज। किसी की रेट आई थी क्या? नहीं रुद्र जी। Is 8 our record? Yep, this is our record, highest stream guys। अरे हरिंदर जी, yes sir, welcome to stream दोस्त। रेट किसी की तो लिखा नहीं किसी ने, किसी का रेट में को दिखा नहीं दोस्त। नहीं बाद पर साउंड देते बैकग्राउंड में। एनिमेशन डिस्क्वालिफिकेशन टू डिफरेंस, यप यप यप। ये बीच में क्या हुआ, कहाँ पे कहाँ पे? किबरी भाई क्या हुआ बीच में, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज़ गुड स्ट्रीम लिखा मेरे वाइस, थैंक यू दोस्त, डेडिकेशन तो है गेम के लिए। अरे भाई सर्वेश जी चिल, थोड़ा चिल यार, 4 घंटे पड़े हैं अभी, इतना तो नहीं जा रहा मैं, चिल भाई, थोड़ा रहम भाई। खेल एक टाइम पे खेल भी रहा होता तो मान लेता है यार, देखने में थोड़ा हो जाता है। जैप फाइट कैंसिल, अरे किबरी भाई वो पुराना मैच रीस्ट्रीम हो रहा था बिकॉज वो स्ट्रीम पे शो नहीं हुआ था। सेकंड सेमीफाइनल था ना आरएनएस वर्सेस T2, वो स्ट्रीम पे शो नहीं हुआ था, तो वो टाइम बाय करने के लिए कर रहे थे। तो जो करंट टीम थी वो रेडी हुई तो आ गए, कर दो आज नहीं भाई चप्पल पड़ेगी, लिटरली चप्पल। चलो गाइस लॉबी में प्लेयर्स हैं, लॉबी कोड दिख रहा है आपको गाइस, जा सकते हैं तो मत जाना। अरे कोई ना यार, ब्रेक मिला प्लेयर्स के लिए, अच्छा रिफ्रेश हुए सारा भाई, पूरे 1 साल की मेहनत है इधर यार। मैक्सिमम 3 मोराल्स, ये क्या है, ये स्ट्रीम की हल्की सी लैग हुई इनकी। हम कौन होते हैं यार प्लेयर्स के लिए रेस्ट था। आज ऑलमाइट ने पूरा नॉलेज चूस लिया, ठीक है भाई, सेट ओपीआई, यप। Late stage in the tournament, losers finals, the dynamic of चलो boys, APAC versus EU, RNS versus Noun Esports। कामरुल भाई तो फुल भाई ट्रिपल स्टैक्स, ये पक्का बकचोदी कर रहा था एसपीएन से। ओह गाड़ी दिख रहा है क्या, गाड़ी कैप्सूल ब्रो, एचडी इज बैक टू माइम। Adesu on Dragon Knight, Gatli on Trevenant, Giz on Upa, Redmo on Serena, Camero on Gardevoir, NT on Blissey, Rebongs on Serena, Mevius on Upa and Yang, भाई ये क्या पिका रहा है भाई, ये सस्पेंस भाई, सस्पेंस। मीना का 9 सस्पेंस है भाई। ओह माय गॉड गाइस, 9 दिख रही है फाइनली, लेट्स गो। ग्रेनेड लिया क्या, ग्रेनेड ले लेगा गैटलू ने, ओ भाई मैंने ध्यान नहीं दिया। भाई लेट्स गो, स्टन स्ट्रेटजीज भाई, स्टन स्ट्रेटजीज, यप। एक्चुअली बात ये है ना कि वो माइम बहुत तंग करेगा उनको, राइट? ओ भाई It's a selection that can help protect the Gardevoir that Renaissance is going to be looking to scale up in their central. Aurora will help करेगी ना सर्वाइवल के लिए। अच्छा ग्रेनेड लेना पेड़, नहीं चलेगा, पेड़ इज गुड। इनका फिर कॉम्बो वो जाता है ना गाइस, ग्रेनेड लिमिटेड चीजें कर सकता है, पेड़
शेड बहुत कुछ कर सकता है एक फाइट में। अब वही तो बोल रहा हूँ, काफी टाइम बाद दिख रही है नाइनटेल्स, जब लाइक कल दिखी थी एक मैच में, वो भी एक के 2 मैच। बट अब डिफरेंस देखना भाई यूजेज का। हाँ स्विफ्ट वाइज 2 स्किन्स फ्री मिली हैं, 2 स्किन्स अपनी चॉइस की सारे वर्ल्ड के प्लेयर्स को मिली है। गाड़ी के अगेंस्ट पेड़ ऑल फैशंस आर इसकी डेंजर स्ट्रेटजी। यप फुल स्टन भाई, फुल स्टन। They do nab that core fish away from Kamiru and are going to keep getting some auto attacks in for damage. Yeah, we see ये तो जीजी हो गया। pressured here with the other Hoopa coming in, but look at oh, the amount oh, of time Giz is bought. Is it going to knock भाई out? Barely escaping. बच गया कामिरुल। incredible amount of time. ओ शिट भाई, वो जंगल पूरा करके आ गया यार। चलो पर नहीं, ड्रैगनाइट को नहीं मार सकता रिबॉन्ग्स। यू कांट किल अ ड्रैगनाइट, ये तो किल देने आ गया। The bees have spawned here at the 850 mark and there पर is चलो just गैटलू को chaos in terms of where हाँ everyone मिला is यार। मैं in किस टीम को सपोर्ट करूँ मेरे को ही नहीं पता यार। Baby Gardevoir is heading back. मैं किस टीम को सपोर्ट करूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ यार। Now that everyone has finally left their central area. भाई 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 This goal zone has been stacking up as well. Aos Cookie and Attack Weight both held. एक तरफ आर्मिस की टेंशन हो रही है, एक तरफ गैटलू का गोल हो गया, उसकी खुशी हो रही है यार। Finally evolving into Acrylia as जी जी। their level 5 mark and unlock that powerful Psy shock attack is going to be interesting to see. अभी ही स्टार्ट हुआ ना गाइस यार, 2 मिनट हो गए। आर्नेस कर नहीं यार, दोनों ही टीम्स अच्छी हैं यार, दोनों ही टीम्स अच्छी हैं। बोथ डिजर्व इट, बोथ डिजर्व दिस सपोर्ट। भाई फार्म ले गया। अरे नॉट लास्ट गई बात, ये तो एज अ गिफ्ट था यार क्वालीफाई करने के लिए, वो तो पहले मिल चुके हैं। स्किन की क्या पड़ी, क्या होता है। ओ भाई नाइस डैमेज। रेडमो 6 हो गया, रिबोंग्स 5 है अभी। Kamaru here on the Gardevoir getting almost level 7 here, doing pretty well भाई despite 7 हो जाइए, 8 तो जरूरी है। यप नाउन का अच्छा स्टार्ट है। नाउन पूरा इन्वाइट करिए, यप क्योंकि गार्डियन है यार। अर्ली गेम कंपनी है कामरूल फ्लोर का, अर्नेस का अर्ली गेम कंपनी है, फुल टीम फाइट कॉम्प है। लेट गेम मतलब टीम फाइट समझ लीजिए। अभी अब दिखेगा इनका कॉम्प का, बट शिट मैन एंटी को पिल दिया इन्होंने और जोन आउट है पूरे। सरीना को 6 करवा रहे हैं, सरीना 6 हो क्या आएगी अब जंगल लेके। ओके दे डिसाइडेड टू गो फॉर द टॉप टावर। इनका रोटेशन भी आ रहा है, इनका रोटेशन चालू हो गया, इन्होंने देख लिया कि उधर जाना है। गैटलू भी जा रहा है, क्या वो ले पाएंगे। ओके रेडमो को रोटेशन थोड़ा लेट हो गया, रेडमो को रोटेशन नहीं हो रहा सेकंड पोर्टल तक। रोटम ले लिया उन्होंने, नहीं रेडमो भी रोटेट नहीं कर रहा है। ओह भाई बच गए। रेडमो तो भाई डैमेज, अरे रेडमो ने उठा लिया। नाइस टॉम, बट अरोरावेल में है, अरोरावेल ने बचा लिया गाइस, अरोरावेल ने बचा लिया। जीजी बचा लिया भाई। Renaissance Hoopa playing an amazing defensive way. Gatlu launches out the Trevenant Unite move though. It's enough damage to knock out the Hoopa and they're looking for more. Yang is the next target. They horn leech them back towards the central area and they keep on auto attacking. बच गया भाई। To run and Auraveil's going to give them enough defense to escape. थोड़ा सा बीटी हो गया इधर हॉर्न लीच का, एंड यप वो हॉर्न लीच ने बीटी कर दी। Just like that, Rebongs is starting to catch up in terms of levels. लोगों को फनी स्ट्रीम चाहिए, मैं फनी स्ट्रीम कर रहा हूँ क्या यार। So at level 10 they can be a threat. मैं फनी स्ट्रीम हूँ क्या भाई, हम तो सीरियस देख रहे हैं। ग्रासी ग्लाइड है क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली अगेंस्ट ड्रैगनाइट ग्रासी ग्लाइड इज गुड टू बी ऑनेस्ट, बट ड्रॉप किक के भी अपने बेनिफिट्स हैं। And only one goal zone broken, and it is Nouns Esports. So Renaissance are looking to secure some experience with this next Dreadnought fight. 5 Unite moves. Yep, Grassy Glide लिया है रिबॉन्ग्स ने। ग्रासी इज गुड अगेंस्ट ड्रैगनाइट, यू नो, उसको धक्का देके आ सकती है और उसका स्टन पूरा स्टन है ना, पूरा स्टन दे रहे हैं। कामरूल का थोड़ा सा यूनाइट, ओ भाई आते ही गिर गया।
अबे आदेशु यार हवा में टपक गया। टीम फाइट यार, टीम फाइट। जीजी घाटलू क्या जा रहा है? लो 3 का स्कोर मारने क्या? इन्फॉर्म लेने, इन्फॉर्म ले रहा है। नहीं पीछे से आ रहा है। लॉल घाटलू सरप्राइज देने आ रहा है भाई, मरने आ रहा है। घाटलू तो मरने आ रहा है। कामरूल को हील मिल गया। ट्रैप कार्ड, ओ नाइस नाइस अल्ट ड्यूड। घाटलू कार्ड मस्त था यार, पर नहीं एक किल नहीं मिल पाया। सफेद लोमड़ी। Which match is going on? Losers finals. इसके बाद ग्रैंड फाइनल्स दोस्त। BO3 है लूजर फाइनल भी। RNS वर्सेस नाउंस। आते गायब भाई, हवा में गायब हो गया वो। चलो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक बस डिफेंड के लिए पहुंचेंगे। ये हुपा ले। ओ भाई भाई यार ये थक दिया यार, ज्यादा एचपी पे मार दिया इसने, ज्यादा एचपी पे मार दिया यार। कोई ना फिर भी नहीं इतना इफेक्ट होता इस पे, इतना इफेक्ट नहीं था ना। ये पुश भी नहीं हो रहा था, कोई ना इतना मैटर नहीं किया ये ना। वो पुश करते, अब उनको मिल गया तो वो भी नहीं पुश किया तो थोड़ा सा। अरे कोई ना यार, चलता है यार, इतना तो स्लैक चलता है। हल्का सा मिस्टेक हो गया, कोई ना। लिटरली 0.1 HP बचा यार। एक बेसिक अटैक और मारना तो स्कोर में हो जा मिल जाता, समझ रहे हो? Both of these teams have been hyper efficiently clearing all of the wild Pokemon off the map to collect experience. We see those yellow dots beginning to respawn on their 60-second timers, and the third and final Dreadnought getting ready to spawn in 15 seconds. Nouns Esports definitely playing a little bit farther back and safer, whereas Renaissance was playing ahead in the map and well spread out to gather as much intel as they could about the map. ब्रो ऊपर से आ रहा है, माइम ऊपर से आ रहा है, चिपका सकता है, पूरा चिपका सकता है दीवार पे भाई। Gardevoir caught a little bit in a forward position here, gets back out and around with some ballistic support. The Hyper Beam on this Dragonite is going to make Nouns favorite, securing this objective. मिल गया, देखो easy. That is what we know about Adesu. They secure that Dreadnought and they catch up quite a bit in experience. No Pokemon at level 13. वो जल्दी यार गेम प्ले थोड़ा लेट आ रहा है क्या? वो तो लाइक लेटेंसी का इशू है यार, वो मेरा नहीं है। Usually 5 seconds का डिले होगा, max to max 5 seconds का डिले है मेरे और इधर, max to max 5 minutes to 3 seconds. Amazing on this arena. They are going to be hunting down Adesu to make sure that the Hyper Beam is a non-factor within this. चलो guys, loser final first match, Zapdos fight. Full 5v5 भाई, full 5v5 ready. You're a fragile team as well. You want to create as much भाई space. इनका देख रहे हो 5 लोग एक साथ हैं यार, चिपका दिया आंटी को। भाई क्या वॉले बना रहा है ये? आई होप नाउंस को पता है वो लीड में नहीं है। अरे 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 हल्का सा भाई, ब्रव तो घुस गया। ब्रव बिना अल्ट के मरेगा क्या? नहीं अल्ट दे देगा। ब्रव मर गया, ब्रव डेड यार, सपोर्ट डेड है। रिबॉन्ग्स डाउन, नहीं नॉट रिबॉन्ग्स। ओ भाई ये थोड़ा सा इन्होंने कर दिया, सीन कर दिया यार। रिबॉन्ग्स ने फ्री की हाइपर बीम खाई है। जी जी, दिस इज ह्यूज रीसेट यार। ये उसका अल्ट है अभी भी एड उसका। ओ ड्यूड, वेल फकिंग प्लेड यार। भाई रिबॉन्ग्स गया, नाउंस कर भाई पूरा। ये इनका तो ऊपर ना इंटेल है बस यार। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यप जी जी भाई, T2 पे वर्डिंग होने वाला है क्या? अबे ओ गेटली भी आ गया छोड़ के यार। इसका स्कोर ना होता ना, ये खाली देता भाई। वेल प्लेड यार। Nouns Esports with an Nouns incredible Esports, team fight there. It was looking grim at the start. Renaissance with a couple of nice picks, but this time around, Nouns Esports got a huge Hooper reset on the back of Geese, and they come back swinging with a KO streak of 3 and a Zapdos KO. भाई ब्रव सबसे पहले मरा फिर भी यार। भाई अब फाइनल देखते हैं। अभी तो नहीं, अभी तो लूजर फाइनल चल रहा है दोस्त। BO3 है ये, फर्स्ट मैच गए। ड्रैगनेट खेल गया भाई, ड्रैगनेट खेल गया, जहर खेल गया भाई।
We got some fans of Nouns Esports in the crowd, giving them all the love and energy. They are going to need it, though, because Renaissance is one of the most formidable opponents that Nouns Esports has ever gone against. They are up one map, but the game is not over. Renaissance can come back in this one. Nouns Esports is one game away from getting back to a place they are no stranger to, the grand finals of a Pokemon Unite tournament. Yes, taking a look back at the stat lines for this game, an interesting story. Desu picking up 6 KOs in this one. Definitely a superstar from Nouns, but they got a lot of those KOs all in that final fight. Listen, if you're going to pick one spot to put all of your knockout swings, you might as well put it in the most important damage part of the game. Looking at the damage, उनका वो डैमेज ही नहीं है. आरएनएस वालों ने फुल टीम फाइट डैमेज दिया. Big numbers. I think both of these teams मोस्ट रिकवरी ट्रेवेनेंट नहीं लिसी एंटी की साइड से नंगा ड्रैगनेट नाम सुन के फ्लावर समझा. Renaissance's team composition is very interesting. Remongs on that Serena is भाई विनर ब्रैकेट कौन जीता? विनर्स ब्रैकेट अभी ब्लैक हैंड है. As an all-arounder like Serena is great at getting up in the enemy face. However, their other damage carries of Gardevoir and Alolan Ninetales really need Remongs to start the fight so they can attack from range and play it safe. Yeah, you don't want your Gardevoir or your Alolan Ninetales walking into a bush or being the first one to hit the opponents here, as we see some highlights from the game that Nouns Esports just won here in the first part of the losers finals. Yeah, I think the early pathing phase was so strong for Nouns Esports. Gatlu is getting a lot of value here in the top path, and of course Bruv was finding a lot of early game advantages in the bottom path. Yeah, I think they navigated the chaos of the early game really well. Both of the teams did some things that were a little bit unconventional, especially with the invade on the Hoopa side right off the bat. I think that Nouns, Renaissance responded in kind, but Nouns... Last hit on point, bhai. What a moment there. You even have Geese showing Johnny off did a not little bit, disappoint at taking the Climax. natural comeback off the portal and just the Phantom Force reset. And of course, E7 खिला दो फाइनल में प्लॉट ट्विस्ट हो जाएगा वर्ल्ड टूर में लंबा. ठीक है a यार. little bit in part 2. Hoopa पोर्ट लॉस क्लच तो नहीं यार, उसका रोल है यार. उसमें कुछ क्लच नहीं था. He survived till the end. उनका नहीं किया. कामरुल को रीसेट नहीं दे पाया वो. Look at that squad. Yep, last में right now. Nouns Esports up 1-0. I know they are confident. That man who had his hand on his head, Gatlu, helping out the player of the game, Desu, on that Dragonite. Dragonite built for damage here, both muscle band and scope lens, helping your auto attacks hit even harder, and X attack. You thought Hyper Beam भाई RNS episode coming possibly. Yep. X attack and it gets about 20% better. ये कोच है. Yep, ये कोच है. I think. Desu knows that best. You see them there, making sure that they are all ready to gameplay. I got a thumbs up. It looks like we're good to go on stage. Johnny करे भाई, calm down भाई. Like was better than them for a balance. Yep. Nouns Esports, they are one game win भाई, well away played यार. from making it to the grand finals. For Renaissance, they are one loss away from going home. This is a win or go home scenario. Good point, Jeff. Let's take a look at what our teams are going to be hovering for game number 2. I would kind of be surprised if Nouns Esports changed up too much. It felt like what they were doing at the core worked very reasonably. We have a Desu hovering the Sylveon here, a character we've seen that play to good effect in a number of other matches. I see Kamiru hovering over the Delphox right now. A Shell Bell energy amp. ठीक है यार, मेरे को अपना भी देखना पड़ता है यार. ट्रेवेनेंट काउंटर तो कुछ नहीं है यार possibly. जस्ट उसका हॉर्न नीचे एक बार मिस हो गया तो he's dead. Double XP share again. Venus और oh Delphox. उधर सब सेम है. नहीं आदिसु सिल्वियन लेकर आ गया. Why Delphox भाई? Shell Bell energy है focus band. First Delphox inverts भाई. Once every 60 seconds. Wow. Okay, Delphox wanting to अब देखना है भाई flame charger के fire spin है. As possible, which as you were saying is going to be incredibly often. It wouldn't be Kamiru if they weren't debuting a brand new Pokemon to the world stage here in our losers finals. I'm very excited for what Renaissance is going to bring in our game number 2. Nouns are going to have to be the ones to adapt mid-game. I doubt they're expecting this Delphox pick out of Renaissance. It'll be interesting. अब दोनों टीम पे लास्ट हिट थोड़ा इशू है. थोड़ा सा इशू है लास्ट हिट दोनों टीम्स पे. Renaissance is picking this टीम फाइट वाइप होगी तो ही लास्ट हिट मिलेगा. They just played against, and now it's going to be a little bit different. मे बी सरीनास दोनों साइड पे और कोई नहीं पर. एक्चुअली नाउन्स पे बेटर है लास्ट हिट. माइम जो है
मिस्टिकल फायर से ले सकता है अगर ये मिस्टिकल फायर गया पता नहीं फायरबॉल जाता है तो लास्ट चांस है लेट्स सी डेल फर्स्ट चैंपियनशिप अभी देखते हैं फार्म कौन लेगा ब्रो भाई ने फार्म लिया शायद उसको दिखा नहीं भाई ढंग से इतना जल्दी मरा है फार्म रिबोंग्स को शील्ड दिया गया है ओ भाई भाई आउटप्लेड यार outplayed यार wild Pokemon and the opponents. And it's a great way to find themselves an early KO, which they did onto the Serena at that time. So their path towards that level 6 breakpoint is going to be much longer than Red Moss. Speaking of breakpoints, Red Moss already towards that these bees. Serena Redmond ने तो डिप दे दिया टॉप लेन पे बट अभी मेजर तो नीचे है. There we go. Now a three-person Gatlu has made their way all the way to the top path now, and they're getting advanced. Reebok almost goes down so incredibly though. They have to take both citrus berries, but because of that, Nouns Esports gets a ton of AOS energy deposited. उधर Hoopa versus Delphox चालू है. Gets them further ahead on the scoreboard on Nouns side, but gives them a lot of really important XP. इसका पोर्टल है तो ये बच जाएगा. ओ भाई Gatlu भी यहाँ पे भाई. बच गए. वापस आ सकते हैं वो एक्चुअली. काटने. Letting these burglars get away. He's just the absolute homie, getting the reset for both of those players themselves and Gatlu. No KOs given, even though they were all the way in the enemy zone there. Redmaw has a lot of stats right now. You can see the damage already from these stomps. उनके 3 बंदे हैं टॉप लेन पे और Redmaw अकेला छील रहा है यार. Play from the Bulbasaur in the bottom path. They saw Mr. Mime rev up their confusion and tap their full heal to avoid getting. अबे ये क्या बग हो गया? That makes a lot of sense. Rebongs does get reset. Notably, Rebongs भाई Rebongs को कितना रीसेट की जरूरत पड़ रही है भाई कितने. Redmaw has hit level 7. They need to find a wild Pokemon to knock out, and they need to do it now. We see that mystical fire blasting off of Fireball. भाई ये तो टीम फाइट करने की हालत में नहीं आ रहे हैं. डेलफॉक्स के कंधों पे पूरा बोझ है भाई अर्ली गेम तो अब वीना भी फार्म नहीं हुआ है. 5 का वीना इनका 7 का वीना हो जाता है रेड पे. सबको पता है इनका 7 का वीना आ जाता है रेड पे यार. फुल अंडर फाउंड भाई. अब वीना को सप्रेस करने के लिए नीचे आ गए बिकॉज़ ऊपर सप्रेस हो गया है. उनको पता है ऊपर अब नहीं कुछ कर सकते. भाई जीजी यार. ओ भाई जीजी. ओ भाई डेलफॉक्स फ्लेम चार्ज मिस्टिकल फायर मिस्टिकल एंड फ्लेम चार्ज भाई भाई चिपका रहे हैं यार. ये मिनियन से मरने की प्लानिंग में है क्या? भाई फुल जोन आउट यार. वीना अगेन डेड. डेलफॉक्स आधी एचपी रखी है यार. फुल जोन आउट. भाई नाउन्स क्या स्टेप अप कर रही है यार. रेडमोज आ गए छील रहा है पहले एप्पल अभी पौधा. Look at the 3-level differential between Rebongs and Redmaw on these arenas as an objective gets stolen by Nouns Esports there. Redmaw keeps going in 1v2 भाई ले लिया ये थोड़ा अल्टीमर थोड़ा ये थोड़ा बीटी कर दिया. लगने दो. ओह जी जी. The Delphox goes down there, but भाई it was a level सपोर्टर्स के साथ घुस गए यार. सपोर्टर टीम के साथ घुस गए. knockout provides is in no way comparable to the level 9 चिपका दिया. KO that we 30 का गोल तो नहीं हो रहा. That is true. I doubt Nouns Esports is too upset though. They are able to break the top tier goal नहीं बोल सकता यार. मैक्रो आउटप्ले हो रहा है पूरा. उनका कॉम्प इज जस्ट बेटर. इनका लेट गेम कॉम्प है पूरा पर वो फार्म ही नहीं कर पा रहे इतना. We see Yang looking to try and get some valuable last hits here. They desperately need this level 9 in the final evolution on their Venusaur, but ultimately डेलफॉक्स यूनाइट आ गई है पर देखना ही है ना. उनपे हीलिंग का 2 है वैसे काफी है हीलिंग के लिए देख सकते हैं. बट माइम तो पूरा घुस सकता है ना. माइम तो पूरा घुस सकता है इन पे. इनको मारने के लिए है ही नहीं इस बार कोई क्लोजर सरीना को छोड़ के. वीनासोर में भी बट वीनासोर को काउंटर कर सकते हैं ये. जी और खाए तो भी आपने सही कहा था डेलफॉक्स. देखेगा नहीं लग अब पता चलेगा मेन यूनाइट आ गया है. उसका बैरियर से कट गया उसका तो. जोन कैसे बनाओगे?
We see Zarina brawling with वीना से जोन बनाना है और वीना ही अंडर फार्म्ड है यार. bottom path. Dreadnought is getting ready to spawn here. This is going to be the next big team fight. Kamiru trying to fight ये लो चढ़ गया मुंह पे. Desu has chased them all the way down. A Unite move from Kamiru does land into a Desu, but they are able to escape. Unite move of their own. They're going to try to chase them down. Kamiru eject button. The mystical fire misses. A Desu जी जी mystical fire miss खत्म बात. And they find the KO. Just completely. वीना सर बिना अल्ट के मरा है. वीना सर बिना अल्ट के मरा है. उनके सरीना में रिबोंग्स है ही नहीं फाइट में. Esports and another objective added to the रिबोंग्स है ही नहीं फाइट में. वो तो ऊपर था इनके हुप. ऊपर का चलो भी यूनाइट आया. मैं भी क्या बोल रहा हूँ. I think ऊपर यूनाइट यूज होगा ऊपर का पुश के लिए अगर ये रोटम इनको चाहिए तो. सीधा या पुश के लिए यूनाइट यूज कर दिया. वीना सर का भी यूनाइट है. इंस्टेंट किल. ये टावर छोड़ सकते हैं पूरा ये. और नहीं वो भी रोटम छोड़ रहे हैं ताकि ये टावर पुश हो जाए पहले. उसके बाद T2 पे रोटम घुसाएं. और उन्होंने छोड़ ही दिया है. डिपेंड कर लेंगे बोल. अरे कामिरुल ने स्कोर कर दिया. क्यों भाई ओवरडन था यार. Hello. Still has yet to push their button. Why? Small window to do so. Can they do it before they get knocked out here? अबे ओवरडन था यार. From far back is able to get in a lot of damage. Bro finds the KO onto the Venusaur as well. 7 के ऊपर 40 का लग रहा था उसने 12 कर दिया. NT is stuck by the barrier. Bro makes a maze and they cannot find their way out. What absolutely masterful play from Bruv on this mine there. Renaissance biting off way more than they could handle, pushing in at that tier. अरे 40 का हो गया था उसका. 40 का हो गया था उसका. नहीं हो जाता भाई. 4 बंदे गोल करवा रहे थे यार. हो गया था उसका 40 का. Or at least that's the way it can feel. But Nouns Esports playing it cool and did a great punish on Renaissance's push. Despite being down over Panic score लग रहा है मेरे को तो ये. Not that far behind Nouns Esports in terms of levels. The big question चल भाई वेलकम टू स्ट्रीम यार. चल ले. This Venusaur find its way to level 13 somehow before the 2-minute mark happens. I'm not sure that's going to be possible. देखता हूँ रिवाइंड करके देखेंगे level 12 benchmark, but you're right. Unless they are 13, they are not going to get that pedal dance plus, a very important benchmark for Renaissance. जंगल चाहिए एक और वीना को यहाँ किल चाहिए. यार ये थोड़ा बीट हो जाएगा. ये रेड मिल सकता है इनको. ये आधी एचपी हो गए हैं पहले ही. यार 13 अब नहीं आ रहे हैं. ये रिस्क कर सकते हैं यार. ये नाउ थोड़ा. ओ भाई घाटलू ओपी. लॉल. ओ तेरी. A KO streak of 2, make it 3. No, Desu's gonna take the rug out from under him. A couple of Unite moves got used there on the side of Renaissance. They are missing Delphox Unite, and they are missing Blissey Unite. Mevis here on the Hoopa pulls in their previously knocked out teammates, but they are behind an experience. They're behind a Unite move, and they are going to get deleted for this engagement. A heads-up play to try to get their team in there with that Hoopa. Trevenant का Unite use हो चुका है अभी. 2 collapse on top of them. Mervis going to go down. Rebounds on a fraction of HP. Yang does not yet have that level 13, and they are collapsed on by Gatlu and Rainbow. A KO in good fashion. Rebounds the only one up for Renaissance still, and now ये जैप स्टील भी हो जाए तो भी नहीं कुछ हो सकता भाई. ब्रव ने चिल दी. A full team wipe with not a single. डेल्फॉस को रेड पे करना था. उन्होंने सोचा लंबा कूलडाउन लग जाए किल मिली तो पर किल ही नहीं मिली ना. सरीना पे हॉरर मूवी बनाओगे यार. भाई ब्लिसी का अल्ट लगा था और ब्लिसी का अल्ट मेल्ट हो गया यार. ब्लिसी का अल्ट मेल्ट हो गया पूरा एक स्टॉर्म से. एक स्टॉर्म पे पूरा ब्लिसी का बड़ी वेरिएंट मेल्ट. भाई 2 फाइनलिस्ट मिल गए यार. भाई जी भाई. Number 1, and they are coming for that title. जी. Maybe put some doubt in their fans. पत्ता कट गया भाई यार ने. They did their best. Now it's Esports 746 285 right now. भाई खुशी दिखा लो यार कैमरा पे यार. ब्रव भाई जीत गए हो यार. भाई थोड़ी तो खुशी दिखा दो यार. इनको गोल ही नहीं. Renaissance dancing on the bottom point. It looks like here as Unite moves start getting डांस कर रहे हैं. The final 30 seconds of Renaissance being on the main stage. Nouns Esports still putting up a fight as well played, guy. Sure the entire world knows that the EU region is proof here है to कि play, Nouns को कर and they रहा are था. finding themselves in ये the फाइनल्स बाकी है बट यार मजा आ गया यार. नाउन्स भाई क्या कमबैक किया है. ये टीम अभी T2 के स्ट्रगल कर रही थी और T2 को आरएनएस ने धोया था.
ये टीम अभी T2 के अगेंस्ट स्ट्रगल की हल्का सा क्या काफी 2 ग्रैंड फाइनलिस्ट भाई NA वर्सेस EU इज बैक NA वर्सेस EU इज बैक बॉयज हर गेम का ऑलमोस्ट सीन रहता है NA वर्सेस EU इज बैक खुद की गलती NA वर्सेस EU इज गाइस बैक तब तक जरा ये देखते हैं रुको जरा तब तक ये देखें इन्होंने क्या बेटी किया है यहाँ पे Venusaur with their Unite move could be a huge push, but they're getting in a lot of AOS energy. That Huba cannot score when in the unbound form. They break it just नहीं एक्चुअली हाँ ठीक है यार ठीक है दोनों का ही हो गया था ऑलमोस्ट दोनों का ऑलमोस्ट हो गया था कुछ भी हो सकता था सरीना का एनिमेशन में अटका सरीना का एनिमेशन में गया सरीना का एनिमेशन में गया सरीना का एनिमेशन में गया ठीक है उसका भी हो ही सकता था चांस था कुछ भी हो सकता था पर उन्होंने रिस्क नहीं लिया पर उसका क्या ही जा रहा है अब तो जीजी हो गया RNS जीजी है चलो guys we have our 2 grand finalists the 2 best Pokemon NET teams in the world Blackhand and Nouns Esports APAC versus NA versus EU Bro HD 94 के डैमेज भाई टकला हो फ्लेम चार्ज इज गुड क्षितिज भाई बट फ्लेम चार्ज ही वर्क कर रहा है फायर स्पिन ये वर्क कर रहा है फ्लेम चार्ज ही वर्क कर रहा है मोबिलिटी इतनी है ना पोल तो है भाई is going to be in the grand finals here coming up for them soon. Nouns Esports playing so incredibly, but you're right, job not done. Get back in there. You got another one to win. Redmaw just putting on such an incredible performance here. They have woken up and they took पूरी गेम में कामरूल ने आधे मुश्किल बार अरे यार वही नया प्रेशर में आ गया बेचारा ऐसा लग रहा है प्रेशर आ गया on the side of Renaissance and not a single member of Nouns Esports being KO'd inside of the Zap pit. A Desu also showcasing some variety भाई फायर ब्लस्ट अच्छा है फ्लेम चार्ज के साथ पता नहीं फाइनल इज ब्लैक हैंड वर्सेस नाउन्स Esports even found a ton of value there. Yeah, I think those are the teams that always impress me. They win a game and they're able to step back. भाई इन गेम से नोटिफिकेशन आ रहा है भाई वर्ल्ड थैंक यू फॉर द फाइनल्स We were successful. Yeah, whether you're making the change to clean up some of your own gameplay, you're making the change to try to take sportsmanship guys there are so मस्त खेले यार Pokemon that unite that मस्त खेले सब लोग मस्त खेले न्यू पोर्ट डाल रहे हैं भाई डाल रहे हैं lots of prep calm lots down of planning and the player of the game here is going to be Redmaw with a lights out performance. Yeah, Zarina here with both 2 attack items and kind of bye, 2 durability items. Weakness policy GG well played है भाई ये तो letting her stops build up to deal an incredible amount of damage that we saw in that game. Yeah. Serena was looking amazing, but so was a Desu Sylveon. Let's hear a little bit more from it on the stage. Thank you, Zoinks. I am here with Desu, just eyeing up the crowd as they are shouting, and this EU crowd is absolutely elated for this team. As Nouns Esports has found their way from the कौन जीता? all the way to the grand Nouns Esports, RNS is out. दोस्त. I don't think it can be said any better than that. Oh भाई. In the sense of emotions. भाई RSOP चिल्ला दिया भाई. What prompted that change? I mean, Dragonite is, everybody knows that it's for securing objectives. It's a really good champion that is doing DPS as well. But Sylveon, in my opinion, is a character that can do so much in early game. ये स्क्रिप्टेड कहाँ से टूर्नामेंट के स्क्रिप्टेड तो नहीं एटलीस्ट NA वर्सेस EU ही देखना पड़े नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता ये ऐसे भाई टुडे रेड नेक्स्ट वेल ठीक है बोल ब्रो ठीक है यार It has definitely worked out for you and Nouns Esports. You are in the grand finals, and one question I personally have to ask: how have you enjoyed being in the first seat and always getting to turn to the camera and make all the faces, blow all the kisses?
What can I tell? वो लोग आग लगा देगा, पानी छिड़क देगा, पता नहीं, पर रेंज ड्रैगन को शायद वही रुक पाए, we can see your energy, we can feel how hype you are. भाई, you got a tough road ahead. You got to win 2 on the hop and a hype best is of real, 5. guys. Grand finals action on their way. You go get ready. I'm Dupesnax. I'll be back in the booth and we're going to bring you this action. What an incredible game. Thank you to Adesu for sharing some information. I think the way they describe their emotion is exactly how I would be feeling if I was in their position. They are headed into grand finals. जिस हिसाब से नाउंस खेल रही है, their momentum is unstoppable. Black Hand एक काफी टाइम के बाद आ रही है, कब से बैठे हुए हैं वो? Almost 3 घंटे से एक मैच नहीं खेला Black Hand ने, देखते हैं. डोडरी ऑडियो लीक कर दिया इसने. Finals best of 5. Yup. डोडरी ऑडियो लीक हो गया गाइस, डोडरी का साउंड लीक कर दिया. Lower bracket to make it back to the grand finals where they now have to win not one. Yep, सही बोला रुद्र जी, सही बोला यार. They want to be the Pokemon Unite World Champions. That's true. And as for Renaissance and the APAC region, they had an incredible run. They are out in the 3rd position, but 3rd at the first ever Pokemon Unite World Championships is an incredible feat. So congratulations to that team as well. We are going to have only one more match for you upcoming. It is the grand finals. That'll be with you shortly. Hi. GG है guys. अब ग्राइंड चालू करता. 3 मिनट 30 सेकंड में ग्रैंड फाइनल्स आ रहे हैं गाइस. करे कौन बोला बियो 10. ठीक है यार, ठीक है यार. यप, नॉन क्वालिफायर्स करने के बाद यहाँ से आत्मा से यार भाई 20 लाइक्स हो गया. मेरे को तो 24 दिख रहा है. हेलो लर्निंग एवरीथिंग बाय, वेलकम टू स्ट्रीम दोस्त. भाई भाई भाई, नॉन वर्सेस T2 स्टिल. यार आरएनएस के अगेंस्ट तो डोमिनेशन था यार. कब खत्म होगा ये सभी मैचेस? दिस इज द लास्ट मैच. द लास्ट 2 टीम्स आर लेफ्ट. अभी देखो, अगर BO5 है, अगर ब्लैक हैंड जीतती है डायरेक्टली तो दे आर द विनर्स. इफ नाउंस विन देन एक और मैच होगा उनका BO5 एज अ रीसेट, बिकॉज जो विनर्स आ रहे हैं उनको थोड़ी एक सेकंड चांस मिला, तो इससे लूजर ब्रैकेट फेयर नहीं होगा ना. तो ये एक अच्छा मूव है. नाउंस को क्या हो गया? ड्रैगनेट की बेइज्जती की तब से फेल रहा है. बिस्टर्स भाई आप तो लकी निकले. मीटअप करवाना पड़ेगा आपका. प्रे फॉर सिंड्रेस इन ग्रैंड फाइनल्स. नो थैंक्स. आज रैंक मुश्किल लगा दी इन्होंने. राउंड फिगर लगा लो ना, 25 का इंक्लूड मत करना. ठीक है यार, 24. इतनी मैथ नहीं होनी आज मेरे से. बस बहुत हो गई मैथ आज की. जीजी यार, जीजी जीजी. 1 मिनट 30 सेकंड्स. तो भाई जो भी बोर्डन था ना सब जा चुका. इतने अच्छे मैचेस हो रहे हैं यार. मन कर रहा है यार खेलने का यार अलग से. इतने एक्साइटिंग मैचेस हैं. क्या ही करें भाई, क्या ही करें, क्या ही करें, क्या ही करें. हर जैन को सिंगल एलिमिनेशन मिलता है, इसलिए ब्लैक हैंड के पास एक एक्स्ट्रा चांस होना चाहिए ना. यप 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 यप. BO5 दो हमें एक और किसी को लगाते हैं, बात करते आपस में हमारे साथ, तो और भी ज़्यादा मजा आता. भाई कोई था नहीं मेरे साथ ना. मतलब भाई है ही नहीं कोई यार. इंदर जी सॉरी, मेरे को ज़्यादा टर्म्स आते नहीं है ये रिश्तेदारों वाले.
तो मैं कंफ्यूज हो गया एक सेकंड के लिए, अब याद आया क्या होता है। टेंशन वाला भाई है ही नहीं। ओह लॉर्ड भाई, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा प्राइज मनी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, एक लाइक गार्ड ठीक है यार। अगर ये बीएड बैक फिर से आया मैं चला, मे भी आ जाए। वेट कर लो टक्सी भाई यार, मतलब कब से चल रहा है वर्ल्ड का? फरवरी से चल रहा, नहीं जनवरी से ना, जनवरी से जाके अब अगस्त में खत्म है यार। कम ऑन यार। अरे ब्लैक स्क्रीन की हो गई। येलो गाइस ट्रॉफी पिकाचूस। हेलो रियोगा भाई, ठीक है आशीष भाई। अरे ये तो गोल देखा। It's gonna be Overlord versus Adesu, I think. अगर जंगल करता है तो टॉप लेन में, नहीं तो कौन था इनका यार, भूल गया नाम उसका टॉप लेनर नाम घाटलू। गोल को क्यों तोड़ता हर बार? पिकाचू भी सोफी ट्रॉफी है भाई, सही है ना यार। Here we are, the Pokemon Unite World Championships in London, the grand finals, North America's Black Spraggles and Alolan Spraggles आ गए guys। अच्छा रेडमो सॉरी सॉरी रेडमो, मुझे मिलना चाहिए ब्लैक हेड अगर भी ठीक है। ड्रैगन 90% चांस है जीतने का। ओवरलॉर्ड एंड जंगल कैसा अगर दिखते हैं भाई, regions from all over the world, the best of the best have come here to London, and it comes down to this: North America, EU. Who is the best Pokemon Unite team in the world? You are about to see the most important matches of Pokemon Unite that have ever been played, and yes, that includes some of my solo queue games. That's embarrassing. Spraggles Pokemon Unite भाई स्प्रेगल्स भी रोस्ट करने पे बैठ जाता है यार। स्प्रेगल्स में भी रोस्ट करने बैठ जाते हैं भाई। मुझे कंपनी का 1% शेयर चाहिए यार, ठीक है यार। लेट्स गो यार, ब्लैक हैंड नाउंस esports। Nouns coming into this from the losers bracket. They're going to have to beat Blackhand in a best of 5 2 times. Let's take a look at the undefeated Blackhand, Curios / Jungle. Undefeated versus the comeback kings. Underdog. I can't say enough. These hero clips. One person that didn't get a hero clip in the Blackhand squad is excellent. Their coach. Big shout out to them, sitting on the back today, coaching them up through this whole series, through the whole season, was part of the reason these लाओ 10 मिनट और 1% ले जाओ, ठीक है यार। माइट भाई बोल रहे होंगे टकले मुझे लूका दिखाता है, मैं लूका करे भाई नहीं भाई। क्या होगा अगर नाम जीता और 20 मिनट का ब्रेक? चुप। मुझे आपके शेयर का 0.1% चाहिए, ठीक है भाई। Can Nouns stop them? I'm not sure. I don't know if anyone can beat Blackhand right now. Well, I'll tell you what, who's got the hot hand is definitely Curios, coming in with some big steals. Of course, Overlord getting Nouns अभी रिदम में है वैसे, यप पूरा रिदम है। to punch their ticket and send Renaissance into the face Blackhand के पास कंपोजर है, नाउन के पास पूरा मोरल और रिदम है। देखते हैं भाई। Nouns esports, your EU champions. Blackhand के पास ओवरलॉर्ड है, नाउन के पास आडेसु है। They have clawed their way through a losers bracket before, all the way to the grand finals. Gotta reset. Hopefully Overlord सबको पिल देगा, देखते हैं भाई। If anyone can win today, it is Nouns esports. We're taking a look at the hero shots here, but Noun जीतेगा, good night, ठीक है परदेसी भाई। He's got cannon strapped to his shoulders. Big boy. He's big boy, strong in the game, strong outside the game, and I think that's important.
Yeah, well, without a doubt. You know, your physical as strong as your mental, it makes sense. Galu coming through. We see those three players, Redmaw, Geese, ठीक है वत्सल भाई. who we were just talking about. Redmaw Let's go भाई. टक्कर का मुकाबला. Showed out again this time, getting that player of the game in their second game. करो दिखा नहीं भाई. Here we go. मैं सुना देता हूँ यार अगर कोई तंग कर ज्यादा मेरे को. Esports getting ready. Maybe using a couple. भाई गेट लियो हर बार पोकेमॉन से ऑब्जेक्टिव से कटर नहीं करता लेकिन ठीक है यार. But man, I cannot Let's wait go, to see भाई. these two teams go at it. You know, one of my favorite things about this Dupe Snacks, we have gotten to cast both Blackhand and Nouns Esports. We saw them win their regional championships, and also we both have a favorite here. Yeah, if you check back to the VODs, I went ahead and I stayed a complete homer. I went straight Blackhand from top to bottom. And I think Nouns Esports is just phenomenal. One of the best teams to ever play the game. Are they the best ever? We are actually going to find out भाई excitement नहीं हो रहा यार. about what's the best meta, who अपने can लोंडो do को this, टैग and कर who दे क्या can do बोलते that. हो? Why is Spraggle so bad? Well, we are going to find out today. Spraggle भी roast करने पे बैठा है Which यार. region is the best? NA versus EU. Now, a storyline point here. Nouns Esports to win their first monthly final. भाई मेरा thumbnail ही load नहीं हो रहा क्या? Bracket, hit a grand final reset and won that best of 5. So this is not unfamiliar आज काफी बड़ी स्ट्रीम होगी almost 9 hours. Another day in the office, they are ready to go. और मैंने अभी सिर्फ लंच किया है. सिर्फ लंच किया है पूरी स्ट्रीम में मैंने. बंदे बुला ले अपनी पार्टी मेरे भाई. ना यार आप लोगों ने यार सपोर्ट के लिए. Taking down teams like Renaissance 2-0. Blackhand can always find a way to pull out a victory. Well, every team that Blackhand is beat, Let's they put go, them in bhai. front of Puri Nouns practice. Esports, whom Nouns Esports also beat to get to this end boss that is Blackhand. And Nouns Esports 20 likes for 200 likes. Let's go boys. एनर्जी तो है यार. वापस आगे सारे फर्स्ट BO5 ना हो जितना चाहिए. फाइव को भी जीत के 2 मैच दिखने हैं पूरे 10 मिनट. ठीक है यार. कर्स भाई उधर अपने टीम 1 सर्वर पे बैठे हैं बिंज वॉच के लिए दोस्त. किंकुल भाई नहीं भाई बुक नहीं है अभी. यार इतना एक्साइटिंग मैचेस चल रहे हैं. बुक कहाँ लग रही है? 5 points yes दोस्त. थैंक यू एवरीवन अगेन. थैंक यू फॉर 5.6 के सब्स यार. ये डेडिकेशन दिखा देंगे भाई. थ्रो करने का डेडिकेशन है तो एक रेड बुल पी लो. ठीक है यार. कौन भाई कुछ नहीं. घंटा कुछ नहीं पता कौन लेके जाएगा. कब चालू हो रहा है? किसी टाइम भी. आई थिंक एक 2 मिनट का बीच में ब्रेक आएगा. उससे पहले एक 2 मिनट के ब्रेक के बाद सीधा ड्रॉप पिक. क्या स्टिल लेफ्ट. यस दोस्त सब इस बात पे लाइक ठोके यार. सही है यार. Yes, India going to stream those. Overlord का ये clutch. Zap steal in the first game. Of course, Overlord had to नहीं, take ये नहीं, over दूसरा the game clutch. in the second game here, getting big KO streaks in the Zap pit as well. But मान Blackhand लो was आप able to eke it out अभी against फेंट हो Renaissance. गए तो इसलिए बॉडी फुल. मैं नहीं फेंट हुआ भाई. आज तक कुछ नहीं हुआ. टेंशन ना लो. आदित्य जी अरे भाई आपकी मर्जी भाई सपोर्ट करने की. ये मैं कौन होता हूँ बताने वाला यार. आप आए हो वही काफी है मेरे लिए यार. बाकी अगर एक्स्ट्रा प्यारा तो दैट्स अप टू यू. मेरे लिए तो आना भी काफी है. इमेजिन 10th मैच पे चैंप डिसाइड हो. इट विल बी फाइनल लेवल. ठंडा यार रुक यार. ठंडा थोड़ा वॉचर्स का भी इज्जत. आई मीन स्टिल मजा आएगा. बेस्ट एवर यार. ट्रेंडर अच्छा है कि मुंह जलाना है. क्या मतलब दोस्त? जल्दी करो. मोबाइल डेटा ना भी जवाब दे दिया. फाइनल स्टार्टेड क्या? They certainly managed a little something, and scoring a lot of points was on that list as Blackhand dispatches Renaissance here to put themselves in the grand finals. Blackhand is looking good. They've been on ice for a bit. Hopefully, they've been trying to get themselves warmed back up. This was a great game here from Blackhand. इतना पीछे हैं क्या हम? Into the grand finals. But you know, if you pull up any game from Blackhand, it's pretty dang good because they can't be beat. Can Nouns Esports do it? We're Nah, gonna find out very, we very soon. started As our anyway. lobby is almost ready. We keep talking about Blackhand's highlight reel, but Nouns Esports not unfamiliar to have highlight reels of themselves. We're taking a final look here at ऑलमोस्ट our रेडी stage भाई. इतना पीछे थे हम. चलो कैच अप हो गया गाइस. of, you know what? Draft is getting ready to go. Tyranitar allowed So नहीं we're है gonna hold off दोस्त. on the highlight reel Tyranitar because is they're not just gonna show it off on allowed. the stage live. Yeah. Here we चलो guys. are, the first Grand game of finals. the grand finals. First match Nouns BO5. Esports, your purple team. Blackhand, your orange team. EU and सिंडरेस दिख रहा है ग्रैंड फाइनल्स में गाइस. गेट ली भाई. ट्रेवरन की जगह एजी स्लैश जाते हुए गिज ऑन द स्लो ब्रो. Single XP share on the other side of Blackhand. We can see double XP share with Trevor and Cinderace, Age Slash, Hoopa, Blissey. Other side Hoopa. Sorry, no Hoopa, Slow Bro, Dragonite, Age Slash, Serena, Blissey.
bringing a Let's go boys. into this game. Nouns पे हुपा नहीं है इस बार. No, that's the meta, guys. Don't you remember Hoopa? We're going to win with it. Macro diff. They're just going to get through the objectives. Cinderace भाई, let's go यार. They got their pedometers on. They're ready to go. Here we go. We can see our players loading into the game. Let's go भाई, let's go. Ready to become champions. I'm trying to see in their chest if we've got some hearts beating out a little bit, but it seems like they're cool, calm, and collected. I can't say the same for myself. No, I'm going to say my heart's going crazy. You want to feel this thing? It's nuts. I do not want to touch your chest, Regals. Waiting to load into this game. I believe I'm being told until Doomstacks touches my chest. Never Let's mind. go. Here we go. Blackhand in that central layer. They're going to be in the orange now. Esports on the left-hand The side. grand finals. The Dragonite. They showed us the Dragonite V Pokemon card, of course, and that's going to carry them to victory through Nouns Esports. Here we go. Fight over this top. Dino Curio stacking it up here with the Trevenant in the bottom path, looking to secure this. ने farm लिया शायद पहला वाला. North American Focus clutch focus. Expert से नहीं भाग पाएगा. When they get a KO to Curios, that huge. Already level 4. They need to hit level 5 for the Trevenant. Overlord almost टपक गया. He's looking to secure and probably give some experience. Full screen हम no chat. Full screen नहीं है, chat तो मेरे दूसरी screen पे है दोस्त. दोस्त bro teddy bear tits का ठीक है यार. That APOM closer for Red Maw so they can get that easily as that peel down. They're going to try and chip into this core fish, and you know. अरे. Let's go guys. Red Maw right here, just making sure they can get as much help. Finals की खुशी में DM भाई ने 10 memberships gift किए हैं यार. Make sure to claim. Lucky 10 people get the membership guys. Thank you again DM भाई OP. And they are absolutely eviscerated. Overlord getting chunked pretty hard though. अरे मेरा बोल रहा going full screen भाई. Top lane तो BT हो गया भाई. Top lane तो BT हो गई. Blackhand is dominating bottom पे. Nouns थोड़ा dominate कर रही है. Hello मृगंका महती जी, welcome to the stream and everyone else welcome to the stream. Let's focus on the match. Invade हो रहा है Blackhand की तरफ से but okay recall किया पर सरीना को तंग कर किया है. Buff लेकर आए कि नहीं पता नहीं. आदेशु ने भी थोड़ा सा इन्वेट किया पर कुछ नहीं मिला शायद यहाँ कुछ नहीं मिलता. ऑटो मिलेगा दोस्त. ये DM भाई पे डिपेंड करता है. I think मेरे को ज़्यादा knowledge नहीं है. Lord of the Sword भाई, let's go यार. अभी साउंड आने वाले गाइस पूरी. किस किस को मिला अभी देख रहे हैं गाइस. तो वो गिफ्ट मेंबरशिप भाई टीओ करके कोई था. राजू भाई को. ओ भाई मैच फोकस करते गाइस. Couple experience shares on Blackhand side. 7 Trevenant. You know, truck and trailer with Udhar the rest of their Slowbro squad. 6. Not a bad look. Here we go. 10 seconds now until these bees. Bruv, just throwing a little egg saying, hey, we're आज 9 घंटे की स्ट्रीम होने वाली है दोस्त. ये बफ का वेट कर रहे हैं. फर्स्ट सेकंड बीज आ रही हैं. In the central area, get that level 9 possibly before Dreadnought, which could be huge on Cinderace. First bees. Unlock that big time unite. Oh, big engagement. गैटलियो ने अच्छा किया पर नहीं. अरे ये हल्का सा क्या लैग हो रहा है. ओ भाई Curious Here we go, moving down for our fight right here. We do not yet have a unite move, and we do not yet have first red guys, first red of the first grand finals. Right here. Jungle Book not quite at 9, but so almost 9 है Cinderace. Dragonite is 8 and zone इनका है. Dragonite को full. भाई Dragonite मार दिया. पर ओवरलॉर्ड को कूलडाउन लगाया आई थिंक रोटेशन का. Cinderace भी डेड है भाई. Curious क्या होल्ड करवा रहा है यार. रेड मोड थोड़ा सा मेल्ट करना चालू कर दिया है. चलो Curious गया. अब ओवरलॉर्ड भाई. ओवरलॉर्ड रह गया यार भाई. ओवरलॉर्ड जीजी. KO'd for that effort, but keeping Blackhand in this one. Nouns cleaning up that beach over. पर चलो levels equal है guys. Not able to secure it for Nouns, but they were levels are equal. a big team fight. Okay. ओ भाई Cinder ने फ्री का खा लिया यार. Went upstairs, takes the rotom, forces Blackhand to take care. Jungle Book ने फ्री का खा लिया यार. Hyper Beam. Oh, look at that Cinderace. Look how fast it goes down. Jeez. Lord of the Sword OP यार. Lord of the Sword OP guys. Red Maw just hanging out. 40 points in pocket with the Desu. They're gonna see if they can make a move. Curious gets a push, but Curious बहुत सही खेल रहा है यार. Little stomp does some damage. Curious has to back off. Can they get back into फंस गया. comes in. They're half HP. Oh,
ओके अल्टी ब्रावोजिडी ने यूनाइट खोल दिया यार उसका 30 करने दो यार उसको स्टैक भी अरे नहीं 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 चलो एक गोल हो ही गया चलो उसका भी आ जाएगा ब्लिसियर्ड चांस है आने का अगर वो आगे जाके एक और गोल कर दे यह पुश स्कोर कर रहा है पर होने नहीं दे रहे उसका स्कोर नहीं हो रहा यार पर मर भी गया तो भी आ जाएगा उसका आ जाना चाहिए ब्लिसी कार्ड अब एक स्कोर एक डेथ दो स्कोर एक्चुअली 20% 30% तो ऐसे ही मिल गया उसको इसका गोल ना हो रहा जब तक इसका नहीं जाता लॉल और ये फंस गया अरे हल्का सा मिस ओ भाई भाई क्यूरियोस को छील दिया यार अरे ये बीटी कर दी इसने ओके एक्सपीड है रिकॉल कितने मेरे भाई हुपा नहीं है तुम पे तुम्हें जल्दी पहुंचना है भाई वो सीरियसली टाइम बाय कर रहा है क्या सिंडर के लिए अल्टी खुल चुका है क्या ये टाइम वेट सिंडर ने उसका रिकॉल कैंसिल करा दिया शायद ओके नाइस हेल्ड ऑन रेडमो ड्यूड सिंडर को उठा लिया भाई ये वापस है तो टाइम बाय होगा पूरा ओह भाई बच गया ओवरलॉर्ड को शट डाउन कर दिया ये एजिस एक दूसरे को तलवार मार रहे हैं ओवरलॉर्ड चढ़ने वाला है ओवरलॉर्ड चढ़ने वाला है पर ये बैड एंगेज हो गया हाइपर बीम खाली अल्टी खोली पर खुली नहीं यूनाइट खोला बट नहीं लगा वीज कैरिटोस ले जाएगा इसका नाम नहीं प्रोनाउंस करता है कैरियोस 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 सॉरी कैरियोस But the stronger and stronger that Cinderace gets, the more difficult it will be to take it out. And I've never seen anyone play Cinderace. Still Cinder के पास लेवल एडवांटेज है यार अभी भी लेवल एडवांटेज मेंटेन है Cinder के पास मरने के बाद भी और ओ भाई 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 at 11 is a rare sight indeed. Here we go. Rotom heading down towards Blackhand. Something they're going to have to deal with here. I'm not sure if Nouns Esports is going to try to push this in. As it looks like जी ऊपर पुश हो सकता है अगर ये टाइम बाय कर दे ब्लिसी नाइस वन ओ नाइस वन ड्यूड अपन ब्लिसी का अंडा अरे 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 अंडा दे सकता था यार ये था नहीं हाँ कैरियोस भाई घुसा दो हॉर्नली से घुसा दो भाई हॉर्नली से घुसा दो भाई Yeah, but also dragging that B back so Blackhand can actually get the experience and not make Desu poach any of that from under them. Close match. Look, trust me, I don't think Blackhand's going to 14 हो जाएगा. Well, we've seen wilder things, right? उनका ब्लिसी का यूनिट अभी तक नहीं दिख रहा है ओके आ गया वो भी हुपा का यूनिट अब नहीं है पेंडिंग है बस आना वो भी आ गया लेट्स गो आई थिंक ये वर्ल्ड्स का पहला गेम है जिसमें दो ड्रेडनॉ और दो रोटम है बस थर्ड भी नहीं है थर्ड ड्रेडनॉ है ही नहीं they're trying to keep an eye out for where Blackhand sets up and Desu and everyone else just trying to make sure they've got the unite moves check as much experience as possible check same thing on Blackhand's side and we're ready for a big time engage here we go Bruv just checking the tall grass here with these eggs making sure that they don't have भाई सारे एग मत वेस्ट कर दे around this Zapdos. The question is who is going to come in here with this engage? What unite move is going to get score हो गया. Looks like we've got a score in the bottom path as Hoopa इलो ने सीधा unite खोला Blackhand के. Nice little stun right here as this fight is breaking out. Slow bro थोड़ा सा. They're pushing far forward. Hound and Redmar on the backside. Slash is trying to get JB. They're trying to stay protected. भाई Dragonite. Curious is trying to nice ult. Overlord goes in. Hyper beam falls south. That's a Sarina का unite अभी तक. Picks up Elo. That's not who they wanted. Redmar's on the chopping block though. They get pushed out and JB's on the chase. They get a KO on the सरीना का यूनाइट कैंसिल हो गया मेरे ख्याल से Jungle Book trying to hold it down Blissey trying to get the heals Slash is there Bruv is there भाई now close match Esports have settled this thing out and Blackhand needs to set up for a re-engage as they are all out of unite moves except for one Zarina and now you can see Blackhand starting to take down this Zapdos now that ये थोड़ा BTS सरीना नहीं आ रही यार ये 45 फाइट है इनका oh no it looks like they're re-engaging on this fight Gotlu's being chunked down here come the flame and soccer ball that's one down Jungle Book is cleaning him up right now Zapdos is very low but Desu is right here for the steal Geese is pushing forward. Curios needs to babysit a Desu. Make sure they can't hyper. Nice hyper beam.
Blackhand's all over Zapdos. Can they take it? Can they close it out? भाई स्लोब्रो ने ऑलमोस्ट ले लिया था यार. Still Blackhand that takes it. Blackhand takes this first Zapdos, and points are going to rain in here. Time नहीं यार comeback का. They could not take Jungle Book down. They did everything they could to collapse on this Cinderace, and it wasn't enough. What excellent patience by Blackhand. They took a good. यार इनके सरीना का यूनिट कैंसिल हुआ यार. रेडमा का यूनिट कैंसिल हो गया. पुलिस से. Pseudo flip, and as soon as Gatlu got too far, jumped all over. Nouns Esports down but not out, but there's not a ton of आज time दुश्मन ने बहुत अच्छा ट्राई किया. Blackhand looking to defend right here, but more than anything, they're just looking for this timer to tick down because they know they're way ahead. Yeah, if they can just chip in and keep these scores from going in, they keep having Redmaw needing to reset. Good egg bomb by Slash on the button, keeping Redmaw from scoring, and they've bought themselves enough time. कोई ना यार. 10 seconds left, and it's not enough for Nouns Esports. Blackhand taking game number 1 of Hello guys, grand finals game 1 goes to Blackhand. Yes, Blackhand is NA and Nouns is EU. Nouns पहले random esports होती थी. Random gaming, sorry, not esports. And let Jungle Book do that work from the back line. Yeah, it felt like they knew what their job was. Make sure that Jungle Book is nice and fed, because when Jungle Book is full, they 2 more games by best of 3 नहीं था क्या? Best of 5 है दोस्त, best of 5. Great follow-up by Slash. Good egg bomb. Yep. एक score नहीं होने दिया भाई. However, they weren't punished by that. They were able to back off and be able to hit that re-engage and get themselves a win. Let's take a look at these numbers. These teams are pretty much dead even across the board. So close. I mean, that match was so incredibly close. That match really came down to that final moment right there. If Jungle Book goes down, if they're able to catch them in that moment, I think that fight turns the other way. They were not, however, and then Jungle Book was able to start kicking, throwing those soccer balls, getting those KOs, and from damage भाई damage. कुछ नहीं था, बस JB का था. जंगल बुक का बस, बाकी सब equal fight. एंड पे सिंडर थोड़ा कर गया. देखते हैं भाई Fortnite lover भाई. And again, thanks to DM Bhai. Thank you for gifting membership. 7 likes to 500 guys. Let's go यार. Almost dead even heading into this Zapdos after Blackhand gets it, of course. The points rain in. Nouns tries to make a push, but Blackhand with some amazing defense. The Hoopa, the Blissey, the egg bombs really stopping them there. Blaster दिखने को मिलेगा क्या वर्ल्ड में? Moments here from game number 1. Can anyone beat Blackhand? I don't know. Doesn't look like it right now. Nouns Esports putting a heck of a fight though. They got all of the. My streaming new record 9 hours. Can we stream for 10 hours? ठीक है यार, मतलब ले लो यार. Overlord, you called it, but they caught a receipt for that real quick. Nouns was fighting so incredibly good throughout this entire match and taking objectives very well. But at the first interest था क्या? नहीं, first नहीं. Blackhand is moving second या third था? and they are picking up tons of experience. Third था शायद. Yeah, sometimes it seems like they won't really ever get a Dreadnought, but are never behind on experience. First Dreadnought तो Overlord का clutch था यार, ले गया. Clearing those wild Pokemon and then getting experience by taking the body. There's a whole big wild world of experience out there, but Nouns Esports wants these big Dreadnoughts. Reset हो गया तो करना पड़ेगा मार. Here we go. This is the Elo Unite, and they got a मैं चाहता हूँ कि reset हो जाए, पर नहीं भी चाहता हूँ reset ना हो. यार Redmo का ult नहीं cancel होना चाहिए था. यहाँ पे cancel होता है शायद Redmo का ult. यार Redmo आया और ये इधर cancel हुआ. और उसी टाइम उसने अपना पुलिस से cancel करवाया और ult खेल दिया सिंडर ने अपना. जी मैं हो रहा जंगल बुक 2 गजब प्लेयर हैं. यप. And then from there, Blackhand raining the points in. माइक्रो नॉलेज तो सबको है भाई. अब गेम नॉलेज तो हर एक को होना चाहिए. A little small thing here, but Slash's egg bombs perfectly timed right at the last second. इतनी की कड़ी स्ट्रीम है, चैंपियनशिप की 1 महीना लग जाएंगे देखने में. ठीक है यार, क्या है थिंक यू है. बड़ी है भाई बड़ी. ओ भाई. Looking beautiful right here. Now the question is, we know that Jungle Book has a lot of different Pokemon at their disposal. Are they going to keep playing this Cinderace, which is of course amazing? Or yes, best of 5 है. Something out that Nouns doesn't expect here. It is best of 5. You know, in my heart, if I'm Blackhand, we just saw success. We were able to execute. Lobby code दे दिया क्या guys? चलो guys, game 2 is started. Nouns Esports to figure that out. Now Nouns Esports, I'm on their side. Geese looked great with the slow bro earlier. 500 like, let's go. 499 दिख रहा है मेरे को तो यार. And I'm already seeing a change up, and it's a big one. Brav on that Mr. Mime. Brav is back on Mime यार. Cinderace के लिए perfect counter. Cinderace के लिए perfect counter. Deciding to move over to the Trevenant right here. Now, भाई are we seeing Blasters? Semi Blasters दिख रहा है क्या? I'm sorry. Do we have ourselves a Blastoise? भाई.
Hopefully it's not a bait and switch by a Daisy, but it is in fact a Blastoise. Bhai. It's going to be stacking with the specs. Best of 5 dost. Alright, let's go guys. 500 likes. Thank you very much. First ever 500 likes on a live stream. We have broken a record. Thank you very much. Everybody's switching it up. Thanks a lot, boys. Curveball after curveball. जान नहीं बची इतना चिल्लाने की. Cindy Blazer Claw ये तो range है ना. अरे Cindy is physical if I am correct. Cindy is physical. Cindy is physical attacker. But they could lose this entire first series and still come back and be grand. भाई मैंने करा 500 एक shout out to you सुभाषिश जी. मुबारक. Thank you दोस्तों. Blasty boy. लुका में फिनिक्स का डिपेंड करता है प्लेस पे. Let's pack our bags. Let's go home and let's buy an extra suitcase for that big trophy. Here we go. Game number 2. Nouns, of course, has to win, and they have to win a lot right now. They looked amazing there in game number 1, but weren't able to get it done. I think Spin Blastoise. Here we are. Game 2, Black Hand, your purple team. Nouns, Esports, your orange Let's team. go, the bhai. grand finals But it's Defender Blastoise, right? Rather than championships. Bruv going to be responsible for babysitting the Jungle Trevenant. Those walls are surgical when you're talking about Bruv on Mr. Mime. Curios being absolutely relentless though, coming through, getting a big time KO on them. This Curios is getting awfully low. A Daisu there for the support. They're going to try and chip in. Curios dead. Wow, one for each team here. Elo trying to chase it up and not able to get a Desu right there. A lot of fighting here in this bottom path. इस बार दोनों टीम्स में ऊपर है. From both teams. Yep, and now Last game में नहीं था ना. find an Overlord babysitting 2 players up top. A lot of people. Overlord not concerned. They knew Gatlu was coming back, and they're dressed This like time Elvis. I'm about मेरा to leg send था. you exactly where you're from. Sorry You're a दोस्तों. ghost type. Let's get it done. Overlord darting through, catching a mean reset. Gonna jump back into the action. Big question mark. Of course it isn't. They're gonna see इस Red बार मेरा leg था guys. low on Really HP. sorry. Tandem with Elo and Redmaw might leash इस बार this मेरा one leg out. था. Ooh, beautiful play right there. Redmaw chill Using रहा है. that core fish to get the reset on the extreme speed. Gatlu at the same time looking for a score, but they might go down for their भाई random gaming they almost have 3 junglers in one. Yep. Score. If Black Hand gives up on it, they get free points. Otherwise, they get a good reset. Gatlu maybe in trouble. Triggered भाई ये भी right सही here. है यार. Overlord नाम on ही this लूँगा Lucario लेकिन एक was बंदे so ने मेरे भाई को इधर फ्लॉप पे पूरी Goodbye. Even लेके Elo getting into the चलने action से now. बोला Those two are गलत working in tandem तार very है well. तो मेरे को लगा Stifling मिली the के tree, लिए chopping होता it है down बस one रिजल्ट limb का. at a time. Here we go. Some big scores up into the top half. ठीक है. Right नहीं पर here सिंडर for फिजिकल है ना. Black Hand looking great. रेजर का एक पार्ट शायद लाइक बेटर है मिलीज के लिए. But you know the rest is good. Shades of the past where both of these teams start. Level 9 Lucario भाई. नहीं level 9 तो नहीं दिख रहा. Already a war total. They want to get Blastoise and they want to start getting into the face of this Black Hand squad. Level 7 Blastoise दिख जाएगा अपने को. Looks like no one from Black Hand is down. थोड़ा मेरा डिफरेंस बढ़ गया होगा. वॉइस ज़्यादा पहले आ रही होगी अब क्योंकि लैग हुआ बीच में. Not able to get it. Nice pickup there for Nouns Esports. The confusion into the barrier. Salmon का Blastoise भी हो गया. I think bottom Blastoise सकता है. Semi rotation भी सकता है. On their levels here, however, Black Hand has 2 players sitting at level 8, and that's going to be huge for this fight. Someone we have not seen much of yet is Jungle Book. They've just been spending their time getting as much experience as possible. Once again, not level 9 here for this Dreadnought. हो गया भाई GG. Level 8 Cinderace kicking these Ulti big खोल दिया soccer उसने balls, शायद. trying to take this Rapid first spin big और KO and ला get a वही secure है. here as they just take over to level 9. Redmaw with a big time engagement. Oh भाई. But JB scoring it. The KO streak of 2 for them. The book doing great. Slash holding it down. भाई Blastoise माइम को जाना पड़ेगा किसी तरह. Ulti नहीं है उन पे. They can do it. Curious knows that and they're getting in their pocket. They're following them down. अरे ये लुका कल्ट आया था क्या? They're going to turn the tides on Nouns Esports. They're going to see how many points they can score. Oh How many भाई. bodies they can take down. Well played यार. Big old egg and the big old secure right here. We've got a bit of a fight happening right here as they're being pushed into this goal. Gatlu trying to take them back towards the base, and it looks बच गए like भाई. Nouns Esports ये is going to back push off. waste हो गई Good इनकी. defensive bliss assistance onto the book by Slash to make sure that they don't go down and send that high level experience to Nouns Esports. Overlord भाई आ गए. Catch up that way. Overlord coming in here at level 10 Lucario right now. Ooh, getting caught out possibly by Bruv. This would be huge. This would be a huge अरे KO ये if इसको they शायद were मिस to हुआ. get confused, अरे but they miss. ब्रव ने Bruv is कांड कर absolutely दिया. surgical with those walls and holding it down in the face अखिलेश of भाई 2 को किल मिल players. गए. It's पूरा सारा admirable, फार्म को Elo टेस्ट with किया the उसने. perfect hyperspace hole, getting Overlord out of danger and right back into the action. There are 3 strips on team name, bro. There, see this? Here at this Rotom. 1, Do not 2, wanna 3. let it go. And big Unite move here from Nice Blastoise. Blastoise Unite. Pushing this thing is here we go. We got the rapid Trev spin Unite coming आया. in. We got the Unite moves भाई pushing. Trev Unite into Blastoise Unite बहुत OP combo रहने वाला है यार.
पर Rotom dead. Unite moves were used, but Curio seems almost unfazed as they're darting through. They get their first KO in this arena. Red Maw is down. Gatlu's trying to put the pressure the other way. Rapid spin water spout going to put some pressure on, and Book, Elo, and Curios are just going to decide to back off. कुछ हुआ ही नहीं. What a ton of fighting happening here early. Black and pressure कर रहा है. Yup. Pokemon are very high level. Nouns Esports is going to need to do something. पहली बार माइम इतना स्ट्रगल किया है ब्रो का. नहीं तो वो अच्छा खासा. That's why last game when I said only level 11. एक्चुअली भाई हम जज नहीं कर सकते ब्रो. उनका भी डिफेंसिव है यार. ऐसे नहीं बोल सकते सीधा सिंडी पे कुछ जाए. वो ट्राई कर रहा है. उनको पता है उनको टीम फाइट कैसे करनी है. And this is going to be a big fight. We've got Unite moves only on a few Pokemon for both of these teams. One of the big ones. We've got सिंडो उनके पे 3 यूनिट्स हैं. इन पे 2 यूनिट्स हैं अभी के लिए. ओके 3 आ गए. माइम का भी आ गया. And it looks like Nouns just ticked over to level. ब्लास्टोइस का आ जाना चाहिए यार. ब्लास्टोइस का आ जाता है 1 मिनट में. Kick this action off, and they're looking at Bruv early. That wall comes through, but it can't. अगर हल्का सा फाइट लेगा तो ब्लास्टर्स का आ जाएगा यूनाइट. Kind of fended off as Slash is playing very far forward. Mr. Mime's coming back through, but nobody's down जब just BC yet. का यूनाइट आ गया पर. Pressure on Overlord is trying to find an opening, and they're converging on Dreadmaw. Keys is united as well. Redmaw's caught on the backside. Here comes Overlord trying to E-speed through, catching all the resets through the bees. Showtime, Spirit Fingers coming through for Bruv, trying to deal in some damage, but nobody's down yet. This fight is going on. भाई क्या फाइट चल रही है. It's like they use 2 Unite moves. Galu's all over Dreadnought. Trevenant Unite comes out, and they're collapsing. That's a fluffy tail on Dreadnought. Who's going to take it? भाई रीसेट हो गया. They're trying to throw damage at as fast as they can. अबे भाई यार ये तो नाउन का था यार. रीसेट हो गया ड्रेडनो यार. ड्रेडनो रीसेट हो गया. 3 players down for Nouns. What a ये तो नाउन का था. What an incredible fight there. Blackhand takes that after every single Unite move gets thrown in the book, and Jungle Book ends up getting some big KOs. Timing. So good. Elo's like, am I really Reset हो गया ड्रेडनो यार. Come on, somebody else on my team needs these, right? And Book rolls through and says, yeah, I got you. I think those are my beats. पूरी फाइट डिले करवा दी यार उन्होंने ब्लैक हैंड ने. Now we can see this Rotom possibly going down. Gatlu trying to steal it, trying to kidnap this Rotom, bring it back. Oh, and they're not able to get it here. Secured by Blackhand. Absolutely great. Jungle Book getting the KO for their efforts. Lord भाई जीजी कर दिया. They're sitting on the goal zone and they absolutely share and T2 पे जा रहा है और T2 push हो रहा है. Very strong in this one. Now the question is Blackhand going to push this or just get more experience all over the map? They're probably going to go back, especially Jungle Book. नहीं चलो push नहीं हो रहा. Hopefully become level 15 by Zapdos. We'll see. That's a big question mark. We already have 2 players level 13, 1 level 12, and they're going to try and push that. भाई नाउन को फार्म करना पड़ेगा यार. And Nouns is struggling to find experience on the Bro फिर से मरने वाला है. बच गया. The level advantage in this game is huge for Blackhand. They already did so well at that. इनको ऑफ गार्ड पकड़ना पड़ेगा किसी को तभी जीत सकते हैं. Zap fight unless. I like how Overlord pushes forward to get vision and is so confident in their escapability. They see 4 players for now. I think ये मैच में भी 3 रेड नहीं आ रहे. जीजी भाई इन्होंने भाई रेड फाइट इतनी डिले हो रही है कि 3 रेड आ ही नहीं रहे हैं. यहाँ पे ब्लैक हैंड की पूरी स्ट्रेटजी है कि फार्म ही नहीं होने देना. चांस ही नहीं. I mean Cinderace is just थर्ड रेड आ ही नहीं रहा है. Incredible at level 14. And then you Jungle Book play and you think, wow, this might be the यार ब्लास्टर्स का 13 हो जाए यार. उसका थोड़ा आ जाएगा. Slash is trying to buy some time. Extra util आ जाएगी ब्लास्टर्स की यार. Come on. 15 सेकंड पर फार्म ही नहीं बचा कोई मैप. But it'll be taken away immediately when Zapdos hits. Now take a look here. Blackhand is just completely zoning out Nouns Esports. They're going to have to find a way in, and it looks like they're actually jumping over into this bottom bush right here. Yep. Oh, okay, nice portal, nice portal, nice portal, nice portal. Very sneaky portal right here. Jungle जा रहा है. Blasters mid से आ रहा है. Resetting in this moment. They're not ready to fight. Okay, थोड़ा सा जोन ले रहे हैं. थोड़ा सा जोन ले रहे हैं ये लोग. First shot as Bruv looks for a big score, and it looks like Black Trevenant का Unite used है. They get that score and they're moving forward. Unite moves are coming out. There's a big Blastoise Unite, and they see who. भाई सर ये Unite के बिना. They're moving through. Bruv is getting low as well. Cinderace dead. They're playing far forward. Jungle Book is down, and that's a huge player for Unite. There's 3 for them, and that's a numbers advantage for Blackhand. Can they turn it around? A Dasu's trying to do उसका as much speed आ as गया. humanly possible. It's going to water spout. It's going to rapid spin. Gatlu's going to come in, and this Zapdos Oh, going भाई. down. It's going down quickly. Who's going to seal this thing? Curio's waiting. Curios is waiting to seal this thing up. Can they slash it down? As Slash puts the protected, but they यार. get it on the backside anyways. And now Nouns Esports are on the verge, but nobody is really there for Blackhand. Just Elo holding 25 points is scrambling, and they can cut them off. Big Unite does. Taking it into the air, 50 points here. उसका स्कोर हो गया. ओ नहीं हुआ. Can't stop it right now. 307. Can they win? T1 है यार. As we've got a sneaky sword headed They can. into the main Oh base. shit. There we go. 407. Shit. Nouns Esports has to mount a comeback. भाई वो Cinderace मार दो यार. Cinderace. Outer tier goal
control zone here, and they're going to try to defend the other two. Jungle Book just dealing in some damage as Geese catch a reset, and now Esports is looking to push. 2 more goals. Just got a lot closer. Blast कट आ सकता है. 407-269, a couple big scores, and this thing is all evened up. 35 seconds left to go. Mime का भी नहीं आ सकता किसी टाइम में. Here in this match, and they've got to make a big push right now. We got Slash going for the back half, and now Esports hasn't really started the push here, as Jungle Book is just all about getting experience and trying to get their Unite move back. Brav low हो गया यार. Brav low HP already. Brav is dead. Even if Noun scores right here, it might not be enough because of these 80 points right here. Noun is putting in some points into the top path, but too many of them are getting KO'd. Last is able to defend, kicking the soccer balls. The Unite move doesn't matter. Blastoise, Blackhand Bye. game number 2. Let's go, North America. That's another strong showing by Blackhand, and completely reversed from what we saw in game 1, where they were struggling to keep up. Crowd is GG, yaar. This time they got out of the gates quick, got some quick KOs, and never gave up. Domination, yeah. I gotta say, Blackhand just looking fantastic here in game number 2. You know, we had the strategy switch up here from Nouns. Both teams switching up their strategy a little bit, and it just didn't seem like it was the play. They did get some value out of that Blastoise. The big plan, obviously, rapid spin onto Jungle Book, take him down. GG bhai. Blackhand was able to punish 2-0. that decision. ओवरलॉर्ड से में लौट है यार. पर ये गेम तो उसने निकाल ली. केरियोस ने. केरियोस भाई ने क्लच कर दिया भाई. आई थिंक गैट्सू ने फ्लफी टेल थोड़ा जल्दी लगा दी. फ्लफी टेल थोड़ी जल्दी लगा दी गैट्सू ने. थोड़ा वेट कर सकता था एबिलिटी का. ब्लास्टर्स तो मस्त खेला यार. ब्लास्टर्स अच्छा खेला. That star. 487, 275. Nouns Esports, if their back was against the wall before, they just got kicked through it, and they got to fight their way back into the house to find क्या comeback दिखेगा guys? They have to win 3 games on the hop to क्या 3 गेम जीत पाएंगे Nouns back to back comeback के लिए? Blackhand needs to just win one of the next 3. Take a look at this here. Blackhand just dominating early. You know, Zarina is pretty good in that top path, but not until they evolve. And a Pokemon that ओवरलॉर्ड का डैमेज तो है भाई. Kind of fallen out of favor lately. कैमर पे इंडिया का सिंडी कॉपी हो गया क्या वर्ल्ड में फाइनल में भाई. इंडिया का सिंडी का कुछ लेवल नहीं है यार. And Nouns Esports had some moments of brilliance here. An early KO is स्कोर 2-0 चल रहा है in favor of Blackhand ग्रैंड फाइनल्स का दोस्त. But Blackhand able to converge and take some very clean team fights. 2x करो नहीं भाई. already caught up है. Yeah, huge fight down here at Dreadnought. Overlord, by the way, just dancing around, moving through the bees, getting some health back, running away from Brub's Unite move right here. This was the massive, never-ending Dreadnought fight with every Unite inside the game. Yeah, they chucked everything at this Dreadnought. भाई कल ओवरलॉर्ड को देखा था तब भी समझ गया था ये ही जीतेगा रे भाई. इधर बहुत गलत हुआ यार इनके साथ, नाउन के साथ. इधर फील हुआ. Yeah, Kyrios looking great on the sword right here, and it, you know, really excellent. अरे पॉकेट 555 भाई आया क्या? वेलकम टू स्ट्रीम एलेक्स भाई. क्या हाल है? Really tanky Pokemon with tons of HP, and then here's that final moment right there. The boosted attack. Come on यार नाउन. And getting the big secure on momentum मत हारो यार. I was concerned with how low Blackhand players were on HP and how many of those points they'd actually get to convert. Just enough is the amount they got, as Nouns was unable to. Zepdo चढ़ा दिया भाई इन्होंने. Slash, your MVP Slash भाई बने हैं. That's more than you have to get on Blissey. 9 assists, 262 points. Red ने दो क्या दिया भाई. Hey, look at you, buddy. कैमरे को ठोक दे भाई. एलेक्स भाई बिग फैन यार. Walking highlight reel on this Blissey. GG भाई GG. The soft boiled with the egg bombs. I mean, with the Bliss assistance specifically on Overlord. I mean, it's been great from top to bottom, and that's. Buzzwall ले सकते हैं किस खुशी में. Buzzwall नहीं चलेगा भाई. Instant dead. Now, Blackhand is playing amazing right now, and let me just set the stage for exactly where we are. को अगले मंथ तक का content भाई. भाई. Wins this next game. They are undefeated in the World Championships, and they become the World Champion. Blastoise दिख रहा है क्या? Kyrios का भी. Is the best in the world. ओ भाई एनर्जी एम ट्रिपल स्पेक्स. गंदा डैमेज भाई.
it's Nouns. This could be the biggest Gas game jump. of Pokemon Unite that has ever been played. Blackhand could be a world Double championship, a champion in less than 10 minutes. Look, I'm not going to say Nouns Esports has the weight of the world on their shoulders, but they certainly have the weight of the EU region on their shoulders. They have a huge amount of just fans going crazy every time they secure an objective, every time they take a Zapdos, every KO they take, and they're looking to come up for this squad new Pokemon support हैं them all the way through the finish अभी तो line. release They हुआ have all the support behind them. Now they just need to deliver. Others back to Sylvie. Yup. Just need to seal it up. Can they be Do or die. Yup. with this one match? It is all on the line for Nouns right now. They cannot give a single game. They must win 3 in a row. Blackhand के साइड में क्यों लिखा है? They must win Blackhand के साइड थोड़ी लिखा है, उसके साइड लिखा है. but never against Nouns. Excuse me, never against Blackhand. Well, Blackhand Nouns के साइड लिखा है, Blackhand के साइड थोड़ी लिखा होगा. I don't see too many drastic changes. I don't think they're going to get goofy here, like I said before. Nouns के साइड होगा. Yep, Nouns के साइड लिखा है दोस्त. It means loser bracket से आई ये team. Nouns Esports, your purple team. ये loser bracket से आई ये team. This is the grand finals, and it could be the last game. चलो भाई. Pokemon Unite World Championships. Here we go. Gatlu playing early, trying to keep Curious out from getting stacks, but that's a Curious पे बंदे चढ़ने वाले हैं और Curious भी like भागो. Yeah, Curious in this bottom path with 3. It looks like Overlord going to be playing this top path. Overlord ने farm तो secure किया है. We got the Lord of the Sword here in the top path trying to deal with Red Mazarina. Support Adesu back on the Sylveon. That's a great power, level 4 power spike, and they're going to try and leverage that in the face of Book and of course the hot edge that takes so long to level up into the Aegis. अरे लूक का देखना था Overlord का कोई ना भाई. कोई ना कोई ना. Experience to evolve, letting it sit here actually for a second so that passive experience can sort of tick up, and hopefully get the evolution. Most excited 10 minutes. Yep. Perfect timing. Yep, they want to get to that Raboot and keep pushing the pace and leveling up here. ऊपर BC आई है, bottom center गया है. For what Blackhand might be up to at these top Bs. They've been rotating hard to it, but right now Wait, ऊपर के लिए अच्छा bottom AG भी चला गया. Reeling and retreating, and they have to send Nouns Esports with their pockets a little bit more empty than they'd like. Yeah, here we go. They just sent Slash up top so they can fight down here at this bottom path and throw a bunch of points in the goal. Nouns not able to stop it, but here they come. Now the Sylveon's down in this bottom path, picking up a couple KOs. Let's go. Curious भी गया. Nouns Esports turning the tide, getting 2 big-time KOs. Upstairs, we've got Nouns Esports. Redmaw scoring points, hitting Zarina much earlier than in the last game. Slash fighting with Redmaw in this top path, just trying to defend themselves against the mean Zarina. तो क्या होता direct backend की जीत जाती क्या? क्या मतलब? Coming through, getting a core fish. They need to get their levels, of course, most importantly for that second Dreadnought. यार इन्वेट भी है कभी आरनेस जीतती तो क्या होता है मतलब आरनेस कहाँ जीतती मतलब यार हुपा यप right now. We got a minute Black hand until our करेगी first Dreadnought fight. Black hand दोस्त back hand नहीं black hand. So they can become an Aegis Slash. Desu coming through. Curious just going to curse and charge forward. They want to hit level 7 soon. Buff लेकर आ गया हुपा है. with the engage. Desu's getting reloaded. And Desu बच गया एंड ने बचा लिया. From Nouns Esports getting a Desu out of danger. Jungle Book looking great right here. Already level 7. Looking for their Overlord. Oh भाई. Caught out here trying to run and they cannot get away. Time by कर रहा था भाई पूरा. KO'd by that doublade sent packing and they need to respawn and get back onto the map. Here we go. नहीं दोस्त अगर loser bracket में आरनेस जीतती तो ऊपर अब अभी आरनेस वर्सेस ब्लैक हैंड होता ना क्या बात कर रहे हो यार? Nice little catcher, maybe a KO. No, Elo able to get out there as they secure the Bs there in the bottom path and start heading down for Dreadnought. मेंबरशिप गिवे के लिए मैंने तो कोई मेंबरशिप गिवे अनाउंस नहीं किया ना दोस्त वो तो बैटल पास गिवे है वो तो चल रहा है अपना दोस्त जोन है इस बार नाउन का इस बार जोन है नाउन का सिंड्रेस आया नहीं है यार 9 का ओके ट्राई कर रहा है वो जंगल इन्वेट ओह भाई ऊपर भाई भाई लो ले गया यार भाई expect but exactly what Blackhand wanted. And now Esports does not know where Jungle Book is, but here it comes. भाई वो पीछे से आ गया जंगल बुक पीछे से आ गया huge unite move taking him down. Let's go Jungle Book. Curious moving forward, one player down for Nouns Esports, but they're putting together a pretty good push here. Egg to the book and they're keep pushing forward as well. Overlord coming through. Sylveon getting KO on the tree. Overlord getting KO on almost.
Jungle Book just heading back here and now going to get some more experience here. What an expert play there from Black Overlord, what a legend that War Turtle tried to hit the spin, get the berry, and Overlord said this sword's too sharp. No, sir. There we go. Blackhand once again putting pressure on up and out in the top path. They have already Jungle started Book up here. It's going to be difficult for now. They've got the egg. They've got the stomp. Here it goes. No, taken down, I believe, actually by Elo. अरे यूनाइट कैंसिल यार फिर से अब ब्रो एचडी जाएगा यार Curious is trying to leash them back with a big leech of its own. Huge push is what they're looking for. Get them all the goal zone so this Rotom can hit. Brub is trying their best, but Blackhand's all over them. They get KO'd, and here we go. Blackhand's going to get some points, and they're going to sandbag it as long as they can because, hey, Elo's got 32. Yeah, there you go. Nice overdunk here for Blackhand, and Blackhand is just playing phenomenally here in game number 3. They're playing like they're champions, and they're trying to take it home right now. Nouns Esports not too far behind it. Desu coming through, trying to leverage that hyper voice. Overlord picking up an egg, hitting on the reach. Level diff already ho gaya yaar. Here we go. Overlord slashing it up, already level 10 here. But you know who's a pretty high level too? Yeah, it's that Jungle Book. Level 12 Cinderace here. भाई जंगल 12 को रखा है. बाकी इनका हाईएस्ट ब्लास्टर्स 10 है. ब्लास्टर्स अरीना. That's going to be a point of contention. They have their Unite move, and that's a great way to set up a great engage for now. And here we go. 5v5 Unite नहीं 5v5 नहीं actually यार. सटीना का दिख नहीं रहा. The hyper voice coming in. No, we're engaging now. Overlord's looking for a way, and they hit a big wide guard, and they're actually just backing off. No sense. Silvian को Unite नहीं है यार. वो पूरा घुस भी नहीं सकता अभी. By nice ult. Blissey penalty के गया. They're moving far forward. Rapid spin water spouts going straight after Book, oh, and they catch them before nice one. 3 players down for Blackhand, and that's यार पर ही reset फिर से हो गया. Stomping them out like Indamakan Su. Redmaw is all over this Dreadnought. Blackhand sent packing. Blackhand. Yeah, Jungle Book is going down. Elo trying to stay around for the seal. Hey, they've done it once. यार ये reset ना हो जाए फिर से यार. This Dreadnought is low. Here comes the big egg from Slash. Let's see who भाई बच it गए. looks like yes. Overlord भी आ गया था. Overlord ने Unite उसको Unite दिया यार. भाई अरे इसका Unite थोड़ा underwhelming हो गया. They're coming through, but Overlord had the blisters for a short second. Can they take it down on a Desu? They do, and now aggressive तो जा रहे हैं. trying to hold it down. Here we go. Overlord just pushing forward, looking for a KO Still, right here. As Kyrios level advantage काफी अभी तक उनके पास ही है. थोड़ा सा equal हो गया. अब levels equal हो गए अब. Levels equal हो गए. Yeah, big pressures. This level थोड़ा कम कर दिया. Cinderace 13.5 हो जाता अब तक. अब शायद 14 hit करेगा max to max. Yeah, Nouns really needs to turn the focus internally onto their side. Third rate तो आ नहीं रहा. As much of those wild Pokemon as they can, and avoid big time engages to Blackhand. Try and find a pick. Don't go for the big team engages. But look at all the static that's being caused in the bottom path. They need to send resources down there as Blackhand's being relentless on that push. Yeah, it looks like Blasters भी 13 हो जाना चाहिए. Getting chased down. ओ भाई catch कर लिया यार. We do not want to let you head home, but no, we are going to back off here because there's more action in the bottom path as Overlord's coming in. Big engage. भाई पकड़ लिया यार. Water's going to try and find it. They're going to catch a reset here just in time. Great work by Geese to keep them out of trouble. 1 minute left. Score diff भी उतना नहीं है. 60, 70 sorry. Nouns Esports in a solid पर 20 ना 20 तो ले गए. Question mark is can Nouns actually win a massive fight at Zapdos? Blissey versus Blissey जीत गई. किसकी पता नहीं. Counterpart, and of course Overlord keeps trying to level up. Redmaw getting big, level 13. That's who I'm looking for. They're going to need them in a big way. Nouns can come back. In the face of what Blackhand's bringing. That's right. That's a level 14. Safeguard just survival नहीं ना चलेगा. Zone की requirement है दोस्त. Team ने बोला होगा क्या चाहिए. ऐसे तो नहीं होता. They might be able to win this fight. Right now, we have 15 seconds until this Zapdos. This could be the last Zapdos of the World Championships. Blackhand is looking to put this thing away right fight now. Has started. Elo को छील रहे हैं. Needs this to stay alive, and this fight looks like it could Kyrios be पे चढ़ रहे हैं. Kyrios is all over Gatlu. That's a rapid spin water spout. They catch a big time reset. All that damage fades. Oh, sector for miss. Overlord tries to find the wide guard, and are they going to engage off of this? The egg goes off. engage हो गया. Hoop is on bound. They're throwing fists in the air. Big Unite move catches all. अरे GG. Redmaw का Unite cancel. First KO, 1 player down for Nouns. They're going to push forward. They're going to try and convert. They're converging on Brub. You're going down. See you later. They're moving forward. Overlord's a
relentless all over Adesu. That hyper voice hasn't hit any notes at all. There's no ears on a sword. They're coming through. Give him another one. 4 down. Just Gatlu, the big Blastoise, gonna try and sort this thing out. But they're tearing through this Zapdos, and they're tearing through this Gatlu. And this is Black Hand's world, and we're just living in it as they're collapsing on this Zapdos. And this could be it. Black Hand kicking down this Zapdos. Just a few hits left. GG, guys. Zapdos, that could be it for the grand finals of the World Championships, as the points are going to be raining in here. Nouns is going to do everything they can to push them back, but Black Hand is relentless. The plates are full. Unite ही मिस नहीं हो रहा है सरीना हर गेम भाई तीनों गेम सरीना का यूनाइट नहीं लगा यार तीनों गेम सरीना का यूनाइट नहीं लगा है stretching out like taffy. Nouns Esports is back against the wall. If they were kicked through it, they're not even on the same block, they're not even the same parking lot, they're not even the same state or stratosphere or country. This is where they're at now. NA is the champion. Where they are is Black Hand's world, and we might all be living in it. Black Hand is 30 seconds away from becoming your world champion unless Nouns can do something about it. Oh Lord, मस्ती कर रहा है छोड़ दो यार अब नहीं कर रहे वो यार 11 PM results done bhai. Adesu with the unite move, but I think it's fruitless right here as we have 15 seconds left. Yeah, they're caught out. They're on the backside of nowhere. Overlord looking for a gauge. They're trying to pad the stats. That's a huge reset timer and Black Hand, baby. Oh, here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Black Hand is your world Chalo, champion. guys. Pokemon Unite, undefeated. North America. Black Hand, look at them. The best team in the world. Oh, bhai. To the ground here in London, North America, stepping into the territory, taking it down in convincing fashion, not dropping a single set. From winners to bell, top to bottom, they're going home with a big trophy, and I hope you got the right side. GG's boys, Black Hand. Hardware to carry with you. You don't do it better than that. You don't do it more convincingly than that. What a run. You cannot beat them. No one can take them down. Not undefeated, bhai, undefeated. One of the best teams in the world. Paul knows it, bhai. Paul knows it, bhai. Paul knows it, yaar. But Black Hand, what a championship run. What a championship team. We're seeing some this is North American team though. These two squads. Nouns Esports have been up against it. अच्छा खेले यार, Nouns भी अच्छा खेले यार. Clawed and fought their way to this point, to the grand finals. Jungle Book ने बहुत काउंटर किया यार. Jungle Book ने बहुत काउंटर किया Dragon Ball को. Would it be the 1-1-3 meta? Would it be Lucario? Would it be Japan? Let's hear it for Kyrios. Let's hear it. भाई audience देखो यार. What it is Black Hand, baby. The ठीक है बोल के यार. in the world, pulling out many different strategies to beat all the teams that came before them. Black Hand, the #1. Fang भाई से फिर समझ लो Black Hand कितना अच्छा निकला फिर. इसी हिसाब से. Finals ही है भाई. God-like gameplay, bhai. The Pokemon Unite Championship Series has had. We kept talking about them as the most consistent team, but could they win? They stepped onto that regional final stage, beat the brakes off of everybody. They stepped on the world stage, beat the brakes off of everybody, and now they're going home champions. I don't know what else there is to say. The only thing I'm a bit bummed about is Excellent, their coach, can't join them right now, but I know they're going to share that trophy. Bye. Last में Cindy आया भाई. Cindy आ गया यार एंड पे. एक टाइम था जब ब्लैक हैंड डिसबैंड हुआ था एंड अब देखो यार ओजी हार के ओजी तो कब का हार गया भाई. Black Hand and Book getting it done. Black Hand pushing ओजी तो कब की हार गई. They took control early in this. नेक्स्ट टाइम आप आ फिर भाई 11 बजे अपने मैचेस खत्म हो गए गाइस. You're looking pretty great. Cindy भाई Cindy, let's go यार. Cindy से गेम स्टार्ट हुआ, Cindy से गेम खत्म हुआ. They were adapting, they were adjusting, they were seeing what the other team was bringing. अभी तो आफ्टर देखते हैं भाई, अभी प्रोसीडिंग्स देखते हैं सारी. एक्चुअली मैं चैट पढ़ रहा हूँ दोस्त, किसी ने चैट दिखा था कि एक टाइम पे ब्लैक एंड डिसबैंड हुई थी और अब इधर आई है. This was the finals प्रीतम भाई, this was the finals. Black Hand won the grand finals. Black Hand is the first ever world champion. Full heal matters.
ड्रैगो आया ही नहीं फाइनल में. ड्रैगो मतलब Don't forget, Blackhand is getting a trophy. ड्रैगो नाइट. Getting their name etched इश into the भाई history books of Pokemon Unite. बहुत यार इश भाई. Blackhand is of course representing ओवरलॉर्ड ने घंटा को दिया. Serena cult यार. Yep. Serena did his best though. He did his best. That's right. $100,000 to Blackhand. Look at that celebration. Let's go. Overlord is the MVP. The player of the game. The player of the game in the final match of the world. Why people don't just feel भाई करते हैं भाई. Any better than that if you're Blackhand. Overlord has always been in the room. ये लोग guys सारी trophies. Doing a hard time carry and they're feeding them. These are the trophies. Hard earned, well earned. Blackhand. And as you can see, we are getting ready to थोड़ा sound present them with their trophies sound on ऊंचा the कर दे main थोड़ा. stage. अब Let me थोड़ा tell है you, ना. Dupe Snacks, I mean, casting this season of Pokemon Unite has been an absolute pleasure. We Black have seen Horse, so भैया, Black many Horse. amazing teams from all over the world. Almost 12 month I champion think title it's लगाने का a nice little treat that, of course, the team from our homeland was able to pull this out. North America, that is also very fun. But every single team that came here in this tournament has just impressed me so much. Let's take a look at what they're winning here. Well, first place we called it. Yellow guys आ गए standings. For Blackhand. Nouns Esports. Hope your check-in count's ready because you're getting 75K across the board. Renaissance 65 and T2 rounding out our top 4, 60K as well. And you can see those numbers going all the way down. All 13 teams getting some pocket money to go home with. That's right, a $500,000 prize pool. The bragging rights of being the world champion on the line. And of course, Sword Lord, settling Overlord. it once and for all, or at least for now, who the best in the world is. North America, and specifically Blackhand. Well, Blackhand's going to have to defend this title in 2023. And you better believe that trophy is going to be sitting behind them whenever they're doing anything. Whenever there's a picture, they might just pull it in. You know, selfie, bang. Wait, you're not even at home. You're in a restaurant. Got it. Oh, yeah, you just take it out wherever you go. You get a trophy like that. You don't leave it at home. You take it with you wherever you go. And you better watch it, because I'm coming for it. Like, तो ठीक है, ट्रॉफी तो obviously एक को मिलेगी यार. I might have just threatened to steal their trophy. Sure, sure, I might have done that. You know what? Yep, nouns के लिए भी well played nouns कर दो guys. Well played nouns कर दो यार. Nouns के लिए भी एक well played बनता है यार. I can't do it, I'll tell you that much, but I would love to see them try to defend this trophy. I mean, without question, just the best of the best. नहीं नहीं. We are ready for their big moment. Let's take you to the main stage so they can receive their trophy. चलो guys. Hello, everybody. Welcome. Please give another round of applause as we welcome back to the stage the award president ceremony, and CEO guys. of the Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara. भाई टेलीफोन बुथ से आए हैं. What the hell यार? Let's give a round of applause to the Pokémon Unite competitors that made it to See London you. for the 2022 Pokémon World Championship. All of them. Let's give them a round of applause. Who won the grand finals? Blackhand. It has been an amazing first Runner year up, for Pokemon Unite. Nouns These Esports, trainers third have been place, practicing Renaissance. all season for this moment to be the first ever अशांक जी ऑनलाइन कर लीजिए यार, मेरे को भी आइडिया नहीं है. champions. 100,000 USD to winner कर लीजिए यार. Across Eos Island using great teamwork and strategy. Let's celebrate their accomplishments as we crown our first ever Yep, he is the champions and finalists CEO of Pokemon Unite. Create Are क्या you पता ready? नहीं, कंपनी का CEO है ये. Create क्या कि नहीं ये नहीं पता मेरे को यार. Knowledge नहीं है. Our finalists from Europe, Nouns Esports. Second place, Nouns guys. First, Adesu. Calling Adesu. Come on over. भाई उसको लग रहा है ऐसे ही नाम बुला रहे हैं. ट्रीट्स का मुझे नहीं पता भाई. Okay, silver trophy. This is the silver trophy, right? Silver color. Okay, हर प्लेयर को ट्रॉफी मिलेगी. हर प्लेयर को ट्रॉफी मिलेगी यार. हर प्लेयर को ट्रॉफी मिलेगी. Gatlu. Bruv. भाई.
and Renma. Congratulations, Nouns Esports. And now, our champions from North America, Blackhand. Oh bhai, GG yaar. Let's Feels hear it fine, guys. from Kyrios. बस भाई इतना ऊपर भाई फुल ऊपर ले जाओ यार. गोल्डन ट्रॉफी है अब. Jungle Book. Overlord. Oh bhai. And Elo. Congratulations to all of our 2022 Pokemon Unite World Championship finalists. Let's give them a hand. Let's go bhai. Ceremony to GG hai yaar. Well played boys. We still have so much more Pokemon action happening here in London with TCG and VG finals happening tomorrow. Thank you again to all the Pokemon Unite trainers, and let's end with giving our finalists one more big round of applause. GG tournament players. Yep, Amrit bhai. Ekdam badhiya. GG matches. Well played yaar to everyone. These are the main trophies. देखो ना उधर gold है, उधर silver है. Your world champions, Doob Snacks, amazing. Bro, this is the main trophy. Looked great. They accepted their trophies with grace. Nouns Esports as well. And I am jealous across the board, but they is hard-earned, and they get that hardware to take home. I'm just so proud of both these teams. Yep, proud to be part of this community. And these are two teams that you and I were fortunate to watch all year long, and to see them on the biggest stage in the biggest game just takes my breath away. It has been absolutely incredible working with you, Jeff, Zoinks, this amazing crew. We're going to be talking to Blackhand here in a moment, but while they get that ready, I just want to say a big thank you, of course, to everyone watching at home. You make this game what it is. The community of Pokemon Unite is incredible. It is incredible. It is incredible. They showed up, showed out, and these teams performed and absolutely entertained as the day is long. They put on a show, and it was, again, speechless. You know, one thing I love, I mean, you've got Blackhand here, undefeated. You really want to answer the question as to who's the best, and without question, it is Blackhand. They really cemented themselves there, but Zoinks is on stage with Blackhand right now. Which position we were? 5th and 6th. 5th, 6th equal. Okay, guys, interview. What is up, everybody? One more time, let's hear it for your champions, Blackhand. Guys, ये ट्रॉफी का ये जो प्लेयर्स हैं इनको सस्ता ट्रॉफी बोल के देखो. इनके मुंह पे बोल के देखना सस्ता ट्रॉफी. ठीक है ना? उसकी वैल्यू नहीं पता आप लोग को यार अगर ये ऐसा बोल रहे हो तो. To know that you are now the best Pokemon Unite team in the entire world. I don't know, man. It doesn't feel real to me, dude. Yeah. It's crazy how like it started out as a hobby playing the game, man, and now like a year later, dude, met like 4 of the best friends in my life. पता नहीं देते भाई. Now we're here, grand champs, dude. Oh, can we get an awe from the crowd? That is adorable. Yes, amazing. In this tournament, you went through it undefeated, match by match. What was the key to such incredible success? So the key to winning was not playing D-Night. Okay. Because our jungler over here can't stick here on D-Night, so. भाई उसका भी ड्रैगन So a hot swap is what gives you the answer now. I just have one final question, and this is actually going to come from the coach of your team. They asked, who said it was okay to play Greninja Greedent? Me and Jungle Book. Okay. Well, we have to give it to you. Can we hear it one last Troll कर दिया time भाई. for Troll कर Blackhand? दिया.
जंगलर को ट्रोल कर दिया भाई। करसड़ भाई है क्या? They are your Pokemon Unite champions, and they have been Blackhand. I'm going to send it back to the desk. Wow, incredible! Thank बोल you, ब्रो, अब तो आएगा यार, अब तो इतना तो बनता है। Here we are coming to the close of our World Championships. It has just been such an amazing journey, hasn't it, Dupe Snacks? सब ट्रॉफी के साथ होंगे, the best indeed. The first ever Pokemon Unite World Championship is in the bag. Blackhand are your winners. I am the most fortunate caster in the world to have been here and cast this game. I just absolutely elated from top to bottom. Shout out to everybody that tuned in, everybody in production, everybody that made this happen. Of course, all the players, the entire community. You're beautiful. I love you. Thank you all so much for watching. Thank you all so much for listening. This has been incredible. Quite a treat. These have been the Pokemon Unite World Championships after months of competition, battling through the best teams in the region across the world. Blackhand has been crowned the first ever Pokemon Unite World Champions here at the 2022 Pokemon Unite World Championships. Thank you for tuning in. Thank you for participating in Pokemon Unite. Yeehaw to you and yours. We will see you next year. Rotate to Dreadnought. पॉकीमॉन कंपनी जैसे तो ट्रॉफी अच्छी है यार, उनका मतलब वो ऐसे ही बनाते हैं, उनके थीम को सूट करता है थोड़ा, यू नो, किड स्टाइल। नो प्रॉब्लम गाइस, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यार। हाँ भाई, म्यूजिक तो अच्छा है यार। And welcome to the 2022 Pokemon Unite World Championships, coming to you live from London, England at the Excel Center. The entire year has led up to these two exciting हो गया क्या भाई? No announcement I guess tomorrow जब सारा इवेंट खत्म होगा। The original Diglett was my first Pokemon card. मैं जाएगा ट्रॉफी का ऐसा होता है, ठीक है यार। रीसेट है क्या? ठीक है। देख लेते हैं हल्का सा। I'm so happy to be here. Clan के friends. We've met so many people. We've met up with them here, so it's just nice to have people from all over the world that like we never would have known without you. RNS कैसी announcement? कोई update game के लिए future का ऐसा? Just thanks for being so kind to everyone, and thanks for being so supportive and making this a great experience and making us want to be here and meet everyone. Good night, Oxy bye. Good night everyone. Thank you for coming यार. ठीक है चिरिस भाई, ये चीज देखना बस आज। चलो गाइस, इट्स ओवर आई गेस। यप, इट्स ओवर। चलो गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन। होप यू गाइस हैड फन। मिलते हैं कल होपफुली, अगर मैं थका नहीं हुआ। टेक केयर, हैव फन, सी या, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।